Ladies and gentlemen, Namaskar, Amen, Amin, Namaste. Are you excited? Are you super excited? Are you super duper excited? Dr. PPP is the celebrity guru. Award-winning author of the book, You Are the Celebrity. Dr. PPP is the marathon man who ran more than 20 full marathons. Dr. PPP is the Himalayas guru who is climbing the Everest, the Himalayas. Dr. PPP is more than 2 times Canadian and more than 5 times international bestseller author. Dr. PPP is the Guinness World Records award-winning author of more than 10 books. By God's grace and your blessings. Dr. PPP is the United Nations Peace Ambassador of the world. He is the celebrity coach of the world. Dr. PPP is the celebrity speaker, creator who created hundreds and hundreds of the celebrity award-winning speakers all over the world. Dr. PPP studied Western medicine from the East and Eastern medicine from the West. Dr. PPP met over thousands and thousands of celebrities from all over the world, including Bollywood actors, Hollywood actors, politicians, cricketers, tennis players, and other sports celebrities. Also celebrity entrepreneurs and spiritual celebrities and award-winning authors. Dr. PPP is the Hollywood and Bollywood actor. He served the Canadian Army as a field engineer. Dr. PPP's mission, passion, purpose, and vision is to awaken the celebrity within you and more than 8 billion people of the world. Dr. PPP's mission, passion, purpose, and vision is to awaken the spirituality within you and more than 8 billion people of the world. Now, ladies and gentlemen, please stand up on your feet and give him a standing ovation to yours and the world's one and only, the celebrity guru of the world, Dr. PPP. ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਈਏ ਕੰਮ ਕਰੀਏ हेलो आप कैसे हो सुपरस्टार And the heaven by God's grace and your blessings, Alhamdulillah. Amen. Amin. Namaste. Hello. I am Dr. PPP. You are yourself a blessing. Thank you so much, Sarji. I am the celebrity guru, award-winning author of the book, You Are the Celebrity. I am the marathon man who ran more than 20 full marathons by God's grace and your blessings. I am the Himalayas guru who is climbing the Everest, the Himalayas by God's grace and your blessings. The celebrity guru can write, so can you. If the marathon man can run, so can you. If the Himalayas guru can climb, so can you. Life is the movie, you are the celebrity. Life is the celebration, you are the celebrity. Life is the marathon, you are the marathoner. Life is the book, you are the author. Life is the mountain, you are the mountaineer. I am honored
I am privileged. I am humbled. I am blessed. And I'm super excited to introduce you, to host you, none other than IndoPak Independence Celebration Conference. Yes. And I am 2+ times Canadian, 5+ times international, Guinness World Records, award winning author of not one, not two, not three, not four, not five, not six, not seven, not eight, not nine, but 10+ books by God's grace and your blessings. I served in the Canadian Army as an engineer by God's grace and your blessings. I am the United Nations Peace Ambassador of the world by God's grace and your blessings. And here is the map of United Nations. Yes. And I'm super excited to introduce our first speaker. Yes, you heard that right. All the way from Amritsar, the Golden Temple area, Punjab, Hindustan. And talking about Hindustan, let me show you Mother India. Yes, this is I'm talking about Mother India. Yes. Tricolor Tiranga. Yes, so none other than help me welcome with your lots of hearts, wow, likes, and share it. None other than awesome, amazing Ashok Nishalji, who sang almost 10,000 songs. Yeah, you heard that right. Who sang almost 10,000 songs. So without further ado, अशोक निश्चल जी वेलकम 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 कैसे हैं सर थैंक यू सो मच सर आपको आपको देख के तो मैं यंग हो जाता हूँ आप यंग ही हो यंग हो जाने का सवाल ही नहीं रहता है हो जाता हूँ मेरी जो एनर्जी है ना बूस्ट हो जाती है जो बंदा हाँ बोले ये नोबल ये वेरी गुड सोइल प्योर सोइल यू आर प्योर सोइल देखो यू अट्रैक्ट हु यू आर आप प्योर सोल हो इसलिए प्योर सोल को रिकॉग्नाइज करते हो और अट्रैक्ट करते हो आप में कुछ बनावट नहीं है जो कुछ हो वो बता देते हो यही है प्योरिटी दिस इज प्योरिटी ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन एंड बनावट करके कोई चलो किसी और को बना सकता है अपने आप को थोड़ी बनाएगा रात को सोने जाएगा तो अंदर से तो आवाज आएगी ना जो अंदर वाला भगवान जिंदा होगा वाहेगुरु जिंदा होगा तो अंदर से तो आवाज आएगी ना कि तूने किसी और को बनाया है ठीक है ना हाँ। तो आप इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच के भी इतने नम्र होना ये बड़ी बात है वो मैंने अमिताभ जी से सीखी है अशोक कुमार जी अमिताभ बच्चन जी इतने बड़े आपके पास नहीं आता प्राउड आपके पास नहीं है मैंने बहुत शुक्रिया मैं इसी चीज को आपको नमन करता हूँ आपकी इस क्वालिटी के लिए नहीं मैं करता हूँ कि इतने माना वहां तक पहुंचे हुए आपने बहुत सारी मेरे से भी ज्यादा दिवालियां देखी होगी ईद भी देखी होगी आई नो और बैसाखियां भी देखी होगी फिर भी माना इतना विनम्र हो के एक नाचीज को माना इतना प्यार दे रहे हैं तो यही आपकी महानता है ना मुझे झूठ बोलना नहीं आता लेकिन मैं आपके बारे में जो कहता हूँ ठीक कह रहा हूँ आई एम बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आल्सो मैं आपको पेनिट्रेटिंग आईज से भी देखता हूँ प्योर हार्ट पर्सन एक निर्मल सुंदर जैसे देखो एक नदी जो है वो पहाड़ों से निकलती है कितनी निर्मल होती है साफ होती है उसमें कोई गंदगी नहीं है एक कमल का फूल एक फूल खिला हुआ पूरे बगीचे में उसको रोशन कर रहा होता है बस वही तो आपकी मानता है यही तो आपकी मानता है कि वही ना इस नाचेस को फूल की तरह और नदियों की तरह भी उछलती कूदती नदी की तरह आप ना कंपेयर कर रहे हैं को बिना जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसितान से आप जैसे फूल को नेचर परमात्मा रब गुरु
सब आपसे प्यार करते हैं, और वही फूल इस गुलिस्तान में पटेल साहब आपको हमने चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये हम कॉन्फ्रेंस लेके आए हैं, वो है इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस। जी 1947 हिंदुस्तान डिवाइड हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ इंग्लिश पीपल की विश थी कि भाई वो क्विट तो करेंगे, वो जाएंगे, मगर हिंदुस्तान को दो टुकड़ों में बांट देंगे। और उसी नाइट माना 14 अगस्त नाइट और 15 अगस्त की सुबह को माना द बिगेस्ट मैसेकर ऑफ द वर्ल्ड हुआ। लाखों लोग कट गए बिकॉज तब आइडेंटिटी पाली कि भाई आप पाकिस्तानी हो, मैं इंडियन हूँ, आप मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, या मैं क्रिश्चियन हूँ कि मैं वो पंजाबी हूँ। एंड द बिगेस्ट मैसेकर दुनिया ने देखा। 75 साल से माना बॉर्डर पे लाखों 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 सोल्जर्स माना अपनी जान, अपनी मदर इंडिया और पाकिस्तान के लिए फना कर दिए, ठीक है ना, वो शहीद हो गए, ठीक है। तो इनफ इज इनफ इज इनफ, ठीक है ना, बिकॉज जब तक हम अपने पड़ोसी से लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे ना, तब तक हम दुनिया को कांकर नहीं कर सकते। क्यों अमेरिका पूरी दुनिया में माना अपना डंका जमा रहा है? बिकॉज उसका नेबर वो कनाडा है, उससे कभी भी फाइट नहीं होती है। अपने घर में वो अपने पड़ोसी से फाइट नहीं होती है, तो वो दुनिया को कॉन्कर करने जा सकता है। इंडिया पाकिस्तान 75 सालों से अलग तो हुई है, मगर फाइट किए जा रहे हैं। वट एवर द रीजन, पॉलिटिशियन लड़वा रहे हैं, कि जो भी लड़वा रहे हैं, कि फनासिस्ट दोनों कंट्रियों में जो एक्सट्रीमिस्ट है वो लड़वा रहे, जो भी है। पर अल्टीमेटली नाउ ये जमाना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये ज़माना है स्मार्टफ़ोन का ज़माना है, इस ज़माना है इंटरनेट का ज़माना है। ये ज़माना है वो पुराने शिकवे गिले भूल जाके माना गले से गले मिलाने का है। लाइक अशोक भाई ने भी बहुत सारी बहनों के साथ सॉन्ग गाए हुए जो पाकिस्तान से हो गए। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए होंगे जो पाकिस्तान से। मैंने भी ऐसा किया है थ्रू रियान अल्लाह वाला। हजारों लोग पाकिस्तान से मिल गए, उनके इंटरव्यू लिए, उनको दिए इंटरव्यू। एंड देन देखा कि यार उनको भी हमारे जैसे दो हाथ है, हमारे जैसे दो आंखें है, हमारे जैसा एक मुंह है, हमारे जैसा एक दिल है, हमारे जैसा एक दिमाग है। वो भी सुकून चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं। तो एंड बिकॉज ऑफ दैट लास्ट 5-6 साल से बहुत कुछ अशोक जी ने भी कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान पीस के लिए। हम भी बहुत कुछ कर रहे हैं, स्वामी जी, रिहान भाई, बहुत कुछ कर रहे हैं। एंड इस मुहिम में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड से इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। तो बस इसके हवाले से इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबादी भी आप दे सकते हैं, आप भी आपका दिल शेयर कर सकते हैं। आपने तो माना नज़दीक से वो देखा होगा, वो 1947 का मंजर, और अपने पेरेंट्स से सुना होगा। बिकॉज आपने अगेन मैंने कहा कि मेरे से ज़्यादा दिवालियाँ भी देखी है अशोक जी, मेरे से हाँ ज़्यादा जी ईद भी देखी हाँ है, जी मेरे से पटेल ज़्यादा साहब, पैसे भी देखी है। देखिए आजादी एक बहुत मीठी चीज है। आजादी का मतलब किसी बंद पिंजरे में उस बर्ड से पूछो, चाहे वो सोने के पिंजरे में कैद है, लेकिन वो प्रिजन है, क्या कैद बात है। तो इसलिए आजादी का होना बड़ा जरूरी है। और आजादी के बाद उस आजादी को मेंटेन रखना, उसे डिसिप्लिन में रखना, ये भी जरूरी है। हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिसकी हवा, जिसकी पानी, जिसकी हर चीज हम यूज करते हैं। मैं तो भाई लायल हूं अपने कंट्री का, लेकिन दूसरों का भी ये मानता हूं कि वो भी खुश रहे। अगर हमारा कंट्री खुश है तो वो भी खुश रहे हमेशा, किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं हो। आप जानते हो कि हमारा कंट्री, ये जो इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, अतिथि देवो भव। ये कहते हैं कि हमारा जो अतिथि है, गेस्ट है, वो हमारे लिए देवता का रूप। तो इसलिए हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट। हम यही चाहते हैं कि लोग तरक्की करें, लोग खुशहाल हों, ना आप तंग हो, ना हमें तंग करने दें।
क्या जरूरत है इतने बड़े वेपन्स की, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, क्या जरूरत है? हम वही पैसा अपनी पब्लिक पे लगाएं तो कितना अच्छा होगा। क्या डर है? डर क्या है? क्या डर है एक दूसरे से? डरना नहीं चाहिए। तो बैठ के कोई भी छोटी मोटी, देखो एक छोटा सा घर होता है तो उसमें भी छोटी मोटी ऐसी चलती रहती हैं, लेकिन घर छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के जाया नहीं जाता। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि दोनों जो कंट्री हैं ये आबाद रहें, और ये जो कंफ्लिक्ट, जो गलत फहमी दोनों के बीच है, वो दूर रहे, दूर हो जाए, और लोग प्यार से, प्रेम से, मोहब्बत से रहें। तो यही मेरा आज का ये मैसेज है, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग प्रेम और प्यार की जो लैंग्वेज है उसको एक्सेप्ट करें। और पटेल साहब। जी सर। हाँ जी, सही बात बोला आपने। शॉर्ट ने स्वीट एंड ब्यूटीफुल मैसेज शेयर किया कि कैसे हमें रहना चाहिए। फ्रीडम इज नॉट फ्री। जैसे आपने वो गोल्डन केज के बर्ड की बात कही ना, कि पक्षी जो केज में भी हो और वो भी गोल्डन केज हो, माना है ना, गोल्ड की कितनी वैल्यू है आप सब तो, आप और हम तो समझते हैं, मगर गोल्डन केज वाला बर्ड भी वो फ्रीडम की वैल्यू से कम है। वो उसको फ्रीडम क्या है वो मालूम नहीं है। जब वो गोल्डन केज का वो केज खुलेगा, वो डोर खुलेगा, और जब वो खुले आसमान में, आसमान का सीना चीर के वो उड़ता उड़ता ऊपर जाएगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि रियल फ्रीडम क्या है। तो हमें 75 ईयर्स अगो फ्रीडम मिली है। इंडिया को मिली, पाकिस्तान को मिली। हमने इंग्लिश पीपल को भगा दिया, मगर इस पटेल साहब, फ्रीडम को मिलने ये के लाइफ बाद। छोटी सी है, हाँ बोले। छोटी सी लाइफ है, और इस लाइफ को बड़े प्रेम प्यार से गुजारना चाहिए। वो दो लाइनें हैं ना, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी सी हो ये उम्र बड़ी हो। ओए ओए, क्या तो बात। अगर हर चीज प्यार से हल हो सकती है तो क्या जरूरत है लड़ाई झगड़े की? आप एक छोटी सी बात हो, जब दो लोग प्यार में बैठे हैं, उनका आपस में वार्तालाप होता ही नहीं है, आंखों आंखों में बात हो जाती जैसे आप करते हो जैस्मिन से। नहीं, जब कोई झगड़ा करता है तो इतनी ऊंची बोलता है। नहीं, आपको तो ज्यादा तजर्बा हो गया होगा इन दिनों। क्यों जी पटेल साहब? आपने जासमीन का जिक्र किया, हमारे दिलरुबा का जिक्र किया, हमारी लाइफ का जिक्र किया, और हमारे दिल से मन हंसी निकल गई। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए पटेल साहब, प्यार की जो लैंग्वेज है ना, बड़ी मीठी है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात। घंटों, 2 घंटे, 10 घंटे बस इंसान देखता रहता है, कहता है आंखें खोल लो, कहते हैं, नहीं खोलूंगी। क्यों? जैस्मिन जैस्मिन कह रही है आंखें नहीं खोलूंगी, आप पटेल साहब कह रहे हैं क्यों नहीं खोलूं? अरे आंखों में आप बस गए हो, खोल लूंगी तो निकल जाओगे। ओए 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 ओए, क्या बात है यार। इस हैं? जमाने में आप इतने रोमांटिक होते हो, ना बना, स्वीट 16 उम्र की होती है तब कितने रोमांटिक होते हैं आप अशोक कुमार जी ना। मैंने वो मिस किया यार, स्वीट 16 वाला आपका हो यार। राजस्थानी एक दो लाइनें हैं। अच्छा जी। काजल लागे किरकिरा, काजल लागे किरकिरा, और सुरमा सहा न जाए। ओए 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 काजल लागे किरकिरा, और सुरमा सहा न जाए। ओए ओए, क्या जैस्मिन बात कह रही है, जैस्मिन कह रहे हैं, है। जिन नैनों में पटेल साहब बसे, उन नैनन कौन समाए। हैं जी? गॉड 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 गॉड। आपने आई पहली अप्रिशिएट दफा न्यूज आई सुना? अप्रिशिएट योर लवली चॉइस। बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चा है। अल्लाह
ऊपर वाले गुड ने, बच्चे। वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला ने दिया है, मैं कौन होता हूँ चूज करने वाला, वरना तो जास्मीन 15 महीने पहले मिल चुकी थी, मगर जास्मीन ने पहली दफा में ही हाँ वो जी, आप बोला फ्लैश था कि करते रहते थे, मुझे पता है, फ्लैश करते रहते थे आप। हाँ जी, आप फ्लैश करते रहते थे उसको कभी कभी, मुझे क्या याद है। करते रहते थे? वो स्क्रीन पे आती रहती थी, कभी नहीं नहीं, वो गाड़ी में हमारी कभी। दोस्तों को चलती थी, मैं उनके इंटरव्यू लेता था, वो मेरे इंटरव्यू लेते थे, वो डॉक्टर संजय मना, और उनके वो वेव्स ऑफ काइंडनेस में भी मैं, उन्होंने वेव्स ऑफ काइंडनेस को बनाया था, वो सब चल रहा था सिलसिला, मगर ऑप्शन तो वही देता था सबको, जैसे मैंने लोगों को देता हूँ कि भाई वुड यू लव टू बिकम माय सोल डॉटर, सोल सिस्टर, सोल मदर, सोल ये सन, प्रेम सोल मतलब सोल होना होना तो ये चाहिए, लोगों के बीच में प्रेम प्यार के लिए कल्चरल प्रोग्राम होने चाहिए। सही लोगों बात। का कल्चर एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। जो भी इख्तलाफात हैं वो बैठ के दूर करने चाहिए। लोगों का ट्रेड बढ़ेगा, खुशहाली आएगी। इतनी दूर से अमेरिका से, रूस से, चाइना से माल मंगाने के लिए इंडिया इज वेरी नियर पोर्ट। ये बड़ा अच्छा और सस्ता सामान देगा। और अपना पड़ोसी अगर अफगानिस्तान को इंडिया कर सकता है, हेल्प कर सकता है, श्रीलंका को कर सकता है, बर्मा को कर सकता है, सारी दुनिया को वैक्सीन दी है, फ्री दी है, और हर की हेल्प कर सकता है, तो ये तो पड़ोसी है ना। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं आप यार, सब कुछ एब्सोल्युटली। बदल सकते हो लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। इसलिए इंडिया की तो ये कोशिश रही है, अतिथि देवो भव, हाँ कि जी, जो हमारा गेस्ट है वो हमारे लिए देवता है, गॉड है। सही वो बात है, इसी एब्सोल्युटली। इसी मैसेज के लिए कि हमारा ये मैसेज उन दोनों कंट्रीज पे जाए कि आराम से, प्रेम से दोनों आवाम रहें, दोनों लोग रहें, और हम एक दूसरे से खुशी से मिलें, और अपना जो कल्चर है उनको दें, और उनका कल्चर एक्सेप्ट करें, देखें। एंड डाइवर्सिटी, है जी, सही बात है जी। हार्मोनी इन डाइवर्सिटी। यहाँ तो, यहाँ हर 50 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है इंडिया में। हाँ जी, है सेम जी? थिंग पाकिस्तान में भी, हाँ जी। हाँ जी, ये उनके वो हमारा कल्चर सीखें, हम उनका कल्चर एक्सेप्ट करें, कितना अच्छा लगेगा। सही बात है, और देखो हिंदी और उर्दू बोलने में सेम ही है, दो बहनों की तरह वो भाषाएं हैं। हाँ जी, हाँ जी। लाइक, तो हाँ, ऐसा, ये मेरा दिस इज द फाइनल मैसेज, कि ऐसा कुछ बने, कुछ प्रोग्राम्स हों, स्टेज शो हों, एक दूसरे शिरकत करें, एक दूसरे के विचार सुने और अपने सुनाएं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम है वो करें। उस स्टेप वाइज चल के, तो एक दो चार दस, जैसे टेबल पढ़ते हैं, टू का टेबल, टू बाय टू, टू द 4, ऐसा करके तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, और ये प्रेम प्यार की जो लैडर है, सीढ़ी है, उसके टॉप पे, अपेक्स पे पहुंच के, तो हम लोगों को ये दे कि कितना भी जोर, चाहे ये दुश्मनी का है, चाहे ये गलतफहमी का है, ये देखो हमने निकाल दिया है। हम लड़े तो एग्जैक्टली, भूख से लड़े, हम सही लड़े बात। तो गरीबी से लड़े। हाँ, हम टेक्नोलॉजी एक दूसरे की लें। इंडिया ने बहुत डेवलपमेंट की है सॉफ्टवेयर में, वर्ल्ड में वो किंग है, वर्ल्ड का किंग है। उससे सही बात, लें, मेडिकल में वो किंग है। इंडिया की जो बुक्स हैं वो पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है। सही बात है। और तो एक पाकिस्तान के दूसरे की, उनमें जो अच्छी बातें हैं वो हम सीखें, हमारे बच्चे सीखें। हम में जो अच्छी बात उन्हें लगती है वो सीखें। तो ये मेरा मैसेज है आज के दिन। थैंक यू सो मच सर। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया मैसेज दिया अशोक कुमार जी आपने, अशोक निश्चल जी, और डेफिनेटली आपका मैसेज हम भी उसका फॉलो करेंगे, आप तो कर ही रहे हैं, और जितने भी सुनने वाले जो हमें लाइव सुनेंगे और लेटर ऑन हमारी वो रिप्ले देखेंगे 9 घंटे के बाद, वो भी उसको फॉलो जरूर करेंगे। एंड डेफिनेटली आप जैसे माना, जिन्होंने वो दुनिया देखी है, जिन्होंने वो जिंदगी देखी है, जिन्होंने अप्स एंड डाउन देखे है, जिन्होंने सुने भी होगी अपने वो पुरखों से वो बातें कि भाई कैसे गंगा जमनी तहजीब की तरह रहते थे, लाइक सभी हम एज ए हिंदुस्तान। सर मैं तो उधर गया हूँ, मैंने एक एक घर में सारी दास्तानें सुनी हैं। ओए ओए, क्या बात जहाँ है, जहाँ से तो मेरे सुनाए ना। पेरेंट्स आए थे, गुजरांवाला से आए थे, मैंने एक एक घर में जाके उनकी दास्तान सुनी है, कि क्या अच्छा हुआ, क्या ऐसा हुआ, क्या हुआ, मैंने पूरी डिटेल ली है, एक एक। अच्छा अच्छा। लेकिन हार का यही अंजाम है, कि अंजाम रिजल्ट यही निकला कि गलत फहमी हो गई। ओह, हाँ,
ये सारा गलतफहमी से हुआ, एक अफवाहें ये जो फैलाते हैं इनसे हुआ, और कुछ नहीं है, इसका बेस कुछ नहीं है। सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं और करते रहेंगे। इंसानियत इंशाल्लाह। के नाते हम भाई बहन हैं। और देखिए ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तब कोई नहीं पूछता ये हिंदू है या मुसलमान है, ब्लड दे दो जी, बी पॉजिटिव, तब सही क्यों बात नहीं है, पूछते? सही जब बात भूख है। लगी होती है, खाना खा लेते हैं, तब क्यों नहीं पूछते? एग्जैक्टली क्यों यार। नहीं पूछते? तो इसलिए ब्लड आर द सेम। ऐसे ही जन्म लेता है इंसान, ऐसे ही मरता है, कोई फर्क नहीं है एक दूसरे में। सिर्फ अपने जो थॉट्स हैं, विचार हैं, जो उनमें कुछ फर्क आ गया है, उनको अमेंड करें, पिछली बातें सही बात है। छोड़ दो। मैं तो ऐसा यही अपनी कहता हूँ, हाँ छोड़ो कल की की बातें, बात, कल कल की की बात बात पुरानी, पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई नई कहानी। कहानी, हम हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, हम हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। सही जय बात। हिंद। जाजमीन सुन रही है आपकी बात है, अशोक निश्चल जी कुछ इंग्लिश में बोलिए। जाजमीन सुन रही, जाजमीन बोला आई एम वॉचिंग, काम पे भी वॉच कर रही है, तो कुछ अच्छी कुछ बोले जास्मिन के लिए, क्या बोलना चाहते हैं? Jasmine is a very sweet girl, Oh, yeah. a very pure nature girl. I appreciate her endeavor. She is a she is really good बच्चा, गुड good बच्चा। child. थैंक यू अशोक जी, थैंक यू अशोक कुमार जी, अशोक निश्चल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा और कुछ शेयर मैं करिए। आप वो आंखें अच्छा वाली मैं स्टोरी बोले, आप वो आंखें वाली स्टोरी, आंखें ने देखा ये, आंखें ने इसके बाद इसको मार हाँ, पड़ी। और देखो ये जो नेचर का जो सर्कल है ना, सर्कल, हाँ हाँ। ये अपने आप पूरा होता है। कोई ये बात छोड़ दे कि मैं इससे कुछ कह रहा हूं तो मुझे पूरा नहीं होगा। एक बंदा जा रहा है, उसने देखा कि एक जो बाग है, पार्क है, एक उसमें आम लगे हुए। मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलता हूँ, वो जैस्मीन सुन लेंगे, ठीक है? प्लीज। हाँ जी प्लीज। वन पर्सन वॉज गोइंग टू ए गार्डन, he saw mangoes on tree. He go there and pluck the mango, mouth it, hand gets nothing. Mango goes in mouth, then in belly. No, the God has seen that he has plucked my mango. He lashed that boy. He lashed that boy on the back. Now tears come from where? Where? From eyes. The story started by eyes and ends by eyes. जहां से शुरू हुई कहानी वहां ही खत्म हो गई, जहां से कहानी शुरू। तो ये सर्कल पूरा हो गया। सही बात है, लाइफ इज अ सर्कल, दुनिया भी एक सर्कल है। मैनेजर था, मैनेजर, उसने अपने जूनियर को 2 थप्पड़ मार दिए। वो जूनियर को थप्पड़ लगे, वो घर आया, उसने अपनी वाइफ को 2 थप्पड़ मार दिए। वो वाइफ को थप्पड़ पड़े, उसने आगे अपने बेटे को मार दिए। वो बेटे ने अपने छोटे भाई को मार दिया 2 थप्पड़। भाई के अच्छा। पास कुछ नहीं था, वो स्टिक लेके तो बाजार में गया और एक कुत्ते को मार दिया। अच्छा। अब देखो कुत्ते को दर्द है, और उसने एक बंदे को काट लिया। बंदा कौन था? वो जो पहले मैनेजर था जिसने शुरू किया। तो बेसिकली दिस इज द सर्कल ऑफ नेचर। आप 24 घंटे में जो मून है ये अपना रोटेशन पूरा करता है। आप देखो 3 हम मानते हैं, गॉड, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, सही। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। राइट। आपको ये पता है कि जब एटम को ब्रेक करते हैं तो 3 हिस्सों में बंटता है वो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, हाँ जी। ये जो चीजें हैं, अगर इंसान के पास गाड़ी, आपके पास गाड़ी है, स्टीयरिंग है, रेस है, अगर ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं है।
जनरेटर कर देगा, जनरेट कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है। अगर डिस्ट्रॉयर नहीं होगा, रोकने वाला नहीं होगा, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सही बात है, एब्सोल्युटली, एकदम बढ़िया बात कही आपने। So be happy on this day, this auspicious day. Accept my congratulations on India and Pakistan Freedom Day. सही बात है, सभी लोग फ्रीडम खुश डे, रहें, फ्रीडम। हमेशा खुश रहें और खुशी से अपने अपने कंट्री में रहें और वहाँ के लॉ जो हैं वो अवॉइड करें, उनके लॉयल रहें। हर इंसान और जो सिटीजन है अपने कंट्री का लॉयल रहे, यही सही बात। मेरा मैसेज है। तो बी हैप्पी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार जी। और अब हमारे स्वामी जी आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं स्वामी जी। तो स्वामी जी की हम प्रेयर करते हैं, बिकॉज कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो स्वामी जी हमारे गुरु है, मदर ऑफ द वर्ल्ड भी है, स्वामी विश्वानंद है। और दुनिया में जो ऊपर वाला का जो संदेश है कि दुनिया को नोबल बनाना है, दुनिया के लोगों को नोबल बनाना है, और वो भी 7 साल में। और स्वामी जी रात दिन बिना सोए बिना खाए पिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे स्वामी जी को हम उनसे ब्लेसिंग लेते हैं, उनकी वो आरती उतारते हैं। स्वामी जी आपका स्वागत है। और आज का जो कॉन्फ्रेंस है इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, जो 1947 में इंडिया पाकिस्तान आज़ाद हुए और इंग्लिश पीपल को भगा दिया फाइनली। सो इसके बाद हम 75 ईयर्स मना रहे हैं। एक्चुअली अगस्त 14 पाकिस्तान मना रहा है और अगस्त 15 इंडिया मना रहा है। हम 13 से वो कॉन्फ्रेंस रखा है। सो प्लीज़ नेक्स्ट 30 मिनट्स दुनिया वालों को स्वामी जी अपना ब्लेसिंग्स दे और कुछ जो भी आज आदेश ऊपर वाले का वो शेयर करें। टेक इट अवे स्वामी जी, शुक्रिया, थैंक यू। Very, very congratulations to the people of both countries and people of the whole world, because today we will talk today Assalamualaikum, Dr. PPP, bro. today we will talk about the freedom and independence. See, this message I received from the house of the God. This thoughts and message is not my own mind product. We people of the world must understand that what is the true freedom and true independency. We must see in this beautiful world all insects, all birds,
and all animals, all trees and entire environments are giving the message to entire humanity that they are enjoying total freedom and totally independency, because they are enjoy both matters, because all are following rules of nature and rules of God, creator of this beautiful world. They always follow the rules and regulations of nature and rules and regulations of God, which have been given to them, to all insects, to all birds, and to all animals, and all trees and entire nature. But as a man, we must understand that why at the present scenario, at the present time, human beings, entire mankind is suffering from many problems and many painful situations in personal life, in family life, in society, in country, and in international level. Because God has created as a human beings a ultimate and excellent, beautiful creation of God is mankind. God has given us some freedom, like to freedom of speech, to freedom of doing activities in this beautiful world. God is not interfering in our speech, in our talk, in our any type of lectures we are giving in this beautiful world, and God is never interferes in our act, in our works. God has given freedom to humankind, mankind, but as a humankind, as a mankind, people of the world has misusing this freedom. So people are started breaking the rules and regulation of the nature and rules and regulations given by God to the mankind. People have started the breaking these rules and regulations of God and nature. So now in present scenario of the world, people are suffering from not totally freedom, not totally independency. We must understand that insects are the beautiful servant of mankind, especially mankind and entire environment and all creations. Likewise, birds are also the servant for humanity and entire all creations. Animals are also the servant for humanity and entire the creation. God, the creator of this beautiful world, has given some duties to the insects, birds, and animals, and trees and environment. They are 100% following their duties. They never bother their body, their food, their shelters. They are not celebrating
any birthday party, any marriage party, any death, sorrow gathering. There are no any formalities which are time losing. As a human beings, we must learn from insects, birds, and animals. They are not celebrating any birthday party. They are not celebrating any marriage party. They never bother their shelters. They never bother clothes. And they never bother their foods even. But they are constantly doing hard work for getting their foods, small types of shelters. But their shelters never be a permanent shelter, but they never bother about their shelters. They are not wearing any types of clothes. We must understand this message from the house of the God. God is telling us, oh mankind, oh humankind, please see my creation, insects, birds and animals and trees and environment. They are my great servant. They are following my instructions, and so that I am giving them my huge energy, my huge powers, suffering powers. So they are enjoying with me. It is a secret, hidden knowledge. Insects, all birds, all animals, all trees and environment are constantly remain with touch with the creator of the world and enjoying their life. They never bother about the foods, clothes and shelters. But humankind is always remains behind, hurry behind physical material facilities, enjoyment, pleasure, and unnecessary. They are losing their energy, time, mind power, money power, and physical power. So we are not really enjoying totally freedom. We are not enjoying totally independency. Today, for the occasion of independency celebration for Pak and India, but we people of the both country must understand that we are lovely brother and sisters, because early 1947 our relations were beautiful and sweet as a brother and sisters. We are living as a family members. But after the partition, we forget our parental relations. They are very loving peoples and love each other. They are supporting people at the marriage time and at the death time to each other. But after partition, we forget the lovely relation, beautiful relationship of our parents. So we must started to love each other because we are members of one family. We must understand the feelings of each other and we must started love each other. We are not enemy of each other, but we are a lovely family members as a one family. And God has given us
great responsibility to the citizen of both countries. We must learn some lessons the past time to Germany become a united again one generally Germany, and after partition in India there were 565 kingdoms, small and big kingdoms. Kings are ruling in their kingdom, but after partitions Sardar Vallabhbhai Patel and some great leaders have done hard work and convinced these kings and make a united India from two the great incidents for citizen of Pakistan and citizen of India. We must learn and we must again be unification because we are all lovely souls and we are all selected souls on the earth because we have given a special duty to teach real spirituality to the mankind. We have a resources to give the food to the entire mankind, all people of the world. These both countries, including Bangladesh and Sri Lanka, Afghanistan, Taiwan, Tibet, or Malaysia, we have a huge resources and potentiality to give the food to the entire mankind and all people of the world. And we can give the pure drink waters from the Himalayas. That is the great resources given by the God, given by the Allah, given by the Parmeshwar to the people of these countries, people of these areas. We can give the clothes to entire humanity, to the all people of the world, because we have resources from Uttar Pradesh, Punjab, Karnataka. There are huge producers of cotton. We can give all types of clothes to the all people of the world. We have resources to give the food, clothes, shelters, buildings, all types of necessities of the mankind. We have exist in our land. This is the gift of Allah. This is the gift of Allah to the people of the Pakistan, people of the India, people of the Bangladesh and surrounding neighboring countries. But we are not understand the God's, Allah's and Parmeshwar's plan. We forget our capability, our resources and God's, Allah's and Parmeshwar's plan. We are misguided people. We have a great responsibility to the save humanity so that Allah Ta'ala has given the gift as a Pakistan, as a beautiful house for the Muslims in the 1947. But we forget the plan of Allah's. Allah has given us great responsibility to the teach real spirituality and we must purify our lower self belly button nerves. It has installed in our human body. We must teach the knowledge of pure Quran because the Pakistan
The meaning of this country's name is 100% purified land. 100% purified peoples are living in this land. And these people must understand, these, these people of Pakistan and Bangladesh must come forward to the teaching the real spirituality from the Pavitra Quran Sharif and Tazkiyah Nafs and Sarai Sadar, Kalbe Salim. We must give these techniques to the all people of the world. That is the also the given the responsibility to the people of the Pakistan, people of the Bangladesh, and remaining 20 crores people of the Muslims are living in India too. We must understand the knowledge, a great knowledge in the Pavitra Quran Sharif, and then we must forget the Katarwad, Nafratwad, and small thoughts. We have given the responsibility. Our heart must be the broad, broad, broad like a ocean, and we must allow entire people of the world welcome. And we are here, people. We are here. The lovely soul, lovely people of the Muslims are teaching you the real and true spirituality which has been given in the Pavitra Quran Sharif. That was the great responsibility. We forget it so that we are suffering. We are playing such a bad activities from both sides, and we are now just like an enemy from last many, many years. We have played 4 wars. That was the nonsense activities. We forget the message of the Allah. We forget the message of the Parmeshwar. That was the not our duty to playing such wars. We forget the message and the capability of both countries' citizens, potentiality of the spirituality and the resources of the natural resources. So today we must learn, we must follow the guidance of the Pavitra Quran Sharif. We must follow the knowledge of Srimad Bhagavad Gita, and we are come forward to teach the real spirituality to the entire humanity. And we must come forward to the give love and real truth knowledge and our goal of humanity. We have given the goal to the run to the walk the truth, path of Quran, path of Bhagavad Gita, and we must teach the people that how we can meet the God, how we can talk with God, how we can meet and love with God. This knowledge has given in the Pavitra Quran Sharif and Srimad Bhagavad Gita. We forget this knowledge. We are misguided people now. We must remember our responsibility, just like insects, birds, and animals are following their responsibility. We are a human being. We are a lovely creation of the ultimate creation of the God. We must remember our duties. We must start to love each other because we are neighboring countries and we are a beautiful, lovely family members. We were earlier 1947. Some negative countries have misused us and they are misguided us. We follow their misguided instruction and we become and behave just like an enemy for each other. But today, if we will follow the instruction of the Srimad Bhagavad Gita and Pavitra Quran Sharif, then we will become a lovely people. We will start love each other. We are lovely
and excellent neighboring countries. We have huge resources. We have huge spiritual techniques and knowledge in our both religion books, just like a Pavitra Quran Sharif and Srimad Bhagavad Gita. But we are not following this knowledge. We are misguided people. So today our lovely Allah, our lovely God, our lovely Parmeshwar is not happy with us, so that some special problems we are suffering in our countries because our lovely Allahs, our lovely Parmeshwar, our lovely God is not happy with us because we are not following His instructions. So we must start the following God's, Allah's, Parmeshwar instructions. We must start to love each other. We are never enemies. We must not behave like an enemy. We are lovely souls. We are selected souls. We have given the great responsibility to the teach real spirituality and true path of religion. And entire people are waiting from our people living in Pakistan and India and Bangladesh. Entire world is watching towards us that those peoples will teach us real spirituality, real spiritual techniques, and then we can be capable to the meet with God, to see with God, to talk with God, and to love with God. That is the ultimate goal of human beings. That is the ultimate goal of mankind. So these messages I received from the house of the God, and just I am a instrument, I am a transformer of the God. This is the words and speech, and this talk is not my mind product. As per God's, Allah's, Parmeshwar instructions, I have just performed my duty as a servant of God, as a servant of you people, my lovely people of the world, and especially my lovely people of the Pakistan, Bangladesh, and India. I am servant of you people. One day we will be 100% make unification, lovely unifications like Germany and the 565 kingdoms in India. We are praying to the Almighty Allah's Parmeshwar and God that, oh God, please come in our heart, and as early as possible we can make beautiful unification, and we people of the surrounding this area will solve all problems of the world, and we have capacity, we have given the resources and the spiritual knowledge. We have confidence that we people of this area, surrounding countries people, we will save humanity, we will save and we will give the protection to the all humanity. We will give all material things like food, clothes, and shelters from these areas. That is our promise. Please stop the production of dangerous weapons, war weapons. Please stop the war. Oh, my Putin, my lovely Putin, please stop the war from Russia. China, from Russia, and oh, Zelensky, president of Ukraine, please stop this dangerous war. That is the nonsense activities. We are coming with you. We will convince you, both presidents. We are coming as spiritual leader groups are coming in your both countries as early as possible, and you have to convince, you have to stop this dangerous war, and then we are requesting the presidents of China, Xi Jinping, and the president of Taiwan to please don't start this war. That is against of humanity. That is the against of the laws of God.
and that is the against of laws of laws. So please, you have both China and Taiwan. You have to not start such type of nonsense war. If you will play war, you will start war. Then we people will not permit you. We must have to come in your countries too, and we convince you. We are giving the promise of such countries are producing dangerous weapons and interested to playing wars. We now 15 crores peace-loving people, noble peoples are on the earth for stopping such nonsense activities, for stopping such war. We will give, we are giving the promise. What you want? Oh my Putin, oh my Zelensky, oh my Xi Jinping, what you want? We will give you everything. Please stop such war, not start such war, and stop the producing such dangerous weapons. We will also started the activities that all countries must be stop such dangerous weapons, and we make all budgets of the world. We will make all countries defense budget at the zero level, and we are giving the promise that your country will be safe, your country will be received all material things, all necessities things from this area. And we 15 crores people are giving the promise, we will give all necessities. So you must have to stop war, you must not start war, and you must not producing dangerous weapons and not selling these weapons. So this is the also request by God. This is the also request from the house of the God, and God is also want such peaceful world, progressive world, happy world. So we must understand the plan of God. This is the message from the house of the God. And thank you very much, Dr. Praveen Patel ji. You have made such great platform that God has got the chance to declare their views and God's message from this platform, because you are also the selected soul. So thank you very much. Congratulations and God bless my lovely soul, Dr. Praveen Patel ji. God bless everybody. God bless entire humanity. God bless entire humanity. स्वामी जी, आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया जो आपने जो गॉड्स का जो मैसेज था इस प्लेटफॉर्म थ्रू इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस थ्रू आपने वो शेयर किया. आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया. एंड नाउ विदाउट फर्दर ड्यू, आई एम humbled, I am honored, I am privileged, I am blessed, and I am super excited to present you at IndoPak Independence Celebration Conference, all the way from Dubai, United Arab Emirates, who born in Dil, Pakistan. Yes, Dil, Pakistan, whose parents, one of the parents are from India, the other parents from Pakistan. So double, I'm enjoying Independence Day because my roots are Indian. How about upcoming speaker, the one none other than Dr. Daphne Source, whose parents, one from India, one from Pakistan. So enjoying the double dose of independence. So without further ado, the Iron Lady of the world, help me welcome none other than Dr. Daphne Source, the amazing author who wrote the book with me, amazing the celebrity coach of carousel moms and teaching moms, amazing thing as well as the guys too. So without further ado,
Next 25 minutes, Dr. Daphne Source, for you. Take it away. Thank you. Welcome. Thank you so much for this wonderful opportunity. And I think a very important, much needed, craving topic of Indo-Pakistan couldn't be better. And I would definitely say that this is an inspiration from the divine, the cry of the people. And today we are celebrating on the 14th and 15th, both countries celebrate 75 years of independence. How beautiful is that? 14th is Pakistan independence, and 15th August is India independence. So, uh, together we are rising and shining. Now, I would like to begin with highlighting a bit what Swamiji has said, right? He has spoken a lot about war and peace. And I would like to invite the audience to really think. Yes, there are wars in the countries going on in different countries, not only India, Pakistan, but other people. Thank God there's no war right now. The real war, the word war is not in India, Pakistan, but otherwise the people are always, having some issues, right? But the thing starts with how much peace are you at internally? We are internally at war 24/7 in our internal beings, in our hearts, and in our minds. If we are not at peace internally, irregardless who the heck you are, or which part of the world you come for, or where you are living, what's your nationalities and your origin, if we are divided internally, how do you expect to be united externally? It is never ever going to happen. And all this peace, this unity, this love, this acceptance starts with no other person but me, the I. I have to accept it. I have to bring peace internally in myself. Because when I have these qualities, I can bring it out to others. Now, each human being is born equally, forgetting the race, caste, color, creed, or family that they are. A human is a human, so no comparison, right? Starting with that. Where does it all actually begin? It begins in the home. What are we hearing? What are we being taught? And I think that it is very important. And I was truly blessed, as already highlighted, that, I am of dual parents, right? With dual nationalities. Because India and Pakistan was one, they were never two lands. But then one decided, okay, for our faith, for the Muslims, they need a separate homeland, and the Hindus needed a separate homeland. And that's where the division started, right? But otherwise, it was just for the sake of that. But again, as I have seen, I've grown up and I've associated with people of different religions. No one is bad. Everyone believes in a God, be it a Hindu, a Muslim, a Christian, a Parsi, name it. They all believe, only the different names we have: Allah, Bhagwan, God, Jesus. You just go naming with the different titles. We have created these divisions amongst ourselves. And this is where I was blessed. My mom was from India, and which was now is now called Mumbai, earlier Bombay, and my dad was from Pakistan. But how have I grown to love these two countries? I was an innocent child, born like any other human being. But if I had not seen the love and the unity between my parents, the acceptance of the different nationalities, how would I learn the beauty of the other country and respect it? So I hold dual nationalities. Yes, you will say I'm speaking about dual nationalities and I stand for both, but at the same time, I only have the Pakistan flag behind me. So am I not a hypocrite? Indeed, I am. But no, in my mind, what is a six from your side is a nine from my side. And from my side, why have I put only the Pakistan flag? To tell you my identity, from where I was nurtured, where I was born and raised, and spent the majority of my life. Yes, I'm in Dubai after marriage, but this was the place I called home, and I still call home my wonderful Pakistan. But yet,
I'm thankful to my mother that took us to visit India, and we've seen the beauty and of the people of India. They are people with a heart. But again, sad for the things that our minds have been poisoned with in both countries. I'm not favoring Pakistan or favoring India. Why the heck are we always told it is an enemy country? Even in a joke, sometimes, I would say, Swamiji, are you, aap to mere dushman ho? And he's like, what? Like, dushman, enemy? Where am I your enemy or your dushman? You're a child of God and God loves you. That's all. He always talks about it, Bhagwan, Allah, God. And the beauty is of him that he goes and speaks in all the different approaches of God. As I said, with Allah, Bhagwan, and everything. And he'll say, where am I? But this is the thing that we have been taught. Not only in Pakistan, but even in India, when I meet with Indian children, they say, oh, you're my enemy, right? Who has put this in our mind if not the adults? Adults, you'll need to stop all this because we were all one land. We have ourselves, our leaders have created that division. Even if you have know about the Wagah border, till today, at a certain time, both the armies march, they meet, and they cross their parts of where they were standing in position and duty. Till today they are doing it. So can you see that merging, the blending of those colors really coming together and meeting? So what is wrong with you and with me? And to know this is to not look beyond, because when you point fingers and you look beyond, you are not looking at the four fingers pointing back at you. Before you look beyond, look within. Check your individual self. And every person who is, say, I would not go on adult, but I would say if you're above 10 years, you've got a lot of maturity in today's world. Do your internal check. Be at peace in heart and mind. Accept people, love people, and don't go on what people say. Explore them. I have explored, I have really interacted with the Indians, not only thanks to my awesome mother, may her soul rest in peace, but that's where I've seen that no, what people said was totally wrong. And the change has to take place now. Enough, 75 years, this nonsense has been going on. And we are passing it generation after generation after generation after generation. Now it's high time we learn to silence this voice, to do the internal check, and learn to zip our mouth and throw it away. So it ends with our generation of the negative thoughts and create this unity. Because if really we had that hatred, as you can see, we are three, two Indians and one Pakistani out here, we would have killed each other by now on the grounds that we were all raised. I'm sure you guys have also heard this that Pakistan is an enemy country. So we need to remove that war, break the bias, and remove everything. And what was most wonderful that I saw, the statement, you must have seen the saying, when in Rome, do as the Romans do. When my mother got married, she left in the last ship that left India in 1965. And that from India. And she accepted what Pakistan's laws and rules and dressing was. She accepted it. She respected my father. And when she respected my father, she respected the people of the land. And if I go more beyond this thing of all this partition and everything, I would say that this division that we have created has caused a lot of pain. As much as I'm happy that my parents united, I still feel that pain of the origins of my family, because both my father and mother were first cousins. Both my grandmothers were sisters, but they were separated. Sisters were separated from each other because of this political nonsense. Today, as you can see, even in my backdrop, I have another banner which says AIP, Arm Insan Party. I am the
President Women Empowerment for the Aam Insan Party. And why am I also putting this banner on the show? For you to know that as a non-Muslim, I have been 100 and say not 100 but 500% accepted in Pakistan. If I hold this post of the women empowerment, must show you that how much respect, how much warmth, how much love that country has. And you all have been listening to all the news, all the negative points that people have been talking that you cannot survive. Pakistan is a terrorist country and everything. As you can see, I'm rising, glowing, and shining by the grace of Almighty Allah. How beautiful is that? So I really want to give you this message in all that I've shared. Love and respect is key. In the Bible, it said, "How can you say you love you love God if you cannot love the one you can see?" You talk about respect. You respect Allah. You respect God. You respect Jesus. You respect Bhagwan. But yet you are not respecting the other person. What damn nonsense is this? When are you going to be really thinking out of the box, being a broad minded person, accepting? Adults, I request you that please make this transition in the institutions so that children learn to accept anyone, regardless of caste, creed, race, or color, to be open to other countries, to help other countries, to support other countries. After all, with all the divisions you have made, we are all born the same way and we die the same way. We all go under the ground in whatever way you perform your rituals as per your faith. We all go under, and we all our souls are taken up by the good Lord. So when you know your starting point is the same, your end point is the same, it's like an athlete running a race. He knows a start point, he knows a finish point, that this is where I have to end. So when you know that we are going to go to the same heaven, we are all going to die one day. Is there any one of you who is going to live forever? Be it a common man, a God fearing man, or a true man of God as our Swamiji is. Can he sustain his life? Can he live forever? No, my friends. He also one day has to go. One day I have to go. One day you have to go. There above, there will be no divisions of Indian, Pakistani, American, Australian, Russian, Italian, uh, anything. We are all going to be in one place. I'm sure you have seen a home that is divided never stands. A family that is united, caring, and sharing always stands. So if we make the change today, let's not go beyond. The institutions also start later. Yes, the institutions have to make a change and everything. But first, the change has to begin with you and me. Condemn things that are not of what I would say the kingdom. Condemn it in its face because it does not belong to the plan of God that we need to love and accept one another. So if you respect, first respect yourself. How much are you respecting yourself? I want to see this really coming in the comments. I want to hear your feedback because, friends, it is not me just talking or the different speakers coming. It is a dialogue. You are very much part and parcel of this event. We need to really focus and make that mind shift. And if you say yes today, I am going to make that change, you will find a way. As we coaches always say, do not figure out the how, just say yes, and later on figure out how and what you are going to do.
And both countries, I will say, are amazing. I visited Mother India, a very loving, a very broad-minded country, very educated and very supportive country. And also, I would like to say, stop whenever you friend on social media. The first question comes, where are you from? Or you don't look like this, or you don't look like that. Stop the judgments. It's a human being. What are you trying to connect with the person? Is it the person you're interested, or are you interested in who and what that person is? I have a few minutes to conclude, and before I conclude, I would like to a little bit address you in Urdu, which I'm sure my Indian friends in Hindi would understand because it is very, very important. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अमन सलामती हमसे शुरू होती है. हम ये ना कहें कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है या इंडिया मेरा दुश्मन मुल्क है. अगर हम वाघा बॉर्डर को भी देखते हैं, आज तक वो दोनों जो सोल्जर्स हैं वो मिलते हैं वो वाघा बॉर्डर पे और अपना पोजीशन बदल लेते हैं. तो आप देखिए कि वो कितना चाहते हैं वो मिलन करना, कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन करें. तो हम कितना ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपना अमन सलामती सुकून पाने के लिए. और हम बाहर ना देखें, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि हमें अमान सलामती सुकून चाहिए हमारे मुल्कों में, सबसे पहले वो शुरू होते हैं हमसे. मैं कौन हूं, क्या मैं सुकून में हूं अपने अंदर, क्या मैं दूसरों को के ऊपर फैसला पास करती हूँ कि भाई वो बंदा हिंदुस्तानी है, इंडियन है या हिंदू है तो ये ऐसा है, या वो मसीह है, वो मुसलमान है तो वो ऐसा है. हर मुल्क में एक गंदा मछली आपको मिलेगा, क्योंकि हर पानी में एक गंदी मछली होती है. बल्कि वो गंदी मछली की वजह से सब पानी को क्यों हम गंदा कर रहे हैं. आप तो अच्छे हो, आप बदलने की कोशिश करो, अपने बच्चों को सिखाएं. आप लोग बस करें, वो घर में भी आप लोग सिखाते हो, स्कूलों में भी. अरे इंडिया आपका दुश्मन है अगर आप पाकिस्तानी है, पाकिस्तान इंडिया वाले अपने बच्चों को सिखाते पाकिस्तान आपका दुश्मन है. ये चलता रहेगा नस्ल ब नस्ल. और ये मैंने अपने माँ बाप में देखा है, क्योंकि मेरी वालदा जो थी वो इंडिया से थी, मेरा वालिद जो था वो पाकिस्तान से था. क्योंकि मैंने देखा कि किस तरीके से वो प्यार और मोहब्बत में और एहतराम में रहते थे एक दूसरे के. मेरे वालिद इंडिया भी जा चुके हैं, मेरी माँ तो क्योंकि शादी के बाद पाकिस्तान में थी. इज्जत बहुत ज्यादा था, तौर तरीके, चाल चलन, बातचीत, नमाज, हर चीज इतना. और मैंने ये सीखा है एहतराम. और मैं हूँ वुमेन्स एम्पावरमेंट की प्रेसिडेंट पाकिस्तान में. और मैं ये चाहती हूँ कि ये क्यों मैं औरतों के लिए, एक तो मैं औरत खुद ही हूँ, दूसरा है कि माँ ज्यादा टाइम बच्चों के साथ गुजारती है. तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने नस्लों को वो सिखाएं जो वाकई में वो अहमियत, वो चीजें जो रहेगी. क्या जो अगर हमारे अंदर दुश्मनी है, क्या मुझे जन्नत नसीब होगा? हम सब एक तरीके से पैदा हुए हैं इस दुनिया में. सब, भले आप जो भी मजहब के हो, जो भी इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, हम सब एक ही तरह पैदा हुए हैं और हम सब ऊपर ही जा रहे हैं. ठीक है, आप ये नहीं अभी आप कहते हैं मैं अमेरिकन हूँ, मैं गोरी हूँ, या मैं काला हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, या मैं ब्राउन हूँ, चॉकलेट कलर, राइट, गैलेक्सी चॉकलेट, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी. बाबा ये सारा कलर जो है ना, आप अपने लिए अपनी जेब में रखें, क्योंकि जब ऊपर जाएंगे हम सब उसी मिट्टी में जाते हैं और सब एक साथ खड़े हो जाएंगे ऊपर वाले के सामने आखिरी दिन पे, जब वो फैसला करेगा
कौन जन्नत और कौन दोजख में जाएगा। और जो आप ये सोचे कि सब लोग जो दोजख में जाएंगे वो सारे गोल्डन ब्राउन ग्रिल्ड चिकन गैलेक्सी चॉकलेट, कितना मजा आता है, राइट? वी ऑल एंजॉय ग्रिल्ड चिकन गोल्डन ब्राउन। हम सब ब्राउन ब्राउन ही हो जाएंगे वहां पे। और फिर आप चिल्लाते रहे, स्वामी जी मुझे बचाओ, सॉरी मैंने आपको ये कहा, सॉरी सेलिब्रिटी जी मैंने ये कहा, सॉरी डैफनी जी मैंने ये कहा। उस वक्त ऊपर वाला क्या कहेगा? इट इज अकम्प्लिश्ड, इट इज फिनिश्ड, the time was given to you, you did not avail the time when I gave you the time. So now is my time to tell you to go into the fires of hell to be roasted or rise up with the angels to live forever. As I look at the screen, I would like to end with this one last thought. I have two wonderful gentlemen in there on the screen. How handsome are you all? Very handsome, right? Very handsome. And I'm very pretty, right? How would it feel to have some beautiful little worms, जो कीड़े होते हैं, थोड़ा सा छोड़ा, और आपको पता है जब वो स्टार्ट होते हैं तो वो पूरा नक्शा ही बनाते रहते हैं चेहरे के ऊपर। क्या वो चाहते हो कि आपके साथ हो? The choice is yours. If you live a good life, a worthy life, accepting others as I want to be accepted by others, am I ready to accept others? The question is this. And if you want to preserve your beautiful faces, my friends, then strive, focus for Jannat, for heaven. Otherwise, you will go in the rotisserie of becoming a roasted, yummy chicken there forever and ever. Goodbye. And I cannot wait to further, even those I'm sure that our celebrity will be keeping it on for people to review it if they're not watching it live. Would love to hear your feedbacks because I cannot do it alone. We need to do it together and we join hands together. And Pakistan, Zindabad, Jai Hind. Thank you. Wow, 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 wow. Pakistan Jindabad, Hindustan Jindabad. Dr. Daphne Source, really you put the stage on fire. And the way you explain what happened, on the final day, the judgment day, beautifully explained, right? So, let's live such a way, let's do amazing karma so we don't have to go into the hell. We all go into the heaven and we'll live eternal life so beautifully. And thank you so much again, bottom of my heart. Always, 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 your presence means the fire. And each word, each sentence comes so beautifully, and touch directly to the heart. Sometimes like the danda, like a master ji ki tarah danda. So yes, thank you again. And our upcoming speaker, actually, Dr. Pranav, who used to study with me during medical college, he couldn't able to join. I don't know why. And after that, another speaker, Mr. Rahmatul Rahman from Pakistan, amazing principal, running beautiful school, towards school. He also, because of some not good activity of this internet, is he also not able to join. So next 1 hour, if you'd love to continue, Swamiji, Daphne ji, feel free. I know Daphne ji has some another commitment. So how's your schedule so far, Dr. Daphne? If you can a little bit further go ahead, you I can. have in And another Swamiji 20 minutes. also. I can spare another 20 minutes before I jump on another call. Yeah, But sure, as I'm absolutely. through that So call, happy feel to. free next 20 minutes and then Swamiji will take over, and then we'll wait for the Jasmine to join at 12 o'clock, 1.5 hours from now. So you had about 20 minutes until you go, and then Swamiji will take over about 1 hour or so, and then Jasmine will join around noon time from her work, and we'll continue. So thank you Beautiful. for giving extra time. Appreciate Daphne, ma'am. You're most Take it welcome. away. I think it would be very wonderful
as before me, you all have already heard Swamiji, and then I dragged into the war part that he said, and I shared that if Swamiji and I have a dialogue, and Guru, you fall into the topic because we are all individually presenting, right? But I think, again, I look at it as in a positive way that everything happens for a reason. Yeah, absolutely. So Man let's have dialogue. proposes, Yeah, I God love that one. disposes. Let's have dialogue. Because, yeah, If you you have questions proposed for it. Swamiji, go with the questions. Swamiji is full of all the answers, So yeah. Exactly, exactly. Swamiji, are you ready? Yeah, so Swamiji with I the would like to questions put from a Dr. question Daphne, to ma'am. Swamiji always Swamiji. ready, Yeah, Yeah. and let's start with the dialogue. Praveelji, you Swamiji. can increase your volume, Okay. voice बढ़ा सकते हैं क्या? Sure, दे- definitely. Thank you. डॉक्टर डाफने मैडम का भी वॉइस थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो देख लेना वहाँ. हाँ, मेरा मेरा अब कैसा होगा? मेरा आपका डिवाइस मेरा पे वॉल्यूम कम होगा, आप मेरा अपना डिवाइस मेरा आवाज अभी बरोबर आ रहा है? मेरा आवाज जी जी बहुत बढ़िया आपका आ है, रहा है. बहुत बढ़िया. तो अगर आपको सुनाई नहीं दे रही है तो दैट मींस योर डिवाइस वॉल्यूम थोड़ा सा आप लाउड कर लें. नहीं, मेरा लो था. Swamiji was right. So I increase my volume to the full now, Swamiji. प्रवीण Can भाई you hear me? आपका तो वॉल्यूम प्रवीण भाई आपका तो वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए ना, ताकि लोग आपकी बात समझ सके क्या आपके पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं. जरूर. आपका वॉल्यूम थोड़ा कम था और बहन जी का भी कम था. Now is it okay? It's better now, Swamiji. देख लो. मेरी ओर से फुल कर दिया है, डेफनी मैम ने भी फुल कर दिया होगा और फुल ही था आई बिलीव. सो अब हमारी ओर से ठीक है स्वामी. सुन मगर प्यार से सुनाई दिख. यस हेलो. यस स्वामी जी, आप वो फ्रीज हो गए हैं, फिर से ज्वाइन कीजिए प्लीज स्वामी जी. Yeah, because I don't think, if I'm correct, that the audibility, the hearing we can change on our devices, but the speaking mic का तो एक ही आवाज होती है. We cannot adjust that at all. There's no tone. Yeah, so let us continue. So our audience is स्वामी जी प्लीज ज्वाइन अगेन. स्वामी जी आपका वो फ्रीज हो गया है. Exactly. So Guruji, what do you have to say about this topic? Because I just feel that we need to speak in the words of the common man for them to understand. हाँ, बड़ी बातें बहुत किया कॉमन मैन कैसे. आम आदमी में, बिकॉज ये होता है कि अरे पॉलिटिक्स है और पता हम क्या करेंगे, कायदे आजम ने कुछ किया था और महात्मा गांधी ने कुछ किया था और ये और वो, मतलब वी आर ऑलवेज प्लेइंग द ब्लेम गेम. I blame you, you blame me. But I just feel that it's time that we all take action. And what's better in today's world कि हमारे पास सोशल मीडिया है. सही बात है यार, रियली. और वो तो पूरा वो पेट्रोल ही है कि आप थोड़ा सा you give a spark to it, the fire will go big and huge. Exactly यार, एग्जैक्टली. और ऐसी वैसी वीडियो वायरल होती है तो हमारे तो अमन की बात कर रहे हैं, दो देशों को और मिलाने की बात कर रहे हैं, तो हमारा मैसेज क्यों ना वायरल होना चाहिए यार. गंदी से गंदी ये बनाओ. आप तो समझते हो, दुनिया के लोग भी समझते हैं कि लाखों करोड़ों में और मिलियंस में वो हिट होती है. तो हमारा तो दिल से हम बात कर रहे हैं, 9 घंटे बात कर रहे हैं, रात दिन की वो नींद हराम करके बात कर रहे हैं, तो क्यों हमारा मैसेज वायरल नहीं होना चाहिए यार. जी बिल्कुल बिल्कुल. एंड यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है गुरु के, द प्रॉब्लम इज दैट हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान वाले हैं, हम लोग वही करें कि यू आर बैड, यू आर माय एनिमी, यू आर सेइंग आई एम बैड, आई एम द एनिमी. बट व्हाट आई हैव नोटिस ऑफ द पब्लिक, द अदर कंट्रीज, वो तमाशा देख रहे, फ्री में फिल्म मिल रहे, चलो भाई बैठ के देखो, हम पॉपकॉर्न खाएंगे. ये पागल बंदर की तरह, बंदर वो दो बिल्लियों वाला खेला है यार. बंदर दो बल लाइक बाहर के कंट्रीज माने इंडिया पाकिस्तान को दो बिल्लियों की तरह नचा रहे हैं, झगड़ा रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बंदर की तरह माने देख रहे, इधर एक टुकड़ा इधर फेंका, एक टुकड़ा इधर फेंका, नाचो खाओ झगड़ो. और And basically you see कि जज्बात लोग जो है इंडिया पाकिस्तान में पक्का जज्बाती लोग. अरे इतने जज्बाती कि यार बात ही मत पूछे यार. लाइक जज्बाती माना यार, वो मेरे फूफे के फूफू ने उसी के शादी में ये कहा था मेरे, उसने, अरे भाई वो दोनों जन्नत चले गए और हेल और हेल चले गए. अरे भाई यार, अब ये बोझ क्यों डोके माना जी रहा है और तेरे जनरेशन को पास ऑन कर रहा है.
1947 में जो हुआ नहीं होना चाहिए, सही बात है, मगर आप मना वही वो झगड़े वाली स्टोरी, यो गले मुद्दे निकालोगे तो सिवा दुर्गंध कुछ ही नहीं मिलेगा यार। क्यों मना वो कान में, वो दिमागों में दही कर रहे हो यार। And we are becoming like पक्का बंदर का जो तमाशा है. Exactly. We are letting ourselves to be treated that way by all the countries. That's it. Something that literally I never like and I never entertain is when people immediately, like even Facebook पे होता है, friend request आ गया तो अरे यार वो बंदा ना सलाम ना दुआ कुछ, they'll immediately say hi, which country you are from. कल ही मेरे साथ हुआ. I asked the question, may I ask you the purpose of the question? तो उसने बोला छोड़े, अगर आपने नहीं बताना है, God bless you. I said my problem is not कि बताना नहीं है. I want to know the purpose of your question. Are you looking at sending your friend request to friend with me, or are you looking on caste, creed, nationality, or what? I am proud to be a Pakistani, but I want to know what is your purpose, because Same. I do not want people to think I'm another nationality, or either because I'm Pakistani, you're either not friending me or you're friending me. Why? Because even when I'm in Dubai, when you say, if ever I mention I'm Pakistani, even if I'm in a taxi, somebody will turn, huh? They will be looking up and down. उनकी नजरें पूरी ऊपर. पाकिस्तानी आप लगते नहीं हो. मैंने कहा क्यों? पाकिस्तानी के ऊपर सींग वहां पे होते सिंग हैं. लगे हुए हैं पाकिस्तान, सिंग हो तो ही आप पाकिस्तानी हो कि माना. So any question for Swamiji? This is a perfect Yeah. time. Swamiji, what do you feel after what I have shared as you spoke about war, which is a major problem? And Swamis always want peace, right? And the will of God to prevail in the world. So my question to you is, what is your comments on the way I have taken it a twist towards the individual being on war? आपका आवाज एकदम मैं समझ नहीं पा रहा, थोड़ा आवाज आप वहाँ आपका आवाज बढ़ाइए ना. मेरा आवाज बड़ी है. आप तो मेरा आवाज बहुत बड़ी बड़ी है. लोग तो कहते हैं आवाज बंद कर दो इसका. ट्रेनी टीचर हो, आपका आवाज बढ़ा दीजिए. आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, आपसे स्वामी जी गैफनी मैम एक सवाल पूछना चाहते हैं. फिर से आप प्रवीण जी आपकी जो आवाज आ रही है ना, बहन जी की आवाज थोड़ा फिर से पूछिए. अगर तो आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं. बहन जी फिर से पूछते हैं आपसे, फिर से पूछिए डैफनी मैम. आवाज बहन जी की एकदम कम आ रही है ना, आवाज कम आ रही है. भाई लायनेस की तरह आवाज कीजिए. स्वामी जी ऐसा कहते हैं. आप लायनेस हो यार. ना यार वो फॉक्स की तरह क्यों बोलते हो यार. लायनेस की तरह बड़ा आवाज से बोले, शेरनी की तरह है. दहाड़ मारे. अभी तो मैं चिल्ला रही हूँ, आप रिपीट करें जरा. देखिए ट्राई मारें आप जरा, इसको क्वेश्चन बता दे, सवाल पूछिए और देखते अगर फिर से पूछिए. स्वामी जी सुनते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपका क्वेश्चन स्वामी जी को रिपीट करूंगा. मेरा क्वेश्चन है इज दैट तब्दीली तो आनी है दुनिया में, राइट? तो तब्दीली लेकर आने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो जो मैंने शेयरिंग की है, क्या आप समझते हो को कि दैट वुड बी अ गुड अप्रोच, बिकॉज यू आर अगेन द टीचर ऑफ द फेथ and a great leader. So where do we start bringing peace in this world? स्वामी जी सुना आपने सवाल? तफसीरी यानी क्या? तफसीरी को उर्दू शब्द बोले ना, तफसीरी क्या इंग्लिश में बोलो, क्या कहना चाहते हैं? चेंज दुनिया में हम पीस चाहते हैं. डेफनी मैम ने अपने पीस के बारे में वो शेयर किया है कि कैसे पीस ला सकते हैं. तो आप अकॉर्डिंग टू यू पीस कैसे लाई जाती है, और डेफनी मैम ने जो शेयर किया उससे आप सहमत हो पीस लाने के लिए इस दुनिया में? वही था ना सवाल तो डेफनी मैम? यस यस. अच्छा जी. We must all people of the world must understand that if we want to feel peace, we want to prevail peace in the entire world, then we must pass and understand and obtain 3 stages. Then we will reach at the 4th stage of peace. Entire people must be knowledgeful first. Knowledge is power, and all
work start from knowledge. So all people of the world must be knowledgeful. Then people must obtain the spirituality, and spiritual must be purified. We must throw out all negativities, negative thoughts, negative acts from our lives. Second stage is purification, purity. We must implement purity in our life. Then third stage. If we will be knowledgeful, then we will be a pure person, purity. We will implement purity in our lives. Then and then we can enter the third stage of love. We must love all creation of the world without any discriminations, caste, creed, colors, countries, boundaries. He is Indian, he is Pakistani, he is Bangladeshi, he is Afghanistani. Forget your such boundaries. We are Hindus, we are Muslims, we are Christian. These are also the boundaries. We must throw out such all types of boundaries, and we come out from the ocean of love. We must love all creation of the world. We must love all people of the world. Just we love ourselves. Such way we must love all people of the world. Then and then we feel the ocean of the peace in our life. And then we can prevail the peace on this earth. And then we can establish permanent peace in the heart of the all people of the world. And then we can establish, we can feel the ocean of the peace in this beautiful world. We have to accept these three stages in our life. Wow, Swamiji, beautifully explain about three stages to get the fourth stage of peace. First stage is knowledge, second stage is purification, third stage is love, and then we can have the ocean of peace. Our lives become peaceful, the heaven on the earth. Beautifully explained. Did Swamiji answer your question, Dr. Daphne, ma'am? Yes, very. I like the way he broke it out, and I think he really hit one nail very clearly is on knowledge. Yeah. So what kind of knowledge, Swamiji? Tell into detail, please, Swamiji. Yes. People must get knowledge that I am a beautiful creation of Almighty Supreme God. I am not a body conscious. I am not a Hindu. I am not a Muslim. I am not Pakistani. I am not Indian. I am a beautiful soul. Amen. Beautiful. And we must get knowledge to obtain the easily bread, butter, shelters. Such type of living styles and living necessary knowledge must be there. And second aspect of spirituality, we must be knowledgeful how to we meet Allah's, how to we can see Allah's, how to we must talk with Allah's. Such type of spiritual techniques and such type of spiritual knowledge, both type knowledge is very, very important. Materialistic knowledge will give us easy and smoothly and happy material life through best food, best clothes, best shelter, and best science and technology must be obtained through the material knowledge. And we must obtain the knowledge of soul and supreme soul.
the spiritual techniques, the knowledge from the spiritual books. Such type of knowledge is also necessary to obtain the God, to meet with Allah, to talk with Allah. So two types of knowledge must required in human lives. So knowledgeful means materialistic knowledge and spiritual knowledge. Both knowledge is very, very important. We cannot ignore material knowledge, science and technology. We cannot ignore the spiritual knowledge. Both knowledge is very, very important. And we must give the weightage 50%, 50% to the both knowledge. Wow. Beautifully explained about the knowledge, Swamiji, into detail. Any more questions, Dr. Daphne, ma'am? No, I really like even the Yeah. part where he's brought about science, because Yeah. sometimes people think science is bad, but you need all the other kind of knowledge. Definitely. You can't be only all the time being Allah, Allah, and sitting there. Because if you do not know the reasoning, what I take it as is that if the person is able to come up with science, do you think you and I can do anything if we do not have the grace of God inside us? God blesses certain people with a certain capabilities. Like some people do not believe in doctors. Even the Bible says the physician has been given to you. Go and see a doctor when you are sick and take medicines. Don't just sit down there and say, okay, I will pray, God will make me okay. So you see, if there are doctors have come or science has come, God has given that wisdom. Why haven't you come up with a creation of science? It's because all fingers are not equal, and the world is filled up with a variety of people. But again, as Swami's already highlighted, we need to really start with ourselves, with that peace, that love, that end goal. If we go into the core, and these are all what we are saying is common man words. This is not some philosophy or Yeah. something that you cannot understand. And people are, getting into that thing, and that ego, especially that ego, we need to get out of. Here right now, if I say, oh, you're not a man, अरे मैं मर्द हूँ, मैं आ रहा हूँ, अरे भाई वो तो उसने वैसे ही आपको छेड़ा है. You at least use some common sense. If they say something, you need to use your wisdom. We are literally sometimes taking words so literally, but we take it literally when we want it, what suits us, but we don't use it literally in the way of really telling somebody else that we appreciate them. And I think what he said is very wonderful, that we have to really accept that, irregardless of where we are, that we are beautiful, we are perfect, because we human beings are created in the likeness and image of God. And Amen. who has created us? Any artist, you ask them, they would never like you to destroy their work of art or criticize it. You and I are his masterpieces. So, what are we literally doing? One side, you are saying, Allah, Bhagwan, मुझे माफ कर दो, मुझे बरकत दो. और दूसरे तरीके से भी ऐसे, अरे जिस अपनी शक्ल देखें. But yet we will say that, but if you say that to me, I will not like it. Mhm. Mhm. We need to अपने गिरेबान में झांक के पहले कुछ सोच के and accept ourselves. Acceptance does not come from others. The problem, especially with the Asian countries, we are always looking for approval. कोई बोलेगा कि अरे आपके तो बाल इतने अच्छे, इतने हैंडसम हो ना, इतने अच्छे लगते हो, or you speak so well. That is why one of the secrets why social media does so well nowadays. Do you honestly think everybody who's clicking the likes and the hearts really loves you? Do you think everybody is with you on social media? It's progressing because we love to live in a world of fantasy. Artificiality, fantasy. Yeah. You need to live life on a Correct. reality. And Yep. I think if we start bridging the gaps of the countries, rather than them sitting and eating popcorn other countries and watching the bandar ka tamasha in India and Pakistan, people will be like, wow, what's that? This is a climax.
wait, अभी ये तो हीरो हीरोइन का कोई जबरदस्त फिल्म है. So let's do that. Let's make that change. Because I strongly believe one person can change this world. It is not possible. Our Mother Teresa ko dekhe, or even like we had in Pakistan, this Ruth Fau. She helped to cure leprosy. Leprosy is such a dangerous disease. आपको पता है कि लोग हटाते हैं and they don't want to stay away. And Ruth Fau, can you believe, being a Christian, first of all, she's the only one who brought cure to leprosy in Pakistan. Wow. And she got a state funeral through the roads of Pakistan. Her body was taken right up to the church of St. Patrick's Cathedral. And also in the graveyard, they waited few minutes. Why? Because the president of Pakistan was coming to the graveyard to pay the last respects. Wow. So you Beautiful. see what media and the world has made, the lack of acceptance. Oh, Pakistan is like that. Oh, India is like that. They only, because alcohol is open in India or something. People have misinterpreted. Just because you've seen some Bollywood movies of some daru, you think all the people are after their darus. But I'm sure there are so many. Like I said, there is always a dirty fish in the pond. Because again, right, we like masala. I'm sure you're in Canada. क्यों थोड़ा सा ना वो जो मिर्च मसाला चिली पाउडर ना कभी कभी हम लोग कर पानी दे दो मुंह जल रहा है बहुत ज्यादा, but it adds some Yeah. very nice beauty to our food. So spice is good, but too much of anything is bad. You need to eradicate it. And when we are bringing in our new generations, that hatred, that jealousy. अभी आप देखो पाकिस्तान में आपका क्या प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मशहूर है? पाकिस्तान में क्या ब्यूटी क्रीम और what? यार क्या fair and lovely. ये गोरे पन का कमाल. So you see, this is like what up with it again, because you're not accepting yourself. Mm-hmm. Do you know that nowadays salons are charging so much to let you to do tanning? लोग tan करने जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान वाले, हम गोरा होने चाह रहे, हम क्यों वो रंग का हो. And when you're seeing people are literally going to the salons to do this, so can you not see that acceptance again? Allah has given you naturally. You've got so much talent. The world is craving, but we ourselves have downed ourselves. Don't say people when they know that, okay, you're of this nationality, you're bad. It's because we have allowed it. We have not created boundaries. It's high time that we learn to create boundaries. Tell people to stop when they are going beyond a limit or saying something. Because at the end of the day, we are all one and the same people, right? Right. Yeah. So there's so much changes that we can make. Like for yourself, I've seen you are always wowing people of the world. पता नहीं ये भी बैठा था वो टेनिस स्टेडियम में, पता नहीं क्या कर रहा था मैच. Now you could have said, I am, Indian and I will not and this and that. Arey yaar, she's got a talent. You don't have a talent. You're a marathoner. She's a tennis player. Did you tell me why you going to attend that tennis match and sharing the photographs? How much have you lost of your celebrityness? Because I appreciate the people who achieve success. I appreciate that. I, of course, especially the women, I appreciate that because they have to break so many myths, right? So here is the Serena Williams, all the way from USA. His her own father, trained both the sisters, Serena and Venus Williams. They reached to the top from the poverty and everything. They won so many medals and awards and rewards and so many titles, one after another. And I said, I should appreciate that. I should go there, and appreciate that, and yeah, I went there. Because first you have appreciated yourself, you know that you got your own capability, they've got their own capability. Absolutely, yeah. But if you had to say that nahi yaar ye aisa hoga, yeah,
or you thought, अरे ये तो इतनी गोरी है, मैं भी फेयर एंड लवली लगा कर कुछ भी, या कोई मे बी कोई white polish लगा के, because you know that's why she's become famous. You honestly tell me, if you had become whatever tanning and become white and everything, do you think you would have won the match? No, It you has come with your own nothing to do talent, with right? color or nationality or anything. It has to do like how much effort you are putting, how much coaching you have done in your life about specific game, and at that day, how powerful are you? You know, yes, Serena Williams was one in the previous so ruled the whole tennis world, but the opponents gave her so much hard time. Of course, Serena won, right? But Mhm. opponents were giving her so much hard time. Like every point, Serena has to sweat. It's not like, okay, you were like, when so many titles, so I'll surrender. No, like that. The other opponents from another countries, she was giving such a hard time. Every point, like she has to like sweat. Like freedom But is not she's just shining separately. You are still shining. The world is still beautiful. So, and you, in your heart, aren't you at peace and happy? exactly because we are celebrating the success. We are celebrating the success. But Doesn't matter. when you were, if you remember in school, when you were compared with anyone, or you were down, or you yourself compared yourself with it, you lost that inner peace. Exactly. And Exactly. you Like will, and what happens when you lose that inner peace? I find that we, like in today's world, everybody wants to use anti-aging creams and everything, right? But what happens when that inner peace and joy comes? You find is a inner beauty that is coming out. exactly. Yeah, exactly. You don't need external stuff to put on. If you are internally happy, you are happy. Of course, it's like you love to do it. It's like Dr. Daphne ma'am always love to change the hair, and I love it. Dr. Daphne ma'am love it. Who cares about the people says green hair or red hair or what kind of hairs? I'm like looking for what will be the next time Dr. Daphne ma'am is going to wear color. because you enjoy your own self. what the सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, भाड़ में गए यार, यार लोगों को हंसना हो तो हंसने दो, लोगों को मना ट्रोल करना हो तो ट्रोल करने दो. You are enjoying your outer beauty, inner We beauty. cannot please everyone. Exactly. That's the thing, right? The problem with all of us are we try to please everyone, and Right. everyone is never possible. You will become a loser. You will surely fail. And it's all, Absolutely. and what I have noticed, at least for my own success, right? One is always making sure you're not messing with the one above. Yes, that's it. That's the bottom line. If you're That's messing the with him, फिर तो That's the काम हो punchline. गया Yeah. आपका, भूल If you जाओ. mess up with the, whatever the faith you believe, that's will be your gone. Doesn't matter. You put fair and lovely, or you put, you go to tanning room for 10 or whatever. Doesn't make sense, because you are not happy within. Because when you mess up with our creator, whatever the faith we believe, right? Or you believe, Exactly. right? And we That's it. should be proud of our identity. I think this is where we need to make the change with the other, with the world, basically. Because when the world hears our nationalities, they say, oh, we cannot hire. I'm sure you had a problem even when you came where you are living now to find a job or something. If you say you're from one of these countries, why? Because we have given them permission to trample on our feet. If True. we stand with integrity and personality, then they will learn to shut their mouths and to accept us. We ourselves are stabbing each other in the back. We will Absolutely. say that, oh, look what he's doing. हाँ यार ऐसा नहीं करना चाहिए. हाँ इसको देखो ये क्या कर रही है ये. If there is some topic, we need to handle it very carefully. Again, stop making it a monkey show out there in the world. Because only when we change this bias and we break it, literally, and I think 75 years is such a beautiful date also to end it. Exactly. Yeah. I guess the To third really, quarter, right? Third quarter. Any question for Swamiji? Definitely, ma'am. Swami ji ko आवाज आ रही है? Yeah, Swamiji, can you hear us? Yes. I Oh, am okay, okay. hearing. I am hearing. I am hearing. Okay, okay, awesome. So, और एक सवाल, Yeah. दोस्त जितने भी सवाल है ताक दे स्वामी जी हमारे Sister, साथ में हैं. our respected sister from Yes, Dubai can ask any Any question. question? There you go. lovely. What would be my question? Rather, let's start with this statement and ask you, how do you resonate with this statement? That is, be the change
you want to see in the world? What would you like to say on the statement? हाँ जी Because स्वामी mostly in coaching, we always use this, and even worldwide, Please, people say, be the change please you want to see. repeat, Praveen bhai, repeat हाँ जी what is महात्मा गांधी जी का एक सेंटेंस है, बुक भी है, बी द चेंज यू वुड लव टू सी इन द वर्ल्ड और यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो चेंज आप दुनिया में देखना चाहते हैं, आप वो चेंज पहले बने। तो इस सेंटेंस के बारे में, इस फिलोसॉफी के बारे में आपके क्या ख्याल है? ऐसा डॉक्टर डेफनी मैम का सवाल है आपके लिए। it is absolutely correct, right thoughts of our Pujya Mahatma Gandhi ji, and it's from starting of the creation of this beautiful world, we can see from the starting of the creation of this beautiful world, we can see all changes has been came on this earth through the messenger of the spiritual person, and all spiritual messengers have produced their life towards the people of the world. Then people has followed this messenger of the God. Like this way, Gandhiji observed that creator of this beautiful world is sending the messenger of God, and each and every messengers have produced their life as per their message first. All messengers of God has produced their lives towards the people of the world. What they want to give the message to the people of the world. So Gandhiji's observation is the correct and absolutely right. And we can say other words. स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन. It means if we want to transformation of the world, then we first start the transformation ourselves first. Then we can change, we can transform this beautiful world. Charity starts from home, such way. If we want to change this beautiful world, transformation of this beautiful world, from negative to positive, to hell to heaven, unhappy world to happy world, Swarga, we have to start from ourselves. We have to change ourselves first. And practical life is the great message for the people. The practical life is the great message and greater message than speeches and lectures. True, Swami. Even spiritual books, because people are not capable and people have no time to read these big spiritual books. But people realize from the practical life of messenger. So we must start our lives. We must change our life. We must transform our life. Then people will see and follow us. So Gandhiji's observation and Gandhiji's quote is absolutely true, absolutely correct. I believe also this message of Puji Mahatma Gandhi. Beautiful. Wow, Beautiful. beautifully explained, Swami. Thank you. Lovely, Very well you explained. explain about be the change you want to see in the world. So what is your message, Swamiji, of your life? What is the message of your life, Swamiji? Let's share it. Because you mentioned about all the Nabis, and all these messengers of God. You're the mother of the world. So what is your message to the people of the world as the mother of the world, Swamiji? I need to leave, so I'll ask you to excuse me. What's that? I need to leave.
Oh, sure. Definitely. Yeah, you Thank have you some so much. commitment. So definitely, thank you so much for sharing, Dr. Daphne ma'am. Swami, Thank you. Daphne ma'am is going for another commitment. So any last minute message for Daphne ma'am before Daphne ma'am will go? Uh, Dr. Daphne ma'am is doing the excellent work in Dubai, and she is a great spiritual member of our spiritual family, are working in the entire world. We people as a noble persons are now 15 crores, and respected Dr. Daphne sister is also one of them, and she is working in Dubai. We have proud of our respected sister, Dr. Daphne Madam. You are working excellent. You are giving your precious time for each and every such programs of Dr. Praveen P. Patel, and we are very much thankful to you that you are giving your thoughts, excellent thoughts on all subjects, and you are giving your precious times. We have proud of you. We 15 crores people have proud of you. And we 15 crores people are together now, changing this beautiful world, and we can give the all necessary things to the all people of the world. That is our promise from 15 crores noble people. And the end of this year, 31st December 2022, we are adding 5 more noble persons. We will be 20 crores noble persons on the earth to giving the services, all types of services and all types of necessary things to the people of the world. We will save this beautiful world. We will not permit any countries to war with other countries. We do not now want to destroy this beautiful world. That is the message and that is the wishes of the God, Supreme Creator of lovely Allah, our lovely Parmeshwar, our lovely God is also desire, and God also want to make this beautiful world so that as a mother of the world, as a mother of the world, I am performing my duty day and night. I am making the unification. I am very much watchful to each and every countries, and I praying to the God. I am seeking all my lovely people of the world. Please come in the spiritual heart of your mother and get the guidance, get the love, and we all together will give pleasureful lives to all living beings as a mother of the world. That is my promise, and I appreciate again Dr. Daphne Madam from Dubai. You Thank you always so much. welcome here. Thank you and God Allah bless bless. you. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Jai Hind, Pakistan Zindabad. Bye bye. Jai Hind, Pakistan जिंदाबाद. हाँ जी स्वामी जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने भगवान का जो आपके लिए जो मैसेज है, मिशन है एज द मदर ऑफ द वर्ल्ड, ब्यूटीफुली आपने समझाया. 15 से अब 20 पर हम जा रहे हैं, 15,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक बाय December 31st 2022, एंड एवरी ईयर हम डबलिंग पे जाएंगे, एंड विद इन 7 years पूरी दुनिया है वो नोबल पर्सन की हो जाएगी. तो फाइट भी नहीं होगा. द बजट ऑफ द ऑल द कंट्रीज विल बी जीरो डिफेंस बजट, एंड बहुत सारे चेंजेस पॉजिटिवली हो रहे हैं. एंड बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी इसके लिए. आप माना रात दिन खाना पीना वो सब छोड़ के मिला नहीं मिला, ब्रेकफास्ट हुआ नहीं हुआ, लंच हुआ नहीं हुआ, डिनर हुआ नहीं हुआ, रात को नींद मिली नहीं मिली, वो सब भूल के मनाई कर रहे हैं. सो अप्रिशिएट दैट स्वामी जी.
हाँ, जो भी आपको शेयर करना चाहे, इफ्तिकार साहब आने चाहिए 11:30 को, अबाउट 12 मिनट के बाद। सो शेयर एनीथिंग स्वामी जी, फील फ्री, बिकॉज आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने को। When next speaker, we are awaiting next speaker, but up to his coming, we will share some our more thoughts and experience. Please. We must understand the God's plan. Why God has created this beautiful world? That is the question for all people of the world and all living beings in this beautiful world too. In my today's earlier speech, God has clarified that my all insects, my all lovely birds, and my all lovely animals, and all trees and environment are working as per their duties. All Hello, hello, hello. I'm back. Swami will be back soon. Have some patience. Yes. So are you enjoying? Yes or yes? Write down in the comment. Are you enjoying? Yes or yes? Are you excited? Yes or yes? Are you super excited? Yes or yes? Are you super duper excited? Yes or yes? Swamiji is back. Let me bring Swamiji again. sorry for disturbance of net problem. That's okay. Welcome back, Swamiji. You are hearing my voice clearly? Yeah. Yes. Continue. Please continue. Thank you. My voice is clear? Yes. Loud and clear. Yes, Swamiji. We, all people of the world, must understand the plan of God. Why God has created this beautiful world and all living beings in this beautiful world. God want to love all creation, and God also want to be loved by the whole creation. So God has created these beautiful natures, 5 elements of nature. Beautiful earth. Earth is performing its duty excellently from the starting of the creation point, starting of the creation time. Earth never demand, never complain towards God and towards all living beings are living on the earth. Earth has never asked the bill, asked the charge. What earth is giving? Earth is giving the variety of foods, variety of fruits, variety of eating materials from earth. So, earth is
performing its duty as allotted by God. Its earth never refuses God's order, God's instructions. Earth is perfectly performing its duty to producing variety of foods from their body. Earth has never made any complaints to the God. Oh God, my body is exhausted, my powers is exhausted because I am producing variety of foods from my body. Now I am tired. Such type of complaints earth never make towards God. With pleasureful mood, with happy mood, earth is performing its duty for giving the excellent juicy fruits, proteins food, and immunity giver foods to the all living beings in this world. So, with pleasure, with happy mood, creator of this beautiful world is always love earth, always give the power to the earth. So, earth never exhausted and never tired because connection with all creation of this world between earth and creator of this beautiful world is remained live connection. God constantly loving earth. Earth is showing God its beauties. So God is very happy for earth. Like these ways, second elements of nature is water. Water is giving and finished first yes, first of all living beings in this beautiful world. Water never complain to God that heat and powerful rays are coming from sun. My body is burning, my body is being the heat, and my water form is becoming the evaporation form. I am getting pain. My body is heating by the rays of sunlight. Water never such big complaints towards God. Constantly water is serving the duties for finishing rest of yes of all living beings in this beautiful world. In the North Pole, in the South Pole, water become a ice form. In the water form of ocean, get evaporation in the form of air, evaporation form. But water never bother. Water never complain to the God. Why you are changing our original form of water to evaporation in the form of ice? Because water believe that God is great. God is creator of himself, itself, water self. Water believe that in the form of water, I am creator of God and I must follow the instruction of God and must I have to
serve all living beings in this world without any charging, without any complaint to God. And water also never complained that I am exhausting my powers, because every year I transform my body in the evaporation form. I climb on the upper of the sky. There I have to make a form as a cloud. Then I have to flow in the form of rain. Such type of regular, tireless duty water is performing in this beautiful world, because water believe that my great creator is God is loving me, so that I have to perform my duty, and God is seeing on the earth that what is the performing of water is doing its duty. So God is loving to the water too, just like a love to earth. And constantly God gives the power to the water, so that water never become exhausted. Like this way, like this way, we must understand the third elements of nature is light. Light comes from sun, moon, and stars. Sun, moon, and stars are performing their duty. They are also never complaining to God that, oh God, I have to perform my duty regularly. I have to rise. Sun never tell to the God that I have regular rises in the east, and I never become a late a single second. And after performing my duty daytime, I have to sunset at the perfect time. So Sun is also giving the great message to the all people of the world. Oh, people of the world, you must perform your duty. You must perform your duties, your work timely and tirelessly and regularly and without making any complaints. So, sun, stars, moon are giving the light to entire this beautiful world. Darkness removed by the sunlight, by the moonlight, and by the stars light. Such way, it is also giving the message to the people of the world. Oh, people of the world, you must remove your darkness of ignorance, your darkness of unknowledge, and darkness of negativities. You must remove the negativity, the darkness of ignorance, darkness of unknowledge from the true knowledge light. So, sun, stars, and moons are also performing regularly duty. They never complain to the God that we are exhausted, we are tired to performing regular duty. Oh God, please see towards us that we are tired, and why we must doing this regularly duties. Please give the leave from our duties. Such type of complaint. Sun, moon, and lights never complain to the God. So God is love, moon, stars, and sun, and giving the use energy regularly. Energy. So sun, moon, and stars never exhausted from their light powers. They are performing their regular duties. So people of the world must
learn lessons from these sun, moon, lights to we must understand the knowledge from the fourth elements of nature. That is the element of air. Air is combination of many gases. In combination of many gases, there is the main gas, main air is useful in form of oxygen. So air is performing its duty regularly and run each and every places in this beautiful world to provide the oxygen to the all living beings. Their places, just like good Rama, good Ram, Sitaj and Lakshmans. God Ram has traveled in the jungle 14 years. God Ram has himself traveled to the providing spiritual knowledge and helping to the people of living in jungle. Likewise, air is providing its services at the place of all living beings in this beautiful world. So, air is the excellent elements of nature and it's performing duties constantly from the starting time of this creation of this beautiful world. Air has never complained to the God, oh God, I am now tired. I have to run each and every places of this beautiful world. So I am tired. Please give some days leaves. I want to rest. I want to take rest. Such type of complaint air never make to the God. So that God is very happy and seeing the towards air and with bless. God is love air and love also air also love to the God. So that God is giving use power, use oxygens and required gases to the air and air is performing its duty regularly. That is the message to the people of the world. We must travel each and every places of the world. There are problems. There are people are suffering from many problems. Like we can see the example there. Nowadays, many days Russia is playing the war with Ukraine, and Ukraine is also playing war with Russia. Now, the people of the spiritual, powerful religion peoples, religion leaders, all religions leaders have used power of spirituality, use powers received from God must utilize and must travel in Russia and Ukraine. And we must convince both president that you must stop these dangerous wars. This war is not in favor of the humanity and not in favor of the all living beings in this beautiful world. God has not given the powers for using your powers for destroying this beautiful world. So, like air, spiritual, all religions leaders must travel at Russia and make meeting with Putin, the president of Russia, and make meeting with president of Ukraine, Mr. Zelensky, and convince them what you want. We will give you all material things and all things and safety and all requirement, all necessary to the citizen of your both countries. Please stop these dangerous wars. We
must learn from air. Air is traveling each and every places. Like this ways, spiritual leaders and all religions, spiritual leaders must travel to such problematic places of this world. We must convince to the president of China and we must convince the president of Taiwan, you must not start such dangerous wars. That is the message is giving the air. We must travel to the necessity places, to the required places, just like air is traveling each and every places in this beautiful world. Like this way, fifth element of nature is sky. Sky is the broadest spaces made by the beautiful God, our lovely God. Sky always provides space to the all elements of nature. Sky is providing the spaces to the earth, to the water, to the sun, moon, light, and to the air. Sky is providing the spaces for working of all elements of nature. Sky is giving the message to the all people of the world. We must make our heart broaden just like a sky. We must enter all living beings in our spiritual heart with loveful feelings. We must accept all living beings as a member of our global family, and we must give the love to all creations and all living beings in this beautiful world. We must accept all living beings with loveful feelings as a mother of the world. So, five elements of nature is giving the great message to the all living beings in this world and especially to the entire humanity. We must follow the administration of God. We must follow the work of five elements of nature. That is the great message received from the house of the God, received from the lovely God, and I am just performing my duty as a mother of the world. So all creation are members of my lovely family. So that just I am performing my duty as a mother of the world, and I always remains present constantly day and night to performing my duty as a mother of the world. This is my only duty, and the words of this message I received from the house of the God. That is not my mind's product. God bless. God bless. God bless. God bless, God bless, God bless. Beautifully, Swamiji explain about five elements of our body: earth, fire, water, air, and space, and importance of all these five elements. And wow, wow, wow. Our Iftikhar Sahab is on the way. He's the next speaker. So, Iftikhar Sahab. So, you introduced me, Iftikhar Sahab, right? So, please tell our audience before Iftikhar Sahab comes, and take the stage. Who is Iftikhar Sahab? Iftikhar. हाँ जी, उनके बारे में कुछ जरा दो बातें कहे बिफोर वो इफ्तिकार साहब स्टेज ले। आपने उनको मेरे से इंट्रोड्यूस करवाया था स्वामी जी, हमारे कश्मीर वाले। इफ्तिकार बाजमी साहब वो आ रहे हैं अब। हाँ, तो उनके बारे में कुछ बताए। आपके तो उनसे मिल चुके हैं, वो आपसे मिल चुके हैं, तो हाँ जी, हाँ। एडवोकेट इफ्तिखार बाजमी
Iftikhar Bazmi is the great advocate हाँ जी, and great soul and specially selected souls by Allah, by Parmeshwar, by God. He is living in Poonch district, Poonch city of Jammu and Kashmir, especially in Kashmir. mm-hmm. Uh, Advocate Bazmi is very cooperative nature. When I visit frequently in Jammu and Kashmir, each and every time he is cooperating me, he is giving love me, he is arranged my accommodation, and he participates in all events Wow, in areas. So he is very active person. He is very noble person, noble soul. He has visited approximate 35 countries and giving their lectures in 35 countries and participants giving their noble speeches in 35 countries wow, in the occasion of great summit, great programs. He is a world level speaker. He is also the top priority core committee of God's, which has made God's lovely family platform and working with us as a noble person. Huge energy he is utilizing in Jammu and Kashmir. He is our great soul, great advocate. He is serving for humanity without any expectation. He is loving soul, he is knowledgeful soul, and he is spiritual soul. I appreciate and welcome Advocate Advocate Bajmi, Iftikhar Bajmi. We welcome. Assalamu alaikum, Fikar Badmi Sahab. And did you वालेकुम hear? सलाम, Did you जय hear? हिंद, वंदे मातरम। आपने सुना स्वामी जी ने आपके बारे में तारीफ के फूल बांधे हैं? सुने आपने कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं सुना। आई थिंक अरे यार, आपने मिस मैं थोड़ा किया। लेट हो स्वामी गया जी हूँ। फिर से, स्वामी जी फिर से शेयर करें, फिर से शेयर करें। यस अरे यस आप प्लीज। हमारे सुनना ही नहीं कि स्वामी जी आप। I am introducing my lovely and great advocate Iftikhar Ahmed Bajmi ji. He is a great advocate. हाँ जी स्वामी जी। You are hearing my voice? Yes, यस स्वामी यस जी। यस Please continue. You Please are hearing continue. my voice? Yes, yes, yes. यस यस। Advocate Iftikhar Ahmed Bajmi ji is a great advocate. Is a great soul selected by lovely Allah. He has given the great and noble speeches in approximate 35 countries. He is a great speaker, the world level speaker. He is doing practically to making this beautiful world a peaceful and happy world. He is my close and lovely friend, spiritual friend. He is living in Poonch district of Jammu and Kashmir, border of Pakistan. From the Jammu, from the Poonch, when I visited, always Advocate Iftikhar Bazmi ji remains with us and he is arranged my accommodation and he is giving me full of love and all arrangements. Poonch district is just 6-7 kilometers borders from Pakistan. He is a great advocate and great soul and brave soul. He is my lovely advocate Iftikhar Ahmed Bajmi is always put their views and thoughts without fear, strongly, with
bravely. So my great, lovely soul, advocate, great advocate, and world-class speaker, you welcome here. Audience and our participants are eager to hearing your voice and your speech. You welcome, my lovely brother. Thank you, Swamiji. Thank you. It's all because of you, and it is all because of Praveen Bhai, with whom I met, and we, succeeded in getting connected with the different peoples. Can you hear me? Swamiji, can you hear us? I do hear you beautifully, Iftikhar Saab. Yes, I do hear you. Swamiji, can you hear Iftikhar ji? अब सुनाई दे रहा है आपको स्वामी जी? Yeah. So, first of all, I would love to extend my thanks, gratitude to my celebrity, my guru, DRPPP. And so, in last meeting and this meeting, we have a lot of enjoys, we have a lot of love from other people. And now we are a family now, and I congratulate for the event and everything. And I think the God has definitely blessed those persons who are helping others, who are working for the humankinds, and you are also blessed by Almighty Allah, God. And so I think it is for those who are watching us, who will be watching, that if you really have something in your mind, if you really feel in your heart, and if you really want to do something for the humankind, don't think for the rewards from the human side. The reward will definitely come from the Almighty Allah. Reward will come from the divine. And so the divine is always watching our acts, deeds, misdeeds, and all such things. So today, when we are celebrating our 75th Independence Day, on this event, I would love to extend my heartful gratitude to all the people, all the Indians, all the other peoples who are loving to see these events. My congrats, my gratitude, my blessings, my love, everything. Because this was the day when both the countries, the India and the Pakistan, they got independence from the Britishers. No doubt the Britishers at the moment are our friends, our brothers, but that was a turmoil. That is the history, we can't deny it. So, without going into the history, let us spread peace, let us spread love, affection. Those who have already spoken, I heard on the Facebook. Know those who will be watching me live now. Let us celebrate. This time is a wonderful time because for the last 2 years we were fighting with the deadly pandemic. And so it is all because of you people. It is because of you people, the bonding we have, we survived, and we are again in front of each other. Let us pray for those who lost their lives in fighting with this deadly pandemic. May Allah, may Almighty, may God give them a place in heaven, in Jannah, and give the patience to the family, to those who are left behind. Let us pledge we should not do any act again so that this pandemic should come back. When on this 75th Independence Day we are celebrating, and in India we are celebrating Har Ghar Tiranga, Ghar Ghar Tiranga. And today was a very wonderful and very special day for me when I made some
flags by my hands. Initially, I put all the flags on my rooftop. Then I took few with me to the jail where I met with the superintendent of the jail. I met with the jail inmates, those who are inside the jail, inside the prison. I exchanged the flags with the jail inmates. I exchanged the flag with the superintendent of the jail. And I give them a message. Let us have these colors in our life. Let us spread these colors in the whole universe. This is the time when we people can have a bonding, when we people can make our country strong. It is not only the India which needs to be stronger. I, being an Indian, I extend my full cooperation, my full support to my neighboring country, that is Pakistan, because Pakistan is not only a neighboring country, it is our sister country because it has been liberated from us. Although we are a two nation, but we are having a same culture, we are having a same language, we have a same feeling, we have a same habitation. That is why we need love and affection from both the countries. Let us take away all the hatred. Let us take all the enemies away from the borders, as our Swamiji is doing, as our Swami Vishwanathamji is doing for the last many years. And we in a team succeeded in preventing both the countries from doing the wars. We take all the guns, we take all the big guns, the artilleries back from the borders. We requested both the governments. We don't want war, we want peace, love, affection. We want a peace, prosperity of both the nations. Let us pledge, let us, being an Indian, I extend my invitation to those neighbors, to my Chinese, to my Pakistanis, to my Banglas, to my Bhutanis, to my Iranis, to my Iraqis. Let us join hands together. Let us fight against the terrorism. Let us fight against the poverty. Let us fight against those who are not having a meals for one day. Let us fight for those who are not having their parents, who have lost their mom, who have lost their dads. Let us pray for those parents who have lost their kith and kins. War is not a solution. If you have a gun in your hand, by pointing a gun on your enemy is not a brave thing. By shooting your bullet on your enemy is not a big thing. The big thing is that keeping away all your hatred, keeping all your guns aside and give a hug to your enemy. Make them a friend. Ask them to embrace your feelings. Sit together, eat together, feel together. And being an Indian, I'm proud to be Indian. And I'm proud to be an Indian of that area, which is very much close to my neighboring country, Pakistan. We don't hate Pakistan. We don't hate Pakistanis. But the acts, the people who are doing in India against other countries, the people who are doing against our India, we hate them. Who make both the countries to have a hatred against each other. Because the man is not bad. The bad is the thinking. The bad is feeling. If a person who is a poor is not having money, he offers a piece of bread
Can you think he's a poor? No, because you are hungry, having $1 million in your pocket, but you are not having a bread to eat. But if a poor man offers you a bread, then think the value of a poor man. He is a more richer than you. But if a person is rich and a poor is on the road and he is shivering of cold, is feeling a thirst, is feeling a hunger, having $1 million in your pocket, can't do anything. Have a sympathy, sit with them, eat with them, give them something to eat. It will just take a few pennies just to make a good feel. We don't need your dollars, don't need your rupees, we don't need your pounds. We need your time. We just need your good deeds, your thinking, your feelings. What Swami Vishwanathamji is doing, he is not a rich man, but he is not a poor. He is not a poor. He traveled many countries. Why? Not to travel. He wants travel. No, he just wanted to see the people who are in a pain. He wanted to see the people who needs the help. He wanted to see the people who have nothing to eat. He stayed there few days in Kathmandu. He stayed there for a few months in UK. Why? He suffered a lot there. He was not having his own home. Even for some days, he did not have a 2 days, 2 meals in a day. Even he have a breakfast and not he has a lunch and the dinner. And next day he is a dinner or a lunch or something. But he did not complain. He did not complain. He is the mother of universe, and mother is giving. Mother is giving. Those mothers who are just watching me now, think if your baby is in your lap, he is crying, and you know he is hungry, he is thirsty, what you will do if you don't have a milk in your breast, if you don't have a bread in your house, if you don't have anything to give your baby, what you will do? You will definitely go outside, you will beg. Similarly, our Swamiji is doing, he is begging for the entire universe. He is begging for the people of the universe. I salute you. I salute you, Swamiji. And I salute you, my Praveen Bhai, who give us this platform where we are expressing our thoughts, our feelings. I will definitely start crying, but because I am very much emotional. Because we people, just think Praveen Bhai, just think Swamiji, we have a good quality of a mobile phone. We have a good quality of internet. We are connecting with each other. Think about those peoples who at the moment under the just a sky without having anything covered, they are not having anything to eat. Neither in India nor in Pakistan. We are just celebrating Independence Day because we want to show it to the other people that we the Indians, we the Pakistan are celebrating. No, this is not a real celebration. The celebration real is that when you are all countrymen, they are eating, they are happy, they are not poor. Even if they are poor, but they have a privilege on some other peoples. That is a real Independence Day celebration. That is a real Republic Day celebration. It's not just holding a tricolor in your hand, hoisting the flags on your rooftops. No, it never gives you immense pleasure. The real pleasure, someone asked a student, how many colors are there in a tricolor? How many colors are there in an Indian flag, not tricolor? The many says 3, but the boy says 5. The teacher says how? He says there is a one saffron. In the middle, we have a white. On the bottom, we have a green. And in the middle, in the center, we have a chakra, which is blue. But when
But when we got this independence, there was a red blood on the there was a red blood on the tricolor that always remind us this tricolor is not a small thing. It has it has taken blood from millions of Indians. Then we got this independence. This is not independence from the Britishers. No, this was the independence we got from the poverty. We got from the hunger. We got from the thirst. The Gandhiji, the Nehru, and Vallabhbhai Patel, Ambedkar ji, they give us a lot of lessons. Had any of us has gone through those lessons, definitely we will say no, because we don't have time. If somebody says, Swamiji, are you free? Swamiji will definitely say, no, this time I am busy. Please call me sometimes. And if I will call Praveen Bhai, I just want to, oh, Mr. Busby, please, just in the evening time. And somebody will ask, oh no, today I'm not free. But in reality, what we are doing, we are just sitting, we are gossiping, we are holding mobile phone in our hand, we are chatting, we are watching videos, we are doing lot of rubbish things. Please, please, please forgive me for all these words, but this is a bitter reality. It's the bitter truth. Those who are watching me might be they are smiling, they are laughing because this is the truth. And you know, when you admit, there is nothing to say. If I will say, Praveen Bhai, yesterday I have seen you somewhere in the market, and I have really seen you. If you say no, I will say, how dare you are there on the shop, you are purchasing such things, and the thing starts going towards the bad side. And say, I have your photograph, I have your videos, you are with someone else. And definitely, at some point, you have to admit that, yeah. But if I say, I have seen you, I say, yeah, I was there. There is no more questions. So this is what we are doing and what is happening to us. So at this moment, when we are celebrating our Independence Day of both the countries, that is India and the Pakistan, I must say thanks to you and congratulate all the Pakistanis, because our neighboring brothers, they got independence tomorrow on 14th of August, and we will be free from all such things, the midnight of 14th, when all the Indians will be in their deep sleeps, and in the morning of 15th of August, when they will get up early morning, they will see the tricolor will be on their rooftops. The tricolor will be just flowering all over the world. So it will give us the feeling that we are really free. And this is what our Constitution has given us. This is the real sense of celebrating Independence Day celebrations. Thank you, Praveen Bhai. Thank you, Swamiji. Thank you, Dr. Saab, who has just joined us. Thanks, everyone watching us. Over to you, Praveen Bhai and Swamiji. Swamiji, what would you love to say about Iftikhar Saab? Then I will say about Iftikhar Saab, and I'll introduce my buddy, my friend, all the way from my medical college years, about 30 years ago. So, yeah. Yeah, I'm Dr. Pranav Pachigar. I'm a psychiatrist and sexologist. I'm working at Surat in India. Right, and I'm not forgotten. I'm a senior of Praveen in my college days. Right. And so then we are here to celebrate. That's Yes. great. Yeah. Yeah. When did And you join Praveen medical college? I joined in 88, Pranav. Yeah, 1988. 88. Yeah, you are. I was Yeah, just senior. I it was is just quite. senior actually.
Quite senior. But then you became my senior, you bypassed me, you're like straightest, right? I was like, so, Munna bhai MBBS. Right. सर Uh, स्वामी जी, ये डॉक्टर प्रणव पच्चीगर जी है, सूरत में हम दोनों साथ में पढ़ रहे थे, इफ्तिकार साहब जी, और बड़े रंगीले मिजाज के वो, तब भी वो इंसान थे और अभी भी मनाई जो चूज भी डॉक्टरी वही चूज किया है, साइकेट्री लोगों के दिमाग के साथ खेलते रहते हैं, और सेक्सोलॉजिस्ट भी इंडिया के, नॉट ओनली गुजरात के, इंडिया के बहुत बड़े सेक्सोलॉजिस्ट भी बन चुके हैं और लोगों को हेल्प भी कर रहे हैं, सेक्सुअल जो भी सिचुएशन हो उसमें भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ जी, तो ये इफ्तिकार साहब है, जम्मू एंड कश्मीर की ओर से है, और पाकिस्तान से wow. लाइक 7-10 किलोमीटर नजदीक ही उनका वो इलाका है, और बहुत बड़ी 35 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने स्पीचेस शेयर कर चुके हैं, और बिंदास बंदा है लाइक बंदा बिंदास है, तो ये स्वामी जी ने भी वो एक्सप्रेस किया था। हाँ जी, और ये हमारे स्वामी जी है, स्वामी विश्वानंद, ओरिजिनली राजकोट में पैदा हुए, इसके बाद पूरी जिंदगी वो दुनिया वालों के लिए सेफ्रॉन कलर पहना, बट 30 years ago, एंड मदर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भगवान का जो मैसेज है, अल्लाह का मैसेज, जीसस का मैसेज, सो एज ए मदर ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में शेयर कर रहे हैं। 14 वर्ड जो वो बंद कर चुके हैं बिटवीन कंट्रीज और विद इन द कंट्रीज। और हाँ जी, तो प्रणव साहब, टेक द स्टेज। Yep. Basically, it's a very proud moment for both the countries, like India and Pakistan. It's like see, I feel like it should be a kind of a celebration more than Diwali and Eid. Yes. Yeah. Rightly said. Yes. That is what my heart is telling me. Right. And मैं आप तो जम्मू कश्मीर से बहुत नजदीक में है, तो शायद हिंदी भी समझ पाते होंगे। या बराबर। तो मैं ये खुशी जाहिर करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान एक हो जाए, तो सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया को पता चल जाए। ये मेरी विश रहेगी हमेशा। Even we people are trying our best. If both the countries can, come together, it will be very tough. Just we can make them as single country, but being a two countries is not a problem. But if we are, two countries, but if we are celebrating, if we are, feeling someone's pain together, and if we are working together for the development, for the prosperity of both the nations, I think that will be quite good. And I think being an Indian is not a good thing, is not a, I think, big thing. But being an Indian, if we are doing certainly for the people of India and even for our neighboring countries, so that is a big thing, as our ancestors and as our freedom fighters, they have told us about the India and the Indian system of this, this independence, how we got this such things. So I think that is the real moral of today's this talk. और मैं समझता हूँ कि जो आप बातें बोल रहे हैं, अगर अल्लाह करे ये सच हो जाए कि आप दोनों मुल्क एक हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी जो परेशानी है, बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये तो खत्म हो जाएगी। और हम तो कहते हैं कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो कहता हूँ इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, ये 5-6 कंट्रीज जो सब कॉन्टिनेंट्स बन गए, अगर ये सारे लोग इकट्ठे होके एक बहुत बड़ी पावर बन जाएं, तो हमारा जो ये ट्राई कलर है ना, ये ट्राई कलर, ये हमेशा के लिए ना लोगों के दिलों में बैठ जाएगा। और रियल एसेंस इंडिया की तो ये है कि हम हिंदुस्तानी लोग जो है ना, हम बड़े इमोशनल हैं। हमारे सामने जब दुश्मन भी आ जाता है ना, हमको कहते हैं यार ठीक है यार, अब तुझे अगर मुझे मार के खुशी मिलती है यार, ओके यार, तू मुझे मार यार, मैं तुझे छोड़ देता हूँ। हम इस किस्म के लोग हैं। हम लोगों को मारना नहीं चाहते, हम लोगों को जीवन दान देते हैं। और हम जम्मू कश्मीर में रह के हम सभी भारतवासियों को कहते हैं कि आप हमारे पुंछ में आओ, राजौरी में आओ, शुपिया में आओ, आप कश्मीर में आओ, आप बहुत सी जगह स्वामी जी गए हैं, आप आओ और यहाँ पे देखो हम लोग कैसे जी रहे हैं, हम कितना खुश हैं। हम लोग एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों फिरके के लोग इकट्ठे रह रहे हैं। आप जो न्यूज में देखते हो,
जो आप रेडियो में सुनते हैं वो रियलिटी नहीं है। कोरोना के दौरान बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल 3 महीने के लिए कश्मीर में गए और स्वामी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एग्जैक्टली क्यों? उनका मन साफ है, उनका मन साफ है। और कश्मीर के सारे लोग जानते हैं ये स्वामी हैं, ये हिंदू हैं और ये इंडिया से हैं। इनको किसी ने कुछ नहीं बोला। मुस्लिम्स के घर में रहे, मुस्लिम के घर में खाना खाया, मुस्लिम ने इनको अपने घर में रखा, देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता है कि भगवा कलर देख के लोगों को क्यों परेशानी हो जाती है और किसी को ग्रीन कलर देख के क्यों परेशानी हो जाती है। अरे बीच में जो व्हाइट कलर है लेके चलो, वो तो अमन शांति की निशानी है। and you know white is a color that absorbs everything and we are becoming white. यस हाँ, सभी कलर व्हाइट से तो निकले हैं ना, सही बात है ना, राइट? Exactly, beautiful. See, I would literally like to join you people again. I'm having some work over here with my patient. I'll just finish it. I'll join you back. Sure, See you Dr. then. Pranav. See you Yeah. later. Thank you so much. Okay. हाँ जी, ओके, जास्मिन का टर्न है एक्चुअली, और ब्रेक लेके आ रही है, तो जरा जास्मिन को, वो भी होस्ट भी है, तो जरा उसको भी सुन रहे हैं। English, Home Minister. please. I don't understand this language. ओके जास्मिन, नमस्ते, नमस्ते जास्मिन। आपकी भाभी जान बन गई अब तो। Hi. Yeah, I know. Hello, Bobby. Namaste. Hey, Jasmine, take the stage, all is yours, Swamiji, Iftikhar Sahib, all the way from Jammu and Kashmir, Hey, Raven, I think before I start, we have a surprise for everybody. Okay, bring it on. Oh, you're Right. the surprise queen. Sure, please. Well, once upon a time, we went to Niagara Falls last month, the last week of July, and once upon a time, me and Craven got engaged at Niagara Falls at the May of the Mist. So, yeah, a surprise, I guess. I don't know. That was very awkward. That was very awkward. Yeah, and then okay, totally off topic. So anyways, you probably know who I am by now. I'm just gonna keep it short and sweet. India and Pakistan are both countries. They both exist on this planet Earth. The people of India and the people of Pakistan are both human beings. So if we erase everything else, that's what we get. So yeah, just be kind and have respect. That's it. Period. Thank you. Short and sweet, beautiful message. Appreciate, Jasmine. Yep, that's all I got. Take it away. Awesome. Yeah, Swamiji, Iftikhar Sahib, please keep continue. And yeah, it was amazing moment. July the 29th, right by the boat went reach right at the front of the Niagara Falls between Canada and USA. And then, I went with 2 rings, one ring, gave it to Jasmine on the ring finger, and Jasmine gave 1 ring to me, and 2 souls became one. And yeah, looking for blessings for upcoming years, and basically we decided. Yes, we are, restoring our blessings. Thank you. And someday we all will transfer our energy to our mother of the world, Swamiji, and he will transform the same in both of you. And we hope something different will come from both of you. That will be a spiritual thing. That will be I think, a gift from the God side. Absolutely. To fulfill Swamiji mission faster, bigger, and more, we went to this decision. And definitely we are going to be, one of the biggest force in Swamiji's mission, including with Iftikhar, as well as 15,000 crore log all over the world hai. Unke saath kandhe se kandha mila ke. So if everything will be okay, Praveen Bhai, Hanji. I will not promise, but me and Swamiji will try our best to come and join your wedding ceremony. Most welcome, most welcome. Most welcome. But the thing is that if you will enjoy, if you will invite us not virtually, but
on the piece of paper or physically. Okay, we will write physically कि भाई भाई शादी के लिए आपके blessings के लिए इन पर्सन स्वामी जी भी चाहिए और इफ्तिकार साहब भी चाहिए, ठीक है? कि हम तो कोर्ट मैरिज की सोच रहे हैं, simple and easy. Yeah, that's good. That's good. The money which you will save, that can serve your purpose, and I think that can be used and utilized on your babies, on your kids. They can get a good schooling, they can get a good nourishment, they can good an atmosphere, everything. I think that is डिसाइड good किया idea. कि दुनिया के लिए हमारी लाइफ खफा करनी है तो बेबीज को लाना बनाना ही है. जास्मिन भी एग्री है, मैं भी एग्री हूँ, तो उसमें भी हाँ जी. भाई अल्लाह तो जो सोचेगा वो होगा. मगर You never think sometime the Jasmine, you never think when you start this group, you are not knowing who is Jasmine, you are not knowing who is Iftikhar, you are not knowing who is Swamiji. Today you got engaged, tomorrow you will be husband and wife, and inshallah someday you will be a mother and a father. Thank you. Definitely the day will come. Keep my words with you. Keep the blessings from Swamiji with you. Definitely, it is only the work of Swamiji to be single, because we are the sons and the daughters of a mother of universe. He needs not to get delivered anything. Let the things be delivered from Swamiji, and you are in real life. So we need something from you both. We'll see. Decide ते किया है, देखते हैं वो ऊपर वाला क्या चाहता है, आपकी ख्वाहिश पूरी करता है कि हमारी ख्वाहिश पूरी करता है. Yes. The God has already destined. Swami ji भी said same thing to Praveen bhai, mingle तो हुई अब. Swamiji is restoring and he is going to deliver you something. और देखते हैं किसकी ख्वाहिश का. Oh God. Okay, Dr. Chandrasekhar, welcome to the party. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. स्वामी जी, इफ्तिकार दोनों को आप जानते ही हो. हाँ बोलिए डॉक्टर साहब. हेलो. हाँ हेलो. Namaste to everybody. Namaste to everybody. It is a good time to be celebrated. Indian Independence Day is going to be celebrated. Before that, I want to congratulate Mr. Dr. PPP for his very fantastic choice of the life. I congratulate you. I namaste and wants Ashirwad from Swamiji. And ये बात सही कही. देखो मिल गया आपको. हाँ जी, आपने मांगा, मिल गया. To everybody, let me have the ear beats. Let me have. हाँ जी, वो लगा लीजिए. That will be better because the voice is jarring. Praveen bhai, I will join you after 30 minutes. Let me have my dinner finished. Sure, and brother. So I will be back, okay? Take care because we need you back. ठीक है. हाँ जी डॉक्टर साहब, लगा लिया अपने ईयरफोन्स. हाँ जी, स्वामी जी ने आपको ब्लेसिंग दे दिया है. आपने मांगा और स्वामी जी ऑलवेज देते रहते हैं ब्लेसिंग. स्वामी जी ने आपको ब्लेसिंग दे दिया है. आप अपना कुछ शेयर करना चाहते हैं 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के बारे में? सो फिर एंड दिल के साथ शेयर कर सकते हैं आप. या डॉक्टर चंद्रशेखर, टेक द स्टेज प्लीज. आपको सुनाई देता है? आवाज आ रही है आपको डॉक्टर बाबू? हाँ, फिर से ज्वाइन कीजिए. ज्वाइन अगेन बिकॉज यू कैन नॉट हियर अस प्रॉपरली. अब कैसा है? अब कैन यू हियर अस नाउ स्वामी जी?
अब आपकी आवाज जा रही है, बढ़िया आवाज अच्छा जा अच्छा रही है। हाँ, तो अब अपना वो शेयर करे दिल की मैसेज कि भाई इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन का वो हमारा कॉन्फ्रेंस है, उसमें क्या शेयर करना चाहते हैं पीपल ऑफ इंडिया के लिए, पीपल ऑफ पाकिस्तान मैं के ये लिए। शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में जो 14th अगस्त है and 15th अगस्त है, we are celebrating the hosting of the flags in every house. इन इंडिया घर घर में हर घर में एक झंडा लगाने के लिए हमारे मोदी जी ने बोला है, and it will be a great celebration and it will be a great show because it is for the nationalism. This is a Indian. We are celebrating Indian Independence Day, and it is 75 years of independence in India. And we Yes. have got lot of development in our country, and our country is going ahead for Atma Nirbhar Bharat. That is just self-dependent. Everybody wants to work self-dependent. The unit which we are running should be self-financed because it is very difficult. Donations and all these things. With donations, the material is available, the infrastructure is available. लेकिन जहां तक मैन पावर की है, मैन पावर is not available. So it is a great mantra of Modi ji to do every work self-dependent, financially dependent. The units which are financially dependent are working very nicely, and I have given this model to our organization. Let me see, they are not yet agreed with my proposals because manpower cost is very high. हिंदुस्तान में टेक्निकल स्टाफ की कीमत बहुत ही ज्यादा है. ऐसी स्थिति में इट इज a very difficult job to run any unit. तो हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें इक्विपमेंट्स है, हमें जो सारी चीजें हैं, बिल्डिंग्स हैं, एसीज हैं, ये सारे के सारे डोनेशन में मिल जाते हैं. बट एज फार एज मैन पावर, टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड. डॉक्टर बाबू आवाज नहीं आ रही है. डॉक्टर बाबू आई कुडंट हियर यू, प्लीज ज्वाइन अगेन. फिर से आप ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन अगेन फिर से. हाँ जी, ज्वाइन अगेन डॉक्टर बाबू. ओके जी, थैंक यू. यस स्वामी जी. हाँ जी, वेलकम बैक स्वामी जी. Dr. Goswami ji was talking nicely, reporting that Modi government is doing excellently in India. Yes. But its connection, voice was broken, some systems problem. Again, we want to welcome Dr. Chandrasekhar Goswami ji. Thank you, Swami ji. Because he is doing excellent job. He has done excellent work during the coronavirus situations. So again, we welcome Dr. Chandrasekhar Goswami. If possible, he can join as early as possible. Absolutely, Swami.
तो स्वामी जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? 75 साल के बाद पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुजरात इंडिया ने बोला कि भाई हमारा तिरंगा, एवरीबॉडी, पीपल ऑफ इंडिया कैन हैव तिरंगा लगा सकते हैं अपने घर के सामने, अपने मकानों के ऊपर, और वो पेट्रियोटिज्म और सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस ख्याल के बारे में आपका क्या कहना है? इस मोदी जी के डिसीजन के बारे में आपका क्या कहना है? It is excellent decision. It is excellent decision because the Indian national flag is not only a flag, but there is a great message to all people of the world. So, welcome Dr. Chandrasekhar Goswami again. Welcome back, Dr. Babu. Can you hear Swamiji and me, Dr. Chandrasekhar? Echo भी आ रहा है। उसको बोलो कान में से निकाल दे, कान में से निकाल देंगे। रिमूव द ईयरफोन्स, डॉक्टर बाबू, कान में से वो निकाले अपने। तो कान में डाला हुआ है ना, इसलिए उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। रिमूव योर ईयरफोन्स। अब बोले जी। हाँ, वेरी सॉरी। स्वामी जी को प्रणाम। आपको नमस्ते। आप ऐसे ही चलने देते हैं बिकॉज हमारे यहाँ इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तेज रेंज हो रही है। स्वामी जी आपकी कृपा से हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। तो आज का जो कल का और परसों का दिन है, हमारे यहाँ सेलिब्रेशन का दिन है और सभी जगह हमारे हिंदुस्तान के झंडे फहराए जाएंगे। और बहुत बड़ा मैसेज हमारे चीफ मिनिस्टर ने दिया, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ चलना है। फॉर साइलेंस इंडिया, हमें क्या है कि जीना है, लोगों को जीने देना है, लव करना है, ब्रदरहुड का प्रचार करना है, एमिट करनी है। जैसे कि स्वामी जी का आदेश है, हम लोग जगह जगह पे पीस को, ट्रैंक्विलिटी को, हार्मोनी को, ब्रदरहुड को एमिट करते हैं, बोलते हैं, लोगों से टॉक्स करते हैं पीस की। कि हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश है जो कि आज रशिया और यूक्रेन में फाइट हो रही है। दे आर फाइटिंग लाइक एनीथिंग, कैट एंड डॉग फाइटिंग, ग्रेट फाइटिंग आर देयर। स्वामी जी इसका भी एक मैसेज कुछ दिन पहले मैंने देखा था, इसमें स्वामी जी ने कहा था कि भाई ही इज टेकिंग ए पीस मिशन टू द यूक्रेन। यस, स्वामी जी हैज टोल्ड दैट डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं जी, यूक्रेन और रशिया को शांति कराने के लिए हिंदुस्तान की तरफ से हमारे स्वामी जी प्रस्थान कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं अभी क्या है कि यूक्रेन में इंडियंस जो स्टूडेंट परेशान हो गए थे, उनका मैंने एक कंपनी बना के ना उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस दिलवा रहा हूँ। मालडोवा का जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें हमने वी हैव जस्ट fetched some seats for Indian students who are in disaster and not completed their studies. We are going to help them with our company. हम बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट वे पे मालडोवा में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में, फार्मास्यूटिकल यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स रशिया की फाइट की वजह से, वार की वजह से जो डैमेज हो गया उसकी वजह से इंडिया लौट आए थे, तो उन स्टूडेंट्स को हम एमबीबीएस पढ़ने के लिए वापस मालडोवा और जॉर्जिया में भेजने का हमें असाइनमेंट मिला है। तो एटलीस्ट 1200 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया आर हियर। दे वर स्टडिंग इन यूक्रेन। वो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ पे आए हुए हैं। हमारा ये जो नए वर्ष की सौगात के रूप में हमने इनको एडमिशन कराने के लिए एक कंपनी का फॉर्म किया है। दिस कंपनी इज वर्किंग नॉन प्रॉफिट। बहुत कम कीमतों में हम जो मालडोवा मेडिकल यूनिवर्सिटीज फीस दे रही हैं उस आधार पर स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं। तो इट विल बी आवर ग्रेट अचीवमेंट फॉर द years of celebration of our Independence Day to give to the Indian students, especially to the Rajasthan students.
हम राजस्थान की स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा तोहफा दे रहे हैं और उनको हम यूक्रेन की जो युद्ध में और जो यूक्रेन की बर्बादी में बर्बाद होके आ गए थे इंडिया, उनको हम लोग वहां पे प्लेसमेंट दिलवा रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स को हम प्लेसमेंट दिला रहे हैं। इट विल बी ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ अस टू दी। आज जिस तरह का स्वतंत्रता दिवस को मनाया जा रहा है, जगह जगह झंडे फहराए जा रहे हैं, 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है, उसमें हम हिंदुस्तान की विशेषकर राजस्थान के बच्चों को एक तोहफा के रूप में उनके एडमिशन के लिए हमने बड़ी पब्लिसिटी की है और हमें बहुत सारे जिलाधीशों से कलेक्टर्स एंड ऑल दैट हैज सपोर्टेड आवर कॉज एंड वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स टू मालदोवा। ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा टू द इंडियन स्टूडेंट्स who are in misery and trouble and having lot of problems about their studies। तो उनकी स्टडी के लिए हमारा जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, तो हम इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस इंडिपेंडेंस डे पर हमारी ओर से ये तोहफा हिंदुस्तान के विशेषकर राजस्थान के विद्यार्थियों को दे रहे हैं, जिसका कि हम पब्लिसिटी कर रहे हैं, जिसका कि हम प्रचार कर रहे हैं। तो मैं स्वामी जी से आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं और प्रवीण भाई से भी बहुत वक्त बाद में मिला हूं और प्रवीण को लॉट 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इन्होंने ही हैज गॉट। तो मैं सोचता हूं कि जैस्मिन विल बी हियर, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ देम। और तो मैंने उनका कुछ नाइजीरिया फॉल वगैरह में कुछ figure snaps देखे थे, but as I was having certain injury in my leg, I was little bit ill, I think so. Though I was attending my patients, though I was doing everything, though I was very active in media, but social media, but sorry, I was not able to respond to Praveen. And we will offer them an Indian tour to both of them. We are thinking to organize an Indian tour for Jasmine and Dr. PPP Celebrity the Great. स्वामी जी, आप जरा अपने शब्दों से इनको आशीर्वाद दीजिएगा और नए जीवन की इस संध्या में जो कि इंडिपेंडेंस डे की हम मना रहे हैं, तो आप एक आशीर्वाद के शब्द प्रवीण को और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मिशन पर कामयाब हूँ। I am talking about the peace, I am talking about the tranquility, I am talking about the harmony, brotherhood, love, and all globally. And one information I want to give you, that King of Ireland, Mosraf Chaudhary, has appointed me as his advisor of Royal House. 2-3 days back, he has appointed me as an advisor of Ireland Royal House. I will be helping him for the philanthropic causes. सामाजिक उत्थान के जो भी काम होंगे एशिया में, उसको करने के लिए मैं उनको परस्यू करूंगा। We are shortly also having a book on World Doctors magazine, in which every doctor of the world, maybe of any specialty, we don't mind that he should be only MBBS, MD, and a fellowship and a DM like that. We will be taking every doctor, every qualified doctor. We are here not compromising with the cost. We are not compromising with the quality of the services. Cost efficient services without compromising with the quality of the services. We are going to initiate this book. That was information from me. अब मैं चाहूंगा कि प्रवीण और बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के, इंडिपेंडेंस डे के लिए सभी को मेरी तरफ से, स्वामी जी को। आवाज बंद हो गई आपकी डॉक्टर चंद्रशेखर, वी कैन नॉट हियर यू। मगर आपने आपका मैसेज दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वामी जी आपके शुभाशीष चाहते हैं, देन आई विल कंटिन्यू, देन आई will learn from our new speaker who asked for how can I join, and Mr. Said is here, जार सईद साहब। so स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर बाबू के बारे में? जैसे यूक्रेन और रसिया का प्रॉब्लम शुरू हो गया, अच्छा, डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी is
talking. You are hearing my voice, Dr. Ji? आपको सुनाई देता है डॉक्टर बाबू? अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें आप, डॉक्टर चंद्रशेखर. अनम्यूट योर माइक्रो प्लीज. हाँ, स्वामी जी बोलते हैं, आपको सुनाई देता है? स्वामी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, स्वामी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेलो, कुछ शब्द कहें, आपके आशीर्वाद के शब्द कहें, क्योंकि मुझे स्वामी बड़ी जी खुशी कह है. रहे हैं, स्वामी जी को कह रहा आपको है, सुनाई देता खुशी है? खुशी. हमारा आशीर्वाद हमेशा डॉक्टर जी आपके साथ, दोनों डॉक्टरों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा. इसमें कोई कमी नहीं आएगी. हम सबको मालूम है, we all are knowing that during the dangerous situation started between the Russia and Ukraine, there is a great platform built up by some Deshbhakta from India, Ukraine Seva. Its name was Ukraine Seva. Like this way, Dr. Chandrasekhar Goswami and Dr. Praveen P. Patel, you have to build up one platform for all Indian medical students. Those are interested to get their admission in Maldives, and just informing Dr. Goswami, he was sharing his planning that all medical students will get their admission in 2 countries, so that how medical student can apply, how contact Dr. Chandrasekhar Goswami and its platform, so that within 2-3 days you have to build up one platform, joining with Dr. Goswami ji and Dr. Praveen Patel. Praveen Patel, you have to build up this platform. Okay, just like Ukraine Seva was built up from the Indian students. Indian, some peoples, noble peoples are working in Ukraine. Those people have built up the platform Ukraine Seva. Right, Swami. All parents from India were giving their messages to their lovely children, the students who are studying in Ukraine, so that the platform Ukraine Seva has given the excellent services to pulling out from Indian student and Pakistani student and Bangladeshi student from Ukraine. So from that ideas, tomorrow you have to contact Dr. Goswami ji. You both are doctor. You have to build up the platform. Admission services for medical students. Such type of titles you can give. What's the title, Swamiji? Helping line for medical student. और ऐसा भी कर सकते हैं कि यूक्रेनियन मेडिकल स्टूडेंट्स help platform for Ukrainian medical student for new admission. ऐसा कुछ आप उधर आप ये प्लेटफॉर्म बनाओ, दोनों का कॉन्टेक्ट नंबर, और जो डॉक्टर गोस्वामी जी कह रहे थे कोई कंपनी के जरिए से वो एडमिशन 1200 स्टूडेंट का कराना चाहते हैं तो बड़ी सेवा हो जाएगी. जो स्टूडेंट और उसके पेरेंट्स अभी चिंता में है, तो टाइम सर उसका एडमिशन कैसे होना है
उसको क्या क्या करना है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर गोस्वामी जी आपको देंगे। फिर आप दोनों मिलके ये स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हैं। That's a very good बहुत advice, बड़ी स्वामी। मानवता की सेवा हो जाएगी जरूर स्वामी जी। इसमें सिर्फ भारत के स्टूडेंट नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेशी सबको इसमें इंक्लूड करो। मानवता सही की बात, सेवा के लिए सबको वेलकम करो। सही सिर्फ बात है, भारत के स्टूडेंट और सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट ऐसा नहीं। सही बात है। सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट को कवर नहीं करना है, पूरे इंडिया के और सराउंडिंग कंट्री के स्टूडेंट को वेलकम करो, उसको प्रॉपर गाइडेंस आपो, कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी कंट्री में एडमिशन होना है और कैसे एडमिशन होगा और उसमें कितना खर्चा आ सकता है और कैसे करना है, ताकि उसकी जो स्टडी लाइफ है वो बच जाएगा, स्टडी टाइम बच जाएगा। तो ये सही बहुत बात है बड़ी स्वामी। मानवता की सेवा हो जाएगी। आज डॉक्टर गोस्वामी जी ने ये इंफॉर्मेशन दिया कि 1200 स्टूडेंट का एडमिशन कराने जा रहे हैं, तो वी मस्ट इंक्लूड all students, medical students, those are studying in Ukraine, from Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, and our neighboring country. सही बात है, जरूर स्वामी जी। So within 2-3 days, you have to build up a social media platform and welcome all medical students. Those are suffering from Ukraine, study of medical science and pharmacy also. जरूर स्वामी जी, डेफिनेटली मैं वो डॉक्टर बाबू के साथ मिलके जो आपका जो ब्लेसिंग्स दिया कि भाई एक्सटेंड करना है, और नॉट ओनली राजस्थानी स्टूडेंट, मगर नॉट ओनली इंडियन स्टूडेंट, मगर बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और जो भी माना सब कॉन्टिनेंट के स्टूडेंट है, सबको मैंने हेल्प करना है। और 1200 का जो नंबर है उसको भी हम स्काई रॉकेट कर जाएंगे। ठीक है स्वामी जी। डॉक्टर बाबू सुन लिया ना आपने स्वामी जी का आदेश? आपने तो थोड़ा सा ब्लेसिंग मांगा था राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, स्वामी जी ने तो दायरा बढ़ा दिया। मेरे के भी कुछ जिम्मेदारी, मेरे को भी वो ब्लेसिंग्स दे दिया कि भाई मैं भी शामिल हो जाऊँ इसमें। इसमें इंडियन गवर्नमेंट विल आल्सो हेल्प for this project. Indian government will also help, just like a Rajasthani government will help, and Rajasthani students can accommodate like this ways. Indian government can help for all neighboring countries medical student and pharmacy students to save their study time, study period. स्वामी जी, ये बंदा है जार सईद है, उसने वो कमेंट लिखा था कि हाउ कैन आई ज्वाइन, इस कॉन्फ्रेंस में कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, और मैंने उसको लिंक भेजा है। सो लेट्स उनसे भी सुनते हैं कि जार सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, अपना वो दीदार करवाएं और जो भी मैसेज है इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस में आप शेयर करें। हाँ जी। और ये पाकिस्तान से स्वामी जी ये बिटिया है, 14 साल 15 साल की छोटी सी बिटिया है, रईस फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रईस, कैसे है? बस आई एम द हेवन अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे स्वामी जी है, स्वामी विश्वानंद, और डॉक्टर बाबू है, वो भी इंडिया से, राजस्थान से है, और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, पाकिस्तान से है, वो भी कुछ मैसेज देने आई है इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। सो शुरू हो जाइए, शेयर भी कीजिए, एंड स्टेज इज योर्स। Thank you so much. First of all, I would like to thank Mr. Parveen and Jasmine Patel for just allowing me to speak here. And there is like huge वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कहो, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। इंक्रीज योर वॉल्यूम प्लीज, इंक्रीज योर वॉल्यूम रईस। Okay. हाँ, नाउ Okay. एकदम नजदीक रखिए अपना माइक्रोफोन, अपना जो माइक्रोफोन है वो नजदीक रखिए। हाँ, इट्स better and beautiful, yes. Yeah, thank you so much for inviting me. And so
फर्स्टली मैं सबसे पहले तो जो है तहे दिल से जो है कांग्रेट्स करूंगी ऑन इंडिपेंडेंस डे। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको इंडिपेंडेंस डे। और सून हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम रियल इंडिपेंडेंस की तरफ पहुंच जाएंगे। रियल इंडिपेंडेंस मीन्स के वी गॉट इंडिपेंडेंट, वी गॉट द फ्रीडम बट स्टिल वी डोंट हैव। सो रियल फ्रीडम हमारे पास क्या होगा? रियल फ्रीडम के वॉर का खतरा खत्म हो जाएगा, पीस होगा दुनिया में, पीस। एक जो है ना पाकिस्तान और इंडिया स्टिल जो है हम लोग एक अच्छे पड़ोसी, अच्छे हमसायों की तरह, अच्छे नेबर्स की तरह अगर रहें और अच्छे फ्रेंड्स की तरह अच्छे एनवायरनमेंट में, एक पीस जनरेटेड एनवायरनमेंट में, तो हम बहुत कुछ साथ में मिलके अचीव कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे माइंड्स हैं जो वर्क करते हैं। हमारे पास के यंगस्टर्स, जो पाकिस्तान और इंडिया के यंगस्टर्स का जो दिमाग है वो दैट्स मोर देन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। तो हम जो है थर्ड वर्ल्ड में क्यों राइज करते हैं? हम इसको फर्स्ट वर्ल्ड में लेके जा सकते हैं, बट फॉर दैट वी हैव टू यूनाइट। हम जितना यूनाइट होंगे, जितना साथ मिलके पीसफुली वर्क करेंगे, और हम बहुत जल्दी जो है थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड में आ जाएंगे। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमें हमारे क्रिएटर ने, अल्लाह ने, भगवान ने हर चीज़ दी है कि हम जो है हमारी जो मिनरल्स हैं, हमारे पास 4 के 4 मौसम होते हैं, हमारे पास हर वो चीज़ है जिसके लिए पूरी दुनिया तरस रही होती है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम बैक क्यों हैं? सिर्फ रीजन ये कि फजूल की फाइट्स, फजूल की स्टीरियोटाइप्स, फजूल के कल्चरल डोमिनेंस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कल्चर को फॉलो करना, लेकिन कल्चर को अपना मजहब या धर्म बना लेना, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और आप जो है अपने अचीवमेंट से दूर जा रहे होते हो। ठीक है, ये डिफरेंस होना चाहिए कि हमारा कल्चर क्या है और धर्म क्या है। धर्म को तो हमें फॉलो करना ही है हर हाल में, क्योंकि मरने के बाद हमें डेफिनेटली जाना है हमारे क्रिएटर के पास। लेकिन हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि हम इस कल्चर में प्रेस होके वो कामयाबियाँ, वो चीज़ें जो हम डिज़र्व करते हैं, उससे जो है वो रेसिस्ट तो नहीं कर रहे उन चीज़ों को। तो ये क्वेश्चन राइज होता है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है, और उसको जो है हमें हर हाल में अक्वायर करना है कि जो है मतलब कुछ चीज़ों को हमें बिल्कुल लाइक उन स्टीरियोटाइप्स को बिल्कुल अलग करके, लाइक कि हमें जो है मीन्स कि हमें जो चीज़ चाहिए, हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें अपने सब कॉन्टिनेंट को, पाकिस्तान और इंडिया को, प्रायोरिटी हमारी ये है कि ये जो है मतलब जो डिफरेंट माइंडसेट्स पे लड़ना या फिर डिफरेंट चीज़ों पे, उनसे जो है ना प्रायोरिटी ये है कि हम दोनों मिलके, दोनों यूनाइट होके इस सब कॉन्टिनेंट को फर्स्ट वर्ल्ड पे लेके जाएं। और हम लेके तो चले जाएंगे इंशाल्लाह, आप भी लेके चले जाएंगे, हम भी लेके चले जाएंगे। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर जब हम यूनाइट हो जाएंगे, वो 10 साल के बजाय 5 साल में वो चीज़ अचीव कर लेंगे। जितना मिल के काम करेंगे उतनी जल्दी हम अपना ऑब्जेक्टिव जो हमें एक्चुअली चाहिए वो हासिल कर लेंगे। ये मेन थिंग है, ये जो है मेरा छोटा सा एक ओपिनियन है। मिस्टर परवीन, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सो आई वुड बी मस्ट इट वुड बी मच अप्रिशिएटेड। ब्यूटीफुली रईस, रियल रॉकस्टार रईस हैशटैग RR आपने अपनी बात कही कि भाई आज का यंगस्टर इंडिया का, पाकिस्तान का क्या चाहता है। Hello, वो am I चाहता है यूनिफिकेशन, audible? चाहता है, वो चाहता है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड के बच्चों से भी हम आगे हैं, मगर हम यूनाइट हो Hello. सकते हैं। सो देन वी कैन डू इट फास्टर। जो 10 साल में अचीव कर सकते हैं वो 5 साल में भी अचीव कर सकते हैं। एंड बढ़िया बात कही आपने, ब्यूटीफुली आपने वो अपना पॉइंट रखा। एंड रियली अप्रिशिएट दैट कि आप बढ़िया सी सोच रखते हो, यूनिफिकेशन की सोच रखते हो। अपने आप को थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड ले जाने के लिए, दोनों कंट्री के लिए आपकी वो जो ख्वाहिश है, दोनों देशों के यंगस्टर से आपने बातें की कि आप नाम जा सकते हैं। ऑलरेडी हम अहेड है,
ठीक है ना। तो बहुत ब्यूटीफुली आपने कहा एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप छोटी सी उम्र में माना इतनी बड़ी सी बातें, सच बड़े बड़े स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी विश्वानंद बैठे हैं, डॉक्टर बाबू राजस्थान से बैठे, डॉक्टर चंद्रशेखर, और मैं कनाडा में बैठा हूँ, फिर भी आप बेखौफ होकर ब्यूटीफुली आपने शेयर किया। रियली अप्रिशिएट दैट। स्वामी जी कुछ कहना चाहते हैं इस छोटी बच्ची के लिए, पाकिस्तान की तो की तरफ बोल गए माना छोटा पैकेज बड़ा धमाका है। तो we congratulate Rais Fatima. His name is Hello. Fatima. Hello. Yes, Swamiji. Yes, Swamiji is giving you blessings. Fatima. Yes, Swami. Fatima was the daughter of our lovely prophet Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. His lovely daughter's name was also the Fatima. Yes. She was the Sultanul Fukra. Now we hope that from Pakistan, Rais Fatima will play the great role to making the unification of the India and Pakistan. We are proud of respected sister Rais Fatima. You are blessed soul. Lovely Allah is Thank you so much. giving you use power and use love like his lovely daughter Fatima. You are Allah's lovely daughter born in Pakistan. You and we people together will make unification of Bharat and Pakistan as early as possible. We congratulate for your thoughts. We, both country and surrounding countries, have given the great responsibility by the Allah's Parmeshwar and God. We have not focused on the development of this only some countries and this area, but we have to focus to give the safe and pleasureful lives and full development like materialistic and spirituality to the all countries of the world, all people of the world. We must be a leader. The capacity of spirituality and materialistic resources, both resources are used and used, gifted by lovely Allah, God and Parmeshwar, so that we must make our goal, we must make our target to the better world, to making the and give the pleasureful lives and full development of entire world, not only Pakistan and Bharat, but we must make developed world and cover all countries of the world. We must not be a selfish, only think the Pakistan and India, but we must use our resources and we must use our spirituality's power to give the better world, to safe world and pleasureful lives to all living beings in the world. That is the goal and that is the wish of Allah's lovely God and Parmeshwar. Wow, wow, wow. Thank you so much, Swamiji, for blessing this beautiful Chota package Bada Dhamaka all the way from Dil Pakistan. Rais Fatima ji. Thank Dr. you. Chandrasekhar, would you love to Thank share you so anything? much. Stay blessed. Yeah, thank you, thank you, thank you. डॉक्टर चंद्रशेखर आवाज नहीं आ रही है आपकी यार। डॉक्टर बाबू आवाज नहीं आ रही है, सॉरी यार। couldn't hear you. Please join again. Some technical difficulties, Dr. Babu. Yeah, Fatima. Wow. What would you have to say after getting Swamiji's blessings?
I felt awesome, and thank you so much for obliging me a lot. I just tried to just give my point of view to grow and raise our voice and raise our identity in the world. So, and you guys appreciate me. It really gave me motivation. Respected Rais Fatima, you are living in which city of Pakistan? Karachi. Karachi. Oh, the port, the great port, Karachi, Yes. the largest city In of Pakistan. Pakistan is the Karachi city, just like a Bombay in India. Yes. So It's you awesome. are lucky soul. You are lucky soul that you born in Karachi. My nani and nana were working in Karachi port before Really? independence, Wow, before that's awesome. 1947. My nana and my nani is living in Karachi, so that I Wow. have specially love to Karachi and people of Karachi and people of Pakistan too. Much Wow. appreciated. That's interesting. I came to Uh, know today about this too. in So, which standard you are studying? You are studying. Uh, Actually, yeah, I'm just in a study phase as well and trying to proceed for master's degree. So, master's in either cybersecurity or artificial intelligence. Nowadays, I'm doing freelance kind of stuff. Like I just grab the projects from US client and do it myself in comfort of my home. That's what I'm doing. You you uh, you have contacted Rehan Allahwala. Yes, I follow Rehan Lawala. Yes, I follow him. did you meet What him? He's living in your city. Rian I Allahwala is living in your city. Yeah, I met him in person in Pearl Continental. You must know the like it's five-star hotel at Karachi. So at Pearl Continental there was an event. So like freelance fest. So I just met him there. Okay, today also what is Rehan Bhai and one of the freelancer has the event. Freelancer, guy came to Karachi, and he did the deliver some speeches over there. Did you join today's freelancer speech, Fatima? Uh, yes. Oh, okay, nice, nice. He's supposed to join soon as the speaker. Let's say right now he's taking dinner with Rihanna Lawala. Otherwise, he'll be joining soon. So the freelancer guy, the one who delivered the speech today, he's be joining today with us too at the same conference right now. That's perfect. Sounds awesome. Yeah, Swamiji, you were saying something. Swamiji, go ahead, please. we have proud such a Rais Fatima. Uh, we are praying to our lovely Allahs that you will obtain your all targets, all goals in your life. We are specially praying to Allah for your happy life, for your progressive life, and you will achieve your goals in your life. And you, like you people, are necessary for unification, making unification of India and Pakistan, so that we are we are congratulate to you, your brave voice. You come today on this platform. You always welcome such platform, and you must give your thoughts freely without any hesitation and any fear. We are Yes, brothers for you. We will give you many contacts from Pakistan. Very big peoples are working with us in from Pakistan, so that you have to come such platform and give your thoughts freely without fear. Rais Fatima, Allah bless you. Allah Hafiz, Khuda Hafiz.
थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी बिटिया को पाकिस्तान से, कराची से, उनको ब्लेसिंग देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो अपने नाना और नानी की बातें की कि वो भी कराची में यू नो वहाँ पे रहे थे और काम भी किया था। और तो ये भी मेरे को आज भी नया चैप्टर जानने को मिला। एंड जनरली वरना स्वामी जी नो अपनी वो संसार त्यागने के पहले की बात जनरल नहीं करते हैं, मगर अप्रिशिएट दैट कि भाई आप ना भाव में आगे और शेयर भी किया, दैट मीन्स लॉट अप्रिशिएट दैट। एंड एक छोटी सी बिटिया के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज मिला कि भाई स्वामी जी के ब्लेसिंग्स मिले। एंड या तो वही स्वामी जी नो आज के जमाने के छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पास इतना जो बैगेज नहीं है जो हमारी जनरेशन से और आपकी जनरेशन से जो मिला अबाउट इंडिया पाकिस्तान, यू नो वो 1947 का बैग है। सो आज के जो बच्चे होते हैं इंडिया से और पाकिस्तान से, वो बहुत फॉरवर्ड होते हैं ना, बिकॉज इतना वो बैगेज लेके नहीं पैदा हुए हैं। इतनी स्टोरी भी वो 21st सेंचुरी के ज़माने की है, तो माना यू नो सेल फोन से सब माना वो क्लियर कर देते हैं कि भाई रियलिटी क्या थी यू नो। अब होना सा जो हो गया, ठीक है ना, 1947 का। अब वही माना पुराने गले मुर्दे निकालेंगे तो सिवा दुर्गंध कुछ नहीं मिलेगा। तो हाँ जी, We all, we all people of the Pakistan and we all people of the India and Bangladesh and surrounding it, the neighboring countries must remember that our parents, our parents have done some mistakes, but we must love each other. We must come together on platform of love, and we must use social medias. We come and participate in such events and share our thoughts because we are all lovely souls of one creator. We forget our mistakes of our parents, but we can love, we can come together, we can regard each other, we can understand each other. We must understand each other and all feelings of all people of surrounding neighboring countries. So we are one members of one global families. We all are lovely members of one global families, and our creator is one. We are calling that one creator in different names as per our faiths, but creator is only one. It was not three, four, five. It was not 3, 4, 5. It was not now 3, 4, 5s, and it will never 3, 4, 5s. Creator is only one. Creator is only one, and we are calling our lovely creator in different names as per our faith. We must understand that basic knowledge. Welcome again, Rais Fatima. ये स्वामी जी, रईस फातिमा का एक सपना है कि एक बड़ी सी यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है, तो उसके लिए कुछ ब्लेसिंग्स दे प्लीज। यू नो बड़ी सी कंपनी बनानी है, उसको यूनिकॉर्न इसका कंपनी। इसका सपना क्या है, जरा फिर से बताइए। हाँ, रईस फातिमा का सपना है कि एक बड़ी सी कंपनी बनानी है तो हाँ, उसके लिए आप ब्लेसिंग जरूर दे सकते हैं, यू नो। आप बड़ी सी कंपनी टेल मोर बनाकर अबाउट योर यूनिकॉर्न कंपनी का सपना क्या है अपना, यू नो, प्लीज एक्सप्लेन टू स्वामी जी, रईस। एक्चुअली मेरा एक छोटा सा सपना यह है कि मुझे एक बड़ी सी कंपनी बनानी है, यूनिकॉर्न कंपनी, वो भी 5 से 10 साल के अंदर अंदर। तो एक ये है कि यूनिकॉर्न कंपनी हमारे पास नहीं है। इंडिया में है मेरे ख्याल से यूनिकॉर्न्स, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, और मैं पहली यूनिकॉर्न कंपनी पाकिस्तान में लेके आना चाहती हूँ। और वैसे भी इससे ये होगा कि एक जो है ना हमारे पास वो भी हो जाएगा, लाइक फॉर एग्जांपल देयर वुड बी 100 ऑफ जॉब्स
जो कि आ जाएंगी। और दूसरे ये कि एक नारी शक्ति भी एक्सपोज्ड होगी। हमारे पास ये ट्रेजेडी है कि खवातीन को जो है ना, मतलब मीन्स के वो किया जाता है, अंडर एस्टिमेट किया जाता है, लाइक दे आर जस्ट फॉर कुक फूड एंड वॉश डर्टी क्लॉथ्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमें ख़त्म करना है। ठीक है, घर वालों की सेवा करना, अपने परिवार को जोड़ के रखना, ये अच्छी बात है, बट किसी को एक आइडेंटिटी को, एक मीन्स के एक जेंडर को स्लेव समझ लेना, ये तो बहुत बुरी बात है। हमारे क्रिएटर ने तो हमें आज़ाद पैदा किया है, तो कोई भी गुलाम बनाने वाला कौन होता है? Congratulations for your brave voice and brave thoughts. Rais Fatima, I am giving you a great promise, my respected sister. You are selected souls by our lovely Allah. Your all wishes and your thoughts, your goals will be completed by the blessings of our lovely Allah. And we 15 crores lovely people, noble peoples are working in all countries of the world, and from all religions and all dignitaries, all types of peoples. 15 crores peoples are working together to transforming this world as a noble world, as a happy world, as a like a Jannat. So Inshallah. you are not a small girl, Rais Fatima. You are not a single and small girl in Pakistan, Karachi, but you are a great member of 15 crores widely family. Now you are entering in our God's lovely family, Allah's lovely family. You are not now single. We 15 crores noble peoples are ready to helping you I'm to feeling so much blessed. to forming your company. You must get help and guidance from Rehan Allahwala, because he is also working in this line, and we will help you when you want to go in abroad, any countries. We will help you at each and every level. Don't worry, because we believe that male and females are equal. Allah's, or our lovely Allah's, has not make any difference. So you welcome here, and through yourself, legs and legs, youth girls, women powers will be get empowering from Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, like our neighboring country Afghanistan and India too. You will be a role model for empowering women, empowering. You will be a role model. We will support you each and every stage. Thousands and thousands people are working with me from Pakistan. Very big dignitaries are working with me. Many people are working from Karachi too. I will give you reference. You have to share your WhatsApp number through Praveen Patel ji, and you can write down my WhatsApp number now, and you can contact me. I will give you the many reference. Great people from Pakistan. They will help you. Their missus, their wife will help you. Swamiji, as you are speaking, and as you are giving this beautiful opportunity to our sister Rahin Fatima ji, Rais Fatima, you can write down my WhatsApp number now, if possible. You can connect with me through WhatsApp, so that I can send you many reference and good contacts in Karachi and in Pakistan and many countries. Your all dreams and all
goals will be completed by the blessings of Allah and help and our services to you. Allah Yes, bless. Swamiji, I created the Khuda group Hafiz. between you, uh, Hello. Fatima ji and me, and also I send your WhatsApp number to in Hello. that group. ठीक है Good, स्वामी जी, good, that's good, all. good, I good. really appreciate your thoughts, Swamiji. Thank you so much for being there. You are our Stay respected blessed. sister. We need your helps because like you peoples are very, very necessary from both sides, from India and from Pakistan. So we appreciate your brave thoughts and you always welcome. We are with you. We 15 crores peoples are with you and thousands great dignitaries from Pakistan are now with you. You are not alone. You must not fear from anybody. Thank you so Express much your for all views the with blessings lovefully and all the way. supports. And we must care. Don't hurt anybody. Our way of thoughts, our way of expression must be politely and respectfully. We must care, respect for others. In social media, we have to must care about that matter so that you will be a great soul in Pakistan and you will be a great soul for all countries of the world. One day you will reach the top at where you want to reach. We will help you. Thank you. Thank you. आपने सोचा था ऐसी बड़ी सी मेहरबानी होगी अल्लाह की ओर से ना स्वामी जी थ्रू फातिमा नहीं वाकई नहीं सोचा था and definitely I really do appreciate your thoughts and like supportive scenario. So okay, इंसान को एक जैसे mindset के लोग मिलते हैं और एक जैसे supportive, so it's not like it's really more than a blessing. So and I am the one who got the blessings. yes, you are the one who got the blessings. Yes. सो और क्या सपने हैं आपके? एक तो यूनिकॉर्न कंपनी बड़ी सी बनानी है, पाकिस्तान की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनानी है, और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाना है, पाकिस्तान को, इंडिया को, और क्या थॉट्स है आपके? या ये भी मेरा एक ड्रीम है, पाकिस्तान और इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड है तो क्यों नहीं बन ना, मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चा है तो वो फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा, ये तो बहुत ज्यादा ट्रेजेडी वाली बात हो जाती है, तो उसको तो करना ही है ना, मतलब आगे प्रोसीड, और हमारे पास भी वो हर चीज होनी चाहिए जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के पास है, लाइक PayPal, Amazon, freedom of speech, freedom to go out, एक like पुरसुकून atmosphere, there was no fear of anything, so justice, no racism, ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, and इंशाल्लाह होंगी definitely, and soon होंगी. As per Allah's order, Rais Fatima, Allah is giving you His special name, and as per Islamic thoughts and Islamic system, you are now blessed by Allah. You will be Kalbe Jikri. We must do the Taskiya Nafs, Saraye Sadar. कल्ब को बेदार करना ये इस्लाम में बताया है. नफ्स को पाक साफ करना ये कुरान में बताया है. तो अभी अल्लाह का स्पेशल नाम आपके दिल में, हार्ट में डालना चाहते हैं. आपको मेरे साथ 5 बार यहाँ हाथ रख के, हार्ट पर हाथ रख के, ये राइट हैंड यहाँ रख के
5 बार मेरे साथ अल्लाहू ऐसा बोलना है। अल्लाह का जिक्र आपको मिल रहा है। Okay. अल्लाह राजी हो गया है, तुम्हारे दिल में खुद आना चाहते हैं और आपके सारे सपने पूरा कराना चाहते हैं और पाकिस्तान की धरती को बहुत बहुत विकसित करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं आप जैसे लोगों के जरिए से। इसलिए 5 बार मेरे साथ बोलना है। अल्लाहू Allahu. अल्लाहू Allahu. अल्लाहू Allahu. अल्लाहू Allahu. अल्लाहू। Allahu. सब काम करते करते हमको अल्लाह को याद करना है। हमारा माइंड हार्ट बीटिंग के साथ मिलाना है। हमारा माइंड हार्ट बीटिंग के साथ रखते हुए, कंसंट्रेट वहां करते हुए हमको बड़े प्यार से अल्लाह को याद करना है। सब काम करते करते हम कर सकते हैं। जब बीच में सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग जब टाइम मिले तब बड़े प्यार से अल्लाह को याद करना है। तो हमारा माइंड हार्ट बीटिंग के साथ रखेंगे तो डिवाइन एनर्जी नूर उत्पन्न होगा। ये नूर ब्लड के साथ पूरे शरीर में फैल जाएगा। फिर बेली बटन यहाँ नब्स बिठा है वो पाक साफ हो जाएगा। सराया सदर होके होते हमारा नूर ऊपर उठेगा। यहाँ अन्ना बिठाया है। जब नूर यहाँ पहुंचेगा तब हम अल्लाह का दीदार करने लायक बन जाएंगे और अल्लाह आपको मदद करते रहेंगे, आपके सारे सपने पूरे करेंगे। इसीलिए आज आपको कल्बे जिक्री बनाया है। अल्लाह ने खुद ने राजी होके वो खुद ने किया है। मैं तो उसका अल्लाह का दोस्त हूँ। मैं ये सेवा करता हूँ फ्री में। आपको मेरा मुरीद बनना नहीं था, चंदा नजराना नहीं देना है। ये अल्लाह की दौलत लुटाने का हुक्म हो गया था। इसलिए आज आप कल्बे जिक्री बन गए और अल्लाह का जिक्र आपको करते रहना है। बड़े प्यार से अल्लाह को याद करते रहना है। तुम्हारे सारे सपना, सारा गोल, जो भी मन में इच्छा होगी सब पूरा अल्लाह ताला कराएगा। ऐसा अल्लाह का आशीर्वाद आपको आज मिल गया। Thank you. रईस फातिमा, मैं स्वामी जी से 5-6 साल से जानता हूँ थ्रू फेसबुक। फाइनली मेरे को लास्ट ईयर स्वामी जी ने ब्लेसिंग्स दिया था, ठीक है। और आप तो देखो पहले दफा स्वामी से मिले हो, और देखो स्वामी जी ने थ्रू बाय अल्लाह ब्लेस कर दिया। आफ्टर वन रियली अब आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है एक्सेप्ट अल्लाह, ठीक है ना। और बस स्वामी जी ने जो दिया वो आदेश आपको थ्रू अल्लाह की भाई अल्लाह हो, अपने दिल में अल्लाह को बिठा दिया है। अब जितनी दफ़ा आप वो फ्रिक्वेंटली अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह का चैंटिंग करोगे, डेफिनेटली जो आपके सपने, स्वामी जी ने कहा कि भाई अल्लाह का मैसेज है कि आपका सब सपने पूरे होंगे, इंक्लूडिंग आपका यूनिकॉर्न कंपनी फर्स्ट पाकिस्तान की बनानी है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनाना है, इंडिया पाकिस्तान को सभी। हाउ डू यू फील? Awesome. I'm feeling incredible and I'm so much thankful and grateful to you and Swamiji who just blessed me and motivates me a lot and try to just make me to path in my expected my own religious way. So in fact I really appreciate आपने हम मतलब मेरे रिलीजन को भी इतना डेप्थ में पढ़ा हुआ है। I really do appreciate that स्वामी जी। आप वाकई बहुत अच्छी एक इनक्रेडिबल सोल है। स्वामी जी को दुनिया मदर ऑफ द वर्ल्ड कहती है। जैसे मदर होती है ना हमारी मदर, राइट। हमको क्या सब जानती है कि बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, हस्बैंड को क्या चाहिए। तो ऐसे स्वामी जी मदर ऑफ द वर्ल्ड है। वो अल्लाह ताला ने ये टाइटल दिया है। स्वामी जी अपने टाइटल खुद लेकर नहीं आए हैं। और स्वामी जी ऑलवेज कहते हैं हम आपके पेरेंट्स से आपको चिंता नहीं करना है। अल्लाह ताला ने हमको सब कुछ दिया है। हिडन खजाना, हिडन ट्रेजर खजाना जो है ना, अल्लाह का जो छुपा हुआ खजाना है, उसकी चाबियां, गेट की कुंजियां हमको मिल चुकी है। आप चिंता नहीं करो। हम पाकिस्तान की कंपनी इंशाल्लाह
आने वाले समय में पाकिस्तान की जो सारी समस्याओं को हल करने के लिए अल्लाह ताला ने शक्ति हमारे जैसे लोगों को दे दी है, और पाकिस्तान हमारा भाई है, और हम उसको अमेरिका के पास, चाइना के पास मजबूर होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा भाई है। और अल्लाह ताला ने जो उसका हिडन खजाना है, गुप्त खजाना, उसकी गेम की कुंजिया, गेमी खजाना की कुंजिया, चाबियां हमको दे दी है। हम जब चाहेंगे तब पाकिस्तान की सारी समस्या हल कर देंगे। और हमारा भाई है, इसलिए कोई उपकार के लिए नहीं, हमारे भाई को हमारे गले लगाना है। ये ड्यूटी अल्लाह ताला ने हमको दिया है। आने वाले समय में गेमी खजाने से पाकिस्तान की तिजोरी भर देंगे हम। समस्याओं को हल कर ये देंगे। बहुत पाकिस्तान की तिजोरी भर देंगे ये गेबी खजाने से, गेबी हिडन ट्रेजर से। और आप जैसे युवकों को जहां पहुंचना है पूरी दुनिया में फैला देंगे। और जब सारी दुनिया को जो जन्नत बनाने का काम चल रहा है, उसमें आप जैसे युवकों की जरूरत है, तो वो भी आपका सपना पूरा करा देंगे। हम आपके पेरेंट्स बन के काम करेंगे। अल्लाह ताला ने हमको आज से आपका पेरेंट्स बना दिया है। definitely and literally much appreciated. हाँ जी, So आपने can we सोचा be नहीं होगा। connected on Facebook? हाँ जी, Sorry, आपने Parveen. सोचा ही नहीं होगा कि आपको इतने सारे अल्लाह ताला स्वामी जी के थ्रू इतने ब्लेसिंग देने वाले। आपने सोचा था कि मेरी वो स्पीच होगी, मैं स्पीच दे के वहीं सोने चली जाऊंगी। अब तो आपको रातों की नींद अब तो उड़ गई है। फातिमा, नींद उड़ानी पड़ती है जब हमें अपने ड्रीम्स बिग रखे हुए हों सही और बात उसको अचीव है, करना हो। सही तो बात है, सही बात जो है। है ये ना, खैर मैं कुछ टाइम से तो 8 आवर्स सो रही हूँ। थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, वो हमने स्केड्यूल बनाया हुआ है, लेकिन अब मैं फिर से अपने सेम उसी रूटीन पे जाके जो है चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करूंगी। नींद तो 4 घंटे में भी पूरी हो जाती है। इंशाल्लाह। हाँ जी, और कोई सवाल है आपके स्वामी जी के लिए रईस फातिमा? एक बच्ची का जी घबरा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस फॉर स्वामी जी? सॉरी प्रवीण, आपको कोई सवाल और सवाल है स्वामी स्वामी जी? कैन वी कनेक्टेड ऑन फेसबुक? हाँ, फेसबुक पे मैंने ग्रुप बना दिया है स्वामी जी का, आपका और मेरा, फेसबुक मैसेंजर पे। मैंने स्वामी जी का व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दिया है उस ग्रुप में। सो फील फ्री, स्वामी जी के जितने भी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं फील फ्री, ठीक है ना? ओके परफेक्ट, मैं कांटेक्ट कर लूंगी और व्हाट्सएप पे भी नंबर मैं सेव कर लूंगी। एंड थैंक यू सो मच परवीन, एंड थैंक यू सो मच स्वामी जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Stay blessed both of you. हाँ जी, बस आप जैसे हो वैसे ही रहो मरते दम तक। और जैसे बड़े बड़े सपने देखती हो, ऐसे बड़े बड़े सपने मरते दम तक रखो। आपके कांटेक्ट में रईस फातिमा जी, आपके कांटेक्ट में जितनी भी यूथ गर्ल्स है, जितनी भी यूथ महिलाएं हैं, बड़ी उम्र वाली महिलाएं हैं, जो अपनी कैरियर को बिल्डअप करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, आगे अपना सपना पूरा करना चाहती है, वो सबको एक के बाद एक मेरा नंबर देते चलो। अल्लाह का जिक्र भी देते चलो। आप सबको, सबके दिल में अल्लाह का नाम डालते चलो। जैसे मैंने आपको दिया ना, वैसे अल्लाह ताला आपको पावर दे रहे, ऑथोरिटी दे रहे, क्योंकि आप में लायकात अल्लाह ने देख लिया। तो अल्लाह ताला आपको ये जिक्र, अल्लाह का नाम, इसमें अल्लाह का नाम सब महिलाओं के, यूथ गर्ल्स के, आपके कॉलेज में जहां आप काम करती हो, आप जहां पढ़ती हो, जो जो कुछ करती हो, आपके साथ जितनी भी यूथ गर्ल्स आती है, वो सबको अल्लाह का जिक्र भी देना है और उसका कैरियर बिल्टअप हो जाए। इसलिए हम सबको मदद करेंगे, सबको मदद करेंगे, किसी को भी सपना उसका अधूरा नहीं रहने देंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। चाहे लाखों यूथ महिलाएं क्यों पाकिस्तान से खड़ी ना हो जाए,
ये हिडन खजाना से और हमारा 15 करोड़ लोगों का जो संगठन बना है, 15 करोड़ लोगों का जो हमारा गॉड्स लवली फैमिली, अल्लाह's लवली फैमिली बना है, इसकी शक्ति से, इसकी स्ट्रेंथ से आपको वचन देते हैं कि आप हजारों हजारों ऐसी बहनें तैयार हो जाओ। आपको बहुत जरूरत है, आपके सारे सपने हम पूरा कराएंगे। जहां जहां पढ़ाई करनी है, कोई किसी को तकलीफ हो रही है, इसके माँ बाप नहीं पढ़ने देते हैं, कोई भी प्रकार की तकलीफ है, हम पाकिस्तान के हमारे रिश्तेदारों के जरिए से ये सोल्व करेंगे। कोई कठिनाइयां नहीं आने देंगे। मॉनेटरी फीस की से लेके कोई सोशली कोई प्रेशर करता है, कोई भी ऐसी तकलीफ खड़ी करता है, कोई परेशानी खड़ी करता है, तो हमारे पाकिस्तान के हर एक शहर में, हर एक मोहल्ले में अपने बंदे हैं। हजारों हजारों पाकिस्तानी हमको प्यार करते हैं और हमारी बात मानते हैं, और वो सबको आपकी सेवा में लगाएंगे। तो लाखों युवक बहनों को तैयार करो, ये भी साथ साथ काम करो। आपको आपको कंपनी बनाने का सपना है, वो उसको मैं नाराज नहीं करता हूँ, लेकिन आप इस काम में लग जाओ कि युवक महिलाओं को उत्साहित करो, हिम्मत दो, उसमें से डर निकालो। जैसे आप में से डर निकल गया है, किसी की दबाव में नहीं आती हो, आप अपने विचार रखती हो। आपने कहा कि भाई पुरुषों को जितना अधिकार है उतना ही महिलाओं को अधिकार है। तो ऐसी सैकड़ों पाकिस्तान में बहनों को, गर्ल्स को, मेरी रिस्पेक्टेड सिस्टरों को तैयार करो, सबको अल्लाह का जिक्र दो और सबको मेरे साथ, प्रवीण भाई के साथ जोड़ो। हम सब प्रकार की मदद करने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए, और पाकिस्तान को इसके जरिए से सुकून शांति वाला बनाना है। क्योंकि एक महिला, एक सिस्टर, एक बहन 100 पुरुषों को भी तैयार कर सकती है, एक पुरुष 100 महिलाओं को तैयार नहीं कर सकता। तो इसमें आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा। आप काम चालू करो, अल्लाह का जिक्र सबको दो। आप आपकी सहेलियों को, क्लासमेट वाले जो कॉलेज में पढ़ती है, सराउंडिंग आपको मिलती है, वैसी महिलाओं को मेरे साथ, प्रवीण भाई के साथ जोड़ो, अल्लाह का जिक्र दो, और उसके सारे सपने हम पूरा कराने का वचन देते हैं, प्रॉमिस देते हैं, अल्लाह की बारगाह से, अल्लाह की शक्ति से, और अल्लाह के हिडन ट्रेजर खजाने से, बेबी खजाने से ये प्रॉमिस करते हैं कि सब कुछ होता चलेगा। खुश रहो, आनंद में रहो, आपके सारे सपना हम पूरा कराएंगे। ठीक है? बिल्कुल स्वामी जी। और मैं डेफिनेटली सबके माइंड को इस तरह से ट्रेन करूंगी अपने इर्द गिर्द कि वो किसी से डरे नहीं, अपने जो है खुद के विचार रख सकें और उन विचार को सही भी साबित कर सकें, क्योंकि हमारे विचार इतने गलत होते नहीं हैं जितने हमारे सोशल प्रेशर जो है हमें प्रेशराइज कर देता है। तो लेकिन सोशल प्रेशर से प्रेशराइज होने का टाइम चला गया, वो तो सेंचुरीज पहले की बात थी। बट इट्स टाइम टू रोर, इट्स टाइम टू लाउट अप। अगर हम अभी मीन्स के 50% से ज़्यादा आबादी किसकी है? महिलाओं की। और वो 50% अगर घर में रह जाएंगे तो हमारा कंट्री, हमारा सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इंडिया का जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड बनने का सपना ना एक सपना ही रह जाएगा। सो मुझे आपके थॉट्स बहुत अच्छे लगे। आप बहुत ओपन माइंड और बहुत अच्छी ब्रॉड माइंडेडनेस रखते हैं। आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब किसी भी प्रकार के कोई रिलीजियस इंसान से हम एक्सपेक्ट नॉर्मली नहीं करते कि वो इतना ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होता है, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट। और आपने बिल्कुल मेरा वे ऑफ थिंकिंग बिल्कुल चेंज कर दिया, लाइक, एंड डेफिनेटली स्वामी जी मच अप्रिशिएटेड। और आपने इतना सपोर्ट दिया, लाइक उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स टू यू। और डेफिनेटली, और एक जो है मेरा सपना है ना, फॉर एग्जांपल यूनिकॉर्न कंपनी का, वो एक का है। अगर 3-4 महिलाएं खुद जो है इस चीज़ को, इस डिज़ायर को एडमिट कर लें कि हम दुनिया में जो चाहें कर सकते हैं, तो वो एक से कितने हो जाएंगे? हमारे पास यूनिकॉर्न कंपनीज 4 हो जाएंगी। तो ये तो हमारे लिए और अच्छी बात हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाएंगी। इंशाल्लाह मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा वर्क करूँगी और आपसे कनेक्ट करवाऊंगी। और डेफिनेटली आपने तो प्रॉमिस किया है हम लोगों को ग्रो करने का,
So definitely अल्लाह ताला का फजल और आप लोगों का सपोर्ट, इंशाल्लाह पेरेंट्स की दुआएं, इंशाल्लाह we will achieve whatever we want. और अल्लाह का कल्ब जिक्री वो भी स्वामी जी ने आज आपको आज तो रईस फातिमा को 15 करोड़ का बड़ा फैमिली मिल गया गिफ्ट में। Thank you so much. Much डॉक्टर excited. डॉक्टर प्रवीण भाई पटेल जी ने आज ये इवेंट रखा, ये प्रोग्राम रखा, तो कहीं आत्माओं का उद्धार होने जा रहा है, कहीं आत्माओं का उद्धार होगा, कहीं मनुष्यों का उद्धार होगा, रास्ता मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, जरिया बनेगा। और रईस फातिमा बहन को आज 15 करोड़ नोबल पर्सन का फैमिली मिल गया, इतने लोगों का कंपनी में, उसकी कंपनी में मेंबर्स बन गए। Thank you so much. हाँ जी, तो स्वामी जी ने जो शेयर किया आपसे बाय गॉड्स ग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह, वो आप फिर से सुनेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, क्या क्या ऊपर वाला आपको करवाना चाहता है, बिकॉज इट्स टू मच इज लाइक थोड़े से टाइम में इतना सारा अल्लाह ताला ने आपको दे दिया बाय स्वामी जी ग्रेस एंड स्वामी जी ब्लेसिंग्स। सो फिर से इस रिकॉर्डिंग को आप देखना, एक एक बात को सुनना, दिल में ले जाना, क्या क्या आदेश अल्लाह ताला आपसे करवाना चाहता है, क्या क्या आपकी जो ख्वाहिश है कैसे कैसे पूरी करवाना चाहता है। और स्वामी जी ने जो दिए है बाहेदरी की भी 15 करोड़ लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, तो जुड़ चुकी है माना हाँ जी। Thank you so much, Parveen. ओके जी। You're a true brother, in fact. शुक्रिया। आप खुश रहे, आबाद रहे, हंसती रहे और मुस्कुराती रहे। और दुनिया पाकिस्तान की जो बहनों के लिए जो स्वामी जी ने आदेश दिया है, जिक्र अल्लाह का जिक्र देना है, वो भी करना है, यूनिकॉर्न कंपनी भी बनानी है, एक नहीं 4-5, जैसे आपने कहा कि आप जैसे 4-5 बहनें आपकी वो लाइक माइंडेड हो जाएगी, तो वो भी कहेगी भाई फातिमा कर सकती है, सपना देख सकती है, तो हम भी क्यों नहीं देख सकते हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है। और सभी अगेन कोई ऐसा नाम नहीं कह रहे हैं, इस एक भाई 2 कंट्री थे और तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी मम्मी जो आई है ना, मम्मी को भी बताना कि आज हमारे फैमिली को इतना बड़ा फायदा मिल गया। मम्मी को पहले जिक्र देना, पापा को, फादर मदर पेरेंट्स को अल्लाह का जिक्र देना। उसको बोलना आज गिफ्ट में पूरी दुनिया के सब देशों में 15 करोड़। आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर अस फातिमा? You are hearing my voice? लोगों का सपोर्ट मिला है गिफ्ट में, कोई बाकी? Yeah, I'm hearing. अच्छा, ओके स्वामी जी की कंटिन्यू। टुडे आज आपकी मम्मी को, पिताजी को, पेरेंट्स को, घर में वालिद साहब को और वालिदैन को कहना है कि अल्लाह का बहुत शुक्र हो गया, आज 15 करोड़ का नोबल पर्सन का पूरे वर्ल्ड में से हमारा फैमिली मेंबर बन गए। हम वो फैमिली के मेंबर बन गए जो फैमिली पूरी दुनिया में फैली हुई है, और सब देशों में सब धर्म के लोग हैं, बड़ी बड़ी डिग्निटरीज है, उसमें बिल गेट्स है, फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है, अभी जो बाइडेन है, मोदी जी है, हमारे रिलायंस का मुकेश अंबानी है, ये बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, गूगल का मालिक है, ये सब इसमें काम में लग गए हैं। इतनी बड़ी फैमिली आज आपको मिली है, ये सब पेरेंट्स को बताना, ताकि माता पिता राजी होवे और आपको इस काम में रुकावट न डाले। उसको अल्लाह का जिक्र देना है, उसको बोलना कि अल्लाह ने मुझे आदेश कर दिया, मुझे लायक माना, मैं अल्लाह की लवली फातिमा हूँ। वैसे भी हमारे जो लास्ट प्रोफेट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी का नाम भी फातिमा था, तो मैं भी वो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी लवली डॉटर्स हूँ और अल्लाह की भी लवली डॉटर्स हूँ। तो आज हमको अल्लाह ने नवाज दिया है और हमारे सारे परिवार रिलेटिव्स को भी नवाजने का मुझे पावर भी दे दिया है, ऐसा बोलना है। ठीक है? अल्लाह ब्लेस,
टेक केयर, बहुत खुदा बहुत हाफिज, शुक्रिया, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ जी, कर्ट कर्ट क्रूगर सपोज टू ज्वाइन। देखते हैं, मैंने उनको, लेट मी कॉल हिम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने जो फातिमा जी को ब्लेस कर दिया। हेलो कट, हाउ आर यू ब्रदर? यस यस यस, स्वामी जी एंड माई सेल्फ आर वेटिंग फॉर यू ब्रदर। It's supposed to come at 2, but you can come early if you want to join. You know, you like 11 o'clock is supposed to join, but if you want to join early, feel free, you know, so you have more time to share your views. Yeah. Okay, okay, brother. Yeah, fix it, and then whenever you free, you know, feel free early. That's okay. Okay, take care. Bye, Kurt. Okay, Swami. So Kurt will be joining soon. Yeah, he's supposed to come half an hour after, but so he'll be joining a little bit early. So we have some time. Swami ji, if you would love to share, you know, आपके पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, तो जो भी आपका दिल का है, feel free to share. हाँ स्वामी जी, सुना आपने? नहीं, मैंने फिर से अच्छा, बोलिए जरा क्या। हाँ जी, फिर से मैंने कहा बोलिए क्या, स्वामी जी कट फिर से बोलिए। आधे घंटे के बाद ज्वाइन करने वाले हैं, तो जब भी वो जो कट आए तब तक आप मना शेयर कर सकते हैं जो भी आपके दिल की ख्वाहिश जो है, जो भी और कुछ शेयर नहीं, करना चाहते हैं। कौन ज्वाइन कर सकते हैं? ओके, उमेर आ गया, चलो उमेर को लाते हैं। चलो भाई स्वामी, हाँ उसको तो आप अच्छी तरह जानते ही हो, ये हमारे उमेर भाई जान है ऑलरेडी फ्रॉम दिल पाकिस्तान। तो रात के 10:30 बजे होंगे वहाँ पे पाकिस्तान में, या 10:30। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग उमेर भाईजान, और स्वामी जी को भी आप अच्छी तरह जानते ही है, सवाल ही नहीं। स्वामी जी हमारे उमेर जी हैं, ये रियान, रियान बहुत, और हमारे जो राजा साहब है उनकी जो पार्टी है, उनके पार्टी से भी वो बहुत बहुत कुछ, रेहान भाई की पार्टी से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है ना, उनके वो शैडो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेहान भाई की पार्टी से है। तो उमेर भाई फील फ्री, आज वो हम जश्न मना रहे हैं इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। हालांकि वो 14 अगस्त को ना पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस जो होता है, 15 अगस्त इंडिया का होता है। हमने जरा वो वीकेंड में था तो सैटरडे को रख दिया। सो फील फ्री, एंड स्टेज इज योर्स। स्वामी जी और गुरु जी दोनों को शुक्रिया कि आज आपने बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत प्यारा एक इवेंट, और ये जो महफिल आप लोगों ने सजाई हुई है बड़ी प्यारी महफिल है। मैं अभी रास्ते में था तो मैं देख रहा था आपका ये इवेंट, और बड़ी ही गुफ्तगू जो जारी थी, जो लोग भी आए मेरे से पहले, उन तमाम लोगों को भी और आप लोगों को भी मैं तहे दिल से तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया। और मैं गुरुजी और स्वामी जी आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि इस प्लेटफॉर्म पे हम आए और अपनी बात कर सकें। एज यूजुअल हमेशा से ही गुरुजी हैं और स्वामी जी हमेशा अमन की बात करते हैं, प्यार बांटते हैं, दोनों ही साहिब जो हैं। सो आज मैं ये जश्न आज़ादी का जो मौका है, 14 अगस्त को पाकिस्तान की जश्न आज़ादी है, 15 अगस्त को इंडिया की जश्न आज़ादी है। सो मेरा पैगाम हमेशा से अमन के बारे में ही है, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है मेरे पास, मैं स्पोर्ट्स भी एक अमन का ही पैगाम हम फैलाते हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए से। और मैं हमेशा से यही बात कहता हूँ कि हमें जितना हो सके अमन के ऊपर बात करनी चाहिए। फिर वो बॉर्डर, अब मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो हमने बॉर्डर्स बना रखे हैं, ये जो सरहदें बना रखी हैं, ये सरहदें जो हैं ये मेरे ख्याल में ये दिलों में जो है वो दूरियां नहीं होनी चाहिए। बाकी स्वामी जी उस पार बैठे हैं बॉर्डर के और मैं बॉर्डर के इस पार बैठा हूँ,
सिर्फ दिलों में दूरी ना हो तो फिर जो है हम बहुत करीब हैं एक दूसरे के। तो दिलों में दूरी नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर बॉर्डर्स भी हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमेशा मेरा यही पैगाम रहता है कि अब हमें अमन को फरोग देना चाहिए, अमन के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारा जो काम कर रहे हैं लोग, हमेशा बात यही होती है कि जितने हम आजकल मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हमेशा से ही बात करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए। आजकल यही दौड़ लगी हुई है ना कि हम कैसे अमीर हो जाएं, कैसे पैसा बना लें, लेकिन एक बेहतरीन इंसान कैसे बन जाए, हमें इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। और जो एक अमन का हमारा पैगाम है, जब आप एक बेहतरीन इंसान बनेंगे तो फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके ऊपर खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगी। फिर आपको दुनिया में जो जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो सरहदें हैं, फिर वो जो हम देखते हैं कि आज बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी बहुत सारे लोग जो कि सिर्फ इस मिशन पे होते हैं कि हमने सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है, हमने सियासत पे बात करनी है, और ताकि जो है हमारा वोट बैंक बना रहे। तो हम तो ये है कि हम लोगों के ऊपर काम करते हैं, हम मोहब्बतें बांटते हैं, हमें वोट से गर्ज नहीं है कि कोई हमें वोट देगा या नहीं देगा। हम तो ये जो हमने जो हाथ में झंडा उठाया है अमन का, पैगाम हम फैलाते रहेंगे आखिरी सांस तक, फिर वो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और ये जो हम दोनों तरफ देखते हैं कि ये जो बजट एलोकेट किया जाता है इस बार भी और उस बार भी, अगर यही बजट जो है वो लोगों की फलाह के ऊपर खर्च किया जाए, और बहुत सारे मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे ये जो आर्मी है उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जहाँ पर ये जो बजट है लोगों की फलाह के लिए खर्च किया जाता है। आज बहुत सारे लोग इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आज भी फुटपाथ पर सोते हैं। तो अगर ये जो हम $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है वेपन्स की, इसके ऊपर देख लें, या जो इतना सारा खर्चा किया जा रहा है वो लोगों की फलाह के लिए काम किया जाए। कि देखिए 3 चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। 47 से लेके आज तक हमारे पॉलिटिशियंस ने भी हमेशा इसी के ऊपर लोगों से वोट लिया, और ये लोगों की बेसिक नेसेसिटीज में भी शामिल है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं अगर हम लोगों के ऊपर खर्च करना शुरू कर देंगे, मैं हमेशा देख रहा होता हूँ जो लोग सेटल डाउन है वेस्टर्न कंट्रीज में, मैं कई बार गुरुजी से भी इनको कांटेक्ट करवा रहा होता हूँ। बहुत सारे भाई रिक्वेस्ट भी कर रहे होते हैं कि हम पाकिस्तान या इंडिया छोड़ना चाहते हैं या बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि वो सेटल डाउन होना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। सो वो बेसिक जो चीज़ें हैं उसके अंदर एक चीज़ मैं ये भी समझता हूँ कि आज हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारा यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड है, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो देखते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि रियासत जो है वो रियासत का काम होता है कि वो रियासत को मैं एक्सप्लेन इस तरह से करता हूँ कि रियासत का काम है माँ वाला। क्योंकि देखिए एक माँ का क्या काम है, माँ का काम है कि वो अपने बच्चों को उस तरह से पालती है, वो अपने तमाम बच्चों को उसी तरह से पालती है जिस तरह से वो तफरीक नहीं रखती कोई बच्चों के दरमियान कि ये मेरा बड़ा बच्चा है या छोटा बच्चा है, वो तमाम अपने बच्चों को प्यार देती है। तो हमारी रियासतों को भी ये चाहिए, वो चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो,
वो अपने हर शहरी को उसी तरह से सपोर्ट करे, उसी तरह से उनकी फलाह बहबूद के ऊपर काम करे जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज करती हैं, ताकि हमारे मुल्क भी जो आज हम देखते हैं कि बॉर्डर इस पार भी और उस पार भी, अंग्रेज तो चला गया 1857 के बाद, हम देखते हैं कि 47 में दोनों को आज़ादी मिली, लेकिन अंग्रेज के जाने के बाद भी आज भी हम उसी सोच को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं SOPs को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें खुद भी थोड़ा सा सोचना होगा कि हमें अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। अपने ये जो यंगस्टर्स आज बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं, तो मुझे बस यही कहना था कि हम अमन के बारे में बात करेंगे, प्यार मोहब्बत के बारे में बात करेंगे, किसी को ब्लेमिंग कल्चर जो है दोनों तरफ, वो हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें बस प्यार बांटना है। बहुत शुक्रिया गुरु जी, थैंक यू स्वामी जी। इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात कही है आपने, छोटी सी आपने जो टाइम लिया उसमें कि भाई हमें अमन फैलाना है, और यंगस्टर क्यों इंडिया पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, क्यों माना जो पूरा ब्रेन है, माना पूरी मदर की भी बात बढ़िया सी कही कि मदर के लिए तो सभी बच्चे एक ही होते हैं, माना कोई छोटा यार कोई बड़ा और कोई ऐसा वैसा नहीं होता है। एंड डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग्स आपने जो थॉट रखे, डेफिनेटली हम भी सोचेंगे, दुनिया वाले जो भी हमें अभी वो सुन रहे हैं बाद में देखेंगे, वो भी उसके बारे में सोचेंगे। एंड या स्वामी जी कुछ आप शेयर करना चाहते हैं जो उमर भाई ने शेयर किया उसके बारे में? उमर भाई, आपको लाख लाख सलाम वालेकुम। और आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। युवकों के साथ काम करते हैं। लाहौर साइड में एक बहुत सालों से अपने फिजिकल फिटनेस का योग सिखाते हैं। आपने शायद नाम उसका सुना होगा, नहीं तो मैं आपको नाम बताऊंगा आपको। लाहौर में हुए है, गार्डन में जाके फ्री ऑफ चार्ज सबको योग कराते हैं, फिजिकली फिट रखते हैं। योग शब्द सिर्फ हिंदुइज्म के सनातन धर्म से नहीं जोड़ना है। योग का मतलब है फिजिकल फिटनेस रखने के लिए एक्सरसाइज वाला व्यायाम करना, शरीर को प्रैक्टिस देना। तो ये वहां लाहौर साइड में कराते हैं, उसके साथ आपको कांटेक्ट करना है। और आप जहां है वहां उसको बुला सकते हैं। वो आपके साथ जितने युवक लोग जुड़े हुए हैं उसको भी फिजिकली फिट कैसे रह सकते हैं, बड़ी उम्र वाले भी फिजिकली फिट कैसे रह सकते हैं, वो सारा गाइडेंस दे सकते हैं। तो एक अच्छे आपकी लाइन वाला फिजिकल फिटनेस यूथ के साथ आप काम करते हैं, तो उसका मैं आपको नाम वगैरह भेजूंगा। आप फेसबुक से उसको कनेक्ट करके उसके साथ राब्ता कर लेना, ठीक है। अभी उसका नाम वगैरह सब मैं फेसबुक से बाद में कल भेज दूंगा, आपकी फेसबुक से। शायद आप मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़े हुए हैं ना उमर भाई? जी जी श्योर, आप भेज दीजिएगा, मेरे पास व्हाट्सएप भी है आपको। हाँ, तो मैं आपको कोई एक प्लेटफॉर्म पे उसका नाम, फेसबुक आईडी भेजूंगा, तो आप उसका कांटेक्ट कर लेना। और शायद लाहौर में है, रोज सुबह गार्डन में जाके जो घूमने वाले गार्डन में घूमने आते हैं, जो कुछ आते हैं, वो सबको फिजिकली फिट कैसे रहना है उसको विदाउट चार्ज फ्री सेवा करते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे के दिन उसने गार्डन में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके विविध प्रकार के व्यायाम, फिजिकल फिटनेस रहने का उसने तरीका सिखाया था। तो आजकल का नहीं, बहुत सालों से ये कर रहे हैं, बहुत साल हो गया उसको ये काम पाकिस्तान में कर रहा है। तो उसके साथ कांटेक्ट आपको कराऊंगा। अल्लाह ताला आपको स्वस्थ रखे। और आपने जो आज पैगाम दिया कि हमने प्यार का झंडा उठाया है, हमने प्यार का झंडा उठाया है, ईमान का झंडा उठाया है और इंसानियत का झंडा उठाया है। तो इस झंडे को हम बरकरार रखने के लिए
आपके साथ हम है और पाकिस्तान की ओर से आप जैसे हजारों हजारों युवकों की जरूरत है। आपको प्रवीण भाई ने अल्लाह का जिक्र दे दिया है ना, अल्लाह का इसमें जात अल्लाह का नाम आपके दिल में डाल दिया है। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ये अल्लाह को बड़े प्यार से इस नाम से याद करना है। और आपके साथ जितने भी युवक है वो सबको भी अल्लाह का जिक्र दो। अल्लाह का जिक्र देना का मतलब है सबके कल्ब में, दिल में अल्लाह का इसमें जात, अल्लाह का नाम, खुद का स्वयं जो नाम है अल्लाहू, तो ये नाम इसमें हर एक के दिल में डालने का आज अल्लाह आपको अधिकार देता है, पावर देता है, ऑथोरिटी देता है। आज से आपको, आपके साथ जितने भी युवक जुड़े हैं उसको अल्लाह का जिक्र देना है। अल्लाह का जिक्र कैसे देना है वो सिर्फ आपको बता देता हूं। सबको बोलना है कि ये इस्लाम का तरीका है, ये तो पवित्र कुरान शरीफ में बताया है, ये कोई नई बात नहीं है। 1450 साल पहले पवित्र कुरान शरीफ में बताया है कि हर एक व्यक्ति को कल्बे जिक्री बनना चाहिए, यानी कि अपने कल्ब में, ये दिल को कल्ब कहते हैं इस्लाम में, ठीक है। तो ये कल्ब में अल्लाह का नाम डाल के अल्लाह को यहाँ बुलाकर नूर उत्पन्न करने का स्पिरिचुअल टेक्निक जो है वो सीखना चाहिए। तो जब दिल धड़कता रहता है उसके साथ अल्लाह का नाम टकराएगा, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ऐसे दिल की धड़कन के साथ अल्लाह का नाम बड़े प्यार से रगड़ा लगेगा तो नूर उत्पन्न होगा, दिल में कल्ब में नूर उत्पन्न होगा, अल्लाह खुद करेगा। वो नूर जो है दिल के साथ खून जुड़ा हुआ है, रुधिराभिसरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट, हृदय के जरिए से ही सारे जिस्म में, सारे शरीर में ब्लड जाता है। तो हार्ट में, हृदय में, कल्ब में, इस्लाम में उसको कल्ब कहते हैं, ये कल्ब में अल्लाह का नाम का जिक्र का रगड़ा लगेगा तो नूर उत्पन्न होगा। वो नूर खून के साथ पूरे शरीर में फैल जाएगा और बेली बटन, नब्स, नीचे जो बेली बटन है मध्य भाग में शरीर में, वहां नब्स बैठा है, शैतान बैठा है, सबकी परीक्षा करने के लिए बिठाया है। उसको पाक साफ करने के लिए नूर, यहाँ नूर उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। ये नूर उत्पन्न करेंगे खून के साथ, नीचे नीचे भाग में जहाँ नफ्स बैठा है, शैतान कुत्ता बैठा है, वो पाक साफ पवित्र होगा अल्लाह का नूर से। ये नूर वहां पहुंचेगा तब वो पाक साफ पवित्र होगा। फिर नूर ऊपर उठेगा, ऊपर उठते 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 जब यहाँ नूर पहुंचेगा तब जाके अल्लाह का दीदार करने लायक हम बनते हैं। तो ये आपके सब साथियों को बताना है। और जिक्र देने के लिए क्या कराना है, उसका ये जो हाथ है खाने वाला, जो राइट हैंड है, वो कल्ब पर रखवा देना है और आंख बंद करवा के 5 बार बुलवाना है, अल्लाहू 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 अल्लाहू। ऐसे 5 बार आपको उसको बुलवाना है, उसके सबके दिलों में अल्लाह का नाम डालना है। ये इस्लाम का तरीका है, ये सूफीज्म में भी है और ये तो पवित्र कुरान शरीफ में बताया है, ये कोई नई बात नहीं है। हर एक मोमिनों को ये करना है। आपको आज अल्लाह अधिकार दे रहा है, पावर, ऑथोरिटी दे रहा है। कैसे? मैं अल्लाह का दोस्त हूं, अल्लाह ने मुझे दोस्त बनाया है। मैं पाकिस्तान में भी ये जिक्र देता हूं वीडियो कॉलिंग के जरिए से। भारत में कई मुसलमानों, लाखों मुसलमानों को मैंने ये जिक्र दिया है, अल्लाह का ही जिक्र दिया है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये ड्यूटी में लगाया। मैं सब धर्म वालों को अपने अपने धर्म के तरीके से जिक्र देता हूँ, नामदान देता हूँ और अपने अपने धर्म वाला नाम इसके दिल में डालने का काम अल्लाह ताला ने मुझे एक सेवक बनाया है।
तो आज आपको मेरे जरिए से अल्लाह ताला आपको अधिकार देता है, आपको आपके साथियों को अल्लाह का जिक्र देना है, उसके दिल में कल्ब में अल्लाह का नाम डालना है। फिर ये थोड़ी सी बात भी करनी है कि तस्किया नफ्स, ये नफ्स को पाक साफ करने के लिए वहां नूर पहुंचाना जरूरी है। जब दिल में नूर उत्पन्न होगा तब जाके खून के जरिए से वो पाक साफ, ये नफ्स पाक साफ होगा। इसको कहते हैं नफ्स को नफुस को पाक साफ करना, उसको इस्लाम में कहते हैं तस्कियाए नफ्स। तो ये तस्कियाए नफ्स करना हर एक मोमिनों को फर्ज में है, ये सुन्नत में है, बताया है कुरान में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उसकी सारी उम्मतियों को यही तो तरीका सिखाता था, यही तरीका दिल वाली तालीम सिखाते थे। पाकिस्तान में लाल साहब बाद कलंदर, भारत का अजमेर का ख्वाजा गरीब नवाज, दिल्ली का निजामुद्दीन औलिया, मुंबई का हाजी अली पीर और इराक का गोस्पाक, ये मौलाना रूमी, ये सब के दिल में इसमें जात अल्लाह का नाम उसके कामिल मुर्शिद ने अपनी नजर करम से डाला था। ये सब कल्बे जिक्री बने थे पहले, तब जाके इतनी बड़ी मर्तबा पर पहुंचे। तो जितने भी 1,24,000 पैगंबर आए हैं, ये सबको ये कल्बे जिक्री उसके कामिल मुर्शिद ने बनाया, फिर कल्बे जिक्री बन के नूर उत्पन्न किया, तब जाके ये मर्तबा में पहुंचे थे। तो आज पाकिस्तान की धरती से उमर भाई आज ये जवाबदारी अल्लाह ताला दे रहे हैं, आपको ये करना है। बाकी सारी जवाबदारी हमारे पर छोड़ दो, तुम्हारा जीवन निर्वाह की, तुम्हारे परिवार की सारी जवाबदारी मैं आज ले रहा हूं। स्वामी विश्वानंद, मदर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की माँ, अल्लाह ताला का हिडन खजाना, ये भी खजाना की चाबियां हमको मिल चुकी है। गेबी खजाना की, गेब की चाबियां, गेब की कुंजियां, छुपा खजाना की चाबियां अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दे दिया है। आने वाले समय में वो हिडन खजाने से पाकिस्तान की तिजोरी भरने वाले हैं हम। पाकिस्तान को अभी मजबूर नहीं होने देंगे हम। पाकिस्तान को अमेरिका के पास, चाइना के पास और कोई कंट्री के पास मजबूर क्यों होना पड़ता है? बार बार प्राइम मिनिस्टर को वहां जाके रिक्वेस्ट क्यों करनी पड़ती है? सिर्फ अभी जो अल्लाह ताला आपको जवाबदारी दे रहे वो करेंगे तो दुनिया देखेगी कि ये पाकिस्तान की तिजोरी कैसे भर गई हिडन खजाना से। ये चाबियां, गेम की कुंजियां यहाँ आ गई है। आपकी और आपके परिवार की रोटी कपड़ा मकान पूरी जिंदगी की हम जवाबदारी ले रहे हैं। ये मिशन में, ये काम में आप लग जाओ बस, साथ साथ दूसरा जो करते हैं वो करते करते ये भी करो। बाकी जब ऐसी नौबत आ जाएगी, आपके घर में पता ही नहीं चलेगा कैसे मदद पहुंच गई, किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे आपके घर में अर्थ, पैसा, धन, जो जरूरत होगी वो आ जाएगी। वो हमारा प्रॉमिस, वचन है अल्लाह की बारगाह से। ठीक है मेरे भाई? जी स्वामी जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया, एंड थैंक यू फॉर योर लव। और इतना सारा ये जो मोहब्बत है, सॉरी जी स्वामी जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत प्यार दिया, थैंक यू फॉर योर लव। और इतना सारा ये जो मोहब्बत है, सॉरी Swamiji, thank you so much कि उमर भाई के लिए, you just blessed by Allah's message, and to make other people, send the jikr, give the jikr. So now Umar bhai, this is it. Today is your first day of your new life, and I wish you all the best. And yeah, okay. And without further ado, I'm honored, I'm privileged, I'm blessed, I'm super excited to
to introduce you my celebrity from all over the world who you are watching, Swamiji as well as Umer Jamsedji. Now this is our new upcoming speaker, the award-winning speaker, all the way from United States of America. Yes. And all the way from California, beautiful around Hollywood, California area. He's been to India twice or more than 2 times. Three times. Oh, I'm sorry, 3 times. Yes. And, if you're the Bollywood skidder like me, then, he dated 2 sisters of Bollywood, 2 sisters of Bollywood, right? Yeah, Dimple Kapadia and Dimple Kapadia's sister, Simple Kapadia, rest in peace. So without further ado, one of the amazing spiritual gentlemen I've ever witnessed in my life. Help me welcome, been to Muktananda's ashrama several times. None other than Mr. Kurt Kruger. Mr. Bajaj also knows him personally. So Kurt Kruger, take it away. Swamij is here, Umar Baijan is here. And your message, you're waiting to hear from your message, brother. Namaste and assalamu alaikum. Walaikum assalam. I welcome you all with great respect and love. वॉल्यूम बढ़ाओ प्रवीण जी, उसको कट को बोलो वॉल्यूम बढ़ाओ. Hi. Speak loudly, brother, like the share, like the tiger, man. Come on, you're the tiger. Volume. सिस्टम इम्प्रूव करो. Volume बढ़ाओ, volume. Increase your volume, brother. Do you have the fully volume? Is your volume is full? My volume is full right now. Do you hear me better? I do hear you better, yes. Swamiji is fine? I think voice is loud and clear for me. Oh, yeah, okay. Awesome. Well, it looks like I get to use my outside voice. And having been a sports psychology and a trainer and coach of world record holders and all kinds of craziness like that, I do have an outside voice. I've spoken in front of thousands of people. My hardest program I ever gave was actually in India. It was for the Delhi Development Authority in New Delhi. And there were about 500 people in the open, and from about 8 to 80 years old. And I got to be able to give them some understanding that what I got to learn in India has not only changed my life, but hundreds of thousands of people's lives. Because I've been on stage, I talked at the United Nations. I've spoken at Oxford Medical School. I've got all kinds of those kind of things, but I don't have any credentials. My credential is a PhD. I play happily daily. That's my PhD. Some people have a PhD, and some people used to say they piled it higher and deeper. Because when you get a PhD, you have all these volumes of research that you've had to do, all of this academia, and it filled the brain so much. And yet I got to teach people how to empty the brain, how to open it to inspiration, how to open it to enthusiasm, how to open it to what we're here for. What we're here for. And we are a creation of Allah, of God, which means we were put here for a reason to share that love and light that we have been given by God. How do we share it? Well, my wife works with an environmental organization called Soil Sponge Collective. She's worked for 15 or 20 years with the Pachamama Alliance, which is an incredible organization. Their vision statement is to create an environmentally sustainable, spiritually fulfilling, socially just human presence on the planet. So if that doesn't cover all bases, I don't know what does.
But that organization has programs that are given freely to do exactly what they say, what their vision is. We founded the Peace Lab. The Peace Lab is what should have happened after in India and Pakistan. There was no separation at the time, but when the subcontinent was given independence from Great Britain, I shouldn't call it Great Britain, the United Kingdom, because it wasn't really great. It did so much devastation to the world, just like America is doing now. Here we are. We get to be able to make the subcontinent celebrate independence. What does that mean? It means probably what Swamiji was talking about. Depending on inside, that spirit that animates us. And as soon as that spirit leaves, the body's gone. The body no longer is useful except to feed the bugs, feed Mother Earth, so that other things can grow. Because that's the cycle of life. And the spirit is never affected by it. Our spirit, this sort of independent spirit, is like a drop in the ocean as soon as we pass on. We merge with God. We merge with that supreme consciousness. We're free. We're not encumbered by this body. Now, I had been an all-American swimmer, and I'd played water polo in college and all these things this body did. Now that I'm 94,000 years old, I don't walk as well. I can still put my wrist stretching forward with my leg straight and have my wrist go over my toes. It's called the Paschimottanasana, which is in Sanskrit means the head knee position. Oh, who's that, buddy? Hey, buddy. Namaste. Aap kaisa hai? How many years do you have? How old are you? How old are you? Are you 4 or 5? 5. You're 5. Oh. And what is your name? Namaste. Now you have to go to bed. No. It's time to sleep. You can then dream of God. So sorry, he is my nephew. What's your nephew's name? Muhammad Ahmad, and he is celebrating independence today. Oh, wow. He's with you instead of his parents. So cute. Yeah. Continue, Kurt. Please. Well, I'm sorry for the interruption. Oh, no interruption. That's perfectly fine, man. I just came on the show. Listen, the teaching that I got from Muktananda, the supreme teaching is to see God in each other. That's it. And know that God dwells within you as you, the big you, not the little ego and greedy you and only thinks about you. It's the big you. And that's the you that is the ocean. Amen. This is what we really are. When I look at this zapote tree outside my house, it reminds me of a mango. Mm-hmm. It has a different taste, but it has a similar texture as a mango. And there's nothing like there's so many great varieties of mangoes. Oh, yeah. And I
love a variety. You can find one that has the texture and the taste that you love, and you can always go get that one when you live in a place like India. I happen to live in Southern California. We don't have mangoes. The closest is a zapote. But again, God gave us the fruit bearing seeds and the seeds bearing fruit as our meat, as our food. So we can eat all this basically like a vegetarian diet. It is much better for the planet. It saves the planet more because the destruction of the rainforest is because of the dairy and cattle industry and so on. And when we are conscious that all of this is God, we've got to take care of it and nurture it. Now, some people need to have meat in their diet, especially the Eskimos. Oh, yeah, of course. But guess what? That was given to them. It's their food. They get to have whales and they get to have fish and so on. When we get into our natural diet, it is so different and so lively. It's close. Like imagine cattle eat grains to get big and fat. They eat the grains. Why would we eat secondhand food? If it's getting a cow big and strong, why don't we get big and strong? And it doesn't mean you have to have bulk. Like I'm only 6'1" and I'm about 170 pounds. I don't know what that is in metric anymore. I used to be able to do that because I lived in India a few years and here and in Sweden and so on and in other places, South Africa. But I've been so used to feet and weight and so on in the American way, of the English way, so to speak. But we're here to celebrate India's and Pakistan's independence. 75th, yeah. Yes, and what an incredible celebration can be. The big thing is, how can we celebrate best? By serving those that need it the most. Beautiful. Well said. Serving others as you would like to be served. When you pass by a beggar in the streets, if you don't give some paisa or rupees now, because paisa is not worth anything, you give rupees now, then you're at least giving to yourself something. That person has a choice. Because here in America, they say, oh, I'm not going to give to the beggars on the side of the freeway. I'm not going to give to, there's beggars in America. Yeah. There's homeless in America. Who ever thought of that? Not when I was young. Never saw it when I was young. Mm-hmm. We have plenty of water too. Now we're lucky to see water. What is happening with the world? It's what we create. God gave us the power to create good or something else. And when we are looking 7 generations ahead and we act as if what I do now is going to affect 7 generations ahead. I have a photograph I took 3 days ago in a golf course, just outside the golf course. I took it through a window, and it showed this golf course having these big sprinklers radiating. They're called Bloomberg sprinklers, and they were shooting water out over this golf course like this. And it's at noontime. The heat of the sun, the temperature outside was 97 degrees. Very little humidity. So the water going all that distance in the air so far and falling down in between was evaporating up quickly because of the temperature, was burning because it got hot and the sun was shining on the nice grass for the golf course for the elite people to use for their leisure. I'm not saying elite people are bad. I'm saying they can afford it and they have it
and they use their money that way. We would never have a poor person on the planet when we actually tithe. There would not be a poor person on the planet when everybody in the world simply gave 10% of their income. True. True. So what we have is a distribution problem and a heart problem. Mm-hmm. The reason that the subcontinent divided was because of control issues. It had nothing to do with the heart. Neighbors ended up killing neighbors. They had been neighbors just a little bit ago. Yeah. Look what happened in Uganda. Similar thing. There became a genocide. It was so sad because nobody was there to intervene, offering a heart lesson, a lesson to spread the heart. In every religion, treat others the way you would like to be treated. The golden rule. And all the people on the planet, the billions of people on the planet, are affected by less than 1% of the people. Yep. The people are the force, but they subjugate, they allow us to think that they have the power. The government has the power. They need to help us. It's their fault. We are subservient to the government. I have to go off to war because the government wants me to go off to war, to kill my relatives. To kill my relatives? And who is killed in all the wars? Over 90% of the people killed in the war are civilians. You look up the statistics. Why? Well, we have an overpopulation on the planet. No, we don't. We have plenty of people on the planet. We can feed them all. But we can't feed the greed. Mm-hmm. You can never feed the greed enough. When we stop feeding the greed, when we say we're not going to war, look at the comedy that it's called Lysistrata or Lysistrata. It's an Aristophanes comedy in ancient Greece. Here's this great playwright. He's a comedian. He also wrote other kinds of plays, but mainly he was a comedian. He wrote this play called Lysistrata. And it was all about how the women were fed up with their men going to war because they were fighting against Sparta. They were fighting against this place or that place and so on. And Lysistrata just said, we're going to stop. I'm getting all my homies together. I'm getting all these women together. You know what? We're going to stop this. And the women said, how can we stop it? She says, we're not going to have sex with our men if they go off to war. You stop doing war or we don't give you any. You can't have this. The door's closed. And guess what? No more war. See the conflict. It's interesting. There's so much that we have to learn, and yet we haven't learned it. This guy started the Peace Lab 2 years ago. It's starting to flourish. More and more people are practicing a simple meditation that has no religion behind it. It uses techniques from all the religions, like breathing practices. In India, it's called pranayama. And getting together in groups of like-minded people like satsang, getting into these small groups that are creating peace in everything with peace. So what we do right now is have an experience of peace, have an experience of unity. Pakistan, Afghanistan, India, America, everywhere.
Right now, we're leaning forward. We have our hands at our thighs if we're seated, and we have them like as if there's a tray in our hand. And as we bend forward, bend backward, breathing in, we say, peace in everything, everything with peace. In everything, everything with peace. Peace in everything, everything with peace. The movement, breathing in, peace in everything. Breathing out, everything with peace. Peace in everything. Everything with peace gives you muscle memory, because we do this as we do this for 5 or 10 minutes of peace in everything, everything with peace. It becomes the law of predominant mental impression, and your mind starts to think about peace throughout your day after you've meditated. And when you go do water aerobics, when you push the water to the side to breathing out, you are breathing out peace in everything. Everything with peace, peace in everything, everything with peace. As you stand up, you're breathing in peace in everything, everything with peace. You use the breathing to remind you of the mantra, peace in everything, everything with peace. And when we see it more, when we think about it more, we hear it more, because we're paying attention to it more. And what happens in our life? We not only experience ourselves more peace, but how do people feel around us? Peaceful. Peaceful. We feel so much more peace. And when we are peaceful, we've spread those good vibes, and more people are peaceful. Your nephew can sleep in your arms easily because you're so peaceful. And he brings peace to you and sleeping in your arms. Just like when I took care of an elephant in India. That elephant was so wise and so caring. And I got to care for it. I mean, it was a fantastic experience. Sadly, though, years later, just actually a couple of years ago, I talked to a woman who is all about elephants. And she knew a lot more than I did. She told me how elephants are trained. Oh, it's a horrible experience for the elephant. It's a horrible experience. It's like, imagine if somebody put little shoes on your little foot as you're 3 years old and never changed the shoe size. Oh, man. China. They did that with children. And my friend who lived in China, Toddy Blackstone, she's a dear soul. She was a daughter of missionaries over there. And next door was this place where they did this. And she hears these little screams, day or night, of little girls screaming because it was so beautiful. What do we do to people? What do we do to our relatives? What we get to do now is give them love. So the Peace Lab salute, the peace salute for anybody who's a peacemaker. Make this heart sign right over your eyes, like you're looking through the eyes. You've got goggles on and you're looking at the world through love. Everything is love. And what we do is then when you're ready to do the salute, you push your hands away from you and say, Zoom peace. Zoom peace. When you throw the love out to the world, love brings peace. Yeah. Love out to the world brings peace. That was designed because of when I was a little child. The very first program produced in Hollywood for national TV, it was always produced in New York before. For national TV, the very first program was Space Patrol. These people that went off into space to save the cosmos, they were called Space Patrolmen. And their salute
was Zoom. That's Oh, what they said. They said Zoom. Now, what were they zooming? They were zooming perfection. oh, And we know love. love is perfection. And we zoom peace. Wow. So this is what we can do when we do this simple peacemaker meditation. That idea came to this man here because of that peacemaking meditation practice. Because it was a psychosomatic spiritual practice of peace in everything, everything with peace. And this is a psychosomatic spiritual practice of zooming peace to the world. Again, it's expressing with our whole body what we choose to express. Because I know when I used to drive down the street, and I would drive not necessarily so slowly, and if somebody cut me off, sometimes I'd throw up a finger. And it wasn't necessarily this one. I learned to throw this finger up because I pointed to him. I said, "Bless you." I yelled out, "Bless you." I yelled it out because I was a little upset, maybe more than a little. It depends on how close. And I would say, "Bless you." Why? I read a book called The Gentle Art of Blessing. If this guy is driving to the hospital, his wife is in the backseat giving birth, and he's wanting to get to the hospital, I don't know what he's racing around for. Sure. But I do know anybody racing around needs a blessing, whether they're racing for no good reason. They need a blessing. Who doesn't need a blessing? Everybody. And in Pierre Pradervan's story, he's the guy that wrote this book, Pierre Pradervan. A friend of mine published it, and then they sold it to Simon and Schuster to further publish it. Got to be a bestseller or something. But Pierre is a great, great soul. He would walk the streets of Geneva, and he would see people sitting on the street, pretty poor, you know, they have their backpack and they're hiking through Europe or whatever. And sometimes people do beg for some, money for food or something, but it's not a big thing. But this man said blessings of light and love to the person, just mentally. He didn't say it out loud. And this one guy jumps up and knocks him out. He's spread eagle on the ground when he wakes up. He doesn't know how long he's been out. And he blesses him again. He wasn't there, of course, but he did this blessing again. Wow. And he walks on home thinking that he's going to see a big black and blue mark on his cheek or on his eye. No black and blue mark. Why? There was no anger. There was no upset. When students drop me on my head doing a trust fall off a table, supposedly into their arms, I was out. When I came to, I felt like a truck had hit me. This was at a junior high school. It was actually middle school in Van Nuys, California. When I came to, I said, "What happened?" And they said, "Well, he got up on the table. We were standing here, and when you turned around, we moved closer because you looked so far away." I had put them in a special place so 7 would catch my whole body. Because they moved closer, 4 caught my legs, and 3 had to catch the rest of my body. So naturally, I landed on my head. I ended up having an X-ray that showed my entire spine was messed up, especially right here in the cervical area. I had no feeling in my hands. When I processed it, I told them, I says, "Okay, you're the safety supervisor because you saw them do this and you didn't speak up. Yell out if they move if they're not ready, if they're out of order." And I got up there and I did it again. They caught me. They had to know that they could catch and that it would work.
and that I trusted them because it was a trust activity in 8th grade. This body still felt like a wreck. Ultimately, I went to the doctors, into the hospital, and so on. I had to have surgery ultimately later, and I don't have pain. I just don't walk so well. Well, this life has that kind of karma. But I still get to be able to smile. I still get to be able to spread the love and light, just like you do. There was a man named, well, I can't exactly remember his name offhand. He wrote a book called The 100th Monkey Effect. And he was actually paraplegic. Most people did not know that he could not walk because of what he taught and how he was so clear. They didn't show movies of him below his waist. He would be looking like he's standing talking with you, but he was actually what some people call physically challenged. I call them, what is it called? There's a friend of mine that people who are physically or mentally, say, challenged. What is his name? Ken. Yeah, Ken Case. Easy, yeah. Ken Case. Junior. Yep. He was a great soul. But where was I at? Yeah, talking about that book story about 100th Monkey Effect. Yes, the 100. Sorry to break your flow, buddy. When we get enough people to believe something, that transmits to other places. The 100th Monkey Effect describes it where monkeys are pulling out sweet potatoes near the ocean, and one of them flips it and it goes into the ocean. He runs and grabs it from the sea, but the time he grabbed it, the ocean had pretty much cleaned all the dirt off, and it had some salt on it. And when he ate it, what did it taste like? Like a mango to him. Very good, right? And so this one monkey got smart enough to do that kind of thing. And instead of flipping it, he brought it over. And when he got all the other monkeys to taste his stuff, and enough monkeys, it's called the 100th. It might have been 101 or 100, 200, whatever. But the idea is, across the sea, the monkeys started doing that. Not one monkey, but a bunch of monkeys. That learning by the morphogenic field, is Dr. Rupert Sheldrake, who's a biologist from the United Kingdom. He mentions in his book about that effect. So here we are, when we are resonators and vibrators, because we use a mantra like peace in everything, everything with peace, that feeling goes out to people. Because the Dalai Lama can walk into the room and people start turning around without knowing he's walked in. It happens all the time. The vibrations of that person is felt. Our communication is more than just the words we speak. Welcome, Raj. Assalamu alaikum, Raja Hindustani, brother Raja Pakistani. Alaikum assalam. Well, it looks like it's about my time, and I think I filled it a little bit more than expected, but I so appreciate being here with everybody. And I just want to be able to send you off with the peace salute. Zoom peace. Zoom peace. Awesome. Zoom peace. Thank you. Kurt, thank you so much, brother, for sharing your wisdom. Always when you speak, time stops. Time becomes timeless. It's like the flow of the river. Your words are like the flow of the river. Appreciate that. Love you guys. Cheers. Love you too. Thank you. And okay, let me introduce my brother all the way from Dil, Pakistan. Hello, my celebrity. I'm humbled. I'm honored. I'm privileged.
I am blessed and I'm super excited to introduce you all the way from Dil, Pakistan. Perfect timing, about half an hour early to celebrate in advance. Happy Independence Day of Pakistan. Right now, 30 minutes, to midnight to convert to August the 14th. Right now, 13th August, about 23:30 p.m. in Pakistan. And Raja Arshad Raja Pakistani is right now on the migration from one place to another, and but still showed up. So appreciate that. So Rajaji, further ado, take the stage. Swamiji is with us. This is your time for stage. So take it away. And मुझे हो तो राजा जी जैसी वरदान ना हो. Also, Rajaji is the founder of aminsan.com. ठीक है ना, आम इंसान पार्टी है पाकिस्तान की, उसके वो फाउंडर भी है, प्रेसिडेंट भी है. सो बहुत बहुत शुक्रिया राजा जी, और अपने दिल की बात शेयर कीजिए. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम. स्वामी जी कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम. बहुत आनंद में. ये कोई अल्लाह की खास कृपा है कि जब भी मैं ऑनलाइन आता हूँ आपसे मुलाकात हो जाती है. अल्लाह का प्लान है. हाँ बिल्कुल. You are the chosen one by Allah. हमको मिलवाता है ना, अल्लाह ताला मिलवाता है. ऐसे ही है बिल्कुल. तो इस तरह से है कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई प्राविन साहब एंगेजमेंट की है इन्होंने, और उसकी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ. जब से इन्होंने एंगेजमेंट की है, अब मुझे ये लाइन पे नहीं लेते कि कहीं मैं इनको मुबारकबाद ना दे दूं. नहीं, वो तो हक है मेरा, मुबारकबाद लेना आपसे मेरा हक है, मेरा राइट है, मेरा बर्थ राइट है. तो मैं तो आपने नहीं दे दी होगी तो मैं सामने से मांगूंगा यार, सवाल ही नहीं राजा जी. तो बहुत ज्यादा जो है वो जो मेरी बेगम है, आपकी भाभी जी, वो कह रही थी कि जब से प्राविन की मंगनी हुई है इनका चेहरा ज्यादा खिला खिला लग रहा है और ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं ये. मैंने कहा भाई शादी के बाद तो ऐसा ही होता है. आपका भी चेहरा खिला होगा ना, अभी भी जो खिलता वो है भाभी जी की वजह से. सो डेफिनेटली बहुत बहुत सी कामयाबी की दुआएं आप लोगों दोनों के लिए, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको एक अच्छा जीवन साथी एक दूसरे का बनाए. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. और ऐसा बना दे कि लोग मिसाल दें. इंशाल्लाह शुक्रिया. जैसे हमारे यहाँ वो फोक स्टोरीज हैं, ससी पुन्नू की, हीर रांझा की, शीरी फरहाद की, ऐसी ही कोई जोड़ी अल्लाह ताला बना दे और लोग जो है वो मिसाल दिया करें आपकी. हेलो लिन, थैंक यू वेरी मच. हाउ आर यू? हाँ जी, I send you Lynn the link to join, so feel free to join Mama Lynn. Definitely you are welcome. Most welcomed. हाँ जी, keep continue भैया. तो आज खुशी का मौका भी है और गम का मौका भी है. मुझे समझ नहीं आ रही इसे मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, क्योंकि यार ये जो इंडिपेंडेंस है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, 2 एस्पेक्ट्स. हेलो मामा लिन, हाउ आर यू? मामा लिन को भी मुबारकबाद दो, उन्होंने भी शादी की है तो उनको भी मुबारकबाद दे, वो भी कांग्रेचुलेशन बाबू ला चुके हैं. Swami. Happy 75 Pakistan. Thank you very much.
Thank you, Love thank you. you, thank you, Mama Lynn. Welcome, 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 welcome. Oh, love to you all. Love to So you all. Raja Pakistani was giving me the blessings about my engagement with Jasmine. I said, okay, Mama Lynn is here also. Miss Mama Lynn about marriage too, with scientist. Yes, yes, yes. Many congratulations for your success and for your love and for your prosperity and for everything, for your good health. Thank you so Best much. wishes. Yeah, for Pakistan, we enter into this new phase, and Pakistan and Hindu connections, and may we open to this next phase in development together over the high mountain, right? Over the high mountain. May we Yes, yes. go over the high mountain together. You Hand in hand. are you Yeah. are most welcome whenever you wanna come here in Pakistan. I will be your host. Thank And you. Thank you. already my host request is there with Pravin, and Yes, he is not coming. he is coming. He's gonna come. We're coming. Jasmine, myself, Mama Lynn. Yeah, Torch is coming. Yeah. Yes, Swami yes, Vishnu. Swamiji. Yes, we need Swamiji in Pakistan Swamiji. too. We have to go do a walk in Pakistan, Swamiji. Yes, yeah. Come on, brother. At the Wagah I have border, spent Swamiji, too Wagah long. border. Yes. By by torch, you have found your life partner. Yes. By torch, you have find out your life partner. He is so good. Mama Lynn, can your torch help me to find another partner for myself and also for Swamiji? भाभी जान को मैं बोलता हूँ राजा जी भाभी जान सुना आपने हमारा भाईजान अनदर पार्टनर फाइंड करने की बात कर रहे हैं There is dedicated है भाई अपनी पूरी मदर Swamiji told me that the torch can do this. Yes, the Swamiji is saying the torch is within you. Then you'll find your partner. Oh. You have to find the torch within first. Yes, Swami. Oh, by great. by your torchlight, and Dr. Pravin Patel. Yes, Swamiji. By my spiritual light and guidance, why you both have not searched out the love of God Himself? Why you have find out the physical partner, destroyable partner? You both have chosen the noble task and noble global goal in the world, and you now going on fix responsibility. G husband. Swamiji. You both have so done a great mistake in your life. You both have taken the great mistake in your life. Time will tell, Swamiji. You have not think. Swamiji has not got married. Swamiji has not got marriage. And you become a mother of the world. And become a mother of the world. Why you have not think about myself? And just a short thinking, who will be the helping in the old age. No. Lean Chitak has thinking, who will be served in my old age? In your searchlight, in your torchlight, you never find the God, the path of God. Let Mama Lynn speak. You are talking noble, big talking. But you have drop in dustbin.
You both have gone in dustbin. As per my opinion, you both have destroyed your life. You both have destroyed your life. As per my opinion. Please hold on. Swamiji, we can understand your grievances. You are single in this world of beauty. Once you have taken the path of great path, serving in the entire humanity. Now you both have serving your husband and serving your wife, Jasmine, and serving one husband. Oh God! You both brought in great dangerous dustbin. We can understand. You are spoiling your life. As per my opinion, your torch light is shut down. Your torch light is shut down. It was a drama. It was a drama for finding out the husband. And Dr. Praveen Patel is also doing the drama to finding out the just like a Jasmine. You both are dramatical person. You cannot get my love. You cannot get my love. You are dramatical. You are very, very great artist of drama. You, in your heart, your both heart, there was a searching. There was a searching of husband. There was a searching of wife. We both love you. We both love you. How were you born? Me and Shravan both love you. स्वामी I can guarantee. जासमीन से प्यार किया है, गुस्ताखी नहीं। I was a role model in front of you both. I was a role model in front of you. I have not got married. I am enjoying. I am giving the thoughts, guidance, answering, and solve all problems of the world. Why you have not chosen this path? Why you have not chosen this? स्वामी जी आपका एक मॉडल जो है वो तो स्लिप हो गया। कौन सा मॉडल स्लिप हो गया? आपका जो रोल मॉडल है वो you both enter in the limited circle. Enter in the limited circle. स्वामी जी, love is God, God is love, love is Allah, Allah is love, love is Jesus. Physical love is not love. My great brother, understand. Swami ji, from last month, Shravan is in love. Now one by one, I will give answer. Now, Mama Lynn, go ahead. Ball is on your hand. My feelings I have expressed in front you. All in TikTok. You was at the airport of the Karachi. You was airport at the Karachi. Why you call me? You call me your husband. Why you call me? Lynn Chittak was at the airport of Karachi. He was very troublesome situation. Why you contact myself? You must contact your husband. You clearly said me. Oh, Swami, I am searching of my husband. I am searching of my husband. This is the drama of the torch. I am searching of my husband. Mama Why you came for me? The help, Swamiji. Help, Swamiji. I am the trouble in the Karachi airport. Let Swamiji went, right? You are the love guru, Swamiji. Swamiji, you are the love guru, and world knows you are a beautiful person with a beautiful heart, a loving heart. I punish both of you. I will punish both of you. Oh God. राजा जी, स्वामी जी का गुस्सा कम कराओ यार. Let स्वामी जी come down यार before Mama Lynn speaks something. Hear my some words. My some words. Okay. If Lynn Chittak propose me, oh my Swami, I am with fear that in my old age, who is my taking care? So that I need one husband
to company in my life, then I will bring in India. I will bring in India, and your torch light will be spread in the whole entire world. And I will make provision of your old age life. I will serve you. My people will serve you, and all your old age problems will be solved without any marriage, without any fixing your life in a short circle. Now your Swami, torch, Swami, now your torch is not working for the Swami ji, entire I world. wanna ask you You mind something. well, my respected Swami sister. ji, I wanna ask you something. Let us speak. Now I want to hear Lin Chitak and then Dr. Praveen Patel. Thank you, Thank you, Swamiji. Go ahead, Mama Swamiji. Lin. Thank you, Swamiji. Thank you. I received the words. I received the words. I do. I think when we open to Swamiji's words, we see the light of the Guru, we see the light of a man, and we see the light of the love of God. The love of God has chosen you, Swamiji. Okay? When you open the light and you share your truth, this gift comes to all of us. The light within me had no search, kept coming, kept coming, kept coming. This time, for me, there is some remembrance, and it wasn't about security. There's no security anywhere. God is with us individually, and individually we walk together. I'm walking together beside a man that is really deep in love with God. And as I walk to guide myself, he guides himself. And we walk mutually together over this high mountain, just like I walk with you. Sensuality, sexuality is a bodily function of consciousness just as much, because you were born between man and woman, Swamiji. We were born between man and woman. I understand the dualities of this physicalized world. The physical world that we are in is that of duality. And you have accomplished the union. Pravin has accomplished the union. Jasmine is accomplishing the union. Raj is accomplishing. We're in a spiral of life. We are walking together in the spirality of life. As we move towards the light and we don't have this physical form anymore, who do we walk beside? Who do we walk beside? My heart is so happy. I cannot understand how life and God gave to me in this physicality just as much as me on a high mountain, one with God. But to have my brother beside me, my beautiful husband, Ian Joseph Thompson, is one of the greatest gifts I've been given. And I love because we as a couple will do great things. We are doing great things now. There is nothing hidden between us except the love of God. The love of God is not hidden unless you choose to have it hidden. I do not choose ever to have God hidden in my life. I will continue to pray to have it hidden. I will continue to pray your word, Swamiji. I will continue and come to India in your words, Swamiji. I will continue to walk beside you, Swamiji, as my beautiful brother, my beautiful soul brother. But that doesn't take away from my husband, doesn't take away from my love of Pravin, doesn't take away my love for Raj, doesn't take my love away from Torch. I am loving you in the spiritual senses of life. Peace, health, environment, and tech
These will be the purity of our next steps. And whether I'm walking beside Ian Joseph Thompson, or beside you, Swamiji, or beside Pravin, or beside Raj, I will continue on this journey with you and love you. And our new friend here, welcome. Welcome. We have to walk beside. That's all. There's a lot to do here on this planet, and everyone knows there's a lot to do. And as we bring the interior and the exterior together, our interior soul never leaves us. Our interior consciousness never leaves us, whoever you walk beside. So walk carefully and gently, and do not bring destruction in the walk. There's nothing lower or higher. There's only one God, in my estimation. And that one God loves us. And I give thanks for Pakistan's 75th beautiful, beautiful celebration today. And I give thanks to all of you. And I continue to pray with you, Swamiji, for the light of the world, for the light of the mother, for the light of the torch, that every soul feels the light. Every soul feels God, whether married or unmarried or poor or rich, everyone feels that light. And out of that purity, we can find each other. I love you, Swamiji. I love you, Pravin. I love you, Raj. You always welcome. You always welcome to get your soul enlightenment. I am giving you 100% guarantee that if you follow the real spiritual techniques in your life, then you can see God, you can meet with God, you can talk with God, and your spiritual light will find out God, lovely God, as early as possible. But you have to follow the spiritual techniques parallel in your life, in your family life. Just I am loving you as a spiritual sister. Just I am loving you, Dr. Pravin Patel, as a spiritual world betterment activities partner. You are part and parcel of this plan of God. You are implementing the plan of God, so that it was my feelings from heart. It was the message from the house of the God too, that you both have not thinking about sexual enjoyment, but Lin Chitak has transformed his husband as a spiritual friend, and Dr. Pravin Patel has also transformed Jasmine as a spiritual friend, and you both, now you four can change entire the world. Inshallah. Thank you, Swamiji. Sure. You both have double engine. Life partner. But forget sexual. Forget producing children. You have transformed our life partner for doing noble activities in entire the world, and ultimately our goal is enlighten our heart, enlighten our life, so that light of enlighten, we have to find out the God as early as possible. This was my lovely message for you both. My words were strong. My expression was very aggressive, because it was
from core of my heart, I am loving you both very, very deeply, so that I have expressed my such type of words very aggressively. Forget my words. Now let us start journey spiritual, and for our activities are going on for the transforming the people as a noble person. You welcome both. You welcome four now. Four people now welcome. God Thank bless. you. God bless. God bless. God bless. God bless. Thank you, Swamiji. You know, on behalf of Mama Lynn husband Thompson, on behalf of Jasmine and myself, thank you so much for forgiving us. And Swamiji, Udan Tasdari, Samir Lalji was watching from the audience, you know, your Kopaiman, you know, thought about Gussa from the God, and he said, what's happening? He has to join, you know, to call you down, Swamiji, you know. So thank you, What Samir is Lal. the spiritual love? What is the spiritual love? Each and every people of the world and all audience can realize that this is the real spiritual love. Yes, Swamiji, absolutely, My absolutely. both spiritual lovers, I must stop. It is my responsibility that you have got life partner, not for producing children, not for sexual enjoyment, because you both have already fixed your life goal for noble activities. And these noble activities must be spread in the each and every corner of the world. So I am giving just alarming, lovely instruction. Be careful. You must not produce children, and you must not even think sexual thoughts and sexual desire, because I am with you as a noble role model. As example, I have not got marriage so that I can stand with Dr. Praveen Patel like this program 9 hours. Now I am standing from starting 5 hours and 55 minutes. Yep. Like this stamina, like this power, spiritual power, I want to see in your body, Lin Chitak, and your body, Dr. Praveen Patel. We are the selected soul. We have to transform entire the world. So we are soldier of the God. We are soldier of the Almighty God. And we must remember our responsibility. So just my aggressive words for you both were my lovely words for you. You understand my feelings. You understand my feelings. Absolutely, Swamiji. Yes, you're right. You know, गुस्सा भी करना, प्यार भी देना डेफिनेटली, और जहाँ भी हम गिरते हैं तो वहाँ पे संवारना जरूर डेफिनेटली. एंड आपका मिशन जो है नोबल वर्ल्ड बनाने का विद इन 7 years, उसको और ज्यादा हम दोनों 1 and 1 11 होके, जास्मिन और थॉमसन, जास्मिन और मैं और थॉमसन और मामा लिन 1 and 1 2 नहीं होते, 11 होके. सो वो 11 1111 होके जरूर स्वामी जी इसी मिशन में ही है, टॉर्च के मिशन में ही वो भी आगे ही बढ़ता जाएगा. एंड डेफिनेटली स्वामी जी, डेफिनेटली. और आपका गुस्सा जायज है, एब्सोल्युटली आपका गुस्सा जायज है स्वामी जी, एब्सोल्युटली. सर आंखों पर. और जो प्यार करता है उसको भी गुस्से होने का राइट है, एब्सोल्युटली. Samilal, okay? Everything is okay, okay? Fighting. So Samilal goes, what's happening? I joined right in the middle. Yes, Samilal. Welcome, brother. Yeah. Yes. You met Swamiji, you met Mama Lin, so no need to introduce. I did. Emil, how are you? I'm good. How are you, Mamalin? Please tell me what's happening. Happy 75th. Okay. Yes, thank you.
Yes, we are celebrating tomorrow for India and today for Pakistan. Mhm. And for us, it is both the same. So our extended celebration. Today we celebrate Pakistan, tomorrow we celebrate India, and this way we celebrate the freedom of humanity, freedom for everybody. Nobody should suffer, everybody should be free. Absolutely, for And sure. we pray on this particular day that everybody is free, not only from the prison of dependence on anybody, but even dependence on our own head. We all create our limits. We always get into imprisonment of our own belief system. We think that we cannot do this. We think we cannot do that. That's all wrong. We should be able to come out of it. And this is what we should pray on this Freedom Day, that everybody is free to do what they want to do as long as they're not harming others, as long as they're not harming the society, as long as they're not harming the nation. Everyone is free to be happy. Everybody should feel free to be happy. Nobody should be able to stop them. And I pray for that kind of freedom for everybody. Very well said, Samir. Short, sweet, and beautiful. Yeah. Amazing. Did you did you wish Mama Lynn for getting married? With Mr. Thompson. I didn't know that. I just came to know right now. So Okay. congratulations, and I wish you the best of Yeah, whatever. Ian is we're having many deep spiritual talks. Beautiful. He's been studying Manuel Swedenborg for 40 years and Mhm. lecturing and rewriting the biblical text and developing. And he's a nuclear physicist. Beautiful. So he's been looking at physics and how the body and the mind and the spirit Right. are fully can be understood in the physics. Right. Yeah, he's a nuclear physicist, top scholar here in Beautiful. California. And he's written many books and he's done really good work. So we're Beautiful. very happy to find each other. We met May 15th Mhm. and we got married July 3rd. Beautiful. Beautiful. And tomorrow is 13 weeks of knowing each other and 6 weeks of marriage. Wow. Beautiful. So very fast, but we immediately said we're here to do a lot of work. We have a lot of work to do together. Right. We're both for the world and his humanity. He's trying to help people understand that God is in science. Right. So his book is very good. Putting God back in science. Beautiful. Beautiful. Yeah. I used to consult Maharshi Mahesh Yogi. He came up with the transcendental meditation program he used to run, and he used to run it from Holland. He was, his headquarters was in Holland, and I used to consult him, and he used to connect Vedas and everything with science, your Oh. body with science, your body with Vedas, and this is how he used to call it, like you connect your body with Vedas and then your body with the science, and that is how you connect Vedas with the science. Oh. Right. And he worked he had a lot of work on physics, on biology, and I'm pretty sure his books are available not only in the shops but also for the research purposes. Yeah, send his name to me, Samir. Yeah, I'll send it. Yeah. Marshall is a big name. Lots of American speakers, and Including motivational Deepak speakers. Chopra was his disciple. That he followed the principles of Maharishi Yogi. Yeah. Correct. And the Beatles were his first one of Beatles, the first disciples. Mm-hmm. So I would definitely love you to come. We're Swamiji and we're working on a torch event here in San Francisco for fall 2023. Okay. Wow. So we will hope to have everyone come. Swamiji, I would like you to hold the spiritual conference within this torch event which here month? in San Francisco. Next September. year. I think it would be early November. Which month and which year?
Next year around November. 2023, early November. 2023. 2023. Which November month? next year. November next year, Swamiji. Okay. Please send details. Yes. We will try to attend your conference. As a torch member, you will be keynote speaker on spiritual promise. Wow. Yeah. So please. Sure, we will try to attend this excellent your program events, and we will give spiritual lectures. We will teach. We will produce spiritual techniques for benefit of entire mankind, Good. which we have practically done. How we can control our biological body, our physical body, how we can control our mind. All systems covers in spiritual techniques through spiritual knowledge. We will share our experience. We will learn from other speakers also. Thank you and congratulations for arranging such programs in 2023 November. There will be Sure. a panel. There will be a panel with Pravin and Jasmine and Ian Thompson and myself on spiritual marriage. Okay? Yeah, that will be great. Good. We can Congratulations for arranging such a program. Sure, we will try to attend after getting the visa of USA. Yes. If you will send, we have to go through the if you will university. if you will send your invitations, letters, program letters in your letterpad of NGOs, then USA visa will be easy for us. Yes. Yes, let's make it Pravin, what do you think? A 10-day conference maybe. 5 days in person and 5 days to explore the Sounds good. relationship. Yeah. Sounds good. So Pravin and I will work on it, Jasmine and I. Yeah, so we will invite Swamiji, Mama Lin, with Yes. the professional letterpad of torch, Yes. and then we'll send this invitation, and then Swamiji will show this invitation to the immigration people for the immigration to USA. Okay. Also, Okay. we'll bring Swamiji to Canada too after that, and we'll go from there. Well, we should do the event there for sure. We need Oh, yeah, the event in Toronto. Absolutely, Swamiji need to be in US and Canada. That was for so long dream. When Swamiji I saw Swamiji in UK, I said, Swamiji, you deserve in Canada and US too for sure. And definitely, yeah, US and Canada need Swamiji for sure, because this kind of beautiful spiritual vibes, this kind of material world much needed. Swamiji, in Samir Lal, give us your opinion what Swamiji said to Pravin and I. I did not. I did not catch the whole thing. Oh God. Yeah. Are you married, Samir? Yes, I am. I'm married. He's a grandfather too. Yeah. He's a grandfather of several several kids, right? Several grandkids. 4 grandkids. 4 grandkids. Yeah. We put on the spot, Mama Lin put you on the spot. No, not at all. Not at all. I have my own opinions, and Praveen knows. I on the first hearing from him, I approved what he was going to do, and I was with him all the time. And I absolutely have no reservations when two souls are meeting. So it's not me, it's not you. It is some divine power which brings up to bring us together. It is, we are just the actors there. We are just chosen to act like that. It's something else which works behind the scene. So who am I to approve or not to approve? I am here to witness what is happening. Yes.
and Yes. witnessing something beautiful happening, you are not harming anybody. You are making two souls happy, Hmm. and both the souls, when they feel happy, they make a happy world. That vibration goes a long way. So definitely, two happy souls multiplies to many, many more happy souls. People see smile on your face, and the other person gets that smile. He feels happy. When he feels happy, that transforms to somebody else, and this way there is a chain of happiness. So we have created the chain, and you should be congratulated for that, for creating that chain of happiness. Ah, Thank you, Swami. so we're thinking about, we've been looking at this deep witness of community, and so many women my age that are not married and alone Yeah. have continued to say, "You gave me hope." Yes. For 20 years, I stayed on my own, raised 5 children on my own. And now they all say, "Mama Lynn, you gave us hope. You gave us hope." Every day I get this, every day. Yes. So Definitely. there's some sort of hope within the graciousness of this. And not that we weren't not giving hope prior, but Swamiji gives a message to the world that the enlightenment has to come from within and really gain knowledge. This idea of soul mate, of soul connection, is in this physicality world, but you have to do the internal work yourself. Or we see all the divorces, we see all the destruction and the chaos, and the children are witnessing now chaos and destruction from couples. So this has to stop in a way that couples learn their own inner engagement for themselves. Then they can move forward. But if they don't have an inner engagement themselves, they will destruct those around them instead of make each other happy. So you said very nice words, Samir. Thank you. Thank you. Thank you for getting it. Definitely, you take yourself to the next level when you pass on such kind of messages to the world. Mm-hmm. You were alone before. Who cared? So why they should care now when you are happy, when you have chosen your path? When you're not choosing it, nobody came to you and say, "Oh, Mama Lynn, you're all alone. Can I support you some way, or can I give you some happiness?" And now, since you're happy, they don't have any rights to say anything. Mm. Same thing for Praveen. He was all alone all these years. Who went to him asking, "Do you feel sometimes loneliness? Do you feel sometimes unhappy? Do you feel sometimes sad?" Nobody went there. So when now he's feeling happy, who am I, or who is anybody else to go and asking why you're feeling so happy, why you're doing this? I mean, it is always his life. It is his way to live the life. And again, I say, as long as he's not harming anybody, everything is good. You're meant for that. Thank you. Thank you, Swami. Come meet Swamiji. My husband is here, Swamiji. There you go. Hello, Papa. Papa Torch is here. Okay. Papa Torch. Hello, Ian. How are you? Swamiji, it's the 75th anniversary of Swami, doesn't they look like made for each other? Swami, look at this frame. You both are lovely and selected soul. Now, Jesus Christ is very pleased with you both, and you have to God Jesus Christ love through his name. You have to enter your hearts, spiritual hearts. The name of Jesus Christ, the special name of Jesus Christ is Ya Isa. So you both have to follow such way. Ya Isa, Ya Isa. This is the spiritual techniques to generate divine energy in our spiritual heart.
So now your spiritual journey started together. Indeed. You have to work. You have to work. The transforming entire European country, those are believing in Jesus Christ, Bible, and regularly going in the church. You have to play the great role as a spiritual teacher, as a spiritual teachers. By this way, you have to follow 5 times, as I am showing you. Now, Jesus Christ is very, very happy, and you both are great blessed by Jesus Christ, because you both are selected soul to implement the Jesus Christ plan in the beautiful world. So please follow 5 times. Just Ya Isa. It means we welcome Jesus Christ in our spiritual heart. He comes in our spiritual heart with huge divine energy, huge divine powers, huge knowledge, ocean of love. He comes in our spiritual heart. Yes. You have to follow just with me. Now, I am not your spiritual master. I am not your spiritual guru, but just I am performing my duty as a friend of Jesus Christ. Jesus Christ is regularly talking with me, and now he has ordered me to give my special name, Ya Isa, in the spiritual heart of Lin Chitak and his lovely husband. Okay. You understand? You understand? Yes. Yes. Now you just both have put your right hand on the heart. Okay. You have to put your right hand on the heart. Yes. You have to do like this way. Ya Isa. Yeah. 5 times. 5 times. Ya Ya Isa. Isa. Ya Ya Isa. Ya Isa. Ya Ya Isa. Ya Isa. Ya Isa. Thank you. Ya Isa. Ya Isa. This is the special love. This is the special gift. Today you both have got from the Jesus Christ. I just follow the instruction of Jesus Christ. Now Jesus Christ is coming as soon as early as possible in the earth. And we will be soldier of military of Jesus Christ. Now Jesus Christ want to transforming entire world as a spiritual human being, as a spiritual person. We have to work. We have to follow this system. Now you have to remember Jesus Christ with loveful feelings. We have to concentrate in our heart. Our mind must be concentrate on our spiritual heart. We must remember, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa, Ya Isa. Such way, the divine energy, spiritual energy will generate in our spiritual heart. Then this energy, divine energy, will flow with the blood in entire body. An entire body will enlighten and charge full and powerful. Then and then we can capable. Then and then we can capable to see, to meet, to talk with Jesus Christ. Now you can ask any question. Okay. Thank you. Best of luck. Okay. God bless. Jesus Christ bless to you both. Lovely
togetherness. Just I instruct my sister. Just I instruct my sister. She will talk you what you have to done both. We have to start divine journey and work for better world. Indeed. Yes. God bless. God bless. God bless. Thank you, Swamaji. Thank you, Swamaji. God bless, God bless, God bless. Love, Swamiji, how do you feel, Mama Lane and Ian? How do you feel? happy event. We are on Happy our event. we are going out. We love you. Awesome. Enjoy your out walk. Appreciate that. And Blessings. yeah, remember this now. Isahu, 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 24/7, Usaya. and see your life will be changed forever. Oh, Swamiji, now I'm going to introduce this to beautiful soul all the way from Dil, Pakistan, Mama Leen, as well as Samir Lal. He just ate the dinner with Rehan Allahwala. So we are jealous, man. Guys, we are jealous, man. Freelancer ji or as well as Imran, man. How come, man? Rehan Allahwala knows me, Swamiji's for like 5-6 years, and you guys are eating dinner with Rehan Allahwala. How come, guys? What did he do, man? You guys are so lucky, man. Also, you delivered the speech at Rehan Allahwala's college, right, Faisal? Right, our freelancer buddy? Absolutely correct. Absolutely. And Swamiji, this freelancer, he got his first check from YouTube about how many? 5 years ago, right? Yes, 2017. 2017. How much? 8 8 cents. cents US, right? So about 80 Pakistani rupees, something like that, right? No, at 8 8 Pakistani rupees. rupee. 8 Pakistani rupee. First check of YouTube about 5 years ago. And, he said, man, if YouTube paid me 8 cents as my first paycheck, I can make 80 cents. I can make 800 cents. I can make 8,000 cents. And right now, the final check you're going to get from YouTube is how much approximately? And now I am working on the Fiverr and started. So from Fiverr, I'm getting a good check like 1 lakh, 2 lakh. Like 1 lakh, 2 lakh Pakistani rupee. I'm getting check now 1 lakh, 2 lakh. He's only 14, Swamiji. Only 14. He just delivered the speech at Rehan Allahwala school that how to become the freelancer and how to make like 1 lakh Pakistani rupee per month. So yeah, and this Golu Molu is also friend of Mr. Freelancer Imran Bhaijan. Assalamu alaikum. कैसे हो भाई? इमरान भाई को देख के मेरे को लगता है कि पाकिस्तान में गरीबी क्यों है, इंडिया में गरीबी क्यों है यार. इंडिया पाकिस्तान का सारा हमारा खाना तो बंदा ही खा जाता है. सही बात है ना इमरान? हाँ इमरान. Sorry, I'm joking, but me, I love you. हाँ जी. तो हाँ, शेयर करें कैसा एक्सपीरियंस रहा. रेहान भाई से आप पहली दफा मिले तो how is Rehan Allahwala on the screen and off the screen? रेहान भाई ने आज आपकी तारीफ भी की थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. थैंक यू. जप्पी दी की नहीं, जादू की जप्पी मैंने दिया था, कहा नहीं उनको तो वो तो हम देंगे ही देंगे, 2 नहीं 3 देंगे. और पब्लिकली वो उन्होंने आज आपको याद किया कि कनाडा से पटेल भाई हैं, उन्होंने पूरा अपना ऑफिस इस तरह से बनाया हुआ है, वो आज आपकी डिस्कस कर रहे थे रेहान साहब. एंड उसके अलावा he is the great man by the heart, by the mind, and हम लोग बड़े इंस्पायर हुए उनको देखकर. सही बात है. आज रेहान साहब ने सर आपके जो है ना तारीफ में 4 चांद और लगा दिए हमारी नजरों में. अरे नहीं भाई, उनका बड़ापन है, आपका बड़ापन है यार. कुछ आपके बारे में कहा होगा, आप मेरे बारे में वो चिट्ठी फाड़ रहे हो यार. हमारे इंडियन दोस्तों को नमस्ते. नमस्ते. इंडियन दोस्तों की ओर से भी आपको अस्सलाम वालेकुम यार. वालेकुम सलाम. ये स्वामी जी है, मेरे स्वामी जी है और बहुत सारे लोगों के स्वामी जी है. मदर ऑफ द वर्ल्ड है स्वामी जी ने. जी सर को तो मैंने देखा है सर, जो राइट पे हैं, क्या नाम है सर का? समीर लाल जी. समीर लाल जी. जी आपने एक बार तारीफ की थी इनकी वो लाइव नन्हे के सेशन में.
हाँ, वो तारीफ काबिल ही है, वो तारीफ काबिल है। जी तुक्के लिखते रहते जी। हैं, बड़े-बड़े गुरु से उनके वो फाइनेंस आज स्वामी जी से आज हमारी मुलाकात हुई है लाइव हाँ, पे। बहुत तो शुक्रिया। स्वामी जी से भी आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग मिलेगा। अबाउट इसी कॉन्फ्रेंस में स्वामी जी ने एक 14 साल की बिटिया थी, ओ गुड। फातिमा करके, रईस फातिमा, उनको भी बहुत कुछ हैप्पीनेस दी है। तो डेफिनेटली दिखता है स्वामी जी की ओर से आपके लिए क्या गुड लक निकलता है। पहले तो सॉरी टू से हम लोग बहुत लेट हो गए। दैट्स ओके, चलता है यार। रेहान भाई की वो मेजबानी बड़ी सी हाँ होती है, रेहान भाई, बस दिल नहीं कर रहा था उठने को, दिल नहीं कर यकीन रहा करें। उठने का। सही बात है। मैं कह रहा था एहसन भाई को कि यार चले, परवीन भाई को टाइम दिया हुआ है ऐसे। मैं समझता हूँ यार कि भाई रेहान भाई के साथ बैठते हो तो भी लाइक मैग्नेट जैसे हम हो जाते हैं। सो दैट्स ओके, टोटली अंडरस्टैंडेबल। हाँ जी, तो फ्रीलांसर जी आप कुछ शेयर करें। इंडिया पाकिस्तान का वो कॉन्फ्रेंस रखा है, इंडो पाक इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन। हाँ जी स्वामी जी आपकी आवाज आपका म्यूट पे है, एहसान आप म्यूट पे हैं। म्यूट पे आप म्यूट पर ऑन करें। अच्छा, ये जो हमारे इंडियन भाई हैं उनको नमस्ते, और जिन्होंने ये ऑरेंज वाला पहना हुआ है उनको यसु मसीह के नाम पे सलाम। वो स्वामी विश्वानंद जिन्होंने स्वामी साहब हैं, स्वामी साहब हैं, आप नमस्ते कर सकते हैं। हाँ जी, वो स्वामी विश्व आनंद है। विश्व मीन्स वर्ल्ड, सलाम आनंद सलाम वालेकुम भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, साहब, सलाम वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। जीवे सर आदाब अभी आदाब, पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? जी सब स्वीकार है। आदाब आदाब, सलाम वालेकुम, सब स्वीकार है। वेलकम। जीवे जीवे पाकिस्तान इज मींस पाकिस्तान यसु के नाम पे जिंदाबाद। सलाम आपको। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ थोड़ा। बोले बोले, जरूर बोले, आपका ही हमारे महफिल है, आपका ही हमें महफिल है। इंडियन दोस्त आए थे 3 अभी हमारे पास विजिट करने। लास्ट पीस मैसेज लेके। आप तो परिन भाई उनको देख रहे थे, वॉच कर रहे थे। उनके साथ हमें बहुत खुशी हुई, उनके साथ हमने बहुत बातें की, और वो हमारे जो है हिस्टोरिकल सिटी शिकारपुर में भी आए थे। अच्छा अच्छा। जी, हम लोग शिकारपुर शहर से हैं, जो पुराने जो वक्तों में, यानी कि आज़ादी से पहले हिंदू और मुस्लिम साथ रहते थे उसमें। अभी भी हमारे पास हिंदू कम्युनिटीज बहुत हैं, और वो अभी भी वही मोहब्बत में रहते हैं। क्या बात है। समझ हर रहे हैं। जगह और सर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, वो हमारे पास आए, हमने फर्स्ट टाइम जो है उनके साथ एक डिनर किया। वो पूरा डिनर जो था वेजिटेरियन था, अच्छा और अच्छा हमें भी बहुत मेन्यू बहुत पसंद आया। अच्छा, वेजिटेरियन मेन्यू पसंद आया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और हमने उनका जो स्वागत किया, वो प्योर हमारे जो शहर का 400 साल पुरानी हिस्ट्री है सर, शिकारपुर की। क्या बात शिकारपुर है। इज द हिस्टोरिकल प्लेस, और वो पुराने टाइम में उसको पेरिस कहा जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सर, वहाँ पे अभी भी हेरिटेज है, वही जगहें हैं जो हिंदुओं की हैं, और पुरानी जगहें भी हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं, पुराने गुरुद्वारे हैं, और पुरानी मस्जिदें हैं। यानी कि वो पीस का जो था ना सिस्टम, वो हमारे शहर में पूरा पूरा उतरता था सर। वो अभी तक है, वो अभी भी भाईचारा है, मोहब्बत है। ये पाकिस्तान इंडिया अलग अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, मोहब्बत वो अभी भी हम लोग अपने छोटे से शहर में बरकरार रख के बैठे हैं। इंशाल्लाह, क्या बात है। तो इसके समझ रहे वीडियो हैं। वीडियो बताए, बनाए, दुनिया के साथ शेयर नहीं करें। सर, मैं हिस्ट्री आपके मेरे पास बहुत पड़ी है। मैं इंशाल्लाह अपने शहर वापस जाऊं। अभी तो हम रेहान भाई के पास कराची आए हैं। जब भी जाए वापस, तब इसका वीडियो वीडियो शेयर करे, और मैं मैसेज करूंगा, आपसे पूरी हिस्ट्री शेयर करूंगा। इंशाल्लाह। और मुझे ऐसा लग रहा है आपको इंटरेस्ट भी आएगा। आप शायद उस पे बुक लिख दो। आप लिखिए यार, आपके अंदर में नहीं, दिख रहा परवीन भाई। आई सी बुक इन यू यार ब्रदर। हेलो। आप यंग है, जवान है, बढ़िया सा वो खून दौड़ रहा है अपने वो ब्रेन में। तो मेरे पे क्यों एक्सपेक्ट करते हो? मैं तो लिखूंगा लिखूंगा, सवाल नहीं है, मगर सलाम। आपके अंदर, आप वहां रहते हो, तो आप मेरे से बढ़िया सा बुक शिकारपुर के बारे में लिख सकते हो, मेरे से बढ़िया। जी जी बिल्कुल, लिखे हुए हैं, पुरानी तारीख के बुक हैं, पर वो थोड़ा सिंधी लैंग्वेज में है। पुरानी हमारी जो सिंधी पूरी भाषा है,
इसलिए उसमें है, पर मैं आपसे शेयर करूंगा, आप गूगल जो है उसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं। जरूर जरूर, जो भी सपोर्ट चाहिए बुक लिखने के लिए, आई विल बी अवेलेबल। नहीं नहीं, एहसन साहब को हिम्मत करवाए तो वो लिखे। देखो जब हम बंदूक तानते हैं ना, तो किसी और के कंधे पे रह के नहीं ताननी चाहिए, आपके सही पलट भाई, बता रहे शिकारपुर की बात, ये है वो है, मंदिर है, मस्जिद है, खंडहरे है, ये है वो है यार, और आप बोल रहे हैं कि भाई आप प्रवीण भाई बुक लिखे, वो भाई सर हाँ बिल्कुल, बुक लिखे, हिस्ट्री बहुत पुरानी है और खूबसूरती बहुत पुरानी है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा फोटोज, जरूर 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 यार, जरूर पुराने फोटो शेयर करूंगा। और कुछ शेयर करना है स्वामी जी के साथ भी शेयर कीजिएगा और सर के साथ भी। जरूर। ऐसा है इमरान भाई कि अगर आप बोल सकते हैं, अगर आप किस्सा सुना सकते हैं, अगर आप हिस्ट्री कह सकते हैं हमसे कि वहाँ मस्जिद है, वो भाईचारा है, वो पुराना हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो दोनों एक हुआ करता था, वो आज भी जिंदा है वहाँ पे। जी सर है। और दिलों, हर इंसान के दिलों में तो आज भी वही इंडिया पाकिस्तान एक ही है। नहीं मोहब्बत है सर, बहुत मोहब्बत है। तो हमारी जो सियासतें हैं उसके कारण वो दरार है जो हाँ भी सर, है। हाँ यही बात है सर, यही बात है। तो और वो एक आम आदमी समझता है, लेकिन वो कह नहीं पाता, ऊपर से दिखा नहीं पाता ऊपर से। और आप देखिए जो पक्षी थे उस समय में जो हुआ करते थे, चिड़ियाएं थी, वो आज भी कश्मीर में इधर से उधर उड़ती, उनको मालूम ही नहीं कि यहाँ से इंडिया खत्म हो गया, कोई सरहद है, हाँ कोई सरहद है, उनको नहीं मालूम। ना आसमान को मालूम है, ना हवा को मालूम है, ना पेड़ पौधों को मालूम है, सिर्फ हमको मालूम है क्योंकि हम दिमागदार लोग हैं। तो इंसानों के लिए रूल्स है। हाँ, इससे बेहतर है जिनके पास दिमाग नहीं है, वो जानवर उससे बेहतर है जिनको नहीं मालूम कि इस तरफ से उस तरफ उड़ के जाना मना है हमसे। अब वो सियासत का तो कहाँ तक हालत है, हालत ये है कि वो कबूतर को उन्होंने पकड़ के बैठा लिया थाने में, कबूतर क्या बताएगा तुमको। उन्होंने अभी रिसेंटली कबूतर 3 पकड़ ली, ये पाकिस्तान से उड़ के आए यहाँ पे, वो कर रहे, स्पाई थे उनके। बस सर क्या करें। हाँ, थाने में बैठा के रखा है कि उगलवाएंगे, क्या उगलवाओगे कबूतर से, हर चीज में गुटर बोलेगा। सर कबूतर का शौक रखने वाले हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, अब कबूतर का क्या दोष। तो इसलिए आप जब कह सकते, अगर उसका अल्लाह पाक ने नसीब उधर रखा है तो वो उधर चुगने जाएंगे, उनको क्या पता हमारे साथ क्या सलूक होगा। बिल्कुल, जब आप इतना अच्छा कह सकते हैं तो आपको किताब लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किताब लिखने में आपके पास एक एडेड एडवांटेज है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। बोलने में तो आप एडिट नहीं कर सकते, आपने बोल दिया खत्म। लिखेंगे जब उसी चीज को जो आप बोल रहे हैं इसी भाषा में आप कहिए किताब में, इसी भाषा में, जिस भाषा में आप, जिस लहजे में हमसे बात कर रहे हैं उसी लहजे में आप किताब में लिख डालिए उसको, और कब से किताब में ये फायदा होगा कि आप उसको फिर से पढ़ के ठीक कर सकते हैं जो आपने बोला। और सही कह रहे हैं आप। जब आप पहला, हर शेक्सपियर ने भी पहले दिन कभी कोई ना कोई एक पहली लाइन लिखी होगी, तब बाद में शेक्सपियर बना हुआ स्टार्टअप करने के लिए। सही कह रहे हैं आप। हमने भी कभी पहली लाइन लिखी हुई किसी किताब की, तो आज हम हर हफ्ते लिखते हैं। और हमें परवीन भाई की सपोर्ट भी है, बड़ी बात ये है। ये भाई भी ऑथर है, मैं भी ऑथर हूँ, दोनों की सपोर्ट है। परवीन भाई भी तो है ही है, सुनील लाल के भी है, स्वामी जी के ब्लेसिंग भी है, ठीक है ना। रेहान भाई भी है, वो भी सिखाते बुक लिखनी हो। नहीं, रेहान भाई तो बहुत कुछ सीखा है हमने 3-4 दिन हुए हमने स्टे रेहान भाई के यहाँ ही किए, और रेहान भाई से हमें रोज कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। ये हम एक्सपीरियंस जो है ना अपनी लाइफ में, यानी कि यादगार मोमेंट जो होते हैं ना, जिसमें आप कुछ ना कुछ यानी अपनी लाइफ में चेंजिंग कर पाओ, वो चीजें हमने सीखी है रेहान भाई से, और हम आगे जाके अपनी लाइफ में वो चीजें चेंज भी करेंगे और उन पे चलेंगे भी, अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। हर रोज सीखते रहेंगे आप लाइफ में, जब तक सीखते रहेंगे नहीं सर, ये चीज हमें जो है कहते हैं कि तालीम मौत तक, कब्र तक तालीम हासिल करनी चाहिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जीना बंद है ना, जिस दिन वो सीखना वही हम सीख लिए, तब ऊपर वाला बोलेगी आ जाए ना, परफेक्ट हो गया तो आ जा मेरे पास, है ना मेरे। सही कह रहे हैं आप। सारे परफेक्ट लोगों की वहाँ पे जरूरत है, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में चलानी है वहां से ऊपर से बैठ के, तो एकदम जिस दिन परफेक्ट हो जाओ निकल लो आप तुरंत। इमरान भाई को देख कर मेरे सवाल का आंसर मिल गया। मैं कब से 52 साल से सवाल पूछ रहा था कि दुनिया में वो क्यों है, वो भूखमरी क्यों है यार, इंडिया में भूखमरी क्यों है, पाकिस्तान में भूखमरी क्यों है। अब आप जैसा इमरान भाई जैसा बंदा गोलू मोलू खाता रहता है 10 लोगों का, तुम भूखमरी रहेगी नहीं सर नहीं, हम अपनी कोटा पूरी करते हैं।
हाँ, तो आप कोटा आपका तो पूरे करते हो, दूसरे 10 लोगों के कोटा पूरे करते हो, तो इसलिए भूखमरी है सर दुनिया में। नहीं नहीं ऐसी बात भी नहीं है। नहीं है ऐसे? हमारे जो इर्द गिर्द बंदे हैं हम उनका पेट भरते हैं सर, अच्छा, अच्छा और ऐसा भी उसके बाद जो बचता है वो खुद खाते हैं। वो खुद नहीं, भी तो नहीं, खाना चाहिए ना सर, बचता हुआ खाते वरना होगे तो बचता हुआ खाते होगे ना, तो मेरे जैसा दुबले-पतले होगे यार, आप तो माना यार नहीं 50 नहीं सर, आपके यहाँ थोड़ा बचता है ना, हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा बचता है इसलिए। ये बंदा देखो बोलने में भी माहिर है भाई यार। 52 साल के बूढ़े को भी मैंने छोड़ता नहीं है यार। नहीं नहीं सर, आप हमारे उस्ताद हैं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही मजाक खुश कर रहे, रहा था आपसे यार, खुश रहे। हम आपको दुआएं देते रहते हैं, हम जब भी आपकी लाइव सुनते हैं आपको दुआएं देते हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप तो हमारे से भी बहुत आगे जाने वाले। आप तो मैंने आप 14-15 के हो। हमें हमें पता है जो है ना रेहान भाई, आपको पाकिस्तान जरूर बुलाएंगे, आपसे मुलाकात तो हम करेंगे। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह भी आएंगे, ये समीर लाल को भी लाएंगे। जी जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल आएंगे। हाँ तो हम आपको शिकारपुर विजिट करवाएंगे, अपना पूरा शहर। इंशाल्लाह जरूर यार, इतना अब आपने इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है तो हम तो डेफिनेटली आएंगे। 400 साल पुरानी हिस्ट्री है सर। और जो देखते जो यानी कि बिजनेसमैन जो थे ना सर, वो हाँ सर, शिकारपुर थे हाँ सर, पुराने। हाँ और जी। कोहिनूर हीरा इंडिया से पहले, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शिकारपुर आ चुका है एक दिन के लिए। अच्छा, ये उधर तो एक यार हीरे और गोल्ड मार्केट है, वो आजकल वो उसमें सब्जी वगैरह ये वो मिलता है। अच्छा, और उसमें कभी हीरे जवाहरात की मार्केट हुआ करती थी हिंदुओं की। अच्छा, अच्छा, हाँ तो ये हब रहा है, हब। यानी कि जब अंग्रेज राज था ना, तो हैदराबाद, कराची और शिकारपुर, अच्छा, यानी इतना बड़ा डिस्टेंस है। आजकल देखें तो कराची हमसे 540 किलोमीटर है। हाँ जी। तो कराची और हैदराबाद में 150 का फर्क है। उसके बाद जाके हमारा शिकारपुर आता था सर। C&S कॉलेज है हमारे पास, वो भी उसकी भी हिस्ट्री 350-400 साल पुरानी है। वो C&S सच्चानंद और ताराचंद है, उनके उनके नाम पे है। ये बंदा बढ़िया सा गाइड बन सकता है समीला, क्या कहते हो यार? हाँ बिल्कुल। सर मैं आपको आऊंगा। मेरे शहर में जो है ना सर, वो कॉलेजेस हिंदुओं की डोनेट हुई हैं, और अस्पताल है, RBUT हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, राव बहादुर ताराचंद। मैं उस बंदे का आपको नाम दिखाऊंगा। उस बंदे में इतनी आजिज़ी थी, उसने पैरों में अपना नाम लगवाया है कि सीढ़ियां पे जो बंदा चढ़ता है ना, उसके पैरों पे से रोंगटा जाता है उसके नाम से। हमको तो शर्म आती है, हम तो साइड से गुजरते हैं अगर जब भी हॉस्पिटल जाते हैं। पर उस बंदे में इतनी आजिज़ी, उस बंदे ने अपना नाम पैरों में वो करवाया था सर। क्या बात है सर यार, वाह। बहुत बड़ी हिस्ट्री है सर उधर की, और आप बहुत जैसे कह रहे पुराना। हैं ना यार इमरान भाई, आप जैसे आपको इंटरेस्ट बढ़ जाएगा सर, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। नहीं, आप नहीं, कहेंगे मेरे को शो करवाओ उधर। नहीं यार, आप यार आप कौन से जैसे कह तालुका में रहे है हैं वहाँ पे शिकारपुर ऐसे के? में ना सर गाइड हम सर शिकारपुर शहर है। अच्छा जैसे उसमें। इंडिया का शिकारपुर है ना सर, ये जी जी। पाकिस्तान में भी शिकारपुर है। अच्छा, ये शिकारपुर ऐसे समझे कि सखर, आपने सुना है सखर? आप गूगल में चेक करेंगे ना सर, गूगल मैप में हमारे यहाँ आप चेक कर सकते हैं शिकारपुर को, अच्छा, अच्छा, गूगल मैप में। जी आप विजिट जरूर कीजिएगा गूगल मैप में। अगर आना हो तो हम विजिट करवाएंगे आपको। और सॉरी, गूगल अर्थ में गूगल अर्थ में। अच्छा, गूगल अर्थ में, ओके जी। हाँ सर, और यहाँ की बहुत तारीखी पुरानी चीजें हैं। यहाँ पे दीवान का सर फालूदा और कुल्फ बोतल मिलती है। व्हाइट रोज बोतल सर, जो पाकोला हमारे पाकिस्तान में पाकोला बोतल बनती है ना, सेम उसका फ्लेवर है व्हाइट रोज। और मैं आपको हिस्ट्री में बता रहा हूँ, यहाँ का फालूदा कुल्फी बहुत मशहूर है। हाँ फालूदा, हाँ पाकिस्तान में, सही बात है। हाँ सर, वो भी हिंदुओं का है सर, दीवानों का अच्छा, मशहूर है। शाही बाग आपके यहाँ का मशहूर है? शाही बाग, शाही बाग सर, बिल्कुल सर, शाही बाग हमारे यहाँ मशहूर है। सर पहुंच गए, सर पहुंच गए ना सर, बहुत पहुंचे हुए है सर। सर कुमार पहुंच गए भाई। सर, बड़े बड़े इंडिया के कवियों को अपने गाड़ी सर में हमारे पास शाही बाग है, गणेश बाग है, जिसका नाम थोड़ा अभी चेंज करके लियाकत बाग रखा गया है, पर वो पूरा गणेश बाग था। अच्छा, वो भी हिंदुओं की डोनेट प्रॉपर्टी है। हमारे यहाँ अवेक्यू प्रॉपर्टीज बहुत है, जो हिंदू बिरादरी वाले जब गए थे तो वो डोनेट करके गए थे कि भाई हम लोग वापस आए तो ठीक है, नहीं आए तो ये इन बंदों को देके जाना।
अच्छा जो गरीब मिस्किन आए उनको दे दें। अच्छा, तो हम अब बहुत बहुत बढ़िया बातें की आपने इमरान भाई। नो आपकी बात तो लगता है मैं कि सुनते आपने ही जब ये टॉपिक कहा था ना सर, मेरे दिल में भरी हुई थी ये बात। नहीं, मैं एहसन साहब को बार बार बोल रहा था, मैं एहसन साहब मौका मिले तो जाए परवीन भाई से थोड़ा लाइव हो जाए। नहीं, अच्छा आपने खाली कर दिया, बातें भरी हुई और माना भरने के लिए जगह खाली बची, तो और माना बातें भरने के लिए वेसल खाली हो गया है, तो और भरना फिर से शेयर करना। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। अब हम सुनते हैं हमारे फ्रीलांसर साहब को, मगर बिफोर स्वामी जी एंड समीलाल जी, वुड यू लाइक टू शेयर अबाउट दिस हाँ छोटा पैकेज नहीं बड़ा सर, उनको भी सुना दे। के बारे में कुछ कहना हो तो इमरान के बारे में। स्वामी जी, समीलाल जी, फील फ्री। इमरान के बारे में नहीं, हाँ, बहुत इमरान के बारे में। बहुत अच्छा ये लगा मिलकर दोनों इमरान आपसे। और ये दोनों यंगस्टर जो है, हाँ दोनों यंगस्टर जो आए हैं, हाँ जी, उसके दिलों में पैसा कमाना स्वाभाविक होता है। हर एक युवक को अपनी जिंदगी को स्थिर करना, जिंदगी को सुखी करना, ये विचार हर एक युवक को होना ही चाहिए। ये दोनों युवकों को ये अच्छा चल रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। ये एक भारत में कहावत है, शायद पाकिस्तान में भी हो सकती है, मनुष्य को पहले ब्रेड एंड बटर का समाधान करने के बाद ही अल्लाह ताला का समाधान हो सकता है। यानी कि हम भूखे हैं, हमको बहुत कड़ी भूख लगी है, तो हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा, कोई अच्छे कामों में नहीं लगेगा। इसीलिए आप दोनों जो पैसा तो कमा रहे हैं, नई नई टेक्निक सीख रहे हैं रेहान अल्लाह वाला से और कहीं ऐसे लोगों के जरिए से सीख रहे हैं, सीखना भी चाहिए। ये भाई अभी कह रहे थे कि मेरे को 1 लाख रुपया का चेक मिला, अच्छा है, लेकिन हमको ये भी तो ख्याल होना चाहिए कि ये जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था ही हो रही है, हमारे शरीर का प्रबंध हो रहा है। हम शरीर नहीं है। We are not a body conscious only. We are not a human body only. हम मानव शरीर सिर्फ नहीं है, वहां रुकना नहीं है। तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि जवानी में पैसा नहीं कमाना है, कमाना है, भरपूर कमाना। लेकिन वो भाई सुन रहा है, जो भाई बाजू वाला जो भाई है, हाँ जी, दोनों मेरी सुन आवाज रहे आ हैं। रही है दोनों को? आ रही जी ठीक जी है, जी जी ठीक है, स्वामी। ठीक है। सुनो, ये रेहान भाई इतना काम क्यों कर सकते हैं रात दिन? उसको इस्लाम का सच्चा तरीका मालूम हो गया है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी उसने सीख लिया है। उसके दिल में अल्लाह का नाम उसने डलवा लिया है, यानी कि ये स्पिरिचुअल टेक्निक जो है ना वो सीख लिया है। तो आप दोनों को आज ये स्पिरिचुअल टेक्निक सिखाने का भी अल्लाह का हुक्म हो गया है। ये स्पिरिचुअल टेक्निक आपको मिल रही है। आपको मेरा मुरीद नहीं बनना है, मैं आपका कामिल मुर्शिद बनने नहीं जा रहा हूं। ये पवित्र कुरान शरीफ में 1450 साल पहले अपने प्यारे अल्लाह ने जिब्राइल के दौरान जो आयतें भेजी थी,
जो पवित्र कुरान शरीफ में वो बताया है, वही स्पिरिचुअल टेक्निक आपको सीखने को मिल रही है, जिसके जरिए से आप नूर अर्निंग करोगे। अभी मनी अर्निंग कर रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो। पैसा कमाना है, बंद नहीं करना है। ये मैं बंद कराने के लिए ये नहीं सिखा रहा हूं, ये तो और ज्यादा कमाओगे, रेहान भाई जैसे कमाता है वैसे। देखो भाई, इस्लाम में आपने कहीं सुना होगा कि मोमिन, हर एक मोमिनों को कल्बे जिक्री बनना जरूरी है, यानी कि कल्ब को बेदार करना जरूरी है। आगे कभी कोई तकरीर में सुना होगा कि तस्कियाए नफ्स करना जरूरी है। तस्कियाए नफ्स करना जरूरी है, यानी अपने नफ्स को पाक साफ करना जरूरी है। तो नफ्स पाक साफ कैसे होता है? हर एक जिस्म में, हर एक मनुष्य के शरीर में डेविल, कुत्ता, राक्षस, रावण बिठाया है। वो परीक्षा करता रहता है, भगवान तरफ, अल्लाह तरफ जाने नहीं देता है। कोई वो तरफ जाने की कोशिश करेगा तो वो नेगेटिव ख्याल डालेगा, दूसरी ऐसी चीजें दिमाग में डालेगा, ऐसी एक्टिविटीज में रखेगा कि वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए वो कदम भी नहीं उठा पाएगा। तो ये डेविल, ये राक्षस को पवित्र बनाना पड़ता है। ये हर एक धर्म में बताया है, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग तरीके से। अभी मैं इस्लाम की बात करूंगा, इस्लाम के तरीके की बात करूंगा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये स्वामी जी बन के हमको इस्लाम क्या सिखा रहे हैं, स्वामी जी को कहां से सीख लिया। तो मैं ये राज खोलता हूं कि मैंने 3 साल कामिल मुर्शीद, इस्लाम का धर्मगुरु के चरण में उसकी सेवा करी, सच्चा इस्लाम सीखने के लिए। और मैंने उसका कपड़ा धोया, सब कुछ, उसका खाना पकाया, सब कुछ किया 3 साल तक। उसके बाद उसने मुझे ये तरीका सिखाया और अल्लाह ताला भी राजी हो गया और मुझे कहा कि अभी तुम सच्ची इस्लाम की तालीम सीख गए हो, आपको मेरे बंदों को चीज है, ये सच्चा इस्लाम है, सच्ची will be back soon. Sorry for स्पिरिचुअलिटी है। the technical अगर आप difficulties. चाहोगे तो 5 So मिनट how लगेगा, far, ज्यादा so नहीं far, how do लगेगा। you feel, freelancer जी, as well as इमरान भाईजान? स्वामी जी की बातों से कैसा फील हो रहा है आपको, स्वामी जी वेलकम बैक। मेरी आवाज तो आ रही होगी, लेकिन ये इमरान भाई का नेट कनेक्शन चला गया है। नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आपके फोन में साथ ही बैठे हैं, उसको बताइए। इमरान भाई मेरे साथ बैठे हैं और वो सुन रहे हैं आपकी बातें बिल्कुल, और मुझे आपकी बातें बिल्कुल पसंद आई। और मैं भी डिफरेंट डिफरेंट धर्मों की, रिलीजन्स की स्टडी करता हूँ, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया। सो इन चीज़ों में मैं भी स्टडी करता हूँ और मैंने बाइबल भी पढ़ी हुई है, थोड़ी बहुत मुझे इनकी भी नॉलेज है। एंड हम भी स्टडी करते हैं इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता है। ये जो चीजें हैं ये भी आपकी जिंदगी में एक बड़ा कीमती रोल जो है वो अता करती हैं, आपकी लाइफ में प्ले करती हैं। तो इंसानी खिदमत भी करनी चाहिए, उसके लिए हम फ्री कोर्सेज भी करवाते हैं। रेहान साहब के कहने पे हम चाहते हैं कि हर इंसान पैसा भी कमाए और साथ में वो अपने खुदा के साथ उसका एक प्यार वाला रिलेशन भी होना चाहिए, चाहे वो यसु मसीह है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो भगवान है, या उसके जो भी खुदा है। कहते हैं कि दुनिया में 3000 खुदा है, लेकिन 3000 मजहब में हर किसी का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलाने वाला तो एक ही होता है। चाहे आप उसको यसु मानो, चाहे आप उसको अल्लाह मानो, चाहे आप उसको भगवान मानो, वो आपकी मर्जी है, आप उसको कुछ भी मानो। आप अल्लाह के कलाम में देखो तो वहां पर भी आपको बड़ी प्यारी प्यारी बातें मिलती हैं। आप बाइबल देखो, वहां पर भी आपको यसु मसीह का बड़ा प्यार मिलता है। उनके बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ लें, आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़ लें, ये जो कुछ चैप्टर्स हैं बाइबल के,
उनमें आप देख लें, पैदाइशी की किताब देख लें कि यीशु मसीह की ज़िंदगी कैसे थी, वो लोगों की कैसे हेल्प कर रहे थे। आप इस्लाम की स्टडी कर लें, उसमें आपको इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चलता है कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं और उन्होंने कैसे लोगों की हेल्प की। सुनो और सुनो, देखें, अभी सुनो, मैं आपको थोड़ा ब्रेक करूंगा, आपको थोड़ा ब्रेक करूंगा इसलिए। स्वामी जी 1 मिनट आप माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा था। ये बच्चा जितना जमीन से बाहर है ना, वो उतना जमीन के अंदर भी है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह पसंद करते हैं ना। मेरे भाई अल्लाह जो है ना, अल्लाह कर्म योगियों को पसंद करता है, कर्म के कायर को नहीं पसंद करता है। अल्लाह जो है ना, कर्मवीर लोगों को पसंद करता है, सुरवीरों को पसंद करता है। तो अभी मैं आपको दोनों को ये पूछता हूं, आपने कहीं तकरीर में और कई जगह पे सुना है कि तस्किया नफ्स करना जरूरी होता है? ए भैया दोनों जवाब दो, सुना है कहीं तकरीर में? नहीं, मैंने नहीं सुना है। आपने? सर इमरान जी, सर आप जिस तरीके से बता रहे हैं, हमने वो वर्डिंग नहीं सुनी, पर ये मैं समझ रहा हूँ, ये मैंने सुना है। हाँ ठीक है। दूसरा, मोमिन कब बनते हैं? सिर्फ मुसलमान के घर में जन्म लेने से मोमिन थोड़ा बन जाते हैं हम, कि हिंदू के घर में जन्म लेने से भगवान वाला थोड़ा हो जाते हैं हम। मोमेन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, नहीं, कौन सी मेहनत, क्या करना पड़ता है तब जाके हम मोमिन बना कहे अल्लाह की नजर में। ये कुरान और हदीस की मैं रोशनी में बात कर रहा हूँ। और अगर आपको पता है कि मोमिन कब बनता है वो आप बता सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा। मैं आपको बताता हूँ एक बात की, देखें, एक हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जो भी है, अगर वो एक मुसलमान घर में पैदा होगा तो वो अपने उस रिलीजन को फॉलो करेगा, अल्लाह को मानेगा। अगर वो क्रिश्चियन घर में पैदा होगा तो वो यीशु मसीह को मानेंगे, बाइबल की अरे रोशनी में भैया, जो है वो। अरे मेरे भाई, ये सबको कहानी पता है। मैं आपको जो सीधा सवाल करता हूँ उसको पता है तो बोलने तू, कि मोमिन किसको मैं कहते हैं वही तो पता है बोल तेरे रहा को? हूँ। सर एक अरे बात शॉर्ट कहूँ, में, अरे एक भैया बात तू कहूँ, एक शॉर्ट बात। में जा, तू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला है ने, लंबा ठीक है, लंबा ठीक है, विस्तार एक मत कर एक वो। बात एक बात कहूँ, एक मिनट, नाराज नहीं मैं होइए। आपको सीधा सवाल पूछता हूँ, दोनों को सीधा सवाल पूछता हूँ, मोमिन किसको कहते हैं? कहीं सुना है तो बोलो। चलो ठीक है, आप ही बता दे मोमिन किसको कहते हैं। ये बोल, ओ भाई जो है ना, अरे वो तो सबको पता है, वो तो सबको पता है कि जिस घर में जन्मेगा उसका माँ बाप मंदिर ले जाएगा, हिंदू वाला, मुसलमान वाला मस्जिद में ले जाएगा, नमाज पढ़ना सिखाएगा, कुरान पकड़ाएगा, ये लोग भगवत गीता पकड़ाएगा, ये सबको कहानी पता है। ये कहानी अभी शॉर्ट में समझना है ना। मोमिन किसको कहते हैं वो पता नहीं है, इसलिए सुनो दोनों। शर्मा गया। सुन रहे मोमिन इसको कहते हैं, इंटरेस्टिंग है। मोमिन इसको कहते हैं जो एक ही दुनिया का क्रिएटर एक ही है, 2-3 नहीं है, उसमें अल्लाह यकीन रखता है ना जो, हाँ, उसका अल्लाह कहो, परमेश्वर कहो, नाम कोई भी ले लो, वो एक ही है। तुम्हारा अल्लाह और हिंदुड़ा लोगों का कोई परमेश्वर अलग थोड़ा है। सुनो, नाम कोई भी ले लो लेकिन वो जात एक ही है, वो याद रखना चाहिए सबको। तो ये एक जात पर क्या यकीन बात है रखना, स्वामी जी, क्या बात है। वो एक ही जात पर यकीन रखना, उसको सजदा करना, इसके पर जिसका पक्का विश्वास है, पहली शर्त मोमिन की है। दूसरी शर्त योमे आखरत पर, कयामत के दिन मेरे कर्मों का हिसाब किताब मेरे अल्लाह को पेश करना है। मेरे कर्मों का हिसाब किताब अल्लाह के सामने मेरे को रजू करना है। इसमें यकीन, इसमें जिसका यकीन है, जो इस बात में मानता है ना, वो दूसरी शर्त है मोमिन बनने की।
तो इसका मतलब ये नहीं अपनी मर्जी से काम करो, किसी को भी पूछ मारो, शीशे में उतारो, किसी का भी हक छीनो, ये अमाल, ये सब जो मर्जी पड़े वो करो और फिर नमाज पढ़ लो 5 टाइम, तो अल्लाह कबूल कर लेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। चाहे कितनी भी नमाज पढ़ लो, कितना भी हज कर लो, कितना भी उम्रा पढ़ लो, सब कुछ कर लो, लेकिन मेरा कर्मों का हिसाब मेरे अल्लाह को देना है, इसमें यकीन जिसको है वो दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त सुन लो, तीसरी शर्त लास्ट, ये मोमिन बनने की 3 शर्त है। तीसरी शर्त कौन सी है? सुन लो बरोबर। इस क्रिएशन में, ये सारी कायनात में अल्लाह जिसको प्यार करता है, अल्लाह जिसने बनाया है, वो किसी को भी हम दुख देंगे, दर्द देंगे, किलिंग करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, हम हलाल कमाई नहीं करेंगे, हम हमारा हक की कमाई नहीं करेंगे, गलत रास्ते के कमाई करेंगे। हमारा अमाल यानी कि हमारा व्यवहार, जीवन का कर्म, हमारा हर एक कर्म जो है ने, वो कुरान हदीस की सुरती में होना चाहिए, अल्लाह को राजी करने वाला होना चाहिए। ये हमारा अमाल यानी कि हमारा कर्म जो है वो साफ सुथरा पाक साफ होना चाहिए। ये मोमिन बनने की 3 शर्त है। और जो मोमिन बनता है उसकी नमाज और इसकी हज, रोजा, जकात, उम्रा सब कबूल होता है। ये मोमिन नहीं बनेगा ना तब तक उसकी नमाज अल्लाह की अरसे इलाही तक नहीं पहुंचती है नमाज। ठीक है इमरान भाई, इसमें और कुछ कहना है? म्यूट पे आप। हाँ, उनका इंटरनेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है। तो आप आपकी बाजू में बिठा लो ने, बुला लो, दोनों बाजू में बैठ जाओ। आवाज सर डबलिंग हो जाएगी। सुनो, ए मेरे भाई सुनो, अभी जो है ने, जमीन लाल जी को हम सुनना चाहते हैं, उनको भी। अभी और आगे तस्किया नफ्स करना जरूरी है। ए मेरे भाई, तू खुले दिल से हंसता है इसलिए तगड़ा है। खुले दिल से हंसने वाला तेरी हंसी खुशी में बहुत सुरती है। तू खुले दिल से ऐसा हंसता है, बहुत आनंद आता है। सर तभी मैंने माइक इसलिए बंद तेरी कर तबीयत अच्छा, इसलिए तेरी तबीयत है ना बहुत। हम भी परवीन भाई healthy हो। जैसे हैं भाई। ए प्रवीण भाई, डर के बारे चुपकी हंसता है, तू खुले दिल से हंसता है। देखो। सुनो, अभी सुनो मेरे इमरान भाई और ये भाई जी, सुनो। देखो, अभी ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि मेन बात पर आता हूं। इतनी उम्र हो गई, मोमिन किसको कहते ये भी पता नहीं था, और तस्किया नफ्स कैसे करना होता है वो भी पता नहीं है। इतनी उम्र बीत गई, कुरान पढ़ते नमाजें पढ़ते रोजा रखते मुझे जिस अंदाज से पता है वो मैं बयान नहीं करना चाहता था। अरे मेरे भाई, तू बयान करना है, किसी से डरता है? तू क्यों डरता है? नहीं, तू क्यों डरता है? बयान कर दे। आज का टॉपिक ये नहीं था। अरे मेरे भाई, ये जो आजादी हम प्राप्त लोग करनी किसी है और टॉपिक के सिलसिले में आए थे। पता है। कभी समीलाल जी कुछ बोलिए। ए मेरे भाई सुन ले, सुन ले। ए इमरान सुन ले, कभी क्लासरूम में कभी क्लासरूम में बहुत अच्छा टॉपिक चलता रहता है और हमको टट्टी लग जाती है, तो बाथरूम जाते हैं कि नहीं जाते? जरूरी है सर, जरूरी है। तो क्या क्लासरूम में टट्टी कर लेते? क्या क्लासरूम में टट्टी कर लेते?
सर आप तो ऐसी मेरे बातें ना भाई, करें वरना मैं चला जाऊंगा सीधा उधर ही। मेरे भाई एग्जाम्पल दूंगा, मैंने एग्जाम्पल दिया तेरे को। ओके सर, ओके, सॉरी। आज जो है ना 14 अगस्त 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और द पाकिस्तानी पीपल। हमने सबको मुबारक दे दिया है सर। वे आप सबको हम दिल से मुबारक देने के लिए तो आए हैं। हम कल भी आएंगे आपको मुबारक देने इंशाल्लाह। और अभी जो है ना सच्ची स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये थोड़ी बात सुन लो। सर सही है। रेहान अल्लाह वाला भाई ने स्पिरिचुअलिटी सीख लिया है। आज जी आप सर। दोनों को 5-7 मिनट में ये बताना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत है तो हम बताएंगे। सर बोलिए। अगर आप दोनों की इच्छा है, राजीमंदी है, इच्छा है तो बताएंगे, नहीं तो फोर्सफुली नहीं। सर आप बोले, हम आपके लिए तो बैठेंगे। ओए 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 ओए। वरना तो इमरान भाई हम को समीर लाल जी से। इमरान भाई को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि स्वामी जी कोई जुदा टॉपिक लेके कहाँ आ गए। लेकिन देखो ये टॉपिक मैंने इसलिए छेड़ा है, कि चाहे भारत वाले चाहे पाकिस्तान वाले फिजिकली कितना भी आजादी को प्राप्त करे, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिन, मुक्ति दिन की सेलिब्रेशन कितनी भी कर ले, लेकिन ये फिर सिर्फ बाहरी शारीरिक फिजिकली बाहरिक है, एक खोखला है। आंतरिक अंदर वाली फ्रीडम जो पंछियों को है, इंसेक्ट है, एनिमल्स को है, वो फ्रीडम है। हमेशा इंडिपेंडेंसी में रहते हैं। हम मनुष्य अपनी भूलों से, अपनी गलतियों से हम इसका आनंद नहीं ले रहे। तो इसीलिए हमको क्या करना है, दिल को बदलना है, स्पिरिचुअल हार्ट को चेंज करना है। स्पिरिचुअल हार्ट को चेंज करने के लिए अल्लाह का नाम दिल में डालना पड़ता है। अल्लाह को प्यार से बुलाकर हमारे दिल में डालना पड़ता है, बिठाना पड़ता है। 1,80,000 जाले, बहुत सारी ऐसी अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो, हेट्रेड, जेलसी, ऐसी सारी फीलिंग्स के कारण हमने हमारे हार्ट को ब्लॉक करके रखा है, लॉक करके रखा है। इसको आज खोल के अल्लाह खुद तुम्हारे दोनों के दिल में आना चाहते हैं। आप दोनों को मेरा मुरीद नहीं बनना है, मैं कामिल मुर्शिद बनने नहीं जा रहा हूं, लेकिन अल्लाह राजी हो गया है। तुम दोनों युवक पाकिस्तान में बैठे बैठे बहुत बड़ा काम कर सकते हो, और ये जवाबदारी अल्लाह ताला आप दोनों को देना भी चाहते हैं। आप दोनों के साथ सैकड़ों यूथ आते होंगे। रेहान अल्लाह वाला भाई के साथ सैकड़ों यूथ पाकिस्तान में उसको मिलते हैं। आप लोगों को ये टेक्निक सिखानी है, दिल वाली तालीम, स्पिरिचुअल टेक्निक। तो ये सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, अल्लाह को बुलाकर हमारे दिल में बसाना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप वो है। तो अगर आप राजी है दोनों, तो आपको मैं अल्लाह को धरती पर बुलाकर पाकिस्तान में आप जहां बैठे हैं वहां में आपके दिल में बिठा सकता हूं। ये पावर मुझे दिया है, ये ऑथोरिटी मुझे दिया है, ये अधिकार मुझे दिया है। आप अगर दोनों चाहोगे तो आपके दिल में अल्लाह का नाम हम डालना चाहते हैं। हम यानी अल्लाह डालना चाहते हैं मेरे जरिए से। मैं एक मीडिएटर हूँ, एक सेवक हूँ अल्लाह का। तो आप अगर चाहोगे तो आपके दिलों में अल्लाह का नाम डालना चाहते हैं अल्लाह,
बोलो, आप राजी हो तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहाँ ही फुल स्टॉप कर देते। सर अल्लाह बड़ा करीम है, हमारे दिल में ही बसता है और इंशाल्लाह बसता रहेगा। और हम समी लाल जी को सुनना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। सुनो, कृपया करें, कृपया करें, हम हर सुनना एक चाहते मनुष्य ये कहता है कि हमारे दिल में भगवान बैठा है, हमारे दिल में अल्लाह बैठा है, मगर इमरान तू लोक लगा के बैठा है। तू लोक लगा के बैठा है, तेरे को मालूम ही नहीं है कि मैंने लोक लगा दिया है। अल्लाह तेरे दिल में राजी हो के बहुत सारी चीज देना भी चाहते थे, लेकिन आपने तो आपकी स्वयं इच्छा से बंद कर दिया ना, दरवाजा बंद कर दिया। सर मैं आपको एक बात कहूं, एक नहीं, जितनी भी बात कहनी है कह ले पहले। एक क्यों, जितनी बात कहनी है कह ले, मैं सुनूंगा। पाकिस्तानी सूफी सिंगर है ना आबदा परवीन, है? हेलो, फिर से बोलिए आवाज आ रही है? इमरान भाई, फिर से। हाँ, आवाज आवाज आप आ रही बोलिए है। अभी। हेलो, हाँ, बोले इमरान बोलिए भाई। इमरान भाई, सुन रहे हैं सब, बोलिए। परवीन भाई। हाँ, बोलिए बोलिए, आवाज सुनाई रही है इमरान भाई आपकी। स्वामी जी भी सुन रहे हैं, समीर लाल भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, और फैजल भी सुन रहे हैं। बोलिए, आई मीन। हेलो, आवाज आ हाँ रही? सर, असीम साहब आवाज आ रही? हाँ आ रही सर, है। सर मेरी बात सुने परवीन भाई। हाँ, बोले भाई। समीर लाल जी जी आबदा परवीन साहिबा का एक गीत है, जी। सूफी कलाम है, सूफी कलाम। हम्म। वो मैं थोड़ा उसका एक मिसरा है वो सुनाना चाहूंगा। जरूर सुना, जरूर सुना। उसमें है कि अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। आपने सुना स्वामी जी? हाँ, स्वामी जी ने सुना। आगे बढ़ो, सुन रहे हैं सब भाई, इमरान भाई प्यार से सुन रहे हैं, आगे आवाज आ बढ़ो। रहा था सर मेरा? आगे बढ़ो। इमरान भाई, सुई अटक गई कि किया यार, कनेक्शन लगता है कट गया। आगे तो सुना है यार इमरान भाई। सर अरे लोगों तुम्हारा क्या, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। हाँ जी। हम सर वही बंदे हैं, फकीर बंदे हैं भाई, ये दिल वाले बंदे हैं। हम हमारे दिल से क्या गुजरती है हमारा अल्लाह जानता है। बिल्कुल बात सही है। हमारा तुम्हारा अल्लाह और हमारा कोई अलग है? बहुत काका, शुक्रिया, इंशाल्लाह हमारी स्टडी चल काका, रही है, और तुम्हारा भी ज्यादा अल्लाह और हमें हमारा जो अल्लाह है कोई स्वामी अलग जी, है? हम आपकी उम्र के नहीं हैं, पर हम अरे आपसे मेरे बहुत कुछ भाई, सीखते और सीखते ए रहेंगे। इमरान जी, ये ए परवीन भाई इमरान का जी, आज तो टॉपिक कुछ और है, इन टॉपिक्स पे भी अरे जुड़ेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं। ठीक है, पर ठीक जो है, चलो। है आपको, बस आप मेरे कुछ सबको था बहुत दिल बहुत में, मैंने आपको बता दिया। बहुत बहुत मुबारक। आपने जो अभी ये जो सूफी का कलाम पढ़ा ने, वो सूफी का कलाम नहीं है, वो मन की प्रोडक्ट है। ये भी सुन ले तू। क्या है मल्टी सूफी ऐसा प्रोडक्ट? कभी नहीं बोलता, सूफी ऐसा कभी नहीं बोलता कि ए दुनिया वालों, मैं सर जानू और मेरा अल्लाह जाने। क्या सूफी का जी अल्लाह जी, कोई अलग होता है दुनिया वालों से? वही अल्लाह ये है सर सूफी का जो कलाम सबका नहीं है। अल्लाह है। ये मन गढ़ित कोई ऐसी अज्ञानी का ये कलाम है मेरे भाई, समझ लेना। सूफी ऐसा कभी नहीं बोलता कि मेरा अल्लाह और तू तेरा अल्लाह कोई अलग है। मेरा अल्लाह ऐसा एक ही है शब्द सर, वो एक नहीं ही। बोलता। तो जो अभी बात चल रही थी वो, और तुमने तो कोई अल्लाह और तेरा दिल जाने, तेरा अल्लाह जाने, वो तेरे को तो एक छोटे सर्कल में तू चला गया। तेरे को तो नहीं सर, मैंने ओशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी में ले जाना चाहता था अल्लाह, लेकिन तूने क्या कलाम बोल के बोल दिया कि अरे मैं जानू मेरा अल्लाह जाने। दूसरे लोगों को परवीन क्या पटेल लेना भाई देना है? नन्ना कुछ बोलना चाहता है। बोले अभी बोले। फ्रीलांसर बोले। नन्हे बोले भाई। मेरा बोलना समाप्त करता हूँ। आप लोग इंडिपेंडेंस डे का आनंद लो, आनंद करो, मैं सुनूंगा आपसे, ठीक है? जी थैंक यू हाँ, स्वामी जी आपका। हाँ एहसान जी। भाई, एहसान भाई कहें। हाँ, एहसान भाई आ जाए, आप मैदान में आए अब यार, बोले।
हालांकि मैं जरूर कहूंगा कि स्वामी जी जो अल्लाह थ्रू जो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे थे वो आपने गंवा दी है। आज नहीं में भी कल परसों नेक्स्ट ईयर आपको समझ में आएगी। जो स्वामी जी ने रियान ये अल्लाह चीज को ये जी नहीं फोर्स करना नहीं चाहते नो, आप अंदर से वो अंदर से आपके अंदर पटेल वो भाई एक बात कहूँ, बस नहीं, एक नसीब की बात होती है, जब हमारे नसीब में होगी हमें मिलेगी वो चीज। नहीं सही शायद बात आज है। वो दिन नहीं था। दैट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। देखो आप भूखे होगे तो माना उसको माना रोटी अंदर जाएगी, माना वो जिस बंदा वो 10 बंदा 15 रोटी आज के बैठा आज हो, सर पेट भरा हुआ है रेहान भाई के लेक्चरों से। दैट्स ओके, टोटली अंडरस्टैंडेबल, टोटली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना। और आई रियली अप्रिशिएट योर नेचर कि भाई स्वामी जी आप देना चाहते हैं मगर आप भूखे नहीं है, ठीक है ना। तो आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। स्वामी जी ने भी देखो अपना वो प्यार था वो माना सम ब्लेसिंग करके वो हम बैक में चले गए ना, तो ये होता है ना, ठीक है। अभी आप लोगों को सुनेंगे ना हम। हाँ बोलिए आप लोग। फ्रीलांसर बोले एहसान एहसान भाई, भाई। आप आ जाइए। समीर लाल जी बोले कुछ, समीर लाल जी। हाँ, मैं समीर एहसान लाल भाई, जी, जब एहसान भाई का पहले नंबर है और वो अच्छा ओके, एहसान भाई को हाँ, आने तो दें, समीला जी बोलेंगे। ये बंदा क्या बाद है में। कि इमरान भाई पे आपने क्या डाला है, जादू डाला है समीर लाल जी, समीर लाल को सुनना है, समीर लाल को सुनना है। अरे भाई यार कुछ तो क्या माना वो जादू क्या किया है यार, मेरे को भी बताया यार कि भाई इमरान भाई मेरे को भी पूछे कि प्रवीण भाई की सुनना है, प्रवीण भाई की सुनना है यार। हाँ समीर लाल जी हाँ हाँ हाँ, नहीं प्यार है। मैं सोचा था एहसान भाई आ जाते तो हम लोग उनको कुछ देर अच्छा सुनते एहसान भी थे। आप आ जाए, चलो सब इसके बाद समीर लाल शेयर करना चाहते हैं छोटे को पहले वो चांस देना चाहते हैं। फ्रीलांसर जी आ जाए भाई यार। वो आप लोगों शायद का डिस्कनेक्ट हो गए, कनेक्ट कर रहे हैं वो। अच्छा ठीक कर अच्छा रहे हैं कर अच्छा रहे हैं वो। ओके, अच्छा अच्छा। आप इधर से बात अभी कर लें। तो इमरान भाई आप बताए यार, समीर लाल ने किया मैंने जादू आप पे डाला है कि यार रात को समीर लाल को ही सुनना है यार। सर मैं सुनना चाहता हूँ सर, मैंने जिससे स्वामी जी को भी सुना, बहुत आनंद आया हमें, बहुत आनंद आया। हम जो है समीर लाल जी को भी सुनना चाहते तो समीर लाल जी वो चल एहसान भाई अभी वो ईद के हाँ, चार हो गए, आप सुनाए भाई चलिए इमरान। तो अभी तो इमरान भाई आपके यहाँ 1 बज गया, रात का 1:30 बज गया, कितना बज रहा है? 1:10 हो गई हैं। पाकिस्तान सर में। हम 7 बजे उठे थे सुबह सवेरे। ओए हाँ ओए तो ओए नहीं, आपकी ज्यादा पर देर नहीं रोकेंगे। ये पटेल भाई की मोहब्बत में हम अभी तक जाग रहे हैं, वरना हम सो ओए जाते। ओए, नो अरे प्रॉब्लम। अरे अरे, तो शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया तो भाई। अब नहीं आज नहीं, का नींद आ आपका रहा तो सो जाना। समीर लाल को सुन के स्वामी जी को भी सुना, मुझे भी सुना, समीर लाल को सुन के आप सो जाना जरूर यार कल आप कहाँ सुनाते हो सर पटेल भाई? आपकी तो अब लाइव देखते हैं बस। समीर नहीं लाल तो जी आज शुरू हो जाए यार, ये बंदा जी आपको बिल्कुल सुनता बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज आपका इंडिपेंडेंस डे है, सो अपने जी सर, इंडिपेंडेंस डे पे मैं आपको बधाई देता हूँ। और बहुत शुक्रिया सर। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि फ्रीडम इज माय बर्थ राइट, राइट। दिस इज यस सर। व्हाट इज told to us when we were born, when we are थैंक growing यू। up. We are always said, इंटरेस्टिंग टॉपिक हो। we were always said that freedom is my birthright, and always remember that it is your birthright. But are we really free? What does the real freedom mean? क्या बात है। The real freedom is to be free to do what is needed to be done to utilize our real potential to achieve the true purpose of our life. That's the real freedom. क्या बात है, फिर से बोलिए वंस मोर यार समीर लाल जी। The real freedom is to be free to do what is needed to be done to utilize our real potential to achieve the true purpose of our life. We are so busy in God knows what that we are not even free to spend enough time to find out the true purpose of our life, क्या बात है। to find out what we really want to accomplish. We all live in a prison of our own belief system, which are not even ours. That belief system, which is implanted into us by our parents, by our teachers, by our friends, by our society, by our culture we live in, by the country we live in. All those belief systems we have brought into ourselves, it has been implanted into us, and we do not know when it got implanted, who implanted it, but we live in that belief system. We all live our life with those limiting beliefs that we cannot do so and so things. Our beliefs earmark the invisible boundary for our comfort zone. We feel very comfortable within that belief system. We don't want to go out of the comfort zone. We do not want
to rather dare to step out of those invisible boundaries. Those boundaries are not seen by anybody, only we see those boundaries. There are no boundaries, but we see those boundaries. There is a big difference between things we know and things we believe. What we know is our experience, and things we believe in is being passed on to us, implanted by some other people. Sometimes it is passed on from generations to generation, and nobody has ever experienced it, but we believe in it. It is that belief system which never allows us to read impossible as I am possible. If you closely look at the spelling of impossible and just divide I am possible. So spelling itself is telling you that I am possible, but our belief system will always read it as impossible. Breaking the prison door of that belief system is in our hand. Nobody else can open it. It's only us who can open that prison. But unfortunately, no one has told us that you can open it. Rather, we are made to believe that if we try to cross those boundaries, we will suffer. We are made to believe that if we do certain things, it is considered as a sin and we will go to hell when we die. Our belief system has such a strong hold on us that we compromise to make our life hell to avoid the hell after our death. What a irony. We all wait for that one day when things will be okay, when we will get a chance to be successful, when the doors of opportunities will open on us, when the wealth will be showered on us, when the right time will come. And this one day philosophy becomes our mindset and our fate. That one day never comes. Days never come. Days pass by. Clock is ticking continuously. We have limited time. It is up to us to act and achieve our dreams and ideas, or let time pass by. The biggest inventories of ideas and dreams are buried in the graveyards. So what are we waiting for? Let us decide today, now, to break open the prison of our belief system and act without fear of failure. Success zone is always outside the comfort zone. Let us march out and do something which we have never done before. We can never get something different unless we do something different. Let us learn the science of living. It is a step-by-step proven technique. Art of living is a byproduct of it. Let us decide today to taste the true freedom. Let there be no prison. Let there be no boundaries for what we can think of, what we can dream, what we can achieve. Let us not just survive. Let us live. Let us start living. Start living for a purpose. Be our true self. Let us realize our true potential and let there be no stones unturned. Success is sitting right there under that stone. We become what we think. Let us become larger than life. Let us decide today that we'll be unstoppable. We will not stop even if we fail. We will take every failure as an opportunity to learn. We'll learn from our failures and keep going till we fulfill our dreams. The dreams are waiting for our action to become the reality more than us waiting for them to become reality. Take that first step out of comfort zone and then another. Just one step at a time. This is how we run the marathon. One step at a time and keep going. Do not wait for the right time or circumstances to come to you. Success is weatherproof. Go for it at any time. Don't have to wait for any weather or time or zone or culture or community. Just go for it. Journey to success is a marathon which has no finish line. It finishes only when we stop. Let us realize that let us realize that we are our own priority. Let us work on us. On this day, when we are celebrating the Independence Day, we commit that in pursuit of achieving our dreams, we will not allow any prison of our beliefs to hold us. Nothing can stop us to be successful. Let freedom be our mantra of success. Thank you. Wow, 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 wow.
इमरान भाई खुश हो गए समीर लाल जी? तभी तो मैं कह रहा था समीर लाल जी को बोलने दे। सही बात है, सही बात है। आपने क्या सीखा समीर लाल जी, अभी जो शेयर किया उससे आपने वो क्या ग्रैब किया, क्या सीखा इमरान भाई? सर एहसान भाई बात करें फिर मैं बात करूंगा। चलो यार, जी वो काम कर रहे हैं फाइवर पे, फिर उनका टाइम हो जाएगा। नहीं जरूर जरूर। एहसान भाई चलो आ जाइए आप यार, आप क्या शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री यार। इसके बाद इमरान भाई बोलेंगे कि भाई समीर भाई से क्या सीखा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? जी लाउड एंड क्लियर, एकदम बढ़िया। हाँ जी। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर पीपीपी सेलिब्रिटी गुरु पटेल भाई, हमें इनवाइट करने के लिए अपने इतने अमेजिंग प्रोग्राम में। एंड लुक लाइक कि हम वाकई में किसी सेलिब्रिटी की शो में बैठे हैं, और आप हो भी बड़ी सेलिब्रिटी कसम से। सो मैं काफी टाइम से ये देख रहा हूँ, समीर लाल जी की भी सुन रहा हूँ और उनकी भी सुन रहा हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो वो जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रहे थे। आई डोंट नो व्हाट दे वर टॉकिंग, वो क्या बात कर रहे थे। मैंने लेटली ज्वाइन किया, रियली सॉरी, क्योंकि हम लोग कहीं पर बिजी थे, लेकिन हम मिस नहीं करना चाहते थे। उसके बाद समीर लाल जी ने हमें जो बातें बताई कि इंडिपेंडेंस डे हम फेल होते रहते हैं, चाहे हम पिछले सालों में फेल हुए हैं, कुछ भी हुए हैं। अभी एक नया साल शुरू होता है अपनी कंट्री का, हमें अपने ख्वाबों को देखना है, उन पे हमें फोकस करना है, उन पे हमें काम करना है, अपना बिलीव रखना है, और हमें अपने कंट्री का नाम रोशन करना है। वी हैव टू मेक आवर शाइन, आवर कंट्री नेम शुड बी शाइन वर्ल्ड वाइड। हमारा पाकिस्तान है, हमारा इंडिया है, भारत है, कनाडा है, जो भी है, हम किसी भी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, सो वी शुड बी शाइनिंग स्टार ऑफ इट। हमें उनका एक स्टार, एक सेलिब्रिटी बनना चाहिए। सो आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर पीपीपी पटेल भाई, द सेलिब्रिटी, द बिगेस्ट सेलिब्रिटी। फील होता है कि हम लोग सच में किसी सेलिब्रिटी के साथ बैठे हैं, इतने मजे के प्रोग्राम करते हैं कसम से। आज तो मेरा मतलब मुझे नींद आ रही थी, मेरी नींद चली गई, सच बता रहा हूँ। अभी ये देखे ना, ये काम भी कर रहा है सर, फाइवर पे काम भी चल रहा है इसका। मल्टीटास्कर कैमरा ऑफ बन है रहे सर, हैं आपकी फ्रंट कैमरा दिखा है, भाई, उस पे नहीं दिख रहा। कंपनी बना रहे, छाप रहे हैं यार। हाँ ना सर, उनके 7 घंटे पड़े, उनकी गिग पूरी करनी है, उनको ऑर्डर पूरा करना है। पूरी होगी, इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी, नो डेफिनेटली यार। और वही बंदा देखो यार, 14-15 साल के आप हो, और रात के माना 1:20 हुए, 7 बजे उठे हो, फिर भी माना इतना लंबा दिन है, फिर भी माना ऐसा लगता हो कि माना इतने स्फूर्ति वाले हो, इतने वही चक्कर है सर पटेल भाई, ये वो 3 घंटे वाला जो आपको इंटरव्यू में इसने बताया था, ये 3 घंटे के बाद बोलता है चले काम करना है। मैंने कहा कौन सा काम करना है भाई, नींद पूरी करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस वही होते हैं कि सपने ऐसे होते हैं कि जो हमारी नींदें उड़ा दे, ठीक है ना। ऐसे सपने नहीं है तो वरना ढूंढ डालो ऐसे सपने, ठीक है ना, वरना यार इसने जो अपनी फील्ड पकड़ी है ना पटेल भाई, उसमें इसको काम करने में मजा आता है। फिर ये कहता है कि मैं नींद नहीं करूं, काम करूं, फिर इसको नींद भी नहीं आती। मैं तो हैरान होता हूँ इसी बात पे। आप उसकी आप मना एहसान भाई की नींद आप ले लेते हो ना, तो सर मेरा छोटा भाई है ऐसे सर, ये मेरा खाना छोटा भी भाई। देखो यार, खाना भी मना एहसान भाई के, और मेरे हिस्से का भी आप खाते रहते हो, वो तो मैं खाता हूँ सर। खाते रहना भी चाहिए। और देखो स्वामी जी ने वो पता है स्वामी जी पता है क्यों खाता हूँ मैं इनका ऐसे का खाना, क्योंकि ये लोग इतना नहीं खाते हैं इसलिए। हाँ, तो मैंने बिगड़ जाए इससे तो अच्छा है कि आपके पेट में चला जाए, ऐसा ना। आप हमारे यहाँ कहते हैं कि खाना खराब करना भी बुरी बात है, इसलिए स्वामी पेट जी में कुछ जाए तो बोलते हैं, अच्छा है। स्वामी जी कुछ बोलते हैं इमरान भाई, सुने सुने। इमरान भाई तुम खुशी की हम और खुराक, पटेल भाई थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हंसने की खुराक बहुत खाते हो ने, खुले दिल से हंसने की जो आपकी स्टाइल है ना, वो भी आपको बहुत बड़ी स्टेमिना और इम्यूनिटी पावर देती है, और आपको हेल्दी वेल्दी शुक्रिया रखती है। सर, शुक्रिया।
तो हमें सिखा इमरान भाई कि कैसे आपकी तरह ना खुले सांड की तरह हंस सकते हैं यार, ना। स्वामी जी ने बोले मेरी तो ऐसे तो स्वामी जी को पसंद नहीं है, देखो 6 साल से मैं हंस रहा हूँ, बोले कि धीरे धीरे हंस रहे प्रवीण भाई, तो यार तो मेरे को सिखाओ यार इमरान भाई कि स्वामी जी को मेरी हंसी भी अच्छी लगे सर आपकी। नहीं, स्वामी जी के सामने नहीं, फिर बाद भी आपको सिखाते। नहीं नहीं, शर्माओ मत यार, शर्माओ मत यार। कल किसने देखा है यार, अभी अभी सिखाओ यार, मेरे को सीखना है यार आपकी हंसी। उसके लिए अलग शो करेंगे सर, उसके लिए अलग प्रोग्राम करेंगे। देखो शो भी बुक कर दिया बंदे ने ना, दूसरा कितना स्मार्ट है बंदा यार। जमीर लाल जी, इस बहाने हमें दूसरी बार तो आना पड़ेगा ना पटेल साहब के शो में। बिल्कुल, हम भी आएंगे आपके साथ, हम भी आएंगे सुनने आपको। इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे स्मार्टनेस कैसे सीखा है ना ये इमरान भाई, वो तो बताए यार उसका बस सर, यहाँ की मट्टी ऐसी है, हम लोग क्या करें। अच्छा अच्छा, वो भी शिकारपुर की मिट्टी की बात ही है। हाँ ना सर, हिस्टोरिकल शहर के बंदे हैं हम लोग। नहीं, आप पूरे अपने आप हिस्ट्री हो यार, ना हिस्टोरिकल शहर, तो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको चूज किया कि ये आप अपने आप हिस्ट्री हो ना, इसलिए आपको हिस्टोरिकल शहर में अल्लाह ताला जी ने सर, पैदा। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बंदा अपने आप एक हिस्ट्री है यार। बिल्कुल। देखो समीलाल जी भी बिल्कुल, वो भी वो राजी हो गए, सही बात है। स्वामी जी तो राजी है ही, आपकी हंसी पे ही फिदा है स्वामी जी तो। अब आप आराम करें यार, शांति से आराम करें, दोनों भी बच्चे यार। हाँ सर, हम इजाजत लेंगे आपसे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा इमरान आपसे मिलके। और भूल चूक हुई हो तो हम बच्चे हैं स्वामी जी, माजरत माजरत। अरे यार नो और आप सबसे आप चिंता नहीं करिए, आप चिंता नहीं करिए। जो पेरेंट्स के रोल में होता है ना, वो कभी अपने बच्चों पर फोर्स नहीं करता। जी सर। उसको लाइट रखता है, मूड में रखता है, खुशी में रखता है। जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत शुक्रिया। आपका हमेशा स्वागत है। यू ऑलवेज वेलकम। नहीं सर, हम पटेल भाई के कनाडा भी विजिट करेंगे और इंडिया भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं और समीर लाल और स्वामी जी शिकारपुर की विजिट के लिए भी आएंगे। सर आप जरूर आइए, आप जरूर आइए शिकारपुर आएंगे, आप फैन बन जाएंगे शिकारपुर के। और वो गाइड आप करेंगे पूरे शिकारपुर की एक एक कोने नहीं, बिल्कुल गाइड करेंगे आपको, बिल्कुल गाइड करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप आराम करें यार, ना आपका बहुत लंबा बहुत दिन हो शुक्रिया। गया है। और रेहान भाई को हमारी ओर से जप्पी पपिया, जी मैं कल आपके बिल्कुल समीर लाल बताएंगे जी की आपको। ओर से जपिया पपिया और हमारी ओर से, ठीक है ना, तीनों की ओर से देना है। थैंक यू सर, थैंक यू बोल के थैंक यू। देना है कि भाई समीर लाल की ओर से आई, ये स्वामी जी की ओर से आई और ये प्रवीण भाई की ओर से आई, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। आराम करें। आपके थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया कि आप जैसी खुश रहें। जान को पैदा की और बढ़िया से आपको संस्कार दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वाह यार, कितने यार बाबू यार, मजा आ गया। हाँ कितने यार, देखो यार, लाइक जैसे वो नदी वो पर्वत से निकलती है और जैसे वो खुलती खुदती नाचती होती है, ऐसे ही दोनों बच्चे थे वरना, स्पेशली वो भाई तो यार वो लगा था कि समीर लाल जी को बोलने, तो समीर लाल जी को सुना। आपका बना क्या बोलते हैं, लाइक मिनी मी आपका समीर लाल जी से वो मिल गए है ना, कि वो यार एक जमाने में समीर लाल बचपन में ऐसे शादी हुआ करते होंगे। खाते पीते करके ना यार। बहुत बढ़िया। वही आज के वो नए कल्चर में, आज के जमाने के बच्चों में, इंडिया पाकिस्तान में वही है कि वो बैगेज लेके नहीं पैदा हुए यार, और वो फास्ट फूड के जमाने वाले बच्चे हैं, तो मना वो पुरानी मना इतना वो नहीं है उसमें, वो नया पाकिस्तान नया इंडिया उसमें है, तो विच इज वेरी गुड। और देखो स्वामी जी को भी मना कि भाई नहीं यार डिस्प्रिक्ट लगेगा, ऐसा नहीं, स्वामी जी मूड में आज नहीं है, स्वामी जी फिर कभी तो स्वामी जी भी उन्होंने भी अपनी वो माया संग कर दी कि भाई नहीं यार अभी वो रेडी नहीं है। यही है। मोमिन की बात सुनी, ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो बोल देते हैं मोमिन हमको मालूम है। वो तीनों बातें सुनी मोमिन की जो आपने समझाई तो यार वो भी समझे कि भाई हमें मालूम नहीं है। जो कुछ होता है वो समय पर ठीक होता है। ये इसमें कोई किसी को फोर्स क्यों करना है? उसकी मर्जी है तो कोई चीज सीखे, कोई नई मर्जी है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है। सही बात है, एब्सोल्युटली। इसको अपन को कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं एग्जैक्टली, हाँ जी।
मौका मिलेगा तो सीखेगा। अभी जिंदगी बहुत बाकी है दोनों के लिए, हमारे लिए भी, तो इंशाल्लाह जरूर। नदी आती है ना, टकराती है पत्थर से, तो एक दिन में तो निशान नहीं छोड़ती, बार बार टकराएगी। हाँ, बार बार सही बात है, सही। एंड या बढ़िया से बच्चे हैं दोनों यार, यू नो। वो पहले वो बच्चे भी, वो फातिमा थी, वो भी लाइक, यू नो, एक 14 साल की, वो भी 14-15 साल की, वो भी मैंने ब्यूटीफुल स्वामी जी से बात किया, मैसेज भी अच्छा दिया, उन्होंने भी वो जिक्र लिया। तो स्वामी जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि समीर लाल जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं ना? बहुत कुछ स्वामी जी तो कब से मना 7 घंटे 28 मिनट से मना, यू नो, फुल जोश यार, फुल जोश। समीर लाल आप जी भी को बहुत कुछ घंटे से भी है ऑलरेडी ज्वाइन, तो और कुछ शेयर करना चाहते हैं स्वामी जी और समीर लाल जी, फील फ्री। मैं तो शेयर करा भी फ्रीडम पे, जो मैंने लिखा भी दोपहर में बैठा मैं लिखने के लिए, मैंने कहा चलो कुछ लिख लेते हैं, कुछ बोलने नहीं, का। बढ़िया ब्यूटीफुल शेयर किया है ना, बच्चों ने ध्यान से सुना, मैंने भी ध्यान से सुना, एंड ब्यूटीफुल एक फ्लो ब्यूटीफुल हो रहा था, यू नो, एंड ईच सेंटेंस का मजा था, कुछ अपना ही मजा था। नहीं, बहुत बढ़िया है। अब कौन आने वाला, नेक्स्ट कौन है इस पे? नेक्स्ट बस अब पैनल होने वाला है 5 बजे, तो आधा घंटा है हमारे पास, इसके बाद पैनल के बाद 5:30 को आधे घंटे के बाद वो आवर्स रखेंगे। वही है। सब स्पीकर आ चुके हैं। हाँ, नहीं बहुत बढ़िया रहा, मामा लिन से मिलके भी अच्छा लगा। अच्छा, हाँ जी, वो भी एब्सोल्युटली, हाँ ना, वो भी ज्वाइन हुई, और स्वामी जी का भी प्यार मिला दोनों को, स्वामी जी ने भी उनको डिलीवरेंस दिया, विच इज वेरी गुड, यू नो, एंड अच्छे बंदे हैं वो। हाँ जी, मैंने पहले से भी उसको मिस्टर थॉमसन से बात की थी ना, बहुत माना साइंटिस्ट है, बहुत कुछ किताबें भी लिखी है, मगर इतना वो नहीं है कि भाई ना मैं बिग शॉट हूँ, ये हूँ, लाइक, यू नो, क्वांटम फिजिक्स पे काम करते हैं ना? क्वांटम फिजिक्स, हाँ जी, बेसिकली वो दीपक चोपड़ा वाला ही है, बेसिकली वो दीपक चोपड़ा ब्रांड हो गए है थ्रू, यू नो, लाइक हमारी टीवी में थ्रू है सब। और डॉक्टर, एक इंडिया का डॉक्टर जो है, अच्छा, क्लिनिक में बैठे थे और कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर के बाद ज्वाइन होऊंगा, अभी मेरा पेशेंट आ गया है, तो हाँ, वो डॉक्टर प्रणव पच्चीगर, अच्छा, प्रणव पच्चीगर, उसको अगर वो जागते होंगे तो देखो, वो इंडिया में रहते हैं वो डॉक्टर। हाँ, वो सूरत में रहते हैं स्वामी जी। मैं और वो दोनों साथ में पढ़ते थे, मैं पहले उनका सीनियर था, इसके बाद वो मेरे जूनियर से आए, मेरे क्लिनिक में बैठे थे, क्लिनिक में, और कह रहे थे ना मेरा पेशेंट आ गया, मैं बाद में ज्वाइंट हो जाऊंगा। हाँ जी, ये सही आपने याद दिलाया, तो मैं उनको डॉक्टर प्रणव पच्चीगर को रिंग मारता हूँ, देखते हैं क्या होता है भाई। और ये एस नितिन अभी जो पाकिस्तान में गया है, एस नितिन, कौन स्वामी जी? एस नितिन। आप पहले ये डॉक्टर को देख लो, अगर वो जागते हैं, आना चाहते हैं तो बात करा लो। प्रणव पच्चीगर से देख ले, चलो स्वामी जी, ठीक है। अगर वो आना चाहते हैं तो ठीक है। हाँ जी, जरूर। वो कह कर गए थे इसलिए। हाँ ना, सही बात है, ट्रू। स्वामी जी आप कहाँ पे हैं, कौन से शहर में इंडिया में हैं? आप कौन से शहर में हैं? अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा। अभी रसिया और यूक्रेन दोनों प्रेसिडेंटों को मनाने के लिए एक स्पिरिचुअल लोगों का ग्रुप बनाया है। उसकी तैयारी के लिए कुछ दिनों से मैं अभी दिल्ली में ही हूँ, ये तैयारी चल रही है। अभी मैं दिल्ली में हूँ। अच्छा, शायद सो गए लगते हैं। हाँ, आंसर नहीं आ रहा है स्वामी। अभी तो सूरत इंडिया में तो अभी 2 बज गया रात को, तो वो सो गए होंगे ना। 2 बज गए, हाँ जी, तो सोने दो। अभी रहने दो। हाँ जी। फिर तो वो जो ये जो आए हैं पाकिस्तान से, जो आए हैं केसरानी, संतोष केसरानी, हाँ जी, तो ये संतोष केसरानी जी को आज आपने ये कार्यक्रम का इंफॉर्मेशन नहीं भेजा था? संतोष को रह गया लगता है स्वामी जी। नहीं, पहले से भेजना चाहिए ना, अभी रात को वो तो इंडिया में कहीं सो गया होगा वो। नहीं, सही बात है, सही बात, तो उठाने का सवाल नहीं है। संतोष जी को सॉरी यार, रह गए स्वामी जी। मैं आपको ये कह रहा हूँ
इस प्रोग्राम में पाकिस्तान से संतोष केसरानी इंडिया आया है और भारत से एस नितिन गया है पाकिस्तान में। तो ये दोनों को तो अभी इस प्रोग्राम में लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि दोनों का अनुभव भी सुनते न। नहीं, सही बात है आपके स्वामी जी, वो दोनों निकल ही गए मेरे दिमाग से स्वामी जी, मैं माफी तो चाहता ये इतना अच्छा प्रोग्राम था कि वो दोनों को अगर बुलाया तो दोनों साइड से हम अनुभव भी सुनते उसके। नहीं, जरूर है, उनका इंटरव्यू लेके दोनों का इंटरव्यू जरूर लूंगा और अनुभव सुनूंगा स्वामी जी। इसमें कॉन्फ्रेंस में दोनों ही मिस हो गए हमारे मेरे से, मगर डेफिनेटली ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो रात को देखो, आप तो सुने दो, सुने दो। एस नितिन भी पाकिस्तान में रात का 1:30 बज गया है, वो सो गए होंगे। हाँ जी, और हाँ जी, अभी उनको मैंने अभी ये सोचा है। संतोष केसरानी भी उदयपुर गया था। लास्ट में मेरे को मैसेज किया था कि मैं उदयपुर राजस्थान जा रहा हूँ। अच्छा जी। फिर ये 24 तारीख तक है इंडिया में, ऐसा बताता था। तो हो सकता है दिल्ली में मुझे मिलेंगे। जरूर जरूर जरूर। वो डॉक्टर भरत ने पाकिस्तान वाला डॉक्टर, जो वेव्स ऑफ काइंडनेस वाला, वेव्स ऑफ काइंडनेस वाले डॉक्टर बाबू। ओके, और उनका क्या डॉक्टर कौन है, नाम है डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय, हाँ जी। हाँ, तो डॉक्टर संजय को ये प्रोग्राम, आप ऐसा प्रोग्राम करते हो तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं भेजते हो? यार डॉक्टर संजय को मैंने भेजा ना, वो लाइव भी भेजा मैंने डॉक्टर नहीं, संजय। भेजा था आपने, उसको मालूम है ना ये प्रोग्राम हुआ, मगर डॉक्टर संजय ने वो चेक नहीं किया है, तो लगता है कुछ अपने डॉक्टरी में बिजी हो गए ऐसा लगता है। ठीक है, आपने भेजा था ना, बस मैंने वो पूछा था अभी कि वुड यू लव टू आपने ये प्रोग्राम का उसने पहले मैसेज किया था ना, बस इतना ही जानना मैंने था। मैसेज फ्राइडे को भेजा था डॉक्टर संजय को। हाँ जी। रेहान अल्लाह वाला को भेजते हो ये रेहान भाई प्रोग्राम को का? एवरी कॉन्फ्रेंस में भेजता रहता हूँ, रेहान भाई जान को भी ऑलवेज एवरी कॉन्फ्रेंस में भेजता रहता हूँ। अभी भी उसको दोनों बच्चों को बोला था कि आप रेहान भाई को लेके आना, आ सकते हो, तो दोनों बच्चों को भी मैंने बोला था। ये रेहान भाई को ये प्रोग्राम का लिंक, अब इंफॉर्मेशन भेजा था, मैं ये पूछ रहा था। मैंने भेजा था स्वामी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मगर वो भेजा भी था, अपने ठीक है, ठीक है। सभी मेरी सभी इवेंट का प्रोग्राम के लिए इनविटेशन जरूर भेजना। अभी दूसरी बात, ये जो बोले। कर्ट आता है, कर्ट और ये इंडिया का जयपुर वाला डॉक्टर गोस्वामी आते हैं ने, हाँ जी, ये दोनों को आप प्यार से समझा देना कि आपका ये कर्ट जो कुछ बोलता है ना, वो उसको तो आप पता नहीं, आप लोगों को तो सुनाई देता था, वो इतना धीमा धीमा मेरे को आवाज आ रहा था ना, धीमा धीमा के वो क्या क्या बोला, आज मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने यहाँ कान, मैं इतना कान यहाँ नजदीक में रख के मैं सुन रहा था, फिर भी मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया कि उसने क्या आज बोला। स्वामी जी तो कर्ट को, हाँ बोले, आपको कभी भी कर्ट को ये बोल देना है कि तुम जब जब ये हमारे प्रोग्राम में आओ तो उसकी आवाज ऊंची रहे, वॉल्यूम ऊंचा रहे, धीमे धीमे बोलते हैं कि पता नहीं खाना खा के आवे, मतलब मुख्य मुद्दा ये है। खाना खा के आए, अगर तो उसका सिस्टम ठीक करे ना, इसमें क्या है, मोबाइल उसका सिस्टम ठीक करना है। और वो बेचारा डॉक्टर गोस्वामी को इतना मालूम बेचारे को नहीं, वो कान में भरा के बैठा था, कान में वो कुंडल भरा के बैठा था, वो निकाला तो आवाज आने लगी। बीच में 3 बार 4 बार तो वो क्या बोल रहे थे, आवाज ही बंद हो गई थी। तो ये डॉक्टर गोस्वामी का आज का नहीं है, बहुत समय से उसको अपनी सिस्टम ठीक करनी है। सही बात है, दोनों को बता दूंगा मैं कि भाई ने स्वामी जी को सुने नहीं दिया, तो मेक श्योर कि भाई आप अरे मेरे को एक को नहीं, ये बात करने का तरीका सीखना है, मेरा नाम नहीं देना है। ओके ओके जी, जरूर फिर वो नाराज हो जाएंगे मेरे से। ओके ओके ओके, नहीं 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 हुआ। आपको ये कहना है कि कोई एक्सपर्ट, कोई एक अच्छा जानकार व्यक्ति से तुम्हारी ऐसे प्रोग्राम में बात करने की सिस्टम सुधारो, जरूर, ताकि सामने वाले व्यक्ति कुछ सुने तो सही, समझे तो सही। जरूर स्वामी जी, सही बात है। जैसे ये 2 अभी पाकिस्तान वाले आए थे, ये इमरान और वो भाई आया था ना, वो दोनों की कितनी आवाज आती थी। लीन चिटक की भी आवाज आती थी अच्छी। वो जो पाकिस्तान की एक युवक लड़की जो बहन आई थी, रईस, रईस, हाँ,
रईस फातिमा, उसकी भी आवाज एकदम ठीक आई थी। अभी आप बोल रहे, आपकी आवाज भी ठीक आ रही है। समीर लाल जी की भी आवाज ठीक आ रही है। आपने पहले आपका वॉल्यूम भी ठीक नहीं रखा था। मैंने कहा कि आपका वॉल्यूम बढ़ाओ, तब तो आपने वॉल्यूम बढ़ाया। तो ये छोटी छोटी मैटर जो है ना, छोटी छोटी मैटर बहुत मायना रखती है। जरूर जरूर स्वामी जी। अब से एक साउंड रूम बनवा लो पीछे, वो जो कंसल्टेंट बैठ के बताए किसका आवाज ठीक, फिर उसको सबको ठीक करा के तब चालू करवाओ। अच्छा जी, शुक्रिया। हाँ जी, नहीं जरूर, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती है, सही बात है। नहीं देखो वो क्या बोल रहा है, कट क्या बोला ने, मेरे को लगभग आधा घंटा उसने बोला ने, मेरे को ज्यादातर समझ में ही नहीं आया। बोलो तो मेरा तो आधा घंटा वैसे ही गया ने। नहीं जरूर स्वामी जी, समझ गया आपकी बात। वो मोबाइल कितना दूर रखते होंगे पता नहीं, उसको आप समझा देना। वो बोलते हैं ना, धीमी धीमी आवाज आती है, आप लोग समझते होंगे, आप लोगों को आवाज आता होगा पता नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत समझ में आता है। हाँ जी। तो वो मोबाइल दूर रखता होगा, कुछ भी होगा। कट को ये भी बूढ़ा हो गया है, भले स्पिरिचुअल तो है लेकिन बूढ़ा हो गया, उसको भी थोड़ा उसकी ये सिस्टम ठीक करानी है आपको। जरूर जरूर। अच्छा जी, ठीक है ठीक है स्वामी जी, जरूर। और दूसरी एक बात भूल ना जाए, ये जयपुर वाले इंडिया के डॉक्टर जो गोस्वामी है, हाँ जी, उसने जो बात रखी कि यूक्रेन से 1200 मेडिकल स्टूडेंट भारत में आए हैं, खास करके राजस्थान में। वो राजस्थान के मेडिकल स्टूडेंट वालों को ही थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं और उसका लिमिटेड काम करना चाहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। उसकी बात से लगा। लेकिन सिर्फ राजस्थान में जो बसे हैं स्टूडेंट जो यूक्रेन पढ़ने गए थे, उसका ही कल्याण क्यों करना है? करना है तो भारत का सब स्टूडेंट जो यूक्रेन में गए थे उसका करो। और मैं तो ये कहता हूँ, मैंने जैसे कहा ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जितने हमारे नेबरिंग कंट्री है, वो सब बच्चे जो यूक्रेन में पढ़ने गए थे, उसको अभी आगे कहाँ एडमिशन मिल सकता है। उसने जो 2 कंट्री का नाम दिया, उसने 2 कंट्री का नाम भी दिया ना कि ये 2 कंट्री में हमारा एक कंपनी है, उसका कोई कंपनी जैसा बोला, उसके जरिए से वहां हम एडमिशन कराएंगे। उसने कहा ना, हाँ जी हाँ जी, जवाबदारी लिया कि हम वहां उसको एडमिशन कराएंगे ताकि उसका साल न बिगड़े, समय न बिगड़े। सही बात है। तो यूक्रेन सेवा नामक एक प्लेटफॉर्म बनाया था। जब रसिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया, भारत के देशभक्तों ने, जो यूक्रेन में कुछ देशभक्त रहते थे, अच्छे लोग रहते थे, और बीएपीएस के स्वामीनारायण संप्रदाय के साधु ने, अपने सेवक वहां रहते थे, ये सब मिलके यूक्रेन सेवा ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया। व्हाट्सएप से भी वो ग्रुप दिखता था, यूक्रेन सेवा। व्हाट्सएप में भी वो ग्रुप दिखता था। तो भारत के जितने भी स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उसके माँ बाप सारे मैसेज ये यूक्रेन सेवा में भेजते थे। उसका बच्चा कहाँ है, क्या उसका मैसेज आया, कहाँ तकलीफ में है, क्या उसके कौन सी तकलीफ है, सारा मैसेज यूक्रेन सेवा नामक प्लेटफॉर्म पे आता रहा। हमने भी बरनाला के 24 स्टूडेंटों को यूक्रेन में से जल्दी फ्री करवाया। हमने खुद ने वो हमारी पहचान लगाई थी। लेकिन यूक्रेन सेवा ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना होता तो मैं ये बरनाला पंजाब के 24 स्टूडेंटों को कैसे यूक्रेन से छुड़वाता। सही बात। तो ये जो डॉक्टर गोस्वामी और आप दोनों मिलके ऐसा ग्रुप बनाओ, ऐसा प्लेटफॉर्म, ग्रुप नहीं ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ, ताकि भारत के और सराउंडिंग नेबरिंग कंट्री के जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल और फार्मेसी के स्टूडेंट जो यूक्रेन में पढ़ते थे, उसको आगे एज पर डॉक्टर गोस्वामी का जो इंस्ट्रक्शन था, कौन सी कंपनी है, फॉर्म अपलोड करो, वो फॉर्म भरेंगे, कौन सी कंट्री में कहाँ एडमिशन मिलेगा, उसकी फीस क्या रहेगी, वहाँ एकोमोडेशन, फूड की फैसिलिटी, एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटी है,
सब वो आप वो प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया करो। ये सेवा बहुत अच्छी सेवा है, अभी जरूरी भी है। तो डॉक्टर गोस्वामी जी का अनुभव भी है, उसका सेवा का लाभ लेना है। ठीक है, जरूर स्वामी जी, वो डॉक्टर जी से बात करूंगा और डिटेल में वो प्लेटफॉर्म शुरू करेंगे। तो जैसे यूक्रेन में से स्टूडेंटों को सेफली टाइम से निकाला, भारत सरकार ने भी बहुत मेहनत किया उसमें। अगर भारत सरकार इनिशिएटिव नहीं लेते तो इतना नहीं हो सकता था, कहीं जाने भी जा सकती थी, कहीं स्टूडेंटों की जाने भी जा सकती थी। लेकिन भारत सरकार ने और कुछ देशभक्तों ने ये प्लेटफॉर्म के जरिए से यूक्रेन सेवा, ऐसा अभी भी वो प्लेटफॉर्म जारी है। अभी भी वो प्लेटफॉर्म बंद नहीं किया है। तो मुझे पंजाब से मैसेज मिला कि स्वामी जी यूक्रेन सेवा नामक एक प्लेटफॉर्म बना है। हमारे बरनाला सिटी से 24 आसपास के 24 स्टूडेंट वहां यूक्रेन में फंसे, उसके माँ बाप यहाँ रो रहे, तो आप उसमें कुछ करिए। तो मेरी पहचान भारत में थी, उसकी पहचान जो ये प्लेटफॉर्म बनाने वाले मेन जो ऑपरेटर थे ने, उसका नाम नंबर भी मेरे पास आ गया व्हाट्सएप से। अच्छा। फिर मैंने वो लोगों को, वो दोनों को मैंने मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट किया। फिर मैं मैसेज भेजता रहा कि भाई बरनाला सिटी के यहाँ स्टूडेंट 24 स्टूडेंट है, उसको मदद करो, ये करो वो करो। तब जाके सिर्फ 2 दिन में वो बरनाला के 24 स्टूडेंट सेफ वहां पहुंच गए बॉर्डर पे, और तीसरे चौथे दिन में भारत भी आ गए। क्या बात है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आप तो ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने में भी आपको थोड़ी अनुकूलता आ गई है। तो पहले गोस्वामी जी को पूछो कि कौन सी कंपनी इसमें मदद कर रही है एडमिशन दिलाने के लिए। अच्छा। फीस में क्या कंसेशन मिलेगा। तो भारत सरकार को भी हम लिखेंगे ना, तो भारत सरकार भी उसमें मदद कर सकती है। जैसे राजस्थान सरकार ने राजस्थान के स्टूडेंट के लिए कुछ बेनिफिट डिक्लेयर किया होगा। तो जैसे यूपी के कुछ स्टूडेंट हो गए, तो योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है, तो यूपी गवर्नमेंट की ओर से, भारत सरकार की ओर से भारत के सारे स्टूडेंटों को बेनिफिट मिल सकता है और टाइम सर उसको एडमिशन हो सकता है। तो आप थोड़ा दोनों मिलके इस प्लेटफॉर्म बनाओ और उसमें थोड़ा कंसंट्रेट करना है। ठीक है, ठीक है स्वामी जी, जरूर। और कोई आदेश? बस ये देखो, एक जो आपके हाथ में है आप कर सकते हैं वैसा काम। फिर भी 2-3 दिन में प्लेटफॉर्म बना लो। टाइम आपका भी तो जिंदगी का टाइम देखना है ना, सिर्फ इसके पीछे थोड़ा आप बैठे हो। आपको रूटीन काम करते करते अगर टाइम मिलता है तो वो प्लेटफॉर्म बना लेना 2-3 दिन में। जरूर। हाँ जी, समीर लाल जी, और कुछ शेयर करना हो यार? बस सब शेयर ही है, और क्या है। हाँ जी, नया बुक की तैयारी चल रही। क्या बात है। अच्छा, स्वामी जी उन्होंने एक बुक तो लिखी है, दूसरी एक बुक लिख रहे हैं। हाँ जी, तो उनको ब्लेसिंग्स भी दे स्वामी जी की, बढ़िया से। बिल्कुल, स्वामी जी की ब्लेसिंग्स जरूरी है, हर काम में जरूरत है। स्वामी समीर लाल ने एक बुक तो लिखी है ऑलरेडी, स्क्वीज द ऑरेंज। अच्छा, बुक लिखी है। हाँ, आप दूसरे भी लिख रहे हैं, तो उनके ब्लेसिंग्स आपसे चाहते हैं कि आप उनको जरूर जरूर। क्या टाइटल रखा है? टाइटल क्या रखा है? ये पहली बुक है स्वामी जी, पहली बुक है स्क्वीज द ऑरेंज। ऑरेंज को स्क्वीज करो। स्क्वीज करना माना दबाना, जूस निकालने के लिए हम स्क्वीज करते हैं ना, दबाते हैं ना, ऐसे। योर मंत्रा फॉर सक्सेस, सक्सेस के मंत्रा उस बुक में हमारे वो समीर लाल ने बताए हैं दुनिया वालों को। अब दूसरी बुक लिख रहे हैं। नहीं, फिर से जरा वो ओट का वो जो टाइटल मेरा ध्यान में सुनने के लिए ऐसे आ गया था, वो जरा बताओ तो। फ्रंट पेज क्या है? 1 मिनट। स्क्वीज द ऑरेंज। हाँ जी, ऑरेंज को दबाकर जूस निकालो, ये मतलब है ना उसका।
ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, सर उसमें मंत्रा फॉर सक्सेस, सक्सेस के मंत्रा उसमें बताया है कि सक्सेस कैसे पाया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसमें स्वामी जी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर, उसमें बोलिए। मैंने बात करी है लाइफ के डिसिप्लिन की, कि कैसे जी जी डिसिप्लिन में लाइफ जियोगे तो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो जी उसका मेटाफोर ये था कि आप सवेरे अगर जल्दी उठते हो जी तो आपको जी अपने लिए जो समय मिलता है सवेरे, जब सारी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त आप जग जाते हो, तो आपको जो अपने लिए समय स्पेंड करना है, खुद को प्रायोरिटी बनाना है, वो कैसे कर सकते हो आप। तो जब आप सवेरे उठने के बाद में अपना मेडिटेशन करके किताब वताब पढ़ के जब आप बाहर निकलते हो तो उस समय सूरज उगता होता है, और जब सूरज निकलता है तो पूरा आसमान ऑरेंज हो जाता है, एकदम नारंगी रंग का आसमान हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रकृति आपसे कह रही है कि अब तुम दिन शुरू करो अपना, और इस दिन को जो मैं तुम्हें संतरा दे रहा हूँ या ऑरेंज तुमको सौंप रहा हूँ, उसको जितना एक्सक्यूज कर सकते हो उतना एक्सक्यूज करो। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको एक्सक्यूज करना चाहते हो और पूरा भर के गिलास जूस पी लेना चाहते हो, आधा गिलास जूस पीना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं निचोड़ना चाहते, देखना भी नहीं चाहते, तो सब कुछ आपके ऊपर है। आप जितना चाहो उतना जूस निकाल सकते हो, उतना जूस पी सकते हो। शाम को फिर सूरज ढलेगा और वो सारे इतनी ज़्यादा ऑरेंजेस हैं कि आप जितने भी ले लोगे उसके बावजूद भी फिर से आसमान पूरा नारंगी हो जाएगा, और वो सारे संतरे लेके वापस लौट जाएगा। अगले दिन सवेरे फिर आएगा, और बिना ये सोचे समझे कि आपने कल स्क्वीज किया था कि नहीं किया था, कितना किया था, आप सोते रह गए, आपने देखा ही नहीं हमारी तरफ, बिना किसी चीज़ की सजा दिए या बिना किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट किए, वो फिर से सारे ऑरेंजेस आपको देगा। हर रोज एक नई शुरुआत करने का मौका देगा। आपके ऊपर है, आप किस दिन से ऑरेंज निचोड़ना शुरू करते हो और कितना निचोड़ लेते हो अपने लिए। जिंदगी एक ही है, अगर आप हर रोज जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये उसका मीनिंग है कवर का। एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट। ये आपने जो नेचर नेचर के साथ, यानी कि सनराइज सनसेट के साथ, और उसका जो कलर जब कलर हो जाता है तो ऑरेंज, यानी ऑरेंज सैफ्रॉन कलर हो जाता है आसमान में। ये अद्भुत आपने ये कॉम्बिनेशन पसंद किया है। जी, और आशीर्वाद है आपका स्वामी जी। एग्जाम्पल भी आपने ऑरेंज का जिंदगी के साथ रखा है। तो ये किताब जो है रियली एक्सलेंट एक्सलेंट प्रूफ होगी मानव जात के लिए। जी, मैं दिल से परमात्मा से आशीर्वाद लेके, शक्तियां लेके इस बुक को अच्छी तरह से पब्लिश हो जाए और मानव जात इसका भरपूर फायदा उठाए, ऐसे मैं परमेश्वर की ओर से आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। और परमेश्वर इस काम में आपको सफल करे, कामयाबी करे, और अच्छी तरह से आराम से ये पब्लिश हो जाए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। वो तो हो गई स्वामी जी, दूसरे लिख स्वामी रहे जी हैं। यहाँ पे पब्लिश हो गई, अमेजोन में चली गई। और अच्छा। इंडिया में भी एक पब्लिशर है मंजुल पब्लिकेशन, हाँ जी। जो हाँ जिनके पास सारे राइट्स हैं इनके, आपके शेट्टी की किताबें हैं और काफी बड़ी बड़ी किताबें वो लोग छापते हैं वहां से, सेल्फ हेल्प की। उनकी सब दुकानों में, ठीक है। स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, सब जगह नेटवर्क है उनका। तो वो उन्होंने इंडिया में वो मेरा काम ले लिया और वो छाप भी दी किताब। मेरे पास आने वाली 8-10 दिन में मेरी कॉपीज, लेकिन ठीक वहाँ है। इंडिया में भी सब दुकानों पे पहुंच जाएगी अगले महीने तक किताबें ये। ठीक है, ये इंग्लिश में होगी ना? हाँ, ये इंग्लिश में है। उनका अगला स्टेप ये है, इंडिया वाले मंजुल वाले जो हैं वो फिर उसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी निकालते हैं। तो इसके बाद अभी इंग्लिश में ही निकाली उन्होंने, इसके बाद वो उसका ठीक है। हिंदी ठीक रूपांतरण है। कराएंगे, हिंदी में अनुवाद करा के हिंदी में निकालेंगे, फिर मराठी, ठीक है। गुजराती, इन सब भाषाओं में निकाल के उन प्रदेश के स्तर पे वो जाएंगे। उनका सिस्टम ही वही है उनका काम करने का। ठीक है। ये ठीक है। वो पब्लिकेशन कहाँ है, कौन सी सिटी में है? भोपाल में है, मंजुल पब्लिकेशन। भोपाल भोपाल। जी, भोपाल में। मंजूर मंजुल, पब्लिकेशन। हाँ। ठीक। जी, जी, जी। ठीक है। ठीक ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे कनाडा में जो है हाँ कई स्पेलिंग में हम लोग जेड लगाते हैं, जिसको कि इंडिया में एस लिखते हैं, उसकी जगह पे जेड की जगह एस लिखते हैं। हाँ कनाडा जी। में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं स्पेलिंग्स जो कि कैनेडियन स्टाइल में या अमेरिकन स्टाइल में लिखी जाती हैं, और इंडिया में वो ब्रिटिश स्टाइल में लिखी जाती हैं। हाँ जी। हाँ तो जी। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन लोगों ने इस किताब को एडिट किया इंडिया में, तो उन्होंने 3000 स्पेलिंग्स बदली इस किताब के अंदर, रियली। हाँ जी। जस्ट टू इंडिया से मैच कराने के लिए। नहीं, तो अच्छा अच्छा है, अच्छा है। हाँ, हाँ, जैसे हमारे यहाँ मैक्सिमाइज लिखेंगे तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं आखिरी में, ऐसे ही मैक्सिमाइज को इंडिया में, और हम्म, यहाँ पे अपन लिखते हैं जेड ई आखिरी में। हम्म। वो जो उसका इंडियन रूपांतरण करना था उसमें ही उन्होंने 3000 स्पेलिंग मिस्टेक निकाल के उसको ठीक किया वहां पे।
अच्छा अब किया, अच्छा किया। हाँ, अब वो क्योंकि इंडिया वाले बोलते हैं तो इंडिया वाला वो कहने लगा कि इंडिया वाले जब पढ़ेंगे तो कहेंगे इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ये क्या सिखा रहे हैं हमको। राइट राइट जी, जी। तो इसलिए ये इसलिए होता वो है, सच्ची बात है, हाँ, सच्ची बात है। वो समझने से वो ऐसा लोग होता समझ है। नहीं पाएंगे कनाडा में ऐसा लिखा जाता है, वो तो कहेंगे इसने गलत लिखा है बंदे ने। हाँ जी, तो हाँ वो जी। इंग्लिश वाली आ गई किताब, वो तो उनके अभी नेटवर्क में जा रही है, मेरे पास भी भेज रहे हैं, अगले महीने तक सब जगह पहुंच जाएगी दुकानों में, और फिर वो हिंदी के लिए शुरू करेंगे इस पे। ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रयास। कितने जी। कितने पेज की बनी है, कितनी पेज की बनी है? ये किताब स्वामी जी है 200 पन्ने की है, 180 200 पन्ने की, पेज, 180 200 पेजेस, पेज, 200 180 पेज ने? या 180 पेजेस या 180 पेजेस। अच्छा अच्छा, जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है। जी बहुत अच्छा प्रयास है। जी। अच्छे तब विचारों स्वामी को, दूसरी लिख रहे हैं, स्वामी दूसरी बुक अच्छे लिख रहे हैं, विचार। उसके लिए ब्लेसिंग चाहिए उनको आपके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं नई किताब लिख रहा स्वामीनाथ, हूँ, हाँ बोले। अब मैं नई किताब लिख रहा हूँ एक, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके लिए आपकी ब्लेसिंग चाहिए, और किताब लिखना शुरू कर दिया है। उसका नाम अभी पक्का नहीं किया, लेकिन उसका नाम रहेगा समथिंग 360 नेटवर्क, 360 डिग्री नेटवर्क। तो जैसे हमारा चांदा रहता है ना, तो वो पूरा अगर सर्किल करेंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। तो उसमें ये समझा है कि नेटवर्क जब आप करते हो तो नहीं होता कि अपने साथ वालों के साथ सिर्फ करो, अपने बराबरी वालों के साथ, अपने ऊपर भी करो, अपने नीचे भी करो, अपने साइड में भी करो, लेफ्ट में भी करो, राइट में भी करो, हर एंगल पे जैसे जैसे लोग आपको मिले, हर तरह के लोगों को जोड़ो अपने नेटवर्क में। कुछ से आप बहुत सीखोगे, अच्छा। कुछ को आप सिखाओगे, कुछ से आप लोगे, कुछ को आप दोगे, एंड वो कहलाता है बैलेंस नेटवर्क। जी तो जी। इसमें कैसे आप अपने नेटवर्किंग को ऑप्टिमाइज करो, कैसे उससे मैक्सिमम बेनिफिट दो, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। अपने आप आएंगे बेनिफिट लौट के, लेकिन आपको कोशिश ये रखना है कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर सकते हो, कैसे लोगों को दे सकते हो, कैसे लोगों को अपने कॉन्टैक्ट का फायदा उठाने दे सकते हो। जब आप ये कर लोगे तो अपने आप बाकी लोग आपके पास पलट के आएंगे और आपको सारी चीजें वापस रिटर्न में मिलेंगी जितनी आप कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, तो उस पे वो सच्ची बात किताब, है। हाँ, उस पे वो किताब लिख रहा हूँ। और चूंकि अभी इस वक्त ऐसा है कि पहले एक जमाना था कि हम लोग नेटवर्किंग इवेंट किया करते थे, या ऑफिस जाते थे तो ऑफिस में लोगों से मिलते थे, उनको जोड़ लेते थे। अब चूंकि ऑफिस जाता नहीं है आदमी, घरों से काम कर रहे हैं, एक दिन के लिए अगर जाता भी है ऑफिस तो उतना समय नहीं होता उस दिन की लोगों से मिल के अपने नेटवर्क को बढ़ाए। तो कैसे उसको डिजिटल वे में कैसे करो। अब डिजिटल कॉफी कैसे हो सकती है? अब अगर मैं प्रवीण भाई को बोलूं कि प्रवीण भाई चलो कॉफी पे चलते हैं, तो बोलेंगे यार कोविड में तो हम किधर जाते ही नहीं है। हो सकता है घर में कोई बुजुर्ग में आदमी रहता हो तो वो नहीं निकलना चाहते, तो आप उसमें आज की डेट में क्या कर सकते हो, एक उनसे एड्रेस लेके ऊबर से उनके घर पे कॉफी भिजवाओ, एक अपने लिए मंगाओ और आपस में बैठ के जूम पे पियो। तो वो एक अलग अद्भुत अनुभव हो गया। प्रवीण भाई को भी हमेशा याद रहेगा कि यार इसने मेरे यहाँ ऊबर से कॉफी भिजवाई थी और तब हमने सही साथ में बात, कॉफी पी थी सही बात। ऑनलाइन बैठ के। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस आपको सारी जिंदगी याद रहेगा। That's true. और आपका जब फिर नेटवर्क होगा और जब भी आपके लायक कोई काम निकलेगा या आपको कोई जरूरत होगी, तो प्रवीण भाई को जो पहला आदमी याद आएगा, यार ये काम किसी से करवाना, चलो स्पीच दिलवाना है हमको, किसको? वो समीर भाई को पकड़ते हैं। सही बात। तो दिस इज हाउ यू कल्टिवेट एंड रीप द बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल सेटिंग। अब जैसे स्वामी जी से हम आज तक कभी पर्सनली मिले नहीं है, लेकिन अभी लगता भी नहीं कि नहीं मिले कभी पर्सनली, सही बात है। That's है ना? इतनी बार हम लोग ये तो है। ऑफिशियली बातचीत कर चुके। तो ये तो एक तरीका ही है ना कि नेटवर्क का, कि जितनी बार मिल सको, जितनी बार अच्छी अच्छी बातें कर सको, जितनी बार अच्छी अच्छी बातें सीख सको, उतनी बार करो, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये तो हम लोग एक ही हैं। exactly. और ये लगने की बात है, असल में जो एक्चुअल चीज होती है वही लगती है आगे चल के, है तो सब एक ही हम, लेकिन हम सिर्फ पहचान नहीं पाते कि हम एक है, और हम अपना झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, कभी हिंदू हो रहे हैं, कभी मुसलमान हो रहे हैं, कभी क्रिश्चियन हो रहे हैं, कभी हम खुदा की बात करते हैं, कभी अल्लाह की बात करते हैं, कभी भगवान की करते हैं। एंड इनफैक्ट आप ये देखो, जब आप निकलते हो सड़क पर तो सारी प्रॉपर्टी तो आपकी है, हवा आपकी है, आसमान आपका है, पेड़ आपके हैं, पत्ती आपकी है, सब है। वो मेरे बाजू से मुसलमान निकल रहा है, उसकी भी वही सब सारी चीज प्रॉपर्टी। तो जब प्रॉपर्टी एक ही है सब तुम्हारी और हमारी, तो फिर भाई हुए ना। Exactly. एक ही घर वालों की तो प्रॉपर्टी होती, बाकी तो किसी बाहर वाले की तो होती नहीं है। हम्म। तो जब आसमान तुम्हारा मेरा एक, हवा तेरी मेरी एक, प्रकृति तेरी मेरी एक, अगर वो ऑक्सीजन देना बंद कर दे, नहीं भाई तू मुसलमान है तुझको नहीं देंगे ऑक्सीजन, तेरी प्रॉपर्टी नहीं हूं मैं, तो हो गया काम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसलिए जब सब कुछ एक है, तो हम पता नहीं कौन सी चीज से वो डिवाइड करके बैठ गए आपस में। और फिर अब हम उसमें जुड़ा लगाते हैं कि साहब झंडा नहीं टांगोगे तो आप तो देश के ही नहीं हो रहने वाले।
इसीलिए मैंने अभी आपने मेरी फोटो देखी होगी फेसबुक पे, मैंने कनाडा का झंडा लगाया, क्योंकि अगर उसी से राष्ट्रभक्ति तय होती है तो मैं तो कनाडा का रहने वाला हूँ, मैंने लगा लिया कनाडा का 15 अगस्त को। तो अच्छा हम जी। इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों पे चले गए हैं, उसकी जगह हम अगर उसको लार्जर स्केल पे देखें, इंसानियत के स्केल पे देखें, तो सच में जीवन सफल है। वरना तो डिवाइड करके बैठ ही सकते हो आप, कभी भी अपना कमरा बंद कर लो और खूब खुश हो जाओ कि मैं हिंदू तू मुसलमान, इसमें क्या है, बढ़िया है, बने रहो आप। सही बात है यार। वही चीजें दूर करना है। और ये नेटवर्किंग की जो मैं बात करता हूँ, नेटवर्किंग इज रिकॉग्नाइजिंग द ब्रदरहुड, रिकॉग्नाइजिंग द सेमहुड, ह्यूमनहुड, इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनीथिंग एल्स। जब भी हमें नौकरी चाहिए होती तब तो हम नहीं पूछते कि कहाँ के रहने वाले हैं आप, तब तो हम कहते हैं यार नौकरी दे दे किसी तरह, बंदा हो तो कहीं कुछ भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो क्रिश्चियन हो, नौकरी बढ़िया है, हमको दे दे नौकरी। जब नौकरी लग जाती तब हम ढूंढना शुरू करते हैं वहाँ पे हमारे कितने हिंदू भाई हैं। नहीं, मुद्दे की बात कही, सही बात की आपने समीरलाल जी, एब्सोल्युटली ट्रू। जीवन मृत्यु के बीच के सारे खेल हैं। आप मरने लग जाओगे, अभी मरने लग जाओगे और आपको खून की जरूरत पड़ेगी, आप कभी बोल के देखना, किसी से पूछना कि यार खून दे रहा है तो उसे मुसलमान है, मैं नहीं ले पाऊंगा उससे खून। सही बात है। ये सिर्फ पटाखे खरीदने में हिंदू मुसलमान नजर आता है कि यार उससे पटाखे नहीं खरीदूंगा, वो मुसलमान है। लेकिन अभी किडनी की जरूरत पड़ जाएगी तब तुमको, मुसलमान तो छोड़ो, तुमको कोई से भी कास्ट का आदमी देने लग जाएगा, आप तुरंत ले लोगे, भैया यार भगवान हो गया, वो हमें किडनी दे रहा है अपनी। सही बात है, सही बात है, बड़ी बात तो है। हर चीज को किडनी मान के चलो ना, जीवन में हर चीज की आवश्यकता है, हर चीज उतनी ही जरूरी है जितनी किडनी है, जितनी लीवर है। और जब आप हर चीज को वैसे ही मानने लगोगे तो आप भूल जाओगे फिर कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू, सब इंसान ही नजर आएंगे आप उसके बाद। ओए, क्या बात, बड़ी बात करी, सही बात है। तो स्वामी जी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ये किताब जब आएगी तो आपको मैं ये दोनों किताबें आपको भिजवाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। जैसे उसका ट्रांसलेशन होता है, गुजराती में भी होगा, तब भी आप तो गुजराती पढ़ते होंगे। अच्छे अच्छे कामों के लिए हमेशा हमारा साथ और आशीर्वाद और शुभ मंगल कामनाओं रहेगी साथ में। जी जी जी। और एक बार वो जो कुछ बहुत समय हो गया, लगभग 2 महीने के आसपास हो गया होगा, ये आपने मैसेज भी किया था कि डेफिनेशन ऑफ नोबल पर्सन की डेफिनेशन मैंने 12 पॉइंट्स करके आपको भी भेजी थी, और अपने जो गॉड्स लवली फैमिली ग्रुप है उसमें भी डाला था। जी जी। तो आपने वो पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा जी। उसमें मैंने ये भी कहा था कि इसमें और किसी को भी और कोई नोबल पर्सन की क्वालिटी ये होनी चाहिए, किसी के भी दिमाग में आता है तो उसमें सिर्फ 12 पॉइंट तक लिमिट नहीं रखना है, लिमिटेड नहीं रखना है, उसको और आगे ले जाना है। तो जी। आप दोनों को भी और कोई अच्छी चीज नोबल पर्सन में होनी चाहिए, ये अगर आपको आता है दिमाग में, ठीक है, तो आप वहाँ ऐड कर सकते हैं। दोनों का स्वागत है आपका। जरूर, शुक्रिया। हाँ जी, तो अब वो पैनल शुरू करते हैं। पैनल हाँ, तो कोई सवाल? हाँ, सवाल वही है कि भाई 15 अगस्त मनाते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, एवरी साल मनाते हैं, 364 डेज के बाद, 365 डेज के बाद, और लीप ईयर हुआ है तो 360 डेज के बाद फिर से मनाएंगे। 75 साल से मनाते रहते हैं। मगर जहाँ पहुंचना चाहिए वहां अब तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? स्वामी जी और समीलाल जी से सेम ही सवाल है, जो भी वन आई गो फर्स्ट, प्लीज फील फ्री। स्वामी जी आप बताएं। समीरलाल जी आप पहले बोलिए। चलिए मैं पहले बोल देता हूँ। तो प्रश्न आपका ये है कि हम जब 75 साल से स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाते आ रहे हैं तो हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं जहां तक हमें पहुंचना है या पहुंचना था। हाँ जी। तो असल में ये परिभाषा ही हम कभी तय नहीं कर पाएगी हमें कहाँ तक पहुंचना था, और जब तक हमें ये मालूम नहीं चलेगा कि हमें कहाँ तक पहुंचना है तो हम कभी भी वहां तक पहुंच नहीं सकते, जब हमें मालूम ही नहीं कहाँ तक पहुंचना है। हम हमेशा एक शॉर्ट टर्म में जीते रहे कि हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें वो 5 साल तक पहुंचना है जहाँ पे हम फिर से चुनाव जीत जाए। सही बात है, बात सही कही आपने यार, है ना।
उसके लिए हमें सच बोलना पड़े, झूठ बोलना पड़े, दूसरे का करा हुआ काम उसका क्रेडिट ले लेना पड़े, दूसरे का करा हुआ काम उसको डिस्क्रेडिट कर देना पड़े, उसके लिए हमें चाहे जितना भी गलत सलत डेटा दिखा के जो भी, और हर सरकार के लिए, एक के लिए नहीं कह रहा हूँ, हर के लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और मुख्य मुद्दा क्या हो गया, धीरे धीरे हम इतना भटक गए इन सब चीजों में, धीरे धीरे इतना ज्यादा उलझ गया है पूरी चीजें कि अब हम 5 साल के ऊपर देखते नहीं कोई भी चीज। 5 साल के ऊपर की चीज जो जो भी हम दिखा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि 5 साल वाला हम जीत जाए चुनाव की तरफ। हम 20 साल का भी फरमान दिखा रहे हैं तो इसलिए दिखा रहे हैं कि 5 साल वाला हम जीत जाए, और जैसे ही हम जीतते हैं हम सारा कुछ भूल जाते हैं हमने क्या दिखाया था। हम फिर शुरू हो जाते हैं उन्हीं सब में कि आपस में झगड़ा करा दो, आपस में जुड़वा दो, आपस में ये करवा दो, ताकि हमारा चलता रहे कार्यक्रम। उनको सिर्फ उस 1765 दिनों से मतलब है जितने दिन की उनकी सत्ता है। 1765 दिन में से आखिरी के 65 दिन आपको सबसे सुंदर देश नजर आता है, क्योंकि वो दिखा रहे हैं आपको आखिरी के 65 दिन। उनको मालूम है, वो जानते हैं मदारी का खेल कि कैसे भालू को नचवाना है। और भालू हमारी पूरी जनता है, बिना दिमाग लड़ाए वो बजाता है जब डमरू, लगते नाचते हैं हम लोग कि बारे वाह यार, यही बेस्ट है। और जिस दिन तक हम लोग ये मान के चलते रहेंगे कि ये सरकार है और ये देश बनाएगी, तब तक देश बन नहीं सकता। हम पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अरे इसने क्या किया, सरकार ने, सरकार क्या करेगी, तुमने क्या किया, वहां पे से शुरू करो पहले तो। तुम तो कुछ कर नहीं रहे, तुमने चुनाव जितवाने के बाद तुम अपने घर में चादर तान के सो गए कि अब सरकार करे सारा कुछ। महंगाई है वो तो सरकार संभाले, बिजली आनी है तो सरकार संभाले, बाढ़ आ गई तो सरकार की गलती, आग लग गई तो सरकार की गलती, और तूफान आ गया तो भी सरकार की गलती, कोविड आया तो भी सरकार की गलती, अगर घर वाले मर गए तो सरकार की गलती, घर वाले बच गए तो सरकार को कोई क्रेडिट नहीं, वो तो उनकी किस्मत थी जो बच गए। ऐसी ऐसी हालत में फिर वो 1765 दिन का खेल उनको भी बुरा नहीं लगता, चलो भाई हमें 1765 दिन के लिए भेजा इन्होंने, कोई गारंटी नहीं अगली बार आए नहीं आए तो हम भी अपना घर भर लें, और उसके बाद अगली बार की अगली बार देखेंगे, फिर जीत के आ जाएंगे तो फिर से भरेंगे 1765 दिन तक। नहीं जीत पाए तो अपना घर बैठेंगे, अपने पैसे तो आ ही गए पूरे। तो मेरे ख्याल में देश नजर में है ही नहीं कहीं, देश की जगह कुर्सी नजर में है, और जब तक कुर्सी नजर में रहेगी, देश नजर से बाहर रहेगा, तब तक देश का क्या विकास होगा। वही चलता रहेगा कि तुम कुछ अच्छा करके जाओ, अभी 10 साल ये अच्छा करके चले जाएंगे, दूसरी सरकार आई हो कहेगी इन्होंने सारा बर्बाद कर दिया, और जो अच्छा किया वो सारा चुपचाप धरे रहेंगे, उसको बाद में दिखाएंगे ये हमने किया, और वही चलता जा रहा है सिलसिला। और इस चक्कर में राष्ट्र कहीं बहुत पीछे छूट गया है, राष्ट्र की तो बात ही नहीं है। सिर्फ वो लीपापोती और राजभक्ति की बातें सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि वो हमारी सत्ता बच जाए, लोग भूल जाएं जो गलतियां हो रही हैं, लोग भूल जाएं जो महंगाई बढ़ रही है, लोग भूल जाएं जो आपस में दंगे चल रहे हैं हर तरफ। उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज में उलझा देते हैं, कभी फलानी चीज में उलझ जाओ, कभी ताली बजाने लग जाओ, कभी थाली बजाने लग जाओ, कभी फूल बरसाओ, कभी कुछ। और ये हर सरकार के साथ हुआ है सर, वो आपको उलझाए रखेगा, वो आपको सोचने ही नहीं देगा बड़े मुद्दे के बारे में। छोटे छोटे मुद्दे में ऐसा उलझा देंगे कि आप उसी में अरे हाँ यार ये बात तो है कि ये गड़बड़ हो गया इंडिया में, अरे उसके कारण वो इतना बड़ा मुद्दा छिपा गया वो आपके सामने से, आपको होश ही नहीं है। जब तक आप खुद होश में नहीं आएंगे, तब तक आप हम सब मिलके ही तो देश हैं, और क्या है देश। एक आदमी जब तक जागरूक नहीं होगा तो आप कहते हो देश जग जाए, देश कोई अलग चीज थोड़ी जो जग जाएगा, वो कहाँ से बढ़ जाएगा अगर आप खुद ही नहीं बढ़ने को तैयार हो। आप खड़े हुए एक जगह पे, कभी कभी उल्टा ही चलने लग जाते हो, दाएं की बाएं, पता ही नहीं चलता कहाँ जा रहे हो आप। एक बंदा गया इंडिया में घूमने के लिए, तो जब वो उतरा इंडिया में, अमेरिका से गया था, अमेरिका में तो भीड़ होती नहीं है ना, कनाडा में भीड़ होती ज्यादा है। गया था दिल्ली में, उतरा, देखा अरे सामने से हजारों लाखों लोग चले आ रहे हैं। कहने लगा यार ये तो ऐसा मैंने एक बार और भी कहीं देखा था, फिर उसको ख्याल आया चाइना में देखा था मैंने, ऐसे ही उतने लोग चले आ रहे थे सामने से। तो लेकिन उन दोनों भीड़ में एक अंतर था, अच्छा, चाइना में जो भीड़ चली आ रही थी उसको मालूम था वो कहाँ जा रही है, यहाँ पे हमारी भीड़ को मालूम ही नहीं कहाँ जा रहे हैं। वहां कोई पतंग कट जाए तो उस पर सारे लोग देखने लग जाते हैं, उसकी पतंग कट गई, उसको मालूम ही नहीं कहीं जा रहे, खाली खड़े हैं, कहीं चले जा रहे थे, एक कुछ कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो वहां देखिए कितनी भीड़ लगती है इंडिया में। जिसके घर वाला मरा उसको तो मालूम नहीं, बाकी लोग पटक पटक के ड्राइवर को मार रहे हैं, बस में आग लगा दे रहे हैं। तो उसने बोला कि ये दोनों भीड़ों में अंतर है, चाइना की, और चाइना की इसीलिए इकोनॉमी ऊपर जा रही है और इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था उनकी भीड़ को कि वो कहाँ जा रहे हैं। अगर वो नहीं जाएंगे वहां पे तो उनको उसकी रिपरकेशन भी मालूम है कि क्या होगा, क्या उसके दंड है, क्या से उनकी नौकरी चली जाएगी। इंडिया में नहीं गए कोई बात नहीं, तबियत खराब थी नहीं आ पाए, उन्होंने कहा ठीक है तबियत खराब थी, वैसे भी तो आज स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी थी, कोई बात नहीं, नहीं आ पाएगा। ट्रू यार। तो कोई कमिटमेंट नहीं है, जब तक कमिटमेंट नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता, और सबको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगी अपनी अपनी ड्यूटीज, अपने अपने। भूल जाओ सरकार आपने चुन दी, उनको करने दो जो कर रहे हैं, लेकिन आप अपना हिस्सा पूरा करो। जब तक आप अपना हिस्सा पूरा नहीं करोगे, सरकार कर भी लेगी तो भी कुछ नहीं होने वाला है।
सबको अपने अपने हिस्से के आसमान को थामना होगा, तभी हम लोग ऊपर बढ़ पाएंगे। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो अगले 150 साल वाले भी मना रहे हो ना, उस समय हम बात करेंगे आखिर क्यों ऐसा 150 साल में हम कहीं जा नहीं पाए, और जा ही नहीं रहे तो जाओगे कहाँ? सही बात है। कहीं भी जाने के लिए जाना तो पड़ेगा ना, हम तो जा ही नहीं रहे कहीं, हम तो खड़े हुए हैं तमाशा देख रहे हैं। जी स्वामी जी। नहीं, बढ़िया बढ़िया, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन है ना, सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों से, मगर जो रियल सिचुएशन है वो शेयर की है स्वामी जी। हाँ, कुछ बदलाव जो भारत में देखने को मिल रहा है, वो बदलाव की बात मैं करना चाहूंगा। पहले हम तीनों ने देखा है कि रेलवे स्टेशनों में इतनी गंदगी और बदबू आती थी कि हमारा सर फट जाता। तो जब से सफाई अभियान भी चालू किया और रेलवे प्लेटफॉर्मों को प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कुछ बदलाव सुधार किया गया, ताकि आज भारत के सब प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े सिटियों के भी रेलवे प्लेटफॉर्म साफ सुथरा मिलता है। ये एक बदलाव हम फील कर रहे हैं। दूसरा, पहले रेलवे के डिब्बों में ऐसी व्यवस्था थी कि सारा पेशाब और लेटरिन सीधा नीचे गिरता था। रेलवे स्टेशन पे लोग अंदर लेटरिन बाथरूम करने चले जाते थे तो प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे ही वो सीधी गंदगी नीचे गिरती थी। लेकिन अभी थोड़ा सोचा और वो डिपार्टमेंट वालों ने सोचा तो रेलवे के डिब्बों के नीचे ही ऐसा बॉक्स रख दिया कि ताकि सारी गंदगी वो बॉक्स में जमा हो जाए और कहीं बड़े रेलवे स्टेशन पे जाके वो पाइपलाइन से सक करके अपने ट्रांसपोर्टेशन के जो टांके होते हैं उसमें लेकर सीधा बाहर ले जाते हैं। तो यानी कि गंदगी नीचे ही नहीं गिरती है और रेलवे प्लेटफॉर्म को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टरों को काम देकर साफ सुथरा बनाया गया है। ये एक सबको फील होने वाला एक काम हुआ है। दूसरा एक काम कि चलो कोरोना वायरस तो भारत में आ गया, विश्व में भी आ गया, लेकिन भारत में जो गरीब मजदूर और गरीब लोग, काम उसका चला गया, रोजगार 2 महीना 3 महीना जितना लॉकडाउन रहा तब कोई काम तो कर नहीं पा रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि सबको कम से कम भूखा नहीं रहने देना, तो ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से भी कम्युनिटी किचन चालू किया गया। सरकार की रिक्वेस्ट से सेवाभावी संस्थाओं ने भी अपना किचन चालू किया और रेशनिंग की दुकानों के जरिए से जिसको रेशन कार्ड था उसको भी मिल रहा था और जिसके पास रेशन कार्ड नहीं था लेकिन वो ये ऐसा कहते थे कि यहाँ हम किराए पे रह रहे, हम यहाँ अभी मजदूरी के लिए आए हैं, तो हर एक लोगों को लगभग 2 साल तक गरीब लोगों को राशन मिला, चावल मिला, गेहूं मिला, यानी कि गरीब लोगों को भूखा नहीं रहने दिया। तीसरा एक काम हुआ कि जब वैक्सीन, भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन शोधी, अपने लोकल मेड, भारत की मेड वैक्सीन आई, तो भारत सरकार ने सोचा कि गरीब लोग ये 500, 600, 1000 की कॉस्ट देकर वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो वो पैसा खर्चेंगे नहीं तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो ये तो कोरोना वायरस स्प्रेड हो सकता है, चाहे वैक्सीन भले धनवान लोग लगा लेंगे तो भी ये कंट्रोल में नहीं आएगा। इसीलिए एक निर्णय लिया गया कि भारत की हर एक जनता को फ्री में वैक्सीन देनी है। तो भारत की 140 करोड़ की जनता हो गई है, सबको सरकार की ओर से फ्री में वैक्सीन लगवाई गई। तो एक बहुत बड़ा
इंटरनेशनल नंबर 1 कहा जाए वैसा एक अभियान भारत में हुआ और संपन्न भी हुआ। इसकी वजह से कोरोना वायरस में मानव का जो लॉस होना चाहिए, धारावी मुंबई की झुपड़पट्टी सारी की सारी झुपड़पट्टी साफ हो सकती थी। ऐसे कहीं भी बहुत सारी झुपड़पट्टियां, गरीब बस्तियां हैं, वो सारे लोग मर सकते थे, लेकिन ये वैक्सीन ने और कुछ अच्छे निर्णय ने, लॉकडाउन समय पर निर्णय लिया गया। तो ऐसे कुछ जो निर्णय है भारत में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से भारत की जनता को बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा एक काम जो आप अभी दोनों जब भी भारत में आओगे तो आपको सीधी नजर में देखने को मिलेगा। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी से लेके बड़े बड़े सिटियों में अभी मेट्रो ट्रेन, चाहे ऊपर से चाहे भूगर्भ से मेट्रो ट्रेन लगाई जा रही है, और नेशनल हाईवेज ब्रॉड भी किया जा रहा है, और नेशनल हाईवे लंबा भी किया जा रहा है, और हर एक तहसील को डिस्ट्रिक्ट लेवल से जोड़ा जा रहा है, अच्छे रोड बनाए जा रहे हैं। यानी कि जो रोड बनाने का काम जो है भारत में अभी पूर जोश में पूरे भारत के कोने कोने में चल रहा है, वो आप जब आओगे तब आपको देखने को मिलेगा। बड़े बड़े ब्रिज, ओवरब्रिज इतने बन गए कि ट्रैफिक जाम होते थे, लोग रोड क्रॉस करते थे तो वहां ओवरब्रिज बना के नीचे से लोगों को पास ऑन करना। तालुका वाले जो रोड, बड़े रोड जाते थे तो उसमें तहसील जैसे ऐसे बड़े बड़े गांव आते थे, वो लोगों को क्रॉस करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो ओवरब्रिज बना के नीचे से लोगों को ट्रैफिक ट्रांसफर करने का काम भारत में अभी पूर जोश में चल रहा है और संपन्न भी हो रहा है। ये काम हमारी नजर के सामने सबको देखने को मिलेगा। आगे हम अगर बात करेंगे तो ये जो चाइना की जो दादागिरी कहो कि वुहान लेबोरेटरी से जो कोरोना वायरस रिलीज हुआ, ये अमेरिका का वैज्ञानिक, अमेरिका की सरकार और सब ये सब कह रही है, तो चाइना का जो कंपनियां भारत में थी और वो हमारी भारत की पॉलिसी सीक्रेसी को भी जानने के सारा यहाँ जाल बिछाया था। तो वो कंपनियों को भारत से बैन लगा देना, समय पर बैन लगा देना, और फिर भी भारत का अर्थतंत्र ठीक मेंटेन चलता रहे, इसीलिए दूसरे देशों की कंपनियों को वेलकम करना और एक कोरोना वायरस दरमियान वोकल से लोकल, यानी कि हमारा भारत का लोकल प्रोडक्ट ही हम प्रोड्यूसर करें और हमको लोकल ही उपयोग करना है, इंपोर्ट करना ज्यादा न पड़े, उसके पर थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए विश्व में भारत चौथा नंबर का ऐसा देश बन गया है। फॉरेन रिजर्व, फॉरेन जो रिजर्व होता है हमारी करेंसी, चौथे नंबर का देश भारत बन गया है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ गया है, ताकि हम कुछ भी जरूरी इंपोर्ट करना चाहेंगे तो इंपोर्ट कर सकते। 71 की वॉर में रसिया ने अगर हमारी मदद नहीं करी होती तो अमेरिका और इंग्लैंड ये सब मिलके पाकिस्तान का साथ देके भारत को बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। समंदर में इंग्लैंड और अमेरिका का हवाई जहाज बेड़ा भारत के एकदम नजदीक आ गया था, हमला करने की तैयारी कर रहा था, भारत को बहुत बड़ा नुकसान कर सकते थे। उसी समय चाइना ने, रसिया ने जंगी हवाई जहाज भरपूर सामग्री के साथ उसके सामने समंदर में रख दिया, ताकि भारत बच पाया और भारत को नुकसान नहीं हुआ। ये रसिया का उपकार भारत पर थे। कई सालों से रसिया हमारे साथ मैत्री रखता है
और इतना संपन्न बड़ा देश भारत तो अभी अभी थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन गरीब भारत, भले पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन गरीब भारत के साथ दोस्ती निभाना चाइना रसिया को जरूर नहीं था, फिर भी एक परमेश्वर की कृपा से इतना अच्छा संपन्न देश हमारे साथ दोस्ती रखता है। तो जब अभी मौका आया, रसिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू किया, तो भारत ने एक पॉलिसी बनाई कि हम सस्ता क्रूड गैस और कोलसा रसिया से लेंगे। अमेरिका ने मना कर दिया भारत को कि आपको रसिया से कोई चीज लेनी नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हमारे देश को क्या करना है, किससे क्या लेना है, कब लेना है, वो हमारा निर्णय हम जानेंगे। अमेरिका ने बोल दिया कि तुम हमारा एडवाइजर कौन हो सकता है, तू संपन्न देश हो तो तेरे देश में तेरी संपन्नगिरी रख ले, हमको तेरी बात इसी बारे में नहीं सुननी है, नहीं कुछ माननी है, क्योंकि कब क्या करना है, कैसे करना है वो भारत अभी समझ गया है। ऐसा भारत सरकार ने अमेरिका को जवाब दे दिया। भारत ने सस्ता क्रूड लेके, ऑयल लेके रसिया का अर्थतंत्र को मजबूत करने में बहुत बड़ा सहयोग किया, तो अपनी दोस्ती भी बनी रही और रसिया का उपकार भारत पर जो था वो भी बना रहा। यानी कि हम भले शस्त्र सामग्री नहीं भेज पाए, डायरेक्ट युद्ध में सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन उसका अर्थतंत्र मजबूत रखने में, टिकाने में हमने इनडायरेक्टली भारत ने बहुत रसिया की मदद करी है, क्योंकि हमारा दोस्त है और दोस्त को संकट की घड़ियों में मदद करना, ये भारत सरकार ने, भारत के लोगों ने समझा और अच्छा एक निर्णय लिया। तो ये कुछ बातें जो मेरे ध्यान में बदलाव की जो आई थी वो मैंने यहाँ रखी। नहीं ठीक है, ये आप जो ये सारी बातें अच्छी हैं, जो जो चीज़ अच्छी हुई हैं वो अच्छी हुई हैं, और ये भारत की विकास यात्रा इसको कहेंगे आप कि कुछ बदलाव तो ऐसे हैं जो वक्त के साथ आते ही आते हैं और आने भी चाहिए और हमेशा से आते रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी कामयाबी की बात है, और अगर इससे हमारे देश को विकास मिलता है तो बिल्कुल इसको विकास माना जाना चाहिए। लेकिन क्या हम वहां तक पहुंच पाए जहां तक हम पहुंच सकते थे इतने सालों में? और उसमें मैं किसी सरकार की नाकामी की बात नहीं कर रहा हूँ या ना किसी सरकार की कामयाबी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई पहले भी हजारों काम हुए हैं इस देश में, हजारों बांध बने हैं इस देश में, हजारों आईआईटीज और एम्स आए हैं, इसमें इंडस्ट्रीज लगी हैं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लगी हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री लगी है, रशिया के साथ हमने मिलकर स्टील प्लांट्स लगाए हैं, सब चीजें थी, ये सब चीजें हुई ना। ऐसा तो था नहीं कि देश में कुछ होता नहीं था, इसके पहले तक होता था। हर सरकार की अपनी कामयाबी है, हर सरकार की अपनी नाकामयाबी है, और वो हमेशा बना रहेगा। जो भी सरकार होगी, कुछ कामयाबियां होंगी, कुछ नाकामियां होंगी, लेकिन क्या किसी का भी स्तर उस लेवल तक पहुंचा जहां हमें पहुंचना चाहिए था? मुख्य मुद्दा ये है कि क्या हम यहीं तक पहुंचने के लिए बने थे या हम इससे कहीं आगे जाने के लिए बने थे। आप देखिए तो कितनी कंट्रीज हैं जो हमसे बाद में पूरी तरह से बर्बाद होकर फिर खड़ी हो गई और कहाँ से कहाँ पहुंच गई, और हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेकर भी हम आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारी सारी पॉपुलेशन में अभी भी हम उसी समस्या के लिए रोते हैं एम्प्लॉयमेंट की, कि घर घर रोटी पहुंच जाए, घर घर खाना पहुंच जाए। ये बेसिक समस्याओं पे अभी अभी भी हम जूझ रहे हैं। तो उससे निकलने के क्या रास्ते बन रहे हैं, वो मुख्य मुद्दा है जानने का। बट अच्छा है, जो जितनी भी कामयाबी आप गिना रहे हो बहुत बढ़िया चीज़ है, और होना भी चाहिए। अगर सरकार है तो कुछ कामयाबी होना ही चाहिए, अगर बिल्कुल भी नहीं किया तो फिर तो निकम्मी सरकार कहला जाएगी वो। और वो तो हर समय हर सरकार के साथ होगा, कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ खराब काम करेंगे, उसका अनुपात क्या रहा वो मुख्य मुद्दा है। उस अनुपात में आप कहाँ तक ले गए देश को, क्या आप जिस स्थिति में आपने देश को उठाया उससे आप आगे बढ़े कि आप पीछे चले गए। और उसमें वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं, आपकी एम्प्लॉयमेंट की इंडेक्स, आपकी करेंसी की इंडेक्स, आपकी फॉरेन रिजर्व्स की इंडेक्स, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडेक्स, आपकी जीडीपी, आपका ओवरऑल सिस्टम की किस दिशा में जा रहा है, सारी चीज़ें काउंट होती हैं। एक चीज़ से नहीं काउंट होता वो, किसी मतलब हमने कुछ चीज़ एक अच्छी कर दी है बाकी सब बिगाड़ दिए, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। गुलाब का फूल लगा, उसके बाजू से नाला निकाल दिया तो गुलाब का फूल तक भी नहीं पहुंच पा रहा, लगा हुआ है फूल बस। तो
बढ़िया है जो आपने गिराया, बहुत ही सुंदर बात है और उसके लिए तो साधुवाद। लेकिन मैं एज ओवरऑल देश की बात कर रहा हूँ, मैं सरकारों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पूरे पूरे देश के तौर पे। इसलिए मैंने कहा कि हर जनता की भी उतनी ही जरूरत है, हर जनता को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम सिर्फ हिसाब नहीं मांग सकते, हमें हिसाब देना भी होगा। तो अगर हम किसी से हिसाब मांगने की काबिलियत रखते हैं, अगर हम कहते हैं सरकार ने क्या किया, तो उसके पहले हमें ये बताने की अपनी खुद की भी औकात होना चाहिए कि हमने क्या किया। हम तो सिर्फ इंतजार ही करते रहे, हम तो सिर्फ पूछने के लिए बैठ रहे हैं। पूछना तो कितना सरल है, लेकिन अगर कुछ करना पड़े तब फिर मालूम चलता है। तो जनता की जिम्मेदारी है, उसने क्या किया और उसने उसको कंट्रीब्यूट करने में क्या, कहाँ तक उसने। तुमने तो सिर्फ सारी सरकारी संपत्ति फोड़ के रख दी, तुमने पत्थर मार मार के आग लगा दी कि सब महंगाई बढ़ गई, तब तो अब तुमने ऐसा काम करें कि और बढ़ेगी इसके बाद तो नहीं, बढ़िया 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 बढ़िया, आपकी बात रही अच्छी स्वामी जी। और बस वही है कि एक ऐसी जन क्रांति की आवश्यकता है जिसमें कि जनता जागे और जनता अपने हिस्से का काम पूरा करे, सिर्फ हिसाब मांगने का नहीं, काम करने का भी। हम उतने ही जागरूक नागरिक हो जाएं जितने कि जापान के नागरिक जागरूक हैं, वो काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। उनके लिए वो सरकार से नहीं वेट करते रहते कि सरकार करेगी तब फिर हम काम करेंगे, कि हमें 9 से 5 का काम करना है। वो जब तक काम करते हैं जब तक उनका काम नहीं खत्म हो जाता, और हम तब तक काम खत्म करते हैं या तभी नहीं करते, हम सिर्फ समय खत्म होने का इंतजार करते हैं। 9 से 5 ऑफिस है तो 5 बजे उठे चल दिए, ये भी नहीं कि सोचा कि क्या किया है मैंने आज दिन भर में। तो जब तक वो खुद की जागरूकता नहीं आएगी हमारे नागरिकों में, हम में, हमारे साथ वालों में। कहते कचरा फैला हुआ, किसने फैलाया भाई? आप ही ने तो फेंका होगा। तो जब तक ये समस्या दिखाने की जगह समस्या का निदान नहीं दिखाएंगे हम लोग, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और वही मुद्दा है मेरा कहने का। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, सबकी अपनी कामयाबी रहेंगी, सबकी अपनी नाकामियां रहेंगी। विपक्ष को कभी कामयाबी दिखेगी नहीं, पक्ष वालों को कभी नाकामी नहीं दिखेगी। ये तो एक सिलसिला है, वो तो चलेगा ही चलेगा हमेशा से। नहीं, ब्यूटीफुली, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वामी जी आपने भी समझाया, और आपका भी समीर भाई, आपका भी पॉइंट वैलिड है एब्सोल्युटली कि भाई सरकार तो आई नो करती रहेगी। ऑपोजिट है वो, सरकार ने कुछ नहीं किया वही प्रूव करेंगे, और सरकार कहेगी कि हमने सब कुछ किया है वही प्रूव करेंगे। एंड डेफिनेटली कि भाई हम एज अ सिटीजन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम देश को कहाँ ले गए, बिफोर हम सरकारों से भी जवाब मांगे कि हमने क्या किया देश के लिए। एंड वही बैक टू द अगेन जो कैनेडी जी, अब कैनेडी ने कहा था कि यार ये मत कहो कि देश ने हमारे लिए क्या किया, एक कहो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और क्या कहते हैं, हमेशा हमें इन दो चीजों को जुदा रखना पड़ेगा, देश एंड सरकार। सरकार तंत्र है, देश राष्ट्र है, वो सब चीजों के ऊपर है। तो जब तक हम राष्ट्र को सर्वोपरि नहीं मानेंगे और हम अपने आप को भगवान मान के बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। राष्ट्र सर्वोपरि, आप अपना हर काम जो भी करें वो इसलिए नहीं कि ये सरकार है वो सरकार है, इसलिए कि ये देश है, उसको सुदृढ़ करना है हमें। हम अपने हर काम के साथ में देखेंगे हम इसमें देश में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तब तो राष्ट्र बढ़ पाएगा। अदरवाइज तो हम फिर सरकार को बढ़ावा दें या घटावा दें, उससे क्या अंतर पड़ने वाला है। राष्ट्र और सरकार दोनों अलग अलग तंत्र, एक तंत्र है और एक लोकतंत्र की जो राष्ट्र है उसकी बात अलग है। राष्ट्र है तो सरकारें हैं, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि भाई दोनों ने डीप में, बहुत ही डीप में जो 75-75 साल का जो लेखा जोखा विचार किया, सरकार की भी बातें बताई, देश की भी बातें बताई। और बिकॉज वी डू केयर अबाउट आवर कंट्री, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ मदर इंडिया ने हमें पैदा किया है। डजंट मैटर हम हजारों किलोमीटर दूर रहते हैं, सम्मी लाल और मैं, मगर डेफिनेटली जब कुछ अच्छा होता है तो खुशी होती है हमारे देश में। जब कुछ कुत्ते बिल्ली की तरह वो इधर उधर होता है और हिंदू मुसलमान होता है, तो सेम दुख समीर भाई को भी होता है, हमें भी होता है, इंडिया वालों को भी होता होगा। तो वही है। तो चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही सवाल में मैंने ब्यूटीफुली बहुत बढ़िया रहा प्रवीण भाई। मैं थोड़ा सा 5-10 मिनट का ड्रॉप लेता हूँ, फिर आ जाता हूँ मैं। नहीं, जरूर जरूर जरूर, हाँ जी। तो शुरू कर दे, तो वो हाँ, आप शुरू कर वेट करें। नहीं, आप शुरू कर दो। अच्छा अच्छा, तो बस अब रेड कार्पेट शुरू करने जा रहे हैं। और या टेक योर टाइम, आपने भी बहुत टाइम दिया है तो डेफिनेटली। हाँ, तो स्वामी जी आपके ब्लेसिंग से अब शुरू करते हैं। लास्ट हाफ एन आवर है, हम वहाँ पे वो रेड कार्पेट इवेंट्स जो 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 हमारे स्पीकर्स आए हैं उनको अवार्ड देते हैं एज यूजुअल। तो वो शुरू करेंगे आपकी ब्लेसिंग से, ठीक है स्वामी जी? जी। अच्छा जी।
हाँ जी. Hello, celebrity. Are you ready now? We are going towards the final ceremony, the red carpet ceremony, award winning ceremony for the speakers who shared their heart, body, mind, soul. So, we are going to give the award. So, very first and award goes to again, Swamiji of the Swamiji, Mother of the World, none other than, last 8 hours and 27 minutes and 29 seconds बिना खाए पिए हमारे सामने बैठे रहे, ब्लेसिंग देते रहे. हाँ, बच्चों आए तो बच्चों के सामने बच्चों की तरह बन गए, हमारे जैसा कोई आया तो उनके एज पे बन गए. और छोटी छोटी बच्ची लाइक फातिमा जी को भी ब्लेसिंग्स दिए और जिक्र दिया. और हमारे इमरान भाई वो जिक्र लेना नहीं चाहते थे, तो उनको भी स्वामी जी ने, चलो भी स्वामी जी ने ख्वाहिश तो दी, मगर उनको सुना. और उनकी, और वही होता है कि भाई बड़ा बड़ा तब होता है वो छोटे का भी वो ध्यान रखे कि छोटा चाहिए, उनको चाहिए, देना चाहिए, लेना चाहिए, मगर वो अब इस लेवल पे नहीं है, वो लेने के लिए रेडी नहीं है. तो उन्होंने, स्वामी जी ने बैक ऑफ कर दिया कि भाई नहीं यार, व्हेनेवर यू आर रेडी तब वो मिलेंगे. सो डेफिनेटली हमारे स्वामी जी, प्यारे स्वामी जी, दिस awards again, IndoPak Independence Celebration ceremony awards goes to none other than you, Swamiji. Please accept kijiye, Swamiji, and this is for you. I accept this award, but as per my nature and my thinking, I transfer first number award to all participants, and I will be remain last winner because all participants came here and spent their precious time and given their uh, excellent thoughts regarding celebration of Indo-Pak's independence celebration occasion. So I transfer first number award to all speaker of this program. God bless. God bless. God bless, God bless. Thank you so much, Swami ji. As usual, मेरे को मालूम था स्वामी जी कभी भी award, always share with speakers or people of the world. So आज भी स्वामी जी आपने अपना जो दिल है वही शेयर किया. Appreciate that, स्वामी जी. Okay, I'm humbled, I'm honored, I'm privileged, I'm blessed, and I'm super excited to give away this beautiful awards, which is known as IndoPak Independence Celebration Awards to none other than a नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया जो दिल दिल पाकिस्तान ने पैदा की है, none other than real rockstar Race #RRR. So this goes to you. Now your time to deliver the speech, acceptance speech, please. Rahins Fatima. आवाज ऊंचा करे जरा. I would like to thank Mr. Paraveen and Jasmine and no doubt Swamiji, and it was an excellent experiment for me to join this session, and I learned a lot. I got motivation a lot, and your thought of your guys was incredibly awesome. And I, more than this award, one day we will make Pakistan and India definitely the first world country. That would be the real freedom, and that would be the real award. Thank you so much, Paraveen, once again, and thank you so much, Swamiji. Inshallah, definitely. Allah will fulfill your wish. People of India and people of Pakistan
want to be known as the third world country people or developing country people, rather than we will known as the first world country people, developed people, and as long as youth of India, Pakistan, are thinking the way you are thinking, Rais, डेफिनेटली दुनिया की कोई भी ताकत इंडिया और पाकिस्तान को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने से, डेवलप कंट्री बनने से कभी भी रोक नहीं सकती है। शुक्रिया। और स्वामी जी ने ऑलरेडी ब्लेसिंग्स बढ़िया से ब्लेसिंग दिए है, अल्लाह के ब्लेसिंग। सो अल्लाहू 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 इज गोना हेल्प यू आउट अ लॉट फॉर श्योर। स्वामी जी कुछ कहना है? बढ़िया सी हो बेटिया ने वो शॉर्ट एंड स्पीच एंड ब्यूटीफुल डिलीवर स्पीच किया, उसके बारे में कुछ। Today, respected Rais Fatima God's encouragement and confidence and satisfaction that now she is not only one Rais Fatima living in Karachi, but now she feel that my spiritual family is very wide and confidence increase to achieve her goal. For achieving her goal, God and we 15 crores people are with respected Rais Fatima. So they don't worry. God bless. Allah Hafiz, Khuda Hafiz, Allah Much bless. blessed. ब्यूटीफुल स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बिटिया को ब्लेसिंग्स देने के लिए। I'm humbled, I'm honored, I'm privileged, I'm blessed, and I'm super excited to give away IndoPak Independence Celebration Awards to none other than Dr. Daphne ma'am. Would you like to play the act of Daphne ma'am? Rais Fatima or Swamiji? Who wants to go? Act. Did you hear Daphne ma'am? Fatima? Yes. Okay, so would you love to react of Dr. Daphne ma'am? So you have to accept this award on behalf of Dr. Daphne. So you have to deliver the speech as if you are the Dr. Daphne. Hi, Parveen and Swamiji. I would be definitely thankful to you guys to award me with IndoPak Celebration Award, and I'm feeling so much blessed with that. And I'm very grateful, very much grateful to be invited here, to be allowed to share my thoughts here. Thank you so much, much appreciated. Wow, nice acting. Wow, wow, wow. Bollywood deserves you. What are you doing in Pakistan? Huh? See, Swamiji is Soon happy. I'll be there. Look at that. Swamiji is also happy. Awesome. Wow. Yes, I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to give away none other than IndoPak Independence Celebration Awards to my buddy, whom I spent about 8 years with him during my medical college, none other than my buddy, known as the sexologist of the world, the psychiatrist of the world, none other than Dr. Pranav Pachigar. Oh, Praveen, man, I have achieved so many awards and rewards, but this one getting from you at this beautiful stage called IndoPak, beautiful celebration during this, India and Pakistan's 75th, Independence Day means a lot, man. Thank you, thank you, thank you, buddy. I was planning to come after the taking care of my patient, but sorry, buddy, I could not able to. But it was fun, and yeah, I enjoyed it with Swamiji as well as other speakers. Thank you, thank you, thank you. Okay, let's go to the next one. Dr. Pranav is gone. Okay. I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to give away none other than IndoPak Independence Celebration Awards to
all the way from Dil Pakistan, the principal who is taking care of beautiful Dot School and feeding the people, student of this school, none other than Rahmat ul Rahmat. प्रवीण भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस अवार्ड से नवाजा. आई एम रियली सॉरी, मैं वो बिकॉज ऑफ some technical difficulties, and internet situation, I could not able to join. मगर बहुत बहुत शुक्रिया. और डेफिनेटली हस मेरे स्कूल के बच्चे मेरे दिलो जान से प्यारे हैं. एंड बहुत बहुत शुक्रिया टॉर्च मामा लीन फॉर taking our school under torch. Thank you. Okay, Swamiji, are you ready? This award is going to none other than our Iftikhar Sahab from Kashmir. So Swamiji Iftikhar Sahab को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. So Swamiji, on behalf of Iftikhar Bazmi ji, please accept this award, and deliver the speech on behalf of Iftikhar ji. Take it away, Swamiji. Oh, hi. Oh, I am here. Now, respected Swamiji, myself and Dr. Praveen will follow your instruction and we will work for better world. Don't worry, Swamiji. Don't worry. That was beautiful, Swamiji. Bazmiji, you should see this. Only this 30 seconds, you will remember it forever. My God. Okay. Oh yeah. I'm humbled, I'm honored, I'm privileged, I'm blessed, and I'm super excited to give away IndoPak Independence Celebration Awards to the host of today, who just came for a couple of minutes, love of my life, became my fiancée, none other than jolly, joyful Jasmine. Oh, my hubby, thank you so much for making me the host. And my God, I'm sorry I couldn't come for so long because I was working, and I watch your videos, I watch Swamiji's, I watch Rais and all other speakers, and I enjoyed it, but I missed you guys a lot. But my hubby, I love you. Thank you. Awesome, like it? Good then. A lot. आया खाना मिलेगा ना मेरे को, यहाँ पे आएगी तो खाना मिलेगा ना? Definitely. तो ठीक है then. Okay, so then let's go to none other than Jasmine. Okay, I'm humbled, honored, privileged, blessed, super excited to give away. Oh my God, how can I say this? This beautiful award to the most bodybuilder of all the speakers, छोटा पैकेज बड़ा धमाका, मिस्टर इमरान भाईजान. स्वामी जी, इमरान भाई का जन का रोल आप कर रहे हैं स्वामी जी. आप उसकी हंसी भी जानते हैं, सब जानते हैं. So स्वामी जी, on behalf of इमरान भाई, स्वामी जी accepting and delivering the speech. 14 साल का बच्चा है वो, 12-14 साल का. ये स्वामी जी. प्रवीण जी, डॉक्टर प्रवीण जी, आपके कहने पर मैं हमारा जो टाउन है वहाँ ऐतिहासिक बहुत अच्छी बातें. Oh my God. Oh boy. Wow. Swami ji. Imran, you should watch this, when Swami ji acted on behalf of you beautifully. आप अपना किरदार भूल जाओगे यार. Oh boy. Yes, I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to give away this beautiful trophy to none other than हमारे जो साहब है वो उनके इमरान खान के भाईजान और फ्रीलांसर जी. तो फ्रीलांसर जी के लिए आपने सुना था फ्रीलांसर जी को रईस फातिमा टुडे?
नहीं अच्छा अच्छा बट मैं अच्छा उनके वो बिहाफ पे रिएक्ट कर सकती हूँ ओके हो जाएगा ना ओके गुजरात कराची में उन्होंने वो रेहान भाई के उस स्कूल में भी उन्होंने वो स्पीच दो स्पीच दी थी ओके या गो हेड टेक इट अवे फ्रीलांसर ओके Thank you so much, Mr. Paraveen and Swamiji, for the wonderful and incredible award. I will be definitely work hard to pursue it, to make it and I will work a lot for growth of Pakistan and as well as India. We will work together and we will grow together in the field of IT and in the field of freelancing. There would be huge IT export in few years and we're gonna grow more definitely. And thanks again for a wonderful evening. Thank you so much. wow wow beautifully delivered the speech on behalf of freelancer ji beautiful wow Thank you. welcome I'm humbled honored privileged blessed and super excited to give away IndoPak Independence Celebration Awards to the author of the book Squeeze the Orange. He's also writing another book. Also, he's met Maharshi Yogi and Osho and Shankaracharya Ji's as well as Vipassana. Finances of this Vipassana also taken care of none other than Samir Lal, Udan Tasdari, Urti Rakabi, and Swamiji is going to accept on behalf of Samir Lal ji. Yes, Swamiji. Respected Swamiji, I have written one book, and we need your blessings. And our this book is message uh, regarding sun always rising in the sky and coming for a great message to the humanity. Oh, people, you can learn my beauties. You can use your life potentiality maximum, and uh, you can uh, utilize of your qualities of life. For example of this book is comparison to the juicy glass and the uh, lemon juice. So Swamiji, we need your blessings for these books and next coming books. I am writing one other book also. We need your blessings. Okay. Very good, Swamiji. Very good. क्या बात है? I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to give away IndoPak Independence Celebration Awards to Mama Lynn and Papa Torch, Ian and Mama Lynn. So Swamiji, you wanna play Mama Lynn role or Ian's role? Which one you wanna play? And then I play the other one. From whom you are telling? Mama Lynn or Mama Lynn's husband? Whose role you want to play? And Respected Swami, we got married for the noble purpose. Our soul is very humble and very loveful. We will work together. I want to come in India. I want to learn spirituality. Don't worry, Swamiji. We got married for a noble purpose. We will not produce any child. We will not enjoy sexual enjoyment. Our marriage purpose is to doing the double activity. Don't worry, Swamiji. I'll play Ian's role. Both beautiful, Swami, beautiful. Mama Lynn, you gotta listen to this one and watch this one. My God. Swamiji. First time I saw you, but feel like, I got your blessings all the time. Swamiji, I'm the nuclear physicist. Swamiji, I wrote so many books and I need your blessings for that. And Swamiji, definitely
As you mentioned, there no hanky panky, no romance, no kids. I promise you, Swamiji, and definitely we'll work on to make the world noble. And as absolutely, also we'll work on torch too. And definitely, a lot more books are coming. So definitely, Swamiji, we get married not for material things or not for enjoyment, physical enjoyment. We will make sure that 1 and 1 is not 2, but 1 and 1 is 11. Thank you. Okay, now let's go to Mama Lynn is done, Ian sir is done. Okay, yes, I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to give away none other than IndoPak Independence Celebration Awards to Raja Pakistani. Yes, you wanna play role of Raja Pakistani, Raja Arshad? Praise. Hey guys, this is Raja Asad, proudly grateful to hold this award, and I'm super excited for this. And I, Raja Pakistani, and Dr. Praveen, Dr. PPP will together make Pakistan and India grow, and we will have a friendly environment, and we will be more and more like with all the awesome scenarios and grow together. Thank you so much, Dr. Praveen and Swamiji. Thank you so much. नाइस यार, क्या बात है। पूरे फॉर्म में हो आप तो यार रईस। Yes, I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to give away IndoPak Independence Celebration Awards to none other than Dr. Chandrasekhar Goswami. And who else than Swamiji is going to accept on behalf of Dr. Chandrasekhar Goswami, the Corona doctor? Swamiji, take it away and play on behalf of Dr. Goswami. Dr. Praveen, my Swami, I want to your blessings. We have done maximum work in the medical sector. We have made the provision for the admission of the medical students. Those came from the Ukraine. Now we will give the admission to the medical students and paramedical students and pharmacy students, so that we are now doing the noble works. Such admission is nowadays necessary, and we will 100% performing these duties. We need blessings of Swamiji and good wishes of Dr. Praveen Patel. Wow. Dr. Goswami, of course, you have to watch this. Swamiji is playing your role beautifully. Wow. I think only Nishchal Saab reh gaye hai. Okay, I believe. Yeah. Okay, Ashok Nishchal ji only reh gaye. Okay. I'm humbled, honored, privileged, blessed, and super excited to give away the last but not the least awards too, which is IndoPak Independence Celebration Awards too. Awesome, amazing Ashok Nishchalji, the man who sang almost 10,000 songs at age more than 60 age, none other than Ashok Nishchalji. प्रवीण भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस नाचिस को इस कॉन्फ्रेंस में लाने के लिए। लास्ट मिनट में इवन मैंने कहा आपको रात के 2 बजे आपके, और आपने मेरे को एक्सेप्ट कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी आपने भी मेरे को माफ़ कर दी है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से गलती ऐसी नहीं होगी। और बस वही है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद उम्मीद है उनकी,
जरा याद करो कुर्बानी। उसी गीत से मैं अलविदा चाहता हूँ, एक और गीत गाने के लिए, ड्यूएट गाने के लिए। सो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका, जो आप मना 8 hours 52 minutes and 9 seconds से नॉन स्टॉप रात दिन बिना खाए बिना पिए ब्लेसिंग देते रहिए। तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया आपका स्वामी जी। ये बहुत बहुत हमारी, हाँ, ये छोटा पैकेज बड़ा धमाका। रात के अभी पाकिस्तान में 3 बजकर होने को है, 2:52 हुई है राइट नाउ, 2:52 yes. PM 14 अगस्त है, बड़ा सा 75th सेलिब्रेशन है और राइट नाउ फ्रंट ऑफ अस जग रही है। तो अप्रिशिएट दैट एंड इट मीन्स लॉट। और स्वामी जी ने बाय अल्लाह ब्लेसिंग बहुत कुछ आपने आप आज मना इतना खुश कर दिया कि बात ही मत पूछे। शायद ही आपको नींद आएगी ऐसा लगता है मेरे को। You're fired up, excited, aren't you? Super excited in fact, and I'm super excited to meet Swamiji, and he's excellent. In fact, Dr. Paraveen is like in fact in mimicking, he's just saying like exact word to a person, like जैसा कि for example Jasmine बोलेगी वैसे ही बोल रहे हैं, जैसा कि हमारे singer अशोक बोलेंगे वैसे ही बोल रहे हैं, but Swamiji is more awesome. He's same voice, same voiceover and same expression. Much appreciated. स्वामी जी बॉलीवुड में नहीं होते, नहीं जाते, वरना बॉलीवुड में सबकी छुट्टी कर देते। डोंट यू थिंक सो राइस? Yeah, exactly. Bollywood needs Swamiji. अरे समीर लाल भी आपने मिस किया यार, स्वामी जी ने आपका भी एक्टिंग किया यार, आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू अवार्ड वो स्पीच भी दे दिया यार, यू शुड वॉच दैट वन यार समीर लाल भाई। अच्छा, क्या रिकॉर्डिंग मैंने देखी राजा तुमने? पाकिस्तानी की दी है, राजा हाँ पाकिस्तानी हाँ and Imran हाँ, and Dr. Saab, who was गोस्वामी, that? हाँ डॉक्टर गोस्वामी का बहुत कुछ लोगों का हाँ जी। Yeah. समीर लाल जी का तो हाँ, समीर लाल जी आ गए तो चलो यार डेफिनेटली हम समीर लाल जैसे सुनते हैं, स्वामी जी से तो स्वामी जी ने तो आपका रोल प्ले किया, बट डेफिनेटली आप आए हो तो डेफिनेटली आई एम humbled, I am honored, I am privileged, I am blessed, and I am super excited to give away IndoPak Independence Celebration Awards to none other than superstar Samir Bhaijan, hashtag SSS, the author of the book Squeeze the Orange. Take it away, brother. Thank you very much. It was my pleasure coming to this seminar and to this celebration. It was great. Thank you very much for giving me time. Thank you, Swamiji, for praying, and I'm looking forward for it. Thank you. Yes, so last minute, what would you love to say? Rais Fatima, then Samila, then Swamiji, then I'll close it at the end. So, yeah, take it away, Rais. Yes. So it's all the event was super excited, super awesome, and thank you so much, Parveen, to conduct that. And these seminars should be needed, should more required to just disconnect the just eliminate the disconnectivity and be more connective and work together, grow together, much faster as possible. Thank you so much. Inshallah, Inshallah. Samir Lal ji, shukriya, बहुत बहुत शुक्रिया. Short and sweet and beautiful Yeah, it closing. was wonderful. So, wishing everybody in Pakistan and India happy Independence Day. May this new year bring new progress, new developments, new peace, and wish all the best to everybody in Pakistan and in India. Thank you. Swamiji. The all speakers, all participants, and organizer Dr. Praveen Patel
all peoples are giving the many congratulations, Abhinandan to all people of the Pakistan as well as all people of the Bharat, India. You all are celebrating your 75th of Independence Day. We are praying to the Almighty God, Allah Parmeshwar, will make our life pleasureful, healthy, wealthy, and full of happiness so that we can learn spirituality and after then we can achieve our main goal of humanity, main goal of mankind to reach up to the Almighty Creator. We establish beautiful and excellent spiritual relation with our Godfather, Almighty Power Authority. We can talk with Him, we can love Him, and God is loving always all creation. But we can love God. It is the ultimate goal of humankind. So all people of the both countries and all countries of the world, all humanity can achieve this goal, ultimate goal. We must go to God, meet God, love with God, talk with God, and establish our relation with God. We are praying to the God, please make your blessings shower, your blessings rain on all people of both countries, so that in coming time we can get pleasureful, happy life, healthy, wealthy, and happiness. And we God, oh God, yourself too. That is the prayers to God. God bless, Allah bless, Khuda Hafiz, Allah Hafiz. गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आप पूरे इवेंट में रहे। समीर लाल जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आधे घंटे की जगह बहुत टाइम आपने दिया, बिजी होंगे फिर भी अप्रिशिएट दैट यार। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सेकंड बुक एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंडिया में जो आपकी पहली बुक भी छाया जाएगी, दूसरे सभी लैंग्वेजेस में भी आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड यू डिजर्व दैट। रईस फातिमा, छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, रात के मना 3 बजे तक भी अभी भी जग रही है, और पेरेंट्स आपके अम्मी अब्बू को भी सलाम कि बच्ची को मना फ्रीडम दे रहे हैं। आपके थॉट्स को मना सैल्यूट टू योर थॉट्स की मना फर्स्ट यूनिकॉर्न कंपनी ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिश करनी है, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, जनानियों के लिए, आप के लिए दिल में जो ख्याल है इक्विवेलेंट का, इक्वल का, समानता, नारी समानता, तो अप्रिशिएट दैट एंड डेफिनेटली स्वामी जी के भी ब्लेसिंग्स अल्लाह थ्रू आपको, अल्लाह थ्रू स्वामी जी के थ्रू मिले ही अल्लाह के ब्लेसिंग्स। सो उसके लिए भी आप आज का दिन बहुत टोटली, टुडे इज योर सेकंड बर्थ। कहा जाता है कि सक्सेसफुल लोग है ना 2 दफा जन्म लेते हैं, पहली दफा तो अपने मदर के वोम से आते हैं, एज यूजुअल सभी आते हैं, और दूसरी दफा अपना वाई ढूंढ देते हैं। तो आज अपना वाई आपको मिल गया होगा, आपके वो जिंदगी क्यों इस दुनिया में आए उसका मकसद आपको मिल गया होगा डेफिनेटली। सो आज से आपकी दूसरी जिंदगी जो सक्सेसफुल लोगों की शुरू होती है, तो वो भी आज से शुरू हो गई आपकी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ। समीर लाल, स्वामी जी, माई सेल्फ, वी आर ऑलवेज विथ यू। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Parveen, Swamiji, and Samir, sir, and wish you best of luck. शुक्रिया। You always welcome. You always welcome. Khuda Hafiz, Thank Allah you so much Hafiz. for all the blessings, Gigi. Much appreciated. And I want one. Yeah, please. Swamiji, I want one more favor. Can you add me on Facebook, please? I've just sent you the friend request. If it's We will possible for connect. you. Sure. I will connect you on Facebook and WhatsApp too, and I will talk with your parents too. Don't worry, we are spiritual family members, and we now binding
on the base of love of Allah and breeze of spirituality. So don't worry, we are one family member. I will contact your parents too through your Thank you. WhatsApp. I will talk your parents too also. Okay. Thank you so much. Thank you, Swamiji. Again, Fatima ji, Samilal ji, as well as all the speakers who joined, and चार चांद इस इवेंट को लगा दी. आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. 14 साल के बच्चे पाकिस्तान से जुड़े. भाई अभी वो रईस फातिमा उसका एग्जाम्पल है, अभी भी माना जग रही है. Really appreciate that, और ऐसे future events में भी आते रहे और चांद लगाते रहे. And definitely your presence means the world for us, because without your presence, its events, इस celebration हो ही नहीं सकता था. And Mother India as well as Pakistan 75th Independence Day मुबारक हो. और मदर इंडिया और पाकिस्तान हजारों साल जीते रहे. बिकॉज जब तक हमारा मदर कंट्री जीते रहेगा तभी हमारी पहचान रहेगी. और डेफिनेटली हम भी हमारे कंट्री के लिए ऐसा कुछ कर जाए कि हम जब जाए, हमारा शव जाए, तो हमारे ऊपर हमारे कंट्री का फ्लैग, हमारे कंट्री का फ्लैग हमारे ऊपर आए, ऐसा कुछ कर जाए. So believe in your wildest dreams. Don't let anybody steal your dreams. Just do it now. If Trump can win, so can you. 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 If Trump can lose, so can you. Imran Khan can win, so can you. If Imran Khan can lose, so can you. You have the celebrity day. You have the celebrity life. You are the celebrity. Thank you, Jasmine, for hosting this event with me too. Thank you, Swamiji. Thank you, Rais. God bless. And of the broadcast.